Good morning. Namaskar, everyone. I welcome all of you in this international e-conference on various modalities used in the Stri Roga. My name is Dr. Shilpa Erme. I welcome all the dignitaries present over here, all the speakers, all the Vaidyas who are watching this show on various modes on Facebook or Zoom. I welcome all the dignitaries. So before starting the session, I would like to request Dr. Joshi sir to introduce about the Ayush Darpan Foundation, which is working for the propagation of the Ayurveda, and we are organizing programs on this platform of Ayush Darpan. So I request the founder of member, Dr. Joshi sir, to introduce something about the Ayush Darpan platform and the foundation. Thank you, Dr. Shilpa Erme ji. I welcome all of the speakers as well as all the participants on this Sunday morning. Ayush Darpan Foundation Trust is a non-profitable organization which is organizing such events from a long time. We have started the journey from year 2010 as a print of offline magazine, and up to 2014 we have published many issues of the Ayush Darpan Hindi offline magazine. After 2014 we are just continuously publishing e-journal, that is ayushdarpanjournal.com, in which we are just working on the current issue, that is the 2021 first issue, and the issue will be launched shortly. During the COVID-19 period, we have started from March 2020 with different programs through the online way, in which the various lectures as well as the various webinars and international webinars were organized, and this journey is still continue. We can say that we are pioneer of the online webinar series, because we have started first in the online platform, and still after the post-COVID also we are just continuing these lectures on the Ayush Darpan Journal Facebook page as well as a YouTube page. We have an app also in which the various classes related with the Stri Prasuti Roga, Clinical Ayurveda Sambhasa, Marma Chikitsa, as well as the Nadi Vigyan. We are also organizing these classes, as well as we have formed some small groups also in which the clinical practitioners are able to discuss their cases also. So in this event also, Stri Rugana Clinical Sambhasa is also a specialty in which many of the doctors are enhancing their knowledge by just discussing their cases. So this program is also a part of that class, that is the Stri Roga Clinical Sambhasa, especially the group. If you want to join that group also, so you can ask our office number, that is 9410379397, in which you will get a Google form, and by filling that Google form, you can join that Sambhasa also, as well as the app also having a class related with the Stri Roga. You can download the Ayush Darpan digital app in your mobile through Google Play Store, and by downloading that, you can join that class also. So thank you, Dr. Shilpa Erme, and I welcome to all the participants as well as all the speakers. Thank you, sir. Definitely, it's a really great pleasure to organize such a nice, wonderful webinar. Though it is online, but as we are moving with this pandemic, I think it's a great opportunity to deal with such a subjects. So before starting our session, I will request Dr. Ketki Parlikar to pray our. Hello, am I audible, ma'am? Yes, continue. Yeah, ma'am. Namami dhanvantarim adidevam surasurai vandita pada padmam lokai jararo bhayam mrityunasham dhataramisham vividhaushadhinam Chavyoma Vatavanivarivanyim
पंचम प्रपंचात्मक देहभाजम संताप संपात जराज्वरांतकम नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् नवीन नील मुदकान्तिकान्तम् शान्तं हरैर्द्वादशमाख्यमूर्तिम् पूर्तिं शतानां सुमनोरथानं नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम्. Thank you. Very beautiful, very beautiful. So again, I welcome all the dignitaries present over here on this dais. And today's webinar, I'm just introducing our speaker's name. So I welcome Dr. Vanita Sharma ma'am from Australia, Dr. Renuka Kulkarni from Pune, Maharashtra, Dr. Kamini Dhiman, AI New Delhi, Dr. Anjana Saxena, Madam from Varanasi, Dr. Madhura Kulkarni from Mumbai, Dr. Anjali Verma from Haridwar, Dr. Anjana Tak from Dehradun, Dr. Rachana from Karnataka, Dr. Aruna Patki from USA. And so I welcome all the speakers on this dais, and I'm sure this webinar will increase the confidence among the Vaidyas, Stri Roga, because I just observed that Ayurveda, Panchakarma, are very less used in practice. We always go with the modern practice in gynecology. So Ayush Darpan Foundation is working on this, and so we are organizing such webinars to build the confidence among the Vaidyas regarding the Panchakarma issue and all the local or Sthanik Chikitsa. So our today's first speaker is Dr. Shashi Sharma ma'am. I welcome ma'am. So Dr. Shashi Sharma is working in the field of gynecology since last 25 years. And she is associate professor in the PTSR department. So I welcome ma'am on this platform of Ayush Darpan. Namaskar. So you can start your session, ma'am. You are muted, ma'am. You just open your mic. Yeah. Okay. Om Shanti. Hope all of you are fine and well. I am very, very thankful to Ayush Darpan, Dr. Naveen Joshi ji, and Dr. Shilpa for giving me this opportunity to share my views on Uttarvasti in Stri Roga. First of all, I would like to say my session was posted at 2 p.m. So I just got the call and I agreed also. So Uttarvasti, it is in very demand and it's a challenging topic to all of us because no such work has been done on the topic as I have gone through. As the topic is given to me, I am preparing for this for the last week, and I have not found many literature data on net also. So as I am giving the Uttarvasti for the last 10 years, I will share my views. It is used in tubal blockage as infertility cases are rising. There is gynecological problems, repeated history of abortion, miscarriage, premature ovarian failure cases are also increasing day by day. So we are using this. And challenge is this, that many people are doing Uttarvasti, but no standard protocols have been still designed. We are using according to our own practical experience. And the शास्त्रों में जो बताया गया उसको भी हम कर रहे हैं, पर when we combine the principles, आयुर्वेद को जो सिद्धांत है वो अक्षुण है, वो परिवर्तनीय नहीं है, वो सिद्धांत आज भी सही है. और जब हम सिद्धांतों और टेक्नोलॉजी को साथ में काम करेंगे, उसका इनोवेशन करेंगे, तो we can serve the society in a better way, है ना. उत्तरवस्ती is boon. आप नेट पे देखिए, there are so many videos, so many lectures, people have posted their own videos. So people are still, they are learning the process of उत्तरवस्ती. जैसे कि अभी बहुत सारे लेक्चर होने वाले हैं उत्तरवस्ती में, विरेचन में, वमन में, मैंने देखा है, और भी स्पीकर्स हैं. तो वस्ती जो है, it is the best treatment for वात रोग. आप सब जानते हैं कि वस्ती जो है पूर्ण चिकित्सा कही गई है, अर्ध चिकित्सा कही गई है, और वस्ती के जो गुण है और उपयोगिता है वो वात रोगों के लिए श्रेष्ठ मानी गई है. और जो वात शमनार्थ या स्नेहनार्थ जो द्रव्यों का प्रयोग किया गया है, उसमें तिल तेल को श्रेष्ठ माना गया है.
और वस्ती इसको क्यों कहा गया, क्योंकि वस्ती जो है इसमें हम यूरिनरी ब्लैडर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स यूज कर रहे थे, इसलिए इस कर्म को करते करते इसका नाम जो है वस्ती कर्म पड़ गया। स्त्री रोगों में स्थानिक चिकित्सा में इसका गणना हो रही है। और इसको उत्तरवस्ती क्यों कहा जाता है? सबसे पहले बात तो ये है कि हम उत्तरवस्ती की बात कर रहे हैं, तो उत्तरवस्ती की परिभाषा क्या है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज उत्तरवस्ती। तो सामान्य जो वस्ती हम देते हैं वो गुद मार्क्स देते हैं, और गुद मार्ग के आगे या ऊपर जो मार्ग है जो एंटीरियर साइड पे, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर एंड विजाइन। तो उत्तर मार्ग में देने के कारण इसको उत्तरवस्ती कहते हैं। निरु के देने के पश्चात, निरुवस्ती और स्थापन अनुवासन और निरुवस्ती देने के पश्चात जब इस कर्म को किया जाता है तो उत्तरवस्ती कहते हैं। एंड इट गिव बेस्ट रिजल्ट, ये गुणों में श्रेष्ठ है, तो इसलिए इसको उत्तरवस्ती कहते हैं। उत्तरवस्ती की बात कर रहे हैं तो पहले हम क्लासिकल बात जरूर करेंगे, मैं अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो आपसे शेयर करूंगी ही, पर पहले शास्त्रों में क्या किया गया, हमें शास्त्रों को लेके ही अपनी इनोवेशन और आगे बढ़ना है। जो भी टेक्निक अपनानी है वो पहले शास्त्रों में जो बताया गया है उससे आज हम क्या बेटर कर पा रहे हैं, क्योंकि समय के अनुसार बहुत सारी चीजें, जैसे वस्ती ही है, वस्ती पुटक का वर्णन बताया गया है, तो आज तो हम ब्लैडर यूज नहीं कर रहे हैं ना, यूरिनरी ब्लैडर, हमारे पास और बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो गए हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया है। तो गुद मार्ग के अतिरिक्त जो हम मूत्र मार्ग या योनि मार्ग से दे रहे हैं, दैट इज उत्तरवस्ती। आज मैं बात करूंगी योनि मार्ग से ही, उत्तरवस्ती की, स्पेशली मूत्र मार्ग की बात हम नहीं कर रहे हैं। जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको उत्तरवस्ती यंत्र कहा जाता है। तो यंत्र जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, वस्ती पुटक है, बैग फॉर होल्डिंग द ड्रग्स, और वस्ती नेत्र है, नोजल है, जिसको हम इंसर्ट करके उत्तरवस्ती दे रहे हैं। तो मैंने अभी आपसे बताया कि ये स्नेहन करने के कारण अनुवासन सदृश है, और कुछ आचार्य कहते हैं कि शोधनार्थ भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए निरुवक्त भी है। उत्तरवस्ती जो है बताया कि यूरिनरी ब्लैडर यूज किया जाता था, पर आजकल हम यूरिनरी ब्लैडर को यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द सिरिंज। आप 5 ml 10 ml की सिरिंज का प्रयोग कर सकते हैं। और पुष्प नेत्र इसलिए कहा गया कि पुष्प जो है वो रज का भी पर्याय है, और पुष्प नेत्र जो है पुराने जमाने में, इन ओल्डन टाइम, इट इज मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर, है ना, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट था, और उसकी भी अपनी उपयोगिता थी कि मेटल यूज करें, गोल्ड सिल्वर या पीतल कांस्य, जिसको भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसका। और ये कैसा होना चाहिए था, गोपुच्छ आकार होना चाहिए था, और सिलेक्शन मींस कि सॉफ्ट होना चाहिए था, कोई भी इंजरी ना करे। और उत्तर नोजल के स्थान पे अब हम क्या इस्तेमाल करते हैं देने के लिए, इंसर्ट, वी आर नाउ यूजिंग इंट्रा यूट्राइन कर रहे हैं हम। जो उत्तरवस्ती की आज मैं बात कर रही हूँ वो इंट्रा यूट्राइन है। तो इसमें तो हम रबर कैथेटर का प्रयोग कर सकते हैं, एनजी ट्यूब का प्रयोग कर सकते हैं, यूट्राइन कैनुला यूज कर सकते हैं, या आजकल लेटेस्ट लोग यूज कर रहे हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कैनुला। तो आप जो है वस्ती यंत्र की जब हम बात करते हैं तो वस्ती यंत्र में सिरिंज और कैनुला का प्रयोग किया जा रहा है, और जैसा जिसको कन्वीनियंट हो वो उसको उसी हिसाब से इसको यूज कर सकता है। अब हम शास्त्र की बात करते हैं कि स्त्रियों को प्रयोग किए जाने वाले पुष्प नेत्र की जो लंबाई है वो 10 उंगल होनी चाहिए। 10 उंगल मीन्स अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई अगर मूत्र मार्ग में दे रहे हैं तो उस यूथरल मीटस या मूत्र स्रोत के आधार पे होनी चाहिए, और उसके जो आगे का इनर अंदर 2 कर्णिकाएं जो बताई गई हैं, ये पहले बांधने के लिए बताई गई थी कर्णिकाएं। एक तरफ हम वस्ती पुटक लगाएंगे, एक तरफ नोजल लगाएंगे, तो उसको बैग को होल्ड करने के लिए 2 या 3 कर्णिकाएं बताई गई थी। कहा गया था कि आगे का छिद्र इतना होना चाहिए जिससे सरसों का बीज निकल जाए। अब आचार्यों ने एक बात बहुत अच्छी कही कि अवस्था अनुसार उन्होंने उत्तरवस्ती का वर्णन किया। उन्होंने कहा बाला के अगर मूत्र मार्ग में उत्तरवस्ती देते हैं तो उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, पुष्प नेत्र का डायमीटर कैसा होना चाहिए, मालती या जाति पुष्प के समान। आप सब लोगों ने देखा ही होगा मालती, जाति पुष्प या करवीर का जो फूल है उसके, और उसके अग्र भाग से सरसों का दाना निकल जाए। और इसको इंसर्ट कितना करना था, कर्णिका इज एक्टिंग एज अ स्टॉपर और गार्ड ऑन द नोजल। तो 1 उंगल बताया है, 1 उंगल मीन्स 1 सेंटीमीटर आप कर्णिका इंसर्ट करेंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं इंसर्ट करनी है। फिर युक्तियों में बताया, ये तो बाला का बताया, युक्तियों में बताया कि मूत्र मार्ग में जितनी मूत्र स्रोत का जो घेरा है और उससे मुग्ध का जो है वो दाना उससे निकल जाए, इसका प्रवेश बताया है। जैसे कि एज बड़ी हो गई, बाला से युक्ति हो गई, तो 2 उंगल कर्णिका या इंसर्ट करने के लिए 2 उंगल बताया। फिर युक्तियों के योनि मार्ग में उत्तरवस्ती देने को कहा है। युक्तियों के योनि मार्ग में उन्होंने बताया कि कनिष्ठिका उंगली, कनिष्ठिका मीन्स दिस आर लिटिल फिंगर,
इतना उसका डायमीटर होना चाहिए और उसके अगर भाग से जो है मुक्त का दाना निकल जाए। और इसको प्रवेश करवाने के लिए 4 उंगल बताया कि इसको जो है 4 उंगल ही प्रवेश करवाएं। अब सबसे एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ये तो आचार्यों ने बता दिया और हम इसको पढ़ते भी आ रहे हैं। फिर उन्होंने एक बात और कही कि कन्याओं में जो है, गर्ल्स में जो है उत्तरवस्ती नहीं दी जाएगी, उनके अपत्य मार्ग में उत्तरवस्ती नहीं दी जानी है, क्योंकि उनका जो पैसेज है वो आवरण से ढका है। आवरण क्या है यहाँ पे? आवरण से हम हाइमन ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने उत्तरवस्ती गर्ल्स में मना कर दी है। और इसीलिए बताया गया है कि युवतियों में उत्तरवस्ती का प्रयोग करना चाहिए। उत्तरवस्ती देने का काल क्या है? उत्तरवस्ती कब दी जाए? उत्तरवस्ती का काल आप सब लोग जानते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी ज्वाइन किए होंगे। और मैं बच्चों को, मेरा लेक्चर हमेशा बच्चों के लिए होता है, जो और बच्चों को ही आज भी गाइडेड है, अगर बाद में भी उनकी कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। उत्तरवस्ती का काल आर्तव काल अर्थात आर्तव काल बीत जाने ऋतु काल में देनी है। ऋतु काल में किस लिए बताया है? इसमें आचार्यों ने कहा है कि योनि और गर्भाशय का जो मुख है वो खुला रहता है, आवरण रहित होता है। तो जो भी हम स्नेह द्रव्य यूज करेंगे वो इजिली योनि मार्ग से और गर्भाशय में जाके इजिली उसका स्नेह शोषण हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा। और उत्तरवस्ती जब भी आप देंगे तो उसको भोजन करके देंगे, खाली पेट कभी भी कोई भी प्रोसीजर नहीं करना है, उत्तरवस्ती भी नहीं देनी है। और उत्तरवस्ती देने का काल इसलिए पोस्ट मेंस्ट्रुअल है, मेंसेस क्लियर हो जाए, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, तभी आप उत्तरवस्ती देंगे। अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको उत्तरवस्ती नहीं देंगे। जैसे कि पेशेंट को हम कहते हैं कॉपर टी लगानी है, तो हम कहते हैं कि अगर हल्का सा पीरियड हो रहा है तो आ जाना, हम लगा देंगे। पर उत्तरवस्ती के लिए इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। यही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको केयरफुल रहना है। जब ब्लीडिंग टोटली स्टॉप हो जाएगी तभी हम उत्तरवस्ती देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। अगर आप ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, आप उत्तरवस्ती दे रहे हैं, तो जो भी आप तेल यूज कर रहे हैं, जो भी ऑयल यूज कर रहे हैं, वो ब्लड वेसल्स में जाके वहां पे इन्फेक्शन कर सकता है या और भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो मैं आगे बताऊंगी। उत्तरवस्ती देने जो है और जितने भी हम प्रोसीजर करते हैं वो पॉलीफ्रेटिव फेज में ही करते हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं, HHG करते हैं तो वो भी पॉलीफ्रेटिव फेज में ही करते हैं। क्लासिकल बात की लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो उत्तरवस्ती देने की विधि क्या है और प्रोसीजर क्या है? तो कोई भी कर्म करते हैं, चाहे पंच कर्म कर रहे हैं, चाहे उत्तरवस्ती दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म को हमें फॉलो करना है। पूर्व कर्म क्या है? पूर्व कर्म है रोगी की प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, जिसमें हम रोगी की परीक्षा करेंगे, रोगी उत्तरवस्ती देने योग्य है या नहीं है। प्रधान कर्म जिसमें हम प्रोसीजर करेंगे, ऑपरेटिव प्रोसीजर। और पश्चात कर्म दैट इज द पोस्ट ऑफ केयर, जो हमको उस पेशेंट को देनी है। उत्तरवस्ती एक बहुत ही ये भी इन्वेजिव प्रोसीजर है। वी आर अप्रोचिंग द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू विजाइनल रूट, तो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। अति उत्साह में उत्तरवस्ती ना दें, आप पहले इसको सीखिए। इट शुड बी डन अंडर अ एक्सपर्ट एक्सरसाइज, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया, गूगल कर लिया और आप कर रहे हैं। इसको बहुत केयरफुली देना है। इट इज अ माइनर ओटी प्रोसीजर, ऑपरेटिव प्रोसीजर है। मैंने आपको बताया यू आर अप्रोचिंग द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू द विजाइनल रूट। तो अति उत्साह में नहीं काम करना, आप सीखिए। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, पर आप सीखिए। आपका क्लिनिकल हैंड अच्छा होना चाहिए। आप PSPV जरूर करिए पेशेंट की। एग्जामिनेशन अभी मैं आगे बता रही हूँ। एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी मस्ट, एग्जामिनेशन भी मस्ट है। और एसेप्सिस और एंटीसेप्टिक इन्वायरमेंट होना भी बहुत जरूरी है अगर हम उत्तरवस्ती दे रहे हैं। आचार्यों ने एक बात कही है, उत्तरवस्ती देने की विधि आचार्यों ने भी वैसे ही बताई है। जो डॉर्सल पोजीशन या लिथोटमी पोजीशन की हम बात करते हैं, वैसे ही आचार्य चरक ने बताया है कि उत्तरवस्ती उसी पोजीशन में देनी है। पर यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, मैं आप सबका ध्यान खींचना भी चाहूंगी, हो सकता है मेरा ये अपना व्यू है, आप लोग भी अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। आचार्य चरक ने कहा है कि उत्तरवस्ती दिन रात में 2, 3, 4 बार आप स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। 2, 3, 4 बार। उन्होंने कहा है कि ऐसे आप कॉन्टिन्यूसली 3 दिन उत्तरवस्ती दीजिए। धीरे धीरे आप स्नेह की मात्रा को बढ़ाते चलिए और 3 दिन बाद आप रुक जाइए, फिर 3 दिन रिपीट करिए। तो मैं
इस बात से, और जो वस्ती नेत्र का प्रमाण बताया है आचार्यों ने, वो कनिष्ठिका उंगली के समान बताया है, और मुग्ध का दाना उससे निकल जाए। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये उत्तरवस्ती जो है, जो आचार्यों ने डिस्क्राइब की है, ये योनि मार्ग में जैसे कि हम तेल पूरन करें योनि में, वैसी कुछ प्रतीत होती है। प्रैक्टिकली वी आर डिस्कसिंग दी इंट्रायूट्राइन उत्तरवस्ती जो आज हम दे रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि सिद्धांत हमारे वही है, पर टेक्नोलॉजी के यूज के साथ हम अपनी चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट, उसको और अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये उत्तरवस्ती बताई गई है, जिसमें स्नेह की मात्रा 2, 3, 4 दिन और कॉन्टिन्यूसली बताई गई है कि आप धीरे धीरे इसको इंक्रीज करिए, तो ऐसा मुझे लगता है कि ये जो बताया गया है ये योनि में तेल पूर्ण करने के समान प्रतीत हो रहा है। और उसमें यह भी कहा गया है कि जब आप स्नेह की वस्ती देंगे तो स्नेह जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर वापस भी आ गया है तो इसीलिए उसको कहा गया है। और जब हम स्नेह योनि में दे रहे हैं तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगा, योनि से, वेजाइनल म्यूकोजा से उसका एब्जॉर्प्शन होगा। और योनि का मुख जब खुला रहेगा, ऋतुकाल में दे रहे हैं, तो ऑस से, सर्वाइकल ऑस से भी धीरे धीरे उसका एब्जॉर्प्शन होगा। और आप प्रैक्टिकली भी देखिए, जब भी हम इंट्राविजाइनल कोई टैबलेट्स देते हैं, चाहे एबॉर्शन कराने के लिए या प्रेगनेंसी रोकने के लिए, वी आर यूजिंग डिफरेंट प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स या एक्सपल्शन के लिए, तो वो हम विजाइनल म्यूकोजा में ही रखते हैं और वहीं से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और स्टडीज ये भी बताती हैं कि ये एब्जॉर्प्शन विद इन हाफ एन आवर अच्छे से हो जाता है। तो ये जो आचार्यों ने बताया था, ये मेरे को ऐसा, ये मेरा ऐसा सोचना है, आप अपना व्यू बता सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो है योनि में ही दी गई है। और जो कनिष्ठिका उंगली का प्रमाण बताया गया है, उसके लिए फिर आपको इंट्रायूट्राइन अगर देनी है तो आपको डायलेट करनी पड़ेगी कैनाल। कनिष्ठिका उंगली मींस लिटिल फिंगर, तो इतना हमको डायलेटेशन करना पड़ेगा। ये तो मेरा शास्त्रीय जो भी आचार्यों ने बताया है उस पर मैंने कहा है। अब प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, क्योंकि बार बार डॉक्टर शिल्पा ने कहा कि मैडम वी वांट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। मैं पीपीटी तैयार नहीं कर पाई किसी वजह से, फाइनल नहीं हो पाई, तैयार तो मैंने करी थी, वो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगी। अब हम बात कर रहे हैं कि उत्तरवस्ती में पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो मैनी पीपल आर यूजिंग उत्तरवस्ती एज एन ओपीडी प्रोसीजर एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि आप इसको इंडोर, एज ए इंडोर प्रोसीजर करिए। तो आप इसका पेशेंट को एडमिट करिए और बेटर सुपरविजन और बेटर रिजल्ट्स हमको तभी मिलेंगे जब हम इसको एज ए इंडोर प्रोसीजर करेंगे। रोगी की परीक्षा और उत्तरवस्ती देने का निश्चय करने से पहले रोगी की परीक्षा बहुत जरूरी है। रोगी का बल, अग्नि
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैम का ये इंटरनेट इशू था, सॉरी। Ma'am, you can unmute yourself. Dr. Shashi, ma'am, please. Ma'am, unmute कीजिए. You are co-host. नहीं हो रहा है. या अभी कीजिए. So we are dealing with the Uttar Basti. Dr. Shashi madam will join within few seconds. Hello. No, ma'am, I have. No, you are co-host. You can easily. Oh, एक मिनट और आपका 2 नंबर से ज्वाइन हो गया आप? नहीं. हाँ, okay, it's done. Okay. क्या हो गया? तो तुमको पहले उधर लगा लेना चाहिए था। यार नहीं, ज्वाइन करो, फिर चली गई मीटिंग। हाँ, आप हो ऑनलाइन शशि जी? 1 minute प्लीज यार। Due to weather, sometimes internet issues there. It's raining too much, na, in UP. Yeah, we can hear her now. ज्वाइन। Yeah. हाँ, ज्वाइन। इसको पासपोर्ट 1 मिनट। आयुष हाँ, You are in, ma'am. You are audible. उनका सिर्फ वीडियो नहीं आ रहा है, दिखाई तो दे रही है वो। तुम कहाँ ज्वाइन कर रहे हो ऋषि? फिर से डालो, नया खोलो, इसमें यहाँ टैब ऐसे नहीं करो। Ma'am, you are audible. Dr. Shashi, ma'am, you are audible. खोलो। हेलो। हाँ, yeah, you are audible, ma'am. हेलो। Yeah, you are audible. हेलो, व्यू। हेलो। You are audible. You She are can't audible, hear us. I think she can't hear us. Like हेलो। she's audible to us. रुको। Okay, दोनों नंबर के उनको मैंने मैडम उनको एक बार आप रिमूव कर दीजिए। आप एक बार रिमूव कर दीजिए, वो फिर ज्वाइन हो जाए। ना, वो दोनों को भी आगे। आगे। is also on. Yeah, आप दिख भी रहे हो। दिख रहे हैं। ओके, वो कुछ हाँ। बीच में भी नहीं, दोनों नंबर से मैंने आपको को-होस्ट बना दिया। ओके, कंटिन्यूइंग। ओके, थैंक यू। हाँ, इसको कर लो, बड़ा कर लो। रहने दो। 1 मिनट, बड़ा कर दो इसको क्लिक करो एरो पे। नहीं, उसी पे जाओ, बैक जाओ। अच्छा, ओके। आपकी आवाज भी आ रही है मैम, यू कैन कंटिन्यू। बस थोड़ा सा इंटरप्शन। आप थोड़ा सा वीडियो ये कर दीजिए, थोड़ा सा नीचे, मतलब चेहरा आपका पूरा दिखेगा, जस्ट लिटिल। ओके, हाँ, आई एम ऑडिबल। या यस, Yes, you are आई एम audible. ऑडिबल। या आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। ओके। पूर्व कर्म या प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशन। मैं बता रही थी कि पूर्व कर्म में जो है, सबसे पहला हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं, इट शुड बी एन इंडोर प्रोसीजर। मोस्टली वी आर यूजिंग इट एज एन आउटडोर प्रोसीजर। इंडोर प्रोसीजर अगर हम करेंगे, पेशेंट को अपने कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे, अपने उसमें रखेंगे, तो सुपरविजन में, तो बेटर रिजल्ट्स देख पाएंगे। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं वो भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। रोगी की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गिविंग उत्तरवस्ती। पेशेंट उसके योग्य है नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग बहुत जरूरी है।
history taking and clinical examination, abdominal examination, pelvic examination, complete menstrual history, obstetric history, past medical history, surgical history. तभी तो हम डायग्नोसिस पे आएंगे कि अगर इसको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इसके इश्यूज हैं, वो किस कारण से हैं. तो प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट इज वेरी वेरी मस्ट. हम उत्तरवस्ती देने जा रहे हैं, हम उसी दिन पेशेंट को प्रिपेयर, हमने पहले पेशेंट को एग्जामिन नहीं किया, कुछ नहीं किया, जैसे ही हम उत्तरवस्ती देने हम देख रहे हैं पेशेंट को वेजिनाइटिस हो सकता है, सर्विसाइटिस हो सकता है, पीआईडी हो सकता है. तो प्लीज जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पहले पेशेंट को अपना जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी उत्तरवस्ती देने जा रहे हैं, पेशेंट की डीप हिस्ट्री टेकिंग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है. पीएसपीवी करके हम देख लें सारी चीजें हमारे फेवर में है कि नहीं है. यूट्रस एंटीवर्टेड है, रेट्रोवर्टेड है, हमको जब इंसेमिनेशन करना है, टेल इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल होने के साथ जो भी, अगर हमको उत्तरवस्ती, हमको लग रहा है पेशेंट को इन्फेक्शन है, तो वी कैन फर्स्ट ट्रीट द इन्फेक्शन, देन प्रिपेयर नेक्स्ट साइकिल में आप उसको उत्तरवस्ती दीजिए. उत्तरवस्ती देने से पहले इंस्ट्रूमेंट्स का स्टरलाइज्ड ऑटोक्लेव्ड होना बहुत जरूरी है. इसीलिए मैंने कहा इट्स अ माइनर ओटी प्रोसीजर. आपके पास ओटी है, मेजर ओटी है, माइनर ओटी है, आप उसी में दीजिए. लेबर रूम इज नॉट फिट फॉर गिविंग उत्तरवस्ती. पर हम लोग प्रैक्टिकली तो बहुत सारी चीजें हैं, कई बार हमारे पास संसाधन कम होते हैं तो हम करते हैं, पर बेस्ट इज एसेप्टिक एंड एंटीसेप्टिक मेजर शुड बी मेंटेन्ड बिकॉज वी आर अप्रोचिंग द वेजाइनल पेरिटोनियल कैविटी थ्रू वेजाइनल रूट. उत्तरवस्ती देने से पहले पेशेंट का बावल और ब्लैडर दोनों एम्प्टी होना मस्ट है. और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, रिटन कंसेंट ऑफ द पेशेंट शुड बी टेकन. पेशेंट शुड बी एक्सप्लेन्ड अबाउट द होल प्रोसीजर. आप क्या करने जा रहे हैं, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बाद में हमको कोई भी मेडिको लीगल कॉम्प्लिकेशन हमें ना हो. इसके लिए बेटर है कि हम एक रिटन कंसेंट लें और उससे साइन करवा लें, और वी शुड ऑल्सो साइन दैट कंसेंट. पेशेंट को आप उस पर लिखिए कि हमने सारा प्रोसीजर बता दिया है, क्या क्या हम यूज करेंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे. दैट शुड बी क्लियर टू द पेशेंट. प्लीज चेक हर वाइटल्स बिफोर गिविंग द उत्तरवस्ती. इसीलिए मैंने कहा डिटेल्ड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री. हो सकता है प्रीवियस सीजर हुआ हो, उसने प्रीवियस एमटीपी कराई हो, उसकी वजह से उसका ट्यूबल ब्लॉकेज हो गया, या उसको कोई और मेडिकल डिसऑर्डर रहा, हाइपरटेंसिव हो, पेशेंट डायबिटिक हो. तो सारी चीजें, और वाइटल्स को जरूर चेक करें. ऐसा नहीं है कि आप अति उत्साह में कि हम उत्तरवस्ती देने जा रहे हैं, आप अति उत्साह में दे दें. आप काम करिए, पर काम को बहुत केयरफुली करिए. मेरा हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं पेशेंट का अगर अच्छा ना कर पाऊं तो मैं उसको नुकसान भी ना दूं, उसका मैं कुछ बुरा ना करूं. मैं रेफर करना ज्यादा बेटर समझूंगी. मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कंसल्टेशन के लिए भी आते हैं. अभी कल एक पेशेंट मेरे पास आई थी, ये मेरा मंच नहीं है कहने का, पेशेंट सीए की थी, और पेशेंट को डॉक्टर्स ने बता दिया था एसजीपीजीआई से ही कि 3 महीने रहेगी. मेरे ख्याल से वो 1.5 महीना ही रह पाई. तो कल पेशेंट ने मैसेज किया कि मैडम मेरी जो पेशेंट है वो चली गई है. तो हम हमेशा पेशेंट के वेलबींग की तरफ सोचें, अपनी वेलबींग हम बाद में सोचें. हम जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, इसलिए रिटन कंसेंट बहुत जरूरी है कि मेडिको लीगल में आप ना फंसें. पेल्विक एग्जामिनेशन, बार बार मैं कह रही हूँ कि पीएसपीवी इज मस्ट. रोगी की परीक्षा, रोगी के बलाबल की परीक्षा, उसकी अग्नि की परीक्षा, ये सब आपको करना है. अब उत्तरवस्ती देने से पहले अनुवासन स्थापन वस्ती देने का भी विधान है. अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप, जैसे कि नेक्स्ट साइकिल में आप प्रपोज कर रहे हैं उत्तरवस्ती, तो आप पेशेंट को फलघृत का प्रयोग कर सकते हैं. लोकल स्नेहन स्वेदन कराने के लिए पंचगुण तैल का अभ्यंग उसके लोअर एब्डोमेन पे और बैक के कराइए. बालुका से वो स्वेद कर ले घर पे. अगर उसको ट्यूबल ब्लॉकेज है, ऐसी कोई समस्या है, ट्यूबल ब्लॉकेज को लेके आई है, तो आप उसको घर पे भी वो कर सकती है. और जिस दिन आप प्रोसेस करने जा रहे हैं उस दिन भी आप थोड़ा सा अपना चीजों को मैनेज कर सकते हैं. बेस्ट है कि आप दीपन पाचन उसको जरूर कराइए. उसके लिए आप चित्रकादि वटी या पंचकोल चूर्ण बेस्ट है, वो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं वो उसको देती हूँ. और प्रधान कर्म जो है मेजर प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, मैंने बार बार कहा इट शुड बी डन अंडर द एक्सपर्ट. आप इसको और एसेप्टिक एंटीसेप्टिक जरूर इस चीज का ध्यान रखना है कि हम उसको इन्फेक्शन ना दें. हम कॉन्टिन्यूसली अगर 3 दिन वस्ती दे रहे हैं, उसको हल्की सी भी इन्फेक्शन होगी तो जब वो हम वस्ती देंगे वो फ्लेयर अप हो जाएगी, वो अंदर जाएगी.
अगर वेजाइना या सर्विक्स पे कोई भी इन्फेक्शन है तो वो भी फ्लेयर अप के अंदर जाएगी। तो इसमें कोई कंप्रोमाइज आपको नहीं करना है। आप नेक्स्ट साइकिल में प्रपोज करिए, आप पहले उसको ट्रीट कर लीजिए इन्फेक्शन को। पेशेंट को उत्तरवस्थी डॉर्सल या लिथोटमी पोजीशन जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल है या आप कंफर्टेबल है उसमें दीजिए। गुड सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं आपके कमरे में, तो एक लाइट का सोर्स आपके आगे और पीछे दोनों होना चाहिए। प्लीज क्लीन द पार्ट्स विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। आप भी प्रिपेयर होके जाइए, अच्छे से वॉश होके जाइए, योर हैंड्स ग्लव्स सब सारी चीजें स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। पेशेंट को भी आप बता दीजिए कि वो अच्छे से अपना नहा धो के अच्छे से आए। Expose the cervix with posterior vaginal speculum and anterior vaginal speculum. Hold the cervix with you can use Valsalem or Alice forceps or tenaculum, जो भी आपके पास अवेलेबल है। Valsalem लेते हैं तो मल्टीपल टूथ है तो इंजरी के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, तो आप एलिस या टेनाकुलम भी यूज कर सकते हैं। और एक बार यूट्राइन साउंड डाल के अब आप चेक कर लीजिए कि यूट्रस एंटीवर्टेड है कि रेट्रोवर्टेड है। उससे थोड़ा सा आपकी कैनाल डायलेट भी हो जाएगी। अगर आप एनजी ट्यूब यूज कर रहे हैं या रबर कैथेटर यूज कर रहे हैं तो थोड़ी सी कैनाल डायलेट भी हो जाएगी, ये हमको एक एडवांटेज मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर IUI कैनुला यूज करें तो वो इजिली चला जाता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा डायलेटेशन की जरूरत नहीं रहेगी। अब हम उत्तरवस्थी देने जा रहे हैं तो उससे पहले हम अपनी ट्रे में सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा लें और तैल भी, जो भी आप तैल यूज कर रहे हैं, बला तैल, तिल तैल, बला तैल, शतावरी तैल, जैसी भी उसका रोग है उस हिसाब से जो भी आपने अपना प्लान किया है आप उन सब चीजों को पहले ही लोड कर लें। ये नहीं कि आप उसके बाद सिरिंज खुलवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आप अपनी सारी चीजों को प्रिपेयर करके, पेशेंट को भी प्रिपेयर करके, आप भी प्रिपेयर हो जाए, अच्छे से वॉश करके फिर आप उसको उत्तरवस्थी दीजिए। अब स्नेह की मात्रा कितनी देनी है? स्नेह की मात्रा जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 3 to 5 ml, 3-4 ml, तो यही यूज कर रहे हैं। और इट शुड बी इंजेक्टेड स्लोली। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम गश ना, और इसीलिए मैंने कहा अगर हम स्लोली देने से क्या होगा, अगर पेशेंट को हल्की स्पॉटिंग हो रही है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, अगर पेशेंट का PS करके देख लीजिए, उसको ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि अंदर एंडोमेट्रियल वेसल्स जो हैं वो ओपन हो, तो एम्बोलाई के चांसेस हो सकते हैं। आप तेल लोड कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिए उसमें बबल ना हो। और जब भी आपने सारा प्रोसीजर कर लिया है तो उसके बाद आप जो है इंसर्शन आपका बहुत स्लो होना चाहिए और केयरफुल होना चाहिए। जैसे कि आचार्यों ने बताया कि निष्कंप हाथों से देना, आपके हाथ कांपे नहीं। तो ये प्रोसीजर आप तभी करेंगे जब आपने पहले बहुत सारा PS PV किया, आपका क्लिनिकल हैंड अच्छा हो, तभी दीजिए, वरना आप अंडर सुपरविजन सीखिए और इसको करिए। इतना डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। जेंटली फिर आप उसको जो है दे दीजिए और उसके बाद एक ड्राई स्वैब जो है आप सर्विक्स पे रख दीजिए, जो भी लीकेज होगा वो उस पे आ जाएगा, उससे पेशेंट को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पेशेंट को अब 15 से 20 मिनट आप उसी पोजीशन पे रहने दीजिए। अगर आपने लिथोटमी दिया तो डॉर्सल कर दीजिए उसको, और 15 से 20 मिनट आप उसको वैसे ही रहने दीजिए। आप वेट करिए, अगर उसको कोई परेशानी है कुछ है। जब वस्ती आप दे रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है पेशेंट रिलैक्स हो, आप उसको गहरी गहरी सांस लेने को कहें, जिससे इजिली जो है हमारा प्रोसेस हो जाए। अब आप उसको पेशेंट को जैसे पश्चात कर्म की बात कर रहे हैं, तो पेशेंट को अगर पेन फील हो रहा है तो आप हॉट वाटर बैग फॉर्मेंटेशन करा सकते हैं, और अगर उसको फिर आधे घंटे बाद आप उसको वार्ड में शिफ्ट कर लीजिए। इसीलिए मैंने कहा अगर हम इसको एज ए इंडोर प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हम अच्छे से देख पाएंगे कि क्या परेशानियां हो रही हैं और क्या नहीं हो रही हैं। अगर उसको दर्द हो रहा है तो आप शंखवटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लीडिंग हो रही है तो बोल परपटी, ये सब आप लोग जानते ही हैं, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट को आपने शिफ्ट कर दिया, थोड़ा उसको वेट एंड वॉच पे रखिए, उसके वाइटल्स फिर से चेक कर लीजिए। अगर पेशेंट थोड़ा एप्रीहेंसिव हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो आप पेशेंट की काउंसलिंग करके उसको कंसोल कर दीजिए। पेन फील हो रहा है तो हॉट वाटर बैग से फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं। और अगर ये लौट के नहीं भी आ रही है, स्नेह की वस्ती है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर हम जो वस्ती दे रहे हैं ये हम कॉन्टिन्यूसली दे सकते हैं, या एक ही इंट्रा यूट्राइन दे रहे हैं, इसलिए एक ही वस्ती दे रहे हैं। नेक्स्ट डे आप इसको रिपीट कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है वो मैंने आपको बताया कि वेजाइनल म्यूकोजा से अच्छा होता है, और मैंने आपको ये भी बताया कि विद इन हाफ एन आवर जो है अगर गर्भाशय का मुख खुला है तो भी धीरे धीरे वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं उत्तरवस्थी के?
मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि एसेप्सिस मेंटेन करना है, अंडर गाइडेंस करनी है। तो वस्ती दाता के दोष बताए हैं, वस्ती नेत्र के दोष बताए हैं, वस्ती पुटक के दोष बताए हैं। तो वस्ती दाता के दोष क्या हो सकते हैं? वस्ती दाता के दोष यही है कि वस्ती दाता अगर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, तो अगर आप एनजी ट्यूब डाल रहे हैं या रबर कैथेटर डाल रहे हैं तो आप इंजरी कर सकते हैं, सर्विक्स को या वेजाइना में इंजरी हो सकती है। अगर आपने इन्फेक्शन नहीं चेक किया है, आपने नहीं पीएसपीवी करके देखा है कि उसको पीआईडी है, टेंडरनेस मिल रही है फोनिसिस में, या पीएस में आपको लग रहा है कि नॉर्मल सर्विक्स हेल्दी नहीं है, तो आप उस इन्फेक्शन को फ्लेयर अप कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो पेशेंट को पेन हो सकता है, और कई बार से आपने सर्विक्स होल्ड करी, उससे ही कई बार पेशेंट जो है वेसोवेगल शॉक में चली जाती है या ट्रॉमा हो सकता है। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इंट्रावेसेशन ऑफ दी टैल हो सकता है। टैल जो है उन ओपन वेसल से जाके जो है लेटर ऑन वो कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। और आप देखते हैं एचएसजी भी हम करते हैं, तो मोस्टली हम जो डाई यूज करते हैं वो वाटर बेस्ड करते हैं। दोनों डाइज आती हैं, वाटर बेस्ड भी आती है, ऑयल बेस्ड भी आती है, पर आजकल प्रेफर हम थोड़ा सा ऑयल वाटर बेस्ड करते हैं, क्योंकि उसमें जो है उसका एब्जॉर्प्शन इजी होता है। और वी आर यूजिंग टैल, जो हम टैल यूज करें हाई विस्कोसिटी की होती है, तो हमको इसलिए क्वांटिटी में थोड़ा कम रखना चाहिए। अगर आप बहुत स्ट्रांगली उसको इन्फ्यूज करेंगे तो पेरिटोनियल इरिटेशन कर सकता है, एक्स्ट्रा विसेशन ऑफ द ऑयल हो सकता है, पेरिटोनियल इरिटेशन हो सकती है उसको। और अगर तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम उत्तरवस्ती करें तो जो बेसिक चीजें हैं आप इस प्रोसीजर को करिए, ये इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। और मेरे पास पेशेंट्स भी हैं। मेरी एक 38 ईयर ओल्ड पेशेंट थी जिसको फिम्ब्रियल एंड पे पार्शियल फिम्ब्रियल ब्लॉकेज था। उसकी आप एज देखिए 38 थी और पार्शियल फिम्ब्रियल ब्लॉकेज था। वो कंसीव कर गई है, उसकी मेरे ख्याल 3 महीने का बेटा है उसका। और भी मेरे पास केस स्टडीज हैं जो अगर दोबारा मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी बात शेयर करूंगी। सॉरी, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया तो कंटिन्यूटी थोड़ी सी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। आप बोलने जा रहे हो फिर बीच में, तो और आपकी कोई क्वेरीज हो तो मैं उनको शेयर करने के लिए आप बाद में ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आई होप आप जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप चाह रहे थे, शायद मैं अपनी बात को वो कन्वे कर पाई हूँ। थैंक यू। Very nice session, Shashi ma'am. थोड़ा कोई क्वेश्चंस है? कोई वैद्य अगर क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो मैम से पूछ सकते हैं। फोन से था ना। जी मैम, एक क्वेश्चन, एक कर्णिका कैसे कर्णिका का समझ में नहीं आ रहा, कैसे मानते हैं वो जो उत्तर बस्ती नेत्र मानते हैं ना? हाँ। कर्णिका देखो, जब वस्ती पुटक था तो कर्णिका एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, ठीक है। और कर्णिका ऐसे समझो कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एक कर्णिका यहाँ थी जितना हमको इंसर्ट करना है वस्ती नेत्र, ठीक है ना। 4 उंगल बताया गया, तो एक कर्णिका यहाँ लगी थी और 2 कर्णिका पीछे थी। वो कर्णिका वस्ती पुटक को लगाने के लिए थी। जो बैग हम लगा रहे हैं औषध द्रव्यों का, ये कर्णिका हम लगा रहे हैं, ये कर्णिका है हमारी। दिस इज द कर्णिका। ये जो बीच में रखिए कैमरे के, मैम दिख नहीं रहा कुछ भी किसी को है। मैम नमस्ते मैम, दिख नहीं रहा, आप थोड़ा सा कैमरे के सामने करिए मैम। हाँ, कैमरे के सामने करूंगा। एक बार डिस्टर्ब हो गई ना चीजें। ओके ओके। हाँ, इसलिए हो सकता है अब इस समय मैं ज्यादा इसको वो नहीं कर रही हूँ। अब दिख रहा है? यस मैम, यस। हाँ, तो ये जो कर्णिका क्या है, कर्णिका नोजल लाइक है ना। जो हम एनजी ट्यूब यूज करें उस समय यहाँ पे एक बंधन बांध दिया जाता था कि हमको 1 उंगल 2 उंगल या 4 उंगल जितना इंसर्ट करना है इतना ही हम इंसर्ट करें, ऐसा नहीं है। और हमारा जब भी हम एनजी ट्यूब या रबर कैथेटर यूज करें तो सर्वाइकल कैनाल की जो लेंथ है 3 to 3.5 सेंटीमीटर, हम बस उतना ही इंसर्ट करें। हमारी कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि जब हम तैल प्रयोग कर रहे हैं तो तैल अपने आप ही फ्लो होगा।
वो नरिश करता हुआ अपने आप ही, जब आप 3 दिन कॉन्टिन्यूसली वस्ती देंगे तो वो नरिश करता हुआ अपने आप ही आगे बढ़ेगा। तो कर्णिका का पर्पज ये था। और जो लास्ट में कर्णिका लगाई जाती थी वो तो बैक के लिए लगाई जाती थी। अगर ड्रग ज्यादा है तो आप 2 कर्णिका बांधेंगे, अगर ड्रग कम है, जैसे उत्तर वस्ती में हमारी ड्रग कम है, तो 1 कर्णिका बांध के भी काम चल जाएगा। और अब कर्णिका वाले कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़े, तो अब तो हम सिरिंज और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप सब लोग इजिली कर सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? मैम एक क्वेश्चन था। यूज करना है। यस यस यस, जस्ट लिटिल फास्ट, वी विल हैव मेनी सेशंस। यस मैम, यस मैम, जस्ट वन क्वेश्चन कि कितने सिटिंग्स प्रैक्टिकली हमको प्लान करने चाहिए एक साइकिल में? लाइक कोई डॉक्टर्स बोलते हैं 1 सिटिंग इज इनफ, कोई 5 सिटिंग्स तक देते हैं एवरी डे, मतलब एवरी डे 1 सिटिंग ऐसे। तो हाँ, क्या सोच के हम ये डिसाइड कर सकते हैं? एक तो भाई मैंने इसलिए कहा कि मैं पेशेंट को, जब भी वस्ती वाले पेशेंट्स आते हैं इनफर्टिलिटी वाले, मैं उनको फल घृत चला देती हूँ। उनका स्नेहन मैं पहले से कर लेती हूँ। अब अनुवासन और स्थापन अगर हम नहीं दे रहे हैं तो मैं स्नेहन कर रही हूँ, दीपन पाचन और स्नेहन कर रही हूँ। और उसका लोकल अभ्यंग वो घर पे कर रही है, पंचगुण में उसको देती हूँ और बालुका से कहती हूँ स्वेद करो। जो भी इन्फ्लेमेशन है, अगर ट्यूबल ब्लॉकेज की बात करते हैं तो वो अपने आप सबसाइड 15-20 दिन, महीना भर मैं उसको करवाती हूँ। और जब उत्तर वस्ती दे रहे हैं तो मैंने आपसे कहा कि ऑयल के अपने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मैंने भी इतने दिन से, हफ्ते भर से नेट पे बहुत सर्च करी कि मैं आपको बेस्ट दे पाऊं अपना। तो इसलिए बेस्ट है कि हम बहुत ज्यादा अति उत्साह में कोई भी कार्य ना करें। आप इसको कॉन्टिन्यूसली 3 दिन दे सकते हैं अगर पेशेंट, या ऑल्टरनेट भी दे सकते हैं। 5 दिन देने का कोई मतलब नहीं है। आपके पास नेक्स्ट साइकिल और पड़ा है, आप 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल दे सकते हैं। फिर आप गैप कर लीजिए, 2 महीने गैप कर लीजिए, फिर आप इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारे पास पेशेंट इनफर्टिलिटी के आते हैं, हम उनको एक दिन में तो ट्रीट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कॉजेज होते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज के साथ उसको लोकल इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसके हस्बैंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारी चीजों को तो पेशेंट को आप बताइए कि 6 महीने का हमें टाइम दे। और अगर आप इतना टाइम ले रहे हैं तो आप उसमें बहुत सारी चीजों को क्योर कर पाएंगे और पेशेंट का आपका फेथ बन जाएगा और आप फिर धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो बेस्ट है कि हम 3 दिन कॉन्टिन्यूसली भी दे सकते हैं, कुछ लोग अल्टरनेट भी देते हैं। तो जैसे पेशेंट है वैसे हम उसको करें। जी मैम, थैंक यू मैम। Which oil is best, ma'am? Dr. Ritu is asking which oil is best for this tubal blockage. So what will we prefer? तेल, हाँ, हाँ, देखिए अगर ट्यूबल ब्लॉकेज भी है तो पहला हमारा सोचना मेरा ये है कि पहले हमें यूट्राइन का वृंगण करना है। वहां पे वृंगण करना है। एकदम से हम क्षार तेल डाल के ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं हटा देंगे। ठीक है, ट्यूब बहुत फाइन स्ट्रक्चर है, म्यूकोजा बहुत ही फाइन है। जिन्होंने भी, जो भी लोग सर्जिकल प्रोसेस करते हैं वो देखते हैं कि ट्यूब कितनी फाइन है। ऐसा नहीं है कि हम फंडस पे इंसर्ट करके एकदम ट्यूबल ब्लॉकेज खोल दें। आप धीरे से, इसीलिए मैंने कहा कि बस आप धीरे से सर्वाइकल कैनाल को क्रॉस करके वस्ती दीजिए। तेल अपने आप धीमे धीमे जितना जितना नरिश होता जाएगा, खेत में भी पानी डालते हैं तो पहले पौधे को जो सबसे पहले है वो नरिश होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरा, तीसरा, चौथा होगा। तो आपके पास 3 साइकिल्स हैं, तो आप इसको उसी हिसाब से यूज करिए। तेल में आप सबसे तिल तेल बेस्ट है, बला तेल यूज कर सकते हैं, शतावरी तेल यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्षार तेल भी यूज कर रहे हैं तो उसको एज इट इज ना यूज करें। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, उसको एज इट इज ना यूज करके 50-50 तिल तेल और क्षार तेल यूज करें। और अगर आपके कोई व्यूज हैं, आप यूज कर रहे हैं, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर आप ले सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ और फेसबुक पे भी हूँ, तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। और मैं स्लाइड्स आपको बाद में शेयर कर दूंगी। मैंने बनाई थी पर मैं वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं बन पाई, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। Yes ma'am, very nice. Yes, thank you. Just one question, चार तेल एंड काशीस तेल कंबाइन करके यूज कर सकते हैं क्या? मैंने काशीस तेल यूज नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, क्षार तेल विद तिल तेल 50-50 यूज करिए। वन मोर कॉमन क्वेश्चन मैम, वजाइनल फ्लो में या मेंस्ट्रुएशन में अगर मतलब ज्यादा मेनोरेजिया होता है, रक्तप्रसरण अधिक होता है, तो क्या हम दे सकते हैं मात्रा बस्ती? बिकॉज सम टाइम इंडिकेट करते हैं, कोई बोलता है, तो थोड़ा आप इस पे ऊपर थोड़ा क्लियर प्रकाश डालेंगे? हाँ, मात्रा बस्ती दे सकते हैं। और मेरा पीएचडी स्कॉलर है जो मेनोरेजिया पे काम कर रही है, मेरी कुलीग है, पीएचडी वर्क बस कंप्लीट होने वाला है, उसमें हमने उत्तरवस्ती यूज करी है, एलादी गुटिका बनाई है, भेषज रत्नावली की है, उसमें हमने उसको एलादी गुटिका, और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं।
पिचू के भी बहुत अच्छे रिजल्ट, मेरा एक स्टूडेंट है यूनानी कॉलेज से, वो इस पे काम कर रहा है और पिचू के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर हम रक्त प्रदर या सिरदर्द की समस्या है तो उत्तरवस्ती एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, वी शुड बेटर यूज पिचू इन दिस कंडीशन। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और मैं शेयर भी करूंगी आपसे, थोड़ा वर्क बस कंप्लीशन पे ही है। तो अगर इन्वेजिव प्रोसीजर की बजाय अगर हम लोकल स्थानिक चिकित्सा की जब बात करें तो पिचू भी बहुत अच्छा है। आप पोटली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेप आगे बहुत सारे अभी सेशन ड्यू हैं तो वो सब लोग अपने व्यू शेयर करेंगे, यूज कर सकते हैं। मात्रावस्थी तो यूज कर ही सकते हैं, मात्रावस्थी में कोई दिक्कत नहीं। और डीयूबी की जो समस्या है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वो हमारे चूर्ण और लोकल प्रेपरेशन से ही ठीक हो जाती है। जो चूर्ण है, पुष्यनुक चूर्ण है, लोदर चूर्ण है, कुटस्थवक चूर्ण है, अशोकारिष्ट है, बोल परपटी है, इतने में ही आप क्योर कर लेंगे। आप यूज करिए और अपना अनुभव और अपना ये जो भी हम चीजें बताते हैं, देखिए सेमिनार में, वेबिनार में जो भी डिस्कस होता है, ये एसेंस होता है जो एक प्रैक्टिशनर अपना शेयर करता है। तो मैंने भी अपना वो एसेंस शेयर किया है और जो बिगनर है वो धीरे धीरे जब काम करेंगे तो आप खुद ही रिजल्ट्स देखेंगे, आपका खुद ही आयुर्वेद पे। और इस समय दुनिया हमारी तरफ, पूरा वर्ल्ड देख रहा है आयुर्वेद की तरफ, तो हमको अपनी पैथी को आगे बढ़ाना है। वी शुड प्रमोट आवर पैथी, वी शुड बी हेल्दी। हम हेल्दी होंगे तब हम दूसरे को हेल्दी कर पाएंगे, हम प्रसन्न होंगे तभी तो दूसरे को प्रसन्नता दे पाएंगे। तो इन होल लेके हमें चलना है। मैम वल्सेलम नमस्कार मैम, यूज कर सकते हैं उत्तर बस्ती के लिए इंस्टेड ऑफ वल्सेलम। टेनेकुलम यूज कर सकते हैं, एलिस फॉर्सेप यूज कर सकते हैं। और अगर आप धीरे धीरे वस्ती देना सीख जाएंगे तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कैनुला को आप बिना किसी चीज के होल्ड किए भी यूज कर सकते हैं। कसकोस लगा के आप कसको यूज करिए। और अब थोड़ा सा अगर आप, मैंने इसीलिए कहा पीएसपीवी मस्ट है, आप पहले जज कर लीजिए आपकी सराउंडिंग्स ठीक है, हेल्दी हैं, और फिर आप इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कैनुला को तो कसकोस लगा के आप धीरे से उसको भी यूज कर सकते हैं। Ma'am, tampons can be used as just like for some doctors are also tampons can be used. हाँ, tampon it is a form of पिचू ना, yeah, है ना। तो पिचू तो वी कैन यूज, तेल हम अपना प्रिपेयर करवा के पिचू वी कैन यूज। और पिचू आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, जैसे वस्ती हम 3 ही दिन दे रहे हैं, पिचू वी कैन यूज फॉर 2 वीक्स। पिचू तो हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, पिचू में ऐसी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है कि पिचू भी स्टरलाइज्ड होना चाहिए, जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं वो स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। डेफिनेटली। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, एक छोटा सा डाउट था, जो तेल यूज करना है बस्ती में, उसका मूर्छन करना जरूरी है? हाँ देखिए, हाँ मूर्छन करना भी जरूरी है। अगर आप तिल तेल सिंपल, मैं तो सबसे पहले सिंपल तेल यूज करती हूँ, तो उसको मैं उसको अच्छे से गर्म कर लेती हूँ, ठीक है ना। अगर आप सिंपल भी यूज कर रहे हो, मूर्छन बला तेल है तो वो तो मेडिकेटेड ऑयल है, बला तेल यूज कर रहे हैं तो बस आप उसको स्टरलाइज्ड होना चाहिए, आप उसको हार्म ना करें, ठीक है। हाँ, तो बला तेल यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारा रिसर्च वर्क भी हो रहा है इस पे, तो बला तेल आप यूज करिए, उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। थैंक यू मैम। Can you repeat ma'am 50-50 what is that? मैम नमस्ते मैम। Yes, हेलो। यस मैम, मेरा एक डाउट था मैम, आपने बताया ना ट्यूबर ब्लॉकेज के लिए 50-50% है, उसको ऑयल को मिक्स करके करना है या मतलब सीक्वेंस में करना है? मिक्स कर लीजिए। क्षार तेल को एज इट इज आप इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। आप क्षार पहले अपने हाथ पे लगा के देखिए, म्यूकोजा पे कहीं रख के देखिए कि आप कितना उसको टॉलरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बेटर है कि क्षार तेल में अगर हम 3 ml ले रहे हैं तो 1.5 ml तिल तेल और 1.5 ml क्षार तेल यूज करके उसको यूज करें, ठीक है। हम कोई ये जो उत्तर बस्ती प्रोसीजर कर रहे हैं, हमारा कहीं भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसेस नहीं है कि हम इसको देख पाए, ठीक है ना। एडवांसमेंट की जरूरत है उत्तर बस्ती में और बहुत काम करने की जरूरत है, तो हमको नहीं पता है कि अंदर जाके अभी उसका क्या है। तो बेटर है कि हम बहुत ज्यादा अति उत्साह में ना काम करके इसको हम 1.5 ml वो और तिल तेल और 1.5 ml क्षार तेल दोनों को कर लें तो हम सेफ साइड रहेंगे, ठीक है। कि मैम बहुत है, फीमेरियल ब्लॉकेज और कोरोनल ब्लॉकेज दोनों के लिए मतलब वही ऑयल यूज करें? हाँ हाँ, पहले आप स्नेहन करिए ना, मैंने कहा ना, पहले आप तिल तेल, बला तेल, शतावरी तेल, पहले थोड़ा रिंगण वाले द्रव्य दीजिए, फिर लेखनीय द्रव्यों का प्रयोग बाद में करिए, ठीक है ना। पहले नरिश तो करिए। आप पढ़ रहे हैं खेत है, वो ऋतु है ना, खेत है ना, क्षेत्र है ना, तो पहले आप उसको नरिश करिए, पहले उसकी मिट्टी को नरिश करिए, एंडोमेट्रियम और सारी चीजों को। जब नरिशमेंट होगा तो वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप ही आगे बढ़ेगा,
ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, व्हाट कैन बी डन ड्यूरिंग मेनोरोजी, या कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे अगर हम लोग मात्रा बस्ती दे रहे तो, डिफरेंट देन रेगुलर रूटीन जो देते हैं हम लोग? मात्रावस्थी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पेशेंट को अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट खुद ही नहीं फील करेगा लेने के लिए, है ना? हाँ वो तो है, बट स्टिल वो तो है, पर अगर और हम मात्रावस्थी भी आप उसको फिर प्लान करिए कि आफ्टर पीरियड्स हम दें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, है ना, पीरियड्स के बाद ही तो देंगे, ड्यूरिंग पीरियड्स तो आप देंगे नहीं मात्रावस्थी भी उस समय, तो वैसे है ना, तो आप उसको बाद में प्लान करिए, बाद में आप उसको मात्रावस्थी दीजिए। मैम आपने एक चीज बताई थी कि ये जो अगर वेसोवेगल शॉक होता है वल्सरम उत्तर बस्ती के वक्त, तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है? हाँ, कई बार पेशेंट को अगर आप काउंसलिंग नहीं करेंगे, पेशेंट की, इसलिए मैंने कहा कंसेंट बहुत जरूरी है, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। आप उसको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दे तो पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशन है वो बनना चाहिए, है ना? तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन, वेसोवेगल शॉक हमने तुरंत से वॉल्सैलम या टेनिकुलम एलिस से जब सर्विक्स पकड़ी, हो सकता है वो एकदम से उसको पेन जो एकदम से शूट अप पेन फील हुआ उससे, तो अगर आपका डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अच्छा है, ठीक है ना, इसलिए मैं कहती हूँ पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है तो फर्स्ट वी शुड बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द पेशेंट, फिर हम धीरे धीरे प्रोसीड करें। उसको पहले आप ओरल मेडिकेशन दीजिए, उसको फलघृत दीजिए, है ना, पहले वो स्नेह, उसको पता तो लगे, फलघृत भी लेगा तो उसको पता लगेगा ना। पेशेंट कहता है नहीं मैडम मैं तो दूध नहीं पीता हूँ, मैं फलघृत पानी के साथ ले लूं, हाँ आप गुनगुने जल के साथ ले लीजिए। तो धीरे धीरे आप प्रोसीड करिए, है ना, पेशेंट रिलेशन अच्छा होगा। वेसोवेगल शॉक होगा तो इसीलिए मैंने कहा पहले उसके वाइटल्स मेंटेन कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है पेशेंट बहुत ज्यादा एंजाइटी में है तो आप उसको रिलैक्स करिए, फिर ये कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। ठीक है मैम। और मैम एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर वंदना पाठक बोल रही हूँ। मैम वेसोवेगल शॉक से को अवॉइड करने के लिए क्या हम, और शायद ऐसे रिसर्चेस भी हुए हैं कि बिफोर दी उत्तर बस्ती वन कैन गिव मात्रा बस्ती और अ नाइट बिफोर कैन गिव दी मात्रा बस्ती, सो हैव यू यूज्ड दैट? नहीं मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है। मैं उत्तर बस्ती देने से पहले पिचू यूज करती हूँ, ठीक है जी। हाँ, मैं पिचू देती हूँ जिससे लोकल एरिया का स्नेहन अच्छे से हो जाए, तो उत्तर बस्ती देने से पहले पिचू का प्रयोग जरूर करती हूँ। मात्रावस्थी अब मेरे पास पीजी भी है हमारे कॉलेज में, तो अब हम मात्रावस्थी पे इस बार हमने स्टूडेंट्स को टॉपिक अलॉट किए हैं, वो रिजल्ट थोड़ा वेट करो फिर मैं शेयर करूंगी। ओके, पिचू मैं यूज करती हूँ। ओके, definitely, thank you very much. Just a last question from Dr. Saroj. Yes, please. मैम प्रणाम। नमस्कार। मैम एक प्रश्न मेरा ये था कि जैसे हम लोग एलोपैथी में फोर्टविन फिनरगान का इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं सर्विक्स को होल्ड करने के लिए ताकि पेशेंट को पेन ना हो, तो क्या आयुर्वेदिक मेथोडोलॉजी में कुछ इस तरीके का हमारे पास प्रोसीजर है जो हम इसको लोकल एनेस्थीसिया टाइप से इस्तेमाल कर सकें? नंबर 1। नंबर 2, जी बता दें। नहीं यू कंटिन्यू। अच्छा, दूसरा प्रोसीजर, एक हमारे पास एक पंचकर्मा की बुक है डॉक्टर आर विद्यानाथ की जी, उसमें उत्तर बस्ती के प्रोसीजर में एक जगह पे लिखा है, ये अगर जो ऋतुकाल के दौरान दिया जाए तो इस समय इंटरनल ऑस ओपन होता है तो उत्तर बस्ती द्रव्य आसानी से उसमें पहुंच जाता है। तो इसके बारे में आपने मना किया कि भाई ऋतुकाल के दौरान इसको देना थोड़ा ठीक नहीं रहता है। नहीं, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैंने कहा ब्लीडिंग उसकी चेक हो जानी चाहिए, है ना, पीरियड्स में नहीं देनी है। गलत इंटरप्रिटेशन नहीं, पीरियड्स में नहीं देनी है, ब्लीडिंग चेक हो जाएगी उसके बाद देनी है, ठीक है? जी। हाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं उत्तराखंड से हूँ, चंपावत डिस्ट्रिक्ट, लोहाघाट। अच्छा, ओके। तो अच्छा, एक प्रश्न और मैं पूछूंगा साइमल्टेनियसली। हाँ, जैसे हमको फैलोपियन ब्लॉकेज होता है, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होता है, तो उसके लिए हिस्टेरोसैल्पिंजियोग्राफी करानी पड़ती है, HSG। क्या आयुर्वेदिक मेथोडोलॉजी में कुछ इस तरीके का हमारे पास प्रोसीजर है कि अगर किसी को फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज आया और हमने उसको उत्तर बस्ती करना शुरू किया तो जब तक हम नेक्स्ट टाइम HSG ना कराएं
तब तक हम उसको नहीं पता कर पाएंगे कि इसका ब्लॉकेज ओपन हुआ या नहीं हुआ। तो क्या आयुर्वेदिक मेथोडोलॉजी में कुछ इस तरीके का हमारे पास है कि हमको एक अनुमान लग जाए कि इसका अब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज ओपन हो गया होगा, अब हम इससे हिस्टेरोसैल्पिंजियोग्राफी करा लें। इससे ये हो जाएगा कि भाई हम उसको अनावश्यक अधिक समय तक उत्तर बस्ती भी नहीं देनी पड़ेगी और उसका काम। देखिए, अगर हमारे पास इनफर्टिलिटी का पेशेंट आता है, ठीक है, मोस्टली हम कहाँ यूज कर रहे हैं उत्तर बस्ती, इनफर्टिलिटी के पेशेंट में यूज कर रहे हैं, तो वो आजकल इतनी लंबी एक फाइल बना के मोटी फाइल लेके आता है कि उसकी HSG बेसिक जहां पे भी आप देखिए, कुछ चीजें बेसिक हैं जो गांव देहात में भी बैठा है वो भी सबसे पहले जाके कहता है कि भैया अपना HSG करा के आओ, ठीक है। तो पेशेंट के पास ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर इनफर्टिलिटी का पेशेंट आया है तो आप उसकी HSG करा लीजिए। अगर 5 साल 6 साल की हिस्ट्री दे रहा है, मान लीजिए साल भर शादी को हुआ है, तो HSG कराने के लिए इतनी कोई जरूरत नहीं है, उसको इतना इनफर्टिलिटी लाइन पे भी ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। आप पेशेंट की काउंसलिंग करिए, उसको फर्टाइल पीरियड बताइए और उसको कहिए अपना आराम से घर पे अपना समय बिताएं, दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से घूमे टहले खुश रहें, ठीक है ना, क्योंकि गर्भ धारण के लिए मन में खुशी भी तो होनी चाहिए। आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोगों के पास अपने लिए हस्बैंड वाइफ के लिए समय ही नहीं है। लोग IVF प्रेफर करते हैं, पैसा है, लोग कहते हैं अरे IVF करा लेंगे जाके, इतना टाइम नहीं है मेरे को, तो ये असाइनमेंट मिला है, वो असाइनमेंट मिला है। तो भाई ये तो नेचुरल प्रोसेस है, आप जितना नेचुरल वे में रहेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेंगे, और अगर आपके पास पेशेंट आ रही है 2 साल 3 साल हो गए हैं नॉर्मल रिलेशन में रहते हुए, तब तो फिर आप उसकी HSG कराइए, फिर आप उसको उत्तर बस्ती प्लान करिए, ठीक है ना। अब रक्त प्रदर की पेशेंट आ रही है, किसी और की आ रही है, तो हम उत्तर बस्ती उसको बिना HSG कराए भी दे रहे हैं, दे सकते हैं। पर अगर इनफर्टिलिटी की आ रही है तो आप उसको पहले उसको नॉर्मल 6 महीने कहिए कि भाई नॉर्मली रह के आओ, और साथ ही साथ आप इन्वेस्टिगेशन कराइए। और मैंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट लेके आती है, एक मोटी लंबी फाइल जिसमें हार्मोनल प्रोफाइल और सारी चीजें हुई रहती हैं, ठीक है। ये मैं उन केसेस की चर्चा ही कर रहा हूँ जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस में ऑलरेडी आ चुका है कि HSG करा के आई है और फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, और हम ऑप्ट आउट कर रहे हैं कि इसका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज मुझे उत्तर बस्ती के द्वारा खोलना है, ठीक है। तो उन केसेस में सबसे पहले तो लेखन बस्ती के द्रव्य क्या रिकमेंडेड हैं इसमें देने के लिए? मैंने आपसे कहा कि पहले ही ड्राई हुआ पड़ा है फेस, उस पे आप और लेखन द्रव्य लगा दें, है मेरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, आप थ्योरी पढ़ते रहिए। पहले मुंह ड्राई है हमारा, उस पे हम और लेखन द्रव्य लगा दें, नहीं, आप पहले स्नेहन करिए, ठीक है डॉक्टर साहब, पहले स्नेहन करिए। इसीलिए मैंने कहा तिल तैल बला तैल शतावरी तैल इसका प्रयोग करिए, फल सर्पी फल घृत का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पहले आप नरिशमेंट तो करिए पौधे की, अपने क्षेत्र की, पहले नरिशमेंट करिए, फिर आगे प्रोसीड करिए। नरिश होगा तो धीरे धीरे वो जो नरिशमेंट आप करेंगे, यहाँ से जो तेल जाएगा, यहाँ नरिशमेंट होते होते वो अपने आप ही आगे फ्लो करेगा, ठीक है। तो आप नरिश करिए। मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, मैं गुरुकुल में भी रही हूँ 5 साल एज ए लेक्चरर, ठीक है जी, मैं भी गुरुकुल का ही हूँ। नमस्ते मैम, एक क्वेरी इधर पूछूं मैम, आप जो we will organize one more session, exclusively session, just one last if it is something important as we are discussing। मैम ये पूछना था, जैसे आप बोल रहे हैं पहले नरिशमेंट जो करना है फलघृत से, तो वो आप ओरली भी बोल रहे हैं या फिर हमको फर्स्ट साइकिल में फलघृत की उत्तर बस्ती प्लान करनी चाहिए, फिर नेक्स्ट साइकिल में हमको क्षार तेल वगैरह का यूज करना चाहिए? ये मैंने कहा ना, देखिए हम सब लोग आयुर्वेद के हैं, तो प्रमाण 4 बताए गए हैं ना, युक्ति हमको अपने अनुभव से करनी है, ठीक है। आप ओरली भी यूज कर सकते हैं और आप इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओरली अगर आप यूज करेंगे तो होल बॉडी स्नेहन होगा, ठीक है, उससे जो ऑर्गन्स हैं, जो वात का शमन होगा, क्योंकि सारी डिजीजेस जो है वात के कारण हो रही है, तो वात का सप्रेशन बहुत जरूरी है। पित्त और कफ तो पंगु है, तो वात का सप्रेशन तो आप पहले ओरली करिए। इसीलिए मैंने कहा पहले दीपन पाचन दीजिए, उसको स्नेहन करिए उसका, ठीक है, उसकी अग्नि को प्रदीप्त करिए। अगर अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी तो स्रोतरोध अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों में कर सकते हो। मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, यू आर ऑल वेलकम, ठीक है। आप अपना रखेंगे एक्सक्लूसिव, और जैसे कि आपने बताया उत्तर बस्ती एक दिन में देना है, बट उसके पहले प्रिपरेशन तो जरूरी है, वो सब करना ही पड़ेगा।
So now Okay. moving forward with our this international e-conference on the local applications on the various modalities, especially for the Sri Rogas, I would like to welcome Dr. Vanita Sharma ma'am, जो कि आयुष दर्पण को बहुत ज़्यादा support करती है, and a very lovely and charming lady of Ayurveda, Dr. Vanita Sharma, who is the founder of Urja Foundation, Australia, and I could welcome Dr. Ketki to introduce Dr. Vanita Sharma ma'am. Yes, ma'am. Now I like to welcome Dr. Vanita Sharma ma'am. She is founder of Vibe Ayurveda, Urja Ayurvedics Australia. She is Deputy Chair, Complementary Health IRC, Skills IQ, PL Department of Education, Skills and Training, Director, Secretary of GHARS, former Vice President of AAA, Melbourne, Australia. She is winner of the Business Woman of the Year 2018 in Indian Australian Business Community Awards, Australia. She is Women Entrepreneur Award winner for making social impact on the community 2019 in international awards. She achieves Women Achievers Award 2020 and Community Services Award from 2 Australian organizations. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Continue, please. Thank you very, very much. I just I'm delighted to be on this platform today. Thank you so much, Dr. Shashiji. That Thanks, was ma'am. absolutely fantastic presentation, and I really loved how you practically really convinced on taking consent of the client and the patient. That's the most important thing. One of the things that we all should be very, very careful about, especially these days when people are so health conscious and everything, and so it's very important for everyone to take patient consent. And even unfortunately in Australia we can't do any kind of invasive therapies like Uttar and all that, but I would have loved to do that, because I really know it has very, very convincing results and all that. So we do Matra Basti and all that kind of stuff, but not like Uttar Basti or acupuncture and stuff that's not allowed unless you are qualified locally. But it was very, very informative session, and thank you for sharing your number too. We will be in touch, definitely. But I'm just really talking today myself about a role of Nasse. Just a second, I'm just trying to struggle with the sharing. Just a second. Sorry. Your PPT is not running, ma'am. Yeah, that's what I was kind of a concern. You just click on that. You are not click on that particular PPT, I think. Hang on a second. I'm so sorry. I'll just stop the share first and then do it again. Hang on a second.
Sorry. Can you see now? No? No, ma'am, no. Mm. I don't know why Just that. close and open again, ma'am. Yeah, that's what I'm trying to do. Like, okay, pause. Share. It's showing that you have started screen sharing, but screen is not visible, like PPT is not visible. Oh, okay. Okay. Mm. It's saying your screen is paused. Like, I don't know why that is happening. Mm. Share with me, ma'am, just little fast, or if you are not able to share, or you can continue without PPT if you are comfortable. Okay, like I can do it without PPT as well. I can. Yeah. But it's showing just, I think, click here, role of Nasya. Click again, once again. Yeah, that's what And I'm here, doing. this arrow is there, na? You just click on that arrow. But it comes up on my screen, but it's not like a. It's not like a. It's PDF, so maybe. Because of that. No, but PDF also can be shared. Yeah, that's the problem. Like, I don't know. It's showing like a screen sharing has stopped. Okay, like well, it was good if I could have like a share. You just open in front your this piece laptop, and you can continue with reading. Yeah, I can do that. Yeah. Yeah. Like because It's better. what it's doing is, hang on a second. Oh, okay. Just a second. This and share. Can you see now? Still not coming. Just 1 minute. Okay. What I'll do, like no, ma'am, no, it's not happening. So you can continue without. I'm just like thinking maybe I should try to log in from the other device or something. Like if I send it fastly on my email, ma'am. Huh? Sorry. Send it to my email. I will share from my side. Oh, okay. Hang on a second then. Yeah, that would be better. Okay. What's your email address? ermeshilpa@gmail.com. Hang on a second. Or share on WhatsApp urgently, so we could save our time. Okay. I'm just like I'm better off like sharing the PPT. That's what I'm trying to do. Like, okay, I can do that now. So forward. Okay, give me your SHI. Give me your address, like an email address, Shilpa. Yeah. I have my chat box में लिखा है, ma'am. See, ermeshilpa@gmail.com. YERMESHILPA@gmail.com. Sorry. Just slow. Okay, what are you saying? SHILPA. Shilpa Yerme @gmail. Yeah.
Shilpa Yerme at Gmail is the right? Yerme Shilpa ma'am, yermeshilpa@gmail.com. मैंने chat box पे लिखा है. I have put it in chat box. Okay, I can't access like all the things at the same time. Sorry. Yeah, done. Okay, yeah. I've sent you. Did you get it? Yeah, just. Sorry about the interruption. You can continue your talk, ma'am. I'm Yeah. just sharing. Okay, all right. Well, welcome everyone. Namaste. I've been practicing Ayurveda in Australia for longer than 22 years, like now. And yes, as even Dr. Shilpa, and I would like to thank you, Dr. Naveen Joshi, for the continuous support. And we've done quite a few webinars together as well. As well as I've been participating in quite a few in a different ways. But today, I'm just gonna talk about the role of Nase in gynecology. Yeah, that's great. Thank you. So can you make it full screen? Yeah, just a minute. Yeah, I'm trying. Yeah, thank you. So it's very much my area of interest, like as well as like मैं हिंदी में नहीं कर रही हूँ ये, like I'm not doing in Hindi because I want even people who are from a non-Hindi background, they should understand as well. Like even in Australia, a few people were interested, like to join and listen to all this interesting webinar. So I would like to start off with my first slide is role of Nase in gynecology. Can everyone watch that, like see that, like now? Can everyone see? Yeah, it's visible, ma'am. Okay, all right. And yeah, so just on to the second slide, like it is all about balancing the hormones, like which are basically more of a sex hormones we talk about, which is progesterone and the estrogen. We mainly focus on balancing these. Dr. Shilpa, can we ask to mute like everyone else, like because it's just creating a bit of disturbance for me. Thank you. So yeah, like it's more of a like a, what do we say is like when we talk about balancing the hormones, we talk about sex hormones, but we do work on the stress hormones because it's really important, the stress factor as well. As Dr. Shashi mentioned, like we should be really focusing on calming the people before they come or when they come, like such a concerns, particularly issues like infertility, or any of the women health issues, gynecological or we call it as OBS issues. So we really have to consider that factor, that the person is in a relaxed, especially both the couples, but mainly the women should be in a relaxed situation. So when we talk about the hormones, like balancing the hormones, we basically are talking about
completely transforming the health, like, and our Eastern traditions, which is Ayurveda, and any kind of like Eastern traditions, as in Ayush health system, any of the pathies we use, like whether it's homeopathy, yoga, meditation is a part of all these, like therapies, like as a part of the therapy, like to calm the person and the woman in the first place. Her mind should be in an optimum relaxed mode, because that's the most important thing. जैसा कि डॉक्टर शशि ने भी कहा कि हम क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, तो अगर वो क्षेत्र पे काम करने से पहले हमें बाहर से देखना है, पहले एक्सटर्नल देखते हैं, फिर हम इंटरनल देखते हैं. So we really have to focus inwards, like a localized treatment, depending on what's been the diagnosis, like the actual diagnosis that's done relative to the condition. But we still have to work a lot before we get onto that stage. So talking about the next stage is when we talk about de-stressing and balancing the 6 hormones, and to calm the nervous system. Basically, we should be focusing really on doing some therapies, offering some therapies like which are Abhyanga, massage, like whether we do the marmas and we do the relaxing massage like a warm oil, which is according to the dosha as well. We specifically choose all the oils and stuff. Like it's very important to do the pulse and to assess the body type of the person first, whether that's a pitta or vata or kapha, although like these kind of like issues or concerns are mainly vata, but we still need to work like on the kind of concept that we keep all the 3 doshas in balance. Yeah, and so we can choose therapies like Abhyanga, we can choose Shirodhara, and all that will not only relax the nervous system, but will also help them to have a good sound sleep and make them feel much more fresh, active and energetic, and be more involved when even kind of like, say for example, if somebody has an infertility issue, just as Dr. Shashi mentioned, like there is hardly any time that the couple spends together. So it's very important for them to have that connection and spending the time together, as well as to be able to make love in the form that they get the fruit out of what they are trying to do. And so not only that, like we really have to kind of like working at de-stressing the person first. So Abhyanga is important, Shirodhara is important, and then we can offer them a pranayam, like and ask them to practice pranayam and meditation at home, especially the I will talk about it later, that the how pranayam and all that can affect like on this balancing the hormones. So as I've mentioned in the slide, like the evidence of and the balance of the dual forces in the nature's women's body, the dual forces being the stress hormone versus the sex hormones. And then the stress hormones are basically very motivating and are very stimulating. Whereas like the stress hormones are like, called the happy hormones, we call as dopamine, serotonin. So we need to offer the therapies that actually can help them release these happy hormones, which are serotonin and dopamine. And these are very, very motivating and stimulating. So they would help them to relax their mind like to an optimum level.
And then we work on their sex hormones, which is progesterone and estrogen. They're very nourishing and they're very grounding. So like they help to ground and nourish like the system. So you need those hormones in balance to be able to get the person to feel happier inside and outside, to be able to get the fruit. And how do you encourage, like basically for especially the women, because when we are talking about the stress, we really kind of like could you put a next slide, please, Dr. Shilpa? So yeah, like we focus really on kind of like slowing down and getting the women to slow down and de-stress. And how do we do that? Because like we as a females like are too much kind of like possessed about our responsibility, about our caring factors, like accountability, responsibility as in a whole, and how much like reliable we are in the relationships, like whether it's the kids or the husband or the parents. Like we take too much kind of like or over responsibility, and then we end up having our breakdown, which actually is kind of like coming to a point that we have to prioritize when especially our health, like women's health is very, very important. You wouldn't be able to look after others unless you look after yourself. So you need to slow down, which means you have to take yourself away, like, and not following that kind of like drive, like putting ourselves into the position that where we are overstressing ourselves. So if and when we realize the consequences of that constant pushing ourselves, like, and driving ourselves to the space of stress where we don't belong, that's where all the root cause of the problem lies. And as in Ayurveda or any kind of traditional sciences, we really focus on eradicating the root cause of the problem. So, which is like we say 90% of the conditions are caused because of the stress, like and the stress can be relieved, like either because stress also is caused because not because of the lack of circulation only, but lack of oxygen supply to the brain. So it's very important to have that proper oxygen supply to the brain through the circulation, having a proper blood circulation, and restoring it with exercises like yoga, meditation, pranayam. Pranayam mostly like I say Agni Sar and Kapalbhati and Anulom Vilom, which is alternate nostril breathing. So ये जो चीजें हैं ये बहुत ही help करती हैं, क्योंकि it basically gushes of a blood flow to the brain, and the lack of oxygen is basically covered up because of exercising and doing practicing pranayam. So like it's very, 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 very important to recognize, I call it कि हमारे में वो पागलपन है, like insanity. It goes to a state of insanity. That's when like the women struggle to get pregnant, and like you know, they can't even relax when they are just by themselves. Like, so say I'm sitting by myself, like at home, I would still be thinking about my responsibilities, like towards the other family members, or anything else like in the family required, even if it's a parents or a husband or kids or whatever.
although there are no kind of like, hidden cameras that are watching us, but it's our own insecurity that's within us that keeps us making kind of think like and go to the level of insanity that that we basically are sort of getting affected to the level that we can't even treat ourselves and prioritize ourselves, like even while being by ourselves. That's where we need to get out of that space of stress and relax ourselves, and then start thinking that I have to prioritize myself. So next there is by Dr. Claudia Welch, like next slide, please. So like she said, like in her book, like I read once, her book is called Balance Your Hormones, Balance Your Life. Like, and it's amazing book. Like I highly recommend everyone to read that. Like, and she wrote like, create a value, a new idea, especially for the women, like she wrote, like who take over responsibility or accountability, that you have to create a value and a new idea, and you need something fresh, like you need a quiet retreat, which is you need your own quietness and your calm environment and calmness, which we have to make ourselves do it. Like otherwise we are like continuously on this treadmill, a treadmill of busyness, and we are consistently putting ourselves into that stressful situation. So it is not too hard, and the life is not going to fall apart, like if we are not going to one day, like just forgetting about everything else and just putting ourselves first and start thinking about ourselves, and take that reduced stress. And that would make a huge difference, like even on balancing your sex hormones. So Shilpa ji, next slide, please. Yeah. So when we talk about 3 things that can create balance, like in the hormones, which is the next one. Even one more. So yeah, the 3 things that create balance in the hormones, which is calming the nervous system, as I mentioned before, alternate nostril breathing, anulom vilom, and the abhyanga. So we really have to focus in abhyanga on the marmas, like that's very, very important. Like and I would explain how working on the Shringatak marma, how it can help you to balance the hormones. So our left nostril is Ida. And when we do like a alternate nostril breathing, we talk about Ida, Pingala, and Shushumna. Shushumna is the spine, and left is Ida, and the right is Pingala. So the left one basically balances the progesterone and the estrogen. And we balance the stress hormones with the right one, which is serotonin and dopamine. Those are the hormones. But the main master glands that we have to work on, the pineal and the pituitary glands, like they are the main ones which basically work on like all this
balancing and on the gynecological disorders. So Abhyanga directly calms the nervous system and creates a balance and reduce the stress. And so when we talk about pineal and the pituitary gland, a lot of people don't know that they are accessible through the nose. And the pineal and the pituitary gland, like you can literally, because all this area, as we understand that it's connected, like from our eyes and ears, like and forehead, like here the frontal sinuses, eyes, and all these, like a position for the glands, like is all on our face. Like that's why the Abhyanga plays a major role, and the marma, like with the third eye, and the Shringatak marma that connects all these facial veins, like that actually activates these glands that's there on our face. So doing the marmas is very important. Like, and whether you want to balance your mood, your emotions, hormones, or any gynecological issues, like Nasa play an important role. So even in our Shastras and Vedas, it's clearly written, Nasa hi shiraso dwaram. Yeah, like it's entry to the brain, like and brain has we all know that the limb hormones or activation in any kind of like limbs or sex hormones, like they're all placed and connected like with the brain. So it's an entry, a doorway, the nose to the brain, with which we can create a balance in these stress and sex hormones. So in this picture, you would clearly look like how it shows the pathway, like of all the arteries, vessels, and the glands, like how they are connected and associated. And it's showing the Shringatak marma, so which is anatomical structure of that. So Nasa is considered as a gateway to the brain. And in Ayurvedic classics, the specific treatment methodology of administering drug through nasal route is mentioned, which is called as Nasa. So hence, the drug administered through Nasa goes up to the brain and stimulates its functions. And then in the modern science, it is given that the cell produce the gonadotropin hormone, which originates from the olfactory area. And then the gonadotropins is a regulator, GnRH is a regulator of the gonadotropin hormones. So, and all the orchestra of the menstrual cycle is under the control of these gonadotropins. And they are secreted by one of the master glands, which is called a pituitary gland, which I mentioned before. So here, the effect of Nasa on the regulation of menstruation, like people who have oligomenorrhea, menorrhagia, and all that kind of issues. And this is very important. It plays an important role in regulating the menstruation cycle and the ovulation, how it all works. Yeah. So then when we talk about the Shringatak marma, it's formed by the union of the blood vessels supplying to the Nasa, to the eye, Akshi, and to the Jiva, tongue. So that's what is shown in this slide. But in the next slide, we how Nasa gynecological disorders, hypothalamic, pituitary, ovarian axis. So we are going to talk about, I already discussed about how Nasa is a doorway,
But then when we discuss about the treatment methodology in Ayurveda, in which drug is administered through the nasal route, in infertility as well as other gynecological disorders, a role of Nasya is very elaborated. And any deviation in the menstrual cycle, a deviation means like either it's hypermenorrhea, oligomenorrhea, or menorrhagia, dysmenorrhea, polycystic ovarian disorders, and infertility. So any kind of like deviation in the menstrual cycle gives rise to these kind of gynecological issues. And all the orchestra of menstrual cycle is under the control of the pituitary hormones, which is situated at the base of the brain. So Nasa is considered as a gateway to the brain, and Nasa helps to regulate the hypothalamic and pituitary ovarian axis and establishment of normal menstruation. Hence, it is one of the best remedies as compared to the modern hormone treatment, which is they do in the cases of like a lot of gynecological issues or infertility cases. They do hormone replacement therapy. Yeah. So now we go on to the it's shown like in the diagram, like how the endometriosis happens. Like, you know, it can happen anywhere in the uterus, like, or endometrial lining, or in the ovary. So you can clearly see that outside, like in the ovary and in the fallopian tube. So that can cause a lot of issues, like with the menstrual cycle. And then when we talk about what's the mode of action of when we administered like the medicated Nasya oil, which is there is Sharbindu Talam, there is like Anu Talam. So it depends like which one we use. Like we can use like a sesame oil, we can do Ghritam, we can use powders, like and depends like which type of like dosha is aggravated according to the dosha, or like the imbalance or vikruti, like we can choose the type of oil which we want to use for the Nasya. And it has to be used in a specific dose, which I'm going to talk afterwards. Like, but the most important is that how the Nasya, basically, what's the mode of action? So that diagram in the slide of when you put the medicated Tela, it stimulates the olfactory nerves. Yeah. So when it stimulates, then it stimulates the limbic system and the hypothalamus. Yeah. And the stimulation of GnRH neurons, which may regulate GnRH pulsatile secretion, which is the gonadotropins or the gonadotropin hormones. Yeah. So may acquired proper gonadotropin secretion, which basically balances and regulates the menstrual cycle. So if somebody has issues like excessive bleeding or issues with not bleeding, like or not having a menstruation cycle or something like that, we can use oral. Like always, we have to start off with oral therapy. As even Dr. Sashi mentioned, it's very, very important to nourish the whole system, the whole body, before we work on that kshetra. So it's the stress, first of all, you deal with, and then you along handling the stress, like you offer Abhyanga, you offer Shirodhara, and you offer, because we need other means and alternatives if you can't do Uttar Basti. Say, for example, like I can't offer Uttar Basti here.
like in Australia. But even Niru Basti, like which is kind of done with the decoction or the concoction they call it, जैसे क्वाथ यूज करते हैं हम, तो वो सब चीजें जो कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग है और इन्वेजिव है, इन्वेजिव थेरेपीज वो हम ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए कि आप कर क्या सकते हो। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी बेसिकली यूट्रस को रिजुविनेट करती हैं और हेल्थी करती हैं। तो स्ट्रेस को अगर आपने रेगुलेट कर दिया और स्ट्रेस हैंडल कर लिया, फिर उसके बाद अगर आप बाकी सेक्स हार्मोन्स पे वर्क करते हो, जैसे कि आप शतावरी घृत या फल घृत या जैसे भी है परपटी जो भी आप दे सकते हैं, अगर आप कोई भी पहले अशोकारिष्टम है, शतावरी है, मंजिष्ठा है, अश्वगंधा है, ये सब है, गूगल है, क्योंकि वो स्क्रैपिंग एक्शन होता है गूगल का। तो जो शतावरी है आपको मालूम है कि इट्स वेरी गुड फॉर द वुमेन, लाइक, और रिलैक्स भी करती है, एंड देन इट वर्क्स ऑन बैलेंसिंग द हार्मोन्स। और गूगल जो है वो सिस्ट और फाइब्रॉइड्स और इन सब पे बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज इट डज लाइक स्क्रैपिंग एक्शन एज आई मेंशन्ड बिफोर। और अशोकारिष्ट है, दशमूलारिष्ट है, ऐसी चीजें जो हैं वो उनको पीरियड्स को रेगुलेट करती है। तो हम पहले अगर ओरल शुरू करते हैं और साथ में फल घृत देते हैं, नरिश करते हैं यूट्रस को, और साथ में स्नेहन करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो we have to get rid of the dryness, exactly as mentioned, before. So we just have to work like on the root cause of the problem. अगर हम पहले वो हैंडल कर लेते हैं तो बाद में फर्टाइल करना कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई भी अगर गायनेकोलॉजिकल जितने भी इश्यूज है, दे कैन बी हैंडल्ड वेरी वेल। सो नस्य का इफेक्ट क्या है, particularly on the neurovascular junction? So the mode of action of Nasya karmas has a definite impact on the central nervous system and likely to lower the blood-brain barrier, which makes possible the absorption of certain drugs. Drugs मैं वो बोल रही हूँ जैसे तेल है हम नस्य में, या पाउडर या चूर्ण का करते हैं, तो जो भी हम नस्य देते हैं वो उसकी एब्जॉर्प्शन में ब्रेन टिश्यू के अंदर और सीएनएस में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो इफेक्ट ऑन द न्यूरोएंडोक्राइनल लेवल. It is well known that the terminal adjacent nerves which run along the olfactory nerve are connected with limbic system of brain, including hypothalamus, written by Hamilton in 1966 in his book. And hypothalamus is responsible for integrating the function of the endocrine system and the nervous system. So endocrine से हम सेक्स हार्मोन करते हैं, बैलेंस करते हैं, और नर्वस सिस्टम में हम नर्वस सिस्टम को और स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं. So the experimental stimulation of olfactory nerves causing the stimulation in certain cells of hypothalamus. So this is the effect at neuroendocrinal level. Nervous system आपको हर एक जगह मिलेगा. Effect on neurovascular, effect on neuroendocrinal, effect on neuropsychological. So इसमें neurovascular जो है उससे हम brain पे work करते हैं, but we try to do the endocrine to balance the hormones like the sex hormones, and then we how the Nasya can impact like on the neuropsychological level. They are obviously administered through the nose and may have an impact on immediate psychological behavior by acting on limbic system through olfactory nerves, as the limbic system is also concerned with behavioral aspects of human beings besides control over endocrine secretions. So these things certainly support the recommendation of Nasya
by Ayurvedic scholars for even for mental disorders like apasmar hai, unmad hai, like in those kind of like conditions, epileptic conditions and all that. सिर्फ नशे का लोग नहीं तो पहले यही सोचते थे कि नशे सिर्फ हम रेस्पिरेटरी कोई इश्यूज होते हैं, कोई लंग्स में है या गले में है, like any kind of like asthma or sinusitis, bronchitis, और उस तरह के इश्यूज में हम सिर्फ नशे देते हैं. But lot of people don't know how and how much impact and benefit it can give in the issues, and especially with the infertility and also with the like any kind of like gynae issues. Yeah. So way of absorption of drug. So vascular path, right? So vascular path transportation is possible through the pooling of nasal venal blood to the facial vein, which naturally occurs at the opposite entrance. The inferior ophthalmic veins also pool into the facial veins. So ophthalmology, as we understand, like it's connected with the eyes, and then like all this nasal system, how it's connected, like and how it can impact, like when they pool into the facial vein, which is Shringatak marma, mentioned by Acharya Vagbhat, can also be well explained by above description. So Shringatak marma kahan hai? It's right in the opposite entrance, the inferior ophthalmic vein, where it pools with the facial vein. So that's where is the position for the Shringatak marma, and we should be really focusing on doing the pressing those marmas, like like to activate and regulate the GnRH, gonadotropins, like to basically regulate the menstrual cycle as well as to help with the as a vascular path, right? Lymphatic path, drug can reach directly into the CSF, like which is cerebrospinal fluid, through lymphatic pathway. So on this basis, it can be stated that ancient scholars of Ayurveda were aware of the role of lymphatic path in direct absorption into brain from the nose. We all understand and we know where is the cerebrospinal fluid, like because the pituitary is at the base of the brain. So all we are doing is just like with the help of like NASE, and what's the procedure and how do we do it? Like I will talk about to explain that. Like it's very important, as I said, first to do the facial abhyanga. And do all the marmas, like including the nose and the face and on the forehead and on the head, like the crown chakra, third eye, and then we do work on the nases, like which is activate all these nases, like which connect this, like as the Shringatak marma, which actually activates and connects with the facial veins and the ophthalmic vein. Yeah, so it's very important to do those marmas, like at the base of the nose, like at the tip, like in between, above the lips and the nose, like so you do those marmas and you do over the eyes and you do this, like, and the third eye. So it's like altogether a different study with the marmas, like how they work, but you look at Shringatak marma mainly, like how you can do that. And when you do the massage, like that actually anyways, abhyanga anyways relaxes the people. So you can do a hot fermentation after, and you instill first after the massage, you instill the nasal drops, and you have to make sure
the head is not over bending like backwards, like, because it shouldn't, you will feel the taste in the throat of the nasal drops, but it shouldn't kind of like go into the throat. It should go into the brain, we call it, so that it can activate all those like hormones which we are working on, like the stress and the sex hormones, right? And so it's very, very important to do Abhyanga, relax, like, and activate and stimulate that facial veins, like to activate the and stimulate the gonadotropins, like as well as the hormones. So the importance of the post Nase massage. So after instilling the drops, we give a steam, like, or we put a hot steamed towel, like and that you put it over your forehead, like, and around the on the sides, like just to give a hot fermentation, and so that the oil or the powders can be absorbed properly and can go directly into the lymphatic path or the vascular path. Yeah. So the importance of the post-Nase massage is recommended by the ancient acharyas. It is as important as a massage before the Nase. The texts have recommended post-Nase massage on the frontal, temporal, maxillary, mastoid, and neck, which is the mane region. A comfortable massage on the above regions may help to subside the irritation of the somatic constriction due to heat stimulation, and may also help in removing the slush created in these regions. Slush means जिसे हम mucus कहते हैं. तो क्या होता है बेसिकली, हीट जो है उसको एरिया को स्टिमुलेट करके वहां से वो सारा साइनसेस में से साइनस सारा पिघला के उसको मेल्ट करता है बेसिकली, और उसको रेशा को बाहर निकालता है. ठीक है, तो म्यूकस जो हो गया, तो इसका बेसिक जो पर्पस सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हम मैक्सिलरी और टेम्पोरल और फ्रंटल एरियाज पे हम जब वर्क कर रहे हैं, वी आर बेसिकली वर्किंग फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड by doing the Nase therapy to get it into the brain to balance those hormones. And then we, the body therapies, Ayurvedic body therapies to balance menstruation, which is for the reproductive. Ayurvedic body therapies for the reproductive system are chosen both for their overall systemic effect or their specific action on the reproductive system. A variety of treatments can be employed and may include the following, which is, Shilpa ji, next slide, thank you. Which is about Basti, Shirodhara, and like Basti therapy, Nase, and Shirodhara. So next slide, next one. So Basti therapy is widely used in all gynecological disorders in Ayurveda, which we already had a big, very interesting and insightful talk by Dr. Shashi about the Uttra Basti, but even she spoke about gave reference about the Matra Basti. So, which is an amazing therapy, like, and I've had wonderful results, like with the clients, like suffering from facial hairs, like and all that kind of, like, because of the hormonal imbalance, like, and I've done Nases, I've done Shirobasti, Shirolapas, like to activate and stimulate that area. So Basti therapy is widely used, like in all the gynecological disorders in Ayurveda. The herbal oil or decoction is absorbed via the rich blood and lymph supply of the rectum and colon into the systemic circulation. So the enteric nervous system is stimulated, which in turn affects the CNS, which is central nervous system, and endogenous opioids to regulate the hypothalamic, pituitary,
ovarian axis. In addition to Basti rectal enema therapy, Ayurvedic gynecological treatments also include local procedures such as Uttar Basti, as Dr. Shashi has already spoken about, vaginal insertion of herbal oil or the concoction, Yoni Prakshalan, which is vaginal douching, and Yoni Pichu, which also we have spoke about, vaginal insertion of cotton swab soaked in a herbal oil or Ayurvedic oil. And so I don't need to go in detail of that because we've already heard a lot from Dr. Shashi, but with Nase, Ayurvedic views the Nase nose as the gateway to the brain and uses Nase as an important factor in correcting hormonal imbalances. During Nase therapy, herbal oil drops are instilled into the nostrils to bring balance to the menstrual cycle, and research shows that Nase stimulates the pituitary gland and hypothalamus, both of which play a pivotal role in hormone regulation of the female reproductive system. And Shirodhara definitely is a kind of passive meditation. And as we all know, that it's a deeply relaxing therapy involving the continuous pouring of warm medicated oil on the from side to side across the forehead, like just at the on top of the eyebrows, like the highest tip of the eyebrows, like we do straight line, but we do to and fro. We don't keep it constantly at one point because it can give a lot of like side effects. Like some people, I noticed they just like keep dripping the oil at one point, which is very, very wrong. And that can give kind of like different issues. People will start getting tears like continuously, or they would have a runny nose or something like that. And the temperature of oil is very important in Shirodhara. It's a lot to be kind of like every person has a different tolerance level. So we have to really check like before we start doing that therapy properly. We have to check with the client that is it tolerable, like, but it should be as warm as they can tolerate, like it shouldn't be cold at all, definitely no. And as well as like so it calms the mind and nourishes the nervous system and is therefore used in a wide range of health conditions exacerbated by stress and anxiety. Recent studies confirm the effect of Shirodhara in reducing anxiety, decreasing non-adrenaline, and enhancing the immune system. It is also helpful in managing symptoms of menopause because there is a lot of mood swings, like and irritability. There could be a bit of frustration, anxiety, sweating, like and a lot of women, like even after post-menopause, even pre-menopause, like PMS, there could be a lot of like signs and symptoms that needs to be balanced, and you balance it with the help of Shirodhara. So the conclusion is that Ayurvedic medicine has 8 branches of specialization: Istri Rog, gynecology, and Prastuti Tantra. Obstetrics are included as part of Bal Rog pediatrics. The classical texts discuss 20 gynecological disorders, some of which can be correlated to modern disorders, with a very sophisticated system of treating using different modalities to bring balance back to the reproductive system. Ayurveda is effective in a wide range of gynecological disorders. So that's why I put like in the next slide, the picture of the less you feel, the more you heal. So that's very important for a woman to be in a very calm and relaxing situation. She needs to be calmed down, like she isn't, like and we have to create that balance with the support of these non-invasive therapies, apart from
Uttarabasti, we just work on the root cause of the problem, like the stress, managing the stress and anxiety, and even giving them emotional support with the ways of counseling as recommended by Dr. Shashi. I've been practicing this for ages. I'm the 5th generation in the family, like practicing Ayurveda, and I just like I've noticed building up the relationship with the client is very, very important. Like, and it's so important to kind of like build a relationship, because that creates a trust and the faith in the client to be able to speak to you openly about any concerns, and they don't hide. More they will hide, difficult it is going to be for us to give them a right outcome and a right solution. So it's very, very important. And here on the slide are my details. My website is urjaayurvedics.com.au, and my email is urjaayurvedics@gmail.com, and my phone number, mobile number is there. That's my WhatsApp number as well. So just as Dr. Shashi said, I'm available there to support and help. Any information, if you need more, like feel free to contact me. I've been like having a lot of experience dealing with these kind of like issues, and I have helped them and assisted them without Uttarabasti, which is considered as an invasive therapy. So, and women have got pregnant, women developed their fertility, they got pregnant after 20 years of the marriage. Like, so, and I've done it all with the help of just with the herbs, relaxing the nervous system, creating that balance in the hormones, like with the help of all these like herbs and stuff. So yeah, more than welcome for questions. Thank you. Very nice, ma'am. Really amazing, great session. Really, yeah, it will really help our Vaidyas, I think. So one question is there, doctor, asking that which oil can we use in Nasya? Okay, well, can you specify some oils for infertility or some type of psychiatric history in females? We mainly use Anutalam, more often, like for most of the conditions. Like I have used Anutalam and sesame talam, but I have used even Gogrita, which is like a cow's ghee, and that really helps. But with Anutalam, it should be about we should put 6 to 7 drops, like in each of the nostril, and as I said, like that massage helps with, because sometimes the clients feel a bit of like burning and irritation, like sensation in the nose. So it's very important to put a towel under the neck when we kind of bend their head. Like it shouldn't go too much at the back, because they will feel a bit of irritation even in the throat. And what I generally do is after putting the nasal oil, I make them sit immediately after rubbing on their frontal sinus and around the eyes, like in a circular way. And then I rub their palms, both palms, with my hands, and rub their feet immediately after making them sit down immediately after putting the oil. So it's very, very important not to keep them lying down after Nase. So and the main contraindications, you can't do Nase to the people having kind of certain, there are contraindications, you should read all that, and the other thing is the most important thing is that after the Nasya, rubbing the sole of the feet and the hands, making them sit down, giving a steam over the face, and hand over a tissue and a bowl, but make sure that they don't blow their nose.
and they don't take the oil out, because otherwise it's going to defeat the purpose of what we have done, right? It should go into the brain and through the vascular path and the lymphatic system, so to into the CNS, like so that it can stimulate the hormones, like, and so make them like when you're putting the nasal drops, you have to close one Ida, and then you put into Pingla, and then you close Pingla, and then you put into Ida. So like you do one by one, you don't do like with the open nostrils, both of them are open. And then it's important that when they feel into the mouth, like that can be, you can get rid of that like by giving a dhuman, like you do prepare a varti with the haldi and ghritam, like the turmeric and the cow's ghritam. So what you can do is you can mix them together, and then you dip that varti like into the ghritam and that, and then you burn it, but you burn it till it starts giving the fumes, like, and the smoke. So you close one nostril again, and you tell them to close their mouth and inhale through like this, like you know, they have to take that inside to calm that heat stimulation. And because haldi is antiseptic and antibiotic and millions of benefits, like anyways it's gonna help, like if there is any kind of like injuries or any kind of infection basically inside, right? So so you do 3 times dhuman from one nostril and the 3 times from the other, and then after that you just give them a dashmul quath for the gargling. So boil the warm water or a saline water, and then like ask them to gargle, like a gandush karna hai, ठीक है? गंडूश और जैसे मुंह में रख के उसको घुमाना है और फिर उसको बाहर स्पिट कर देना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1.5 घंटा इट्स रिकमेंडेड बिफोर एंड आफ्टर नस से। एक तो सोना नहीं होता है, और दूसरा शावर नहीं लेना होता है, और तीसरा ठंडी चीजें नहीं खानी होती है, और क्या कहते हैं खट्टी नहीं खानी होती है, तो जिससे कि कफ एग्रोवेट होता है। ठीक है, तो हमें कफ को शांत करना है और वात को शांत करना है मेनली। और जो हल्दी है वो तो तीनों दोषों को बैलेंस करती है और त्रिदोषनाशक है, तो इसलिए हम हल्दी और घी जो होता है वो स्नेहन करता है और नारिश करता है, जैसे कि जो कि हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि नशे के बाद कई लोग ड्राइनेस फील करते हैं। लेकिन मेक श्योर कि वो ब्लो नहीं करे, नोज ब्लो नहीं करे। और जब आप डाल रहे हैं तेल नासा में, तो उस समय उनको बोलना है कि माउथ से ब्रीथ करो, ब्रीथ थ्रू द माउथ नॉट थ्रू द नोज, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि वो हच्छी छींक मारे और बाहर निकाल दे सारा। तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और पिलो रखना, वो टॉवल रोल करके उसको नेक के नीचे रख दो ताकि सिर बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाए। लेकिन दे हैव टू बी इन द लाइंग पोजीशन मोस्टली टू डू द नसे। चेयर पे मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर बेंड कर जाते हैं लोग। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको लिटा के उनका जैसे मसाज किया पहले, वो करके उसके बाद जैसे हाथ और पैर, ये रिफ्लेक्सोलॉजी भी काम करती है, क्योंकि ये भी हमारे हाथों और पैरों में जो जो पॉइंट्स हैं और मरम हैं उनको भी एक्टिवेट करता है। और साथ में जैसे मैंने बताया कि पोस्ट जो मसाज है आफ्टर नसे इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज डूइंग बिफोर। You should be doing after as well. Yeah. Ma'am, which oil is best for hormonal imbalance or in menopause? Could you tell something differentiation? दोष के हिसाब से ही सुनते हैं हम, दोष के हिसाब से बताइए थोड़ा। लेकिन हमें त्रिदोष नाशक जो है वो मैंने पहले ही बताया कि अणुतैलम, सेसमी और क्या कहते हैं अपना ज्यादातर जो हार्मोन्स के लिए मैं ज्यादातर अणुतैलम ही यूज करती हूँ, और यही मैंने किया है। या फिर मैं
घृत करती हूँ। अपना शतावरी भी आप यूज कर सकते हो, शतावरी घृतम है। ये जो अपना त्रिफला है, त्रिफला जो है, त्रिफला, शतावरी, अणुतैलम और क्या कहते हैं, ड्रॉप्स ही डालने हैं, वही 6 चाहे घी है, क्योंकि उसको आप गर्म करके पिघला के डालोगे। और कभी भी डायरेक्ट हीटिंग नहीं करनी है ऑयल्स को। कभी भी हम, आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि आप जब एक बार पका चुके हो तेल को, तो आप उसको दोबारा दोबारा गर्म नहीं करते हैं और डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके सारे कंटेंट खत्म हो जाते हैं, है ना, बेनिफिशियल। तो हम क्या करते हैं, कटोरी में डाल के तेल को, लाइक वी पुट इट इन द बोल एंड वी प्लेस दैट इन द हॉट वाटर, और फिर बिल्कुल सिम पे, बर्नर पे रख देते हैं या हॉट प्लेट पे। तो उसको आप क्या कहते हैं, उसमें पानी में बोल रखना है, ताकि उसको डायरेक्ट हीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके बेनिफिट्स खत्म कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है। अणुतैल मैं कंसिडर करती हूँ बेस्ट है, सेसमी भी ठीक है। षडबिंदु तैल मैं ज्यादातर यूज करती हूँ अपना, जैसे रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए कोई आता है। लेकिन गायनेकोलॉजी और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अणुतैलम और शतावरी घृतम और ये अपना क्या कहते हैं, सेसमी, जो वात को बैलेंस करता है। तो ये ऑयल्स बेस्ट हैं। Yeah, ma'am. Yeah, very true. Shatavari growth will be best for menopausal syndromes also. मैं किसी का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, अदरक स्वरस, वो ज्यादा रेस्पिरेटरी कंडीशंस में होता है। तो क्या कहते हैं, जो अणुतैलम है वो तो 6 ड्रॉप्स मैं एक बारी में डालती हूँ। और एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट, कि नशे आप लगातार नहीं करते हो। जैसे आप उत्तर बस्ती वगैरह में जैसे बोल रही थी ना डॉक्टर शशि की, यू कैन डू लाइक 5 दिन आप करो, लगातार करो या वो करो। तो नशे हम हमेशा ऑल्टरनेटिव डे पे करते हैं। तो नशे को कभी भी आज जैसे किया और सेम टाइम पे करना है, और लेट नहीं करना है कभी भी। आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून नशे इज नॉट रिकमेंडेड। जितना हो सके सुबह। वो फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वो खा के आते हैं, लेकिन कुछ हल्का खाया हो तो बेहतर है। या वो बस्ती में भी ऐसे ही है, मात्रा बस्ती जब हम करते हैं तो उसमें खाली पेट आने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि हल्का खाओ, खिचड़ी खाओ, या मतलब क्या कहते हैं, कोई भी जो हल्की पचने वाली सब्जियां हैं, जैसे हम वो खाते हैं, जुकीनी खाते हैं, पंपकिन है, बटर पंपकिन है, या कोई भी गाजर वगैरह हल्की जो पचने में है, और मूंग की दाल है, खिचड़ी है। तो ये सब चीजें हम एडवाइस करते हैं उसमें। लेकिन 1.5 घंटा पहले और बाद में ना सोना ना नहाना नशे के, और ना ही ठंडा और खट्टा कुछ खाना। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है नशे के लिए। यही कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बाकी वैसे लाइक क्या कहते हैं, इसमें हम नशे कितने करते हैं, मैंने मैक्सिमम आई थिंक लाइक मैंने किए होंगे 14। लेकिन ऑल्टरनेटिव डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, वेरी करता है कंडीशन टू कंडीशन कि हम कितने नशे देते हैं। लेकिन 5-7 मिनिमम होते हैं, 7 मिनिमम, और वो भी ऑल्टरनेट डेज। और फिर 14 तक जाती हूँ। 14-21 भी करे हैं, पर वो मैंने करे हैं जैसे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, ऐसे जो मेंटल उसके आते हैं, या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है जिनको इंसोम्निया वगैरह है या कुछ है। तो उसमें तो ये भी होता है कि हम सिर्फ तेल की धारा नहीं करते हैं, हम कई बार हमें क्या कहते हैं, अपना तक्र धारा भी करनी पड़ती है, या क्षीर धारा भी करनी पड़ती है। दूध से और दशमूल क्वाथ को मिला के हम करते हैं, या फिर हम तक्र धारा और दशमूल क्वाथ मिला के करते हैं। लेकिन उसमें टेम्परेचर वेरी करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म तो लस्सी फट जाएगी, है ना। तो आप क्वाथ जो है वो गर्म करते हैं और फिर उसको मिक्स करके उसको लूक वार्म कर देते हैं।
लस्सी को, है ना। और जो दूध है, दूध में आप इकट्ठा उबाल सकते हो उसको, दूध और वो, और फिर उसको थोड़ा ठंडा कर लो। और आप वैसे भी कर सकते हो, और लेकिन वात के केस में ज्यादातर हमें तेल धारा ही करनी पड़ती है। हम शिरोधारा एक जेनेरिक है वर्ड, क्योंकि शिरो इसको बोलते हैं, सिर को बोलते हैं, हेड को, फोरहेड को, और धारा होता है कांस्टेंट फ्लो, राइट। लेकिन तक्र लस्सी हो गई, और जो क्षीर धारा है वो दूध की है। लेकिन अगर जैसे कोई स्किन कंडीशंस के केसेस आते हैं मेरे पास, मैं उसमें अपना ये करती हूँ, दूध वाली करती हूँ। तो पित्त के केस में आप दूध से करते हो, वात के केस में आप तेल से करते हो, और कफज रोगों के लिए आप कफ को बैलेंस करने के लिए, अगर किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, जैसे नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है, तो उसमें ऐसे में आप तक्रधारा करते हो। तो ऐसे ही हम तेल भी चुनते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगा अगर आप इंटरनेट पे देखो कि वात के कौन से हैं नस्से ऑयल, और पित्त के कौन से हैं, कफ के कौन से हैं, तो यू कैन सर्च दैट। बट मेनली हार्मोन्स के लिए मैं शतावर, त्रिफला मैं बहुत यूज करती हूँ। नेत्र अक्षी, उसके लिए भी मैं, नेत्र तर्पण के लिए भी मैं त्रिफला ही यूज करती हूँ, या फिर त्रिफला, सेसमी, शतावर और अनुतैलम ज्यादातर। तो that works best in cases of gynec issues या फिर infertility. Very nice, ma'am. Very detailed explanation. Minor things you have put it very nicely. So thank you very much, Dr. Vanitha Sharma, ma'am, for the nice session, and it will really help our Vaidyas in practice. So thank you very much. Now, moving forward for being patient and cooperating with me. I couldn't play that, but I would, I'm more than open and welcome. Namaste, Naveen ji, Dr. Naveen ji. It's good to see you as well, like always. But but it was a pleasure for me to kind of do this. And if anyone needs any help, feel free to text me, email me, or whatever, whichever way. That's all available. I put it in my slides, and I'm more than happy to share my slides. I think ebook aap karenge to yeah, definitely it will be helpful. So I have planned it. Yeah, definitely. No problem. Yeah. Thank you and namaste. I will revert you back, ma'am. Yeah, sure, no problems. Thank you very much. Yeah, thank you very much. Moving forward with our this webinar, I would like to call upon Dr. Anjana Tak, and I request Dr. Joshi sir to introduce Dr. Anjana ma'am, as madam is colleague of Dr. Naveen sir. Yes. Thank you, Dr. Shilpa Erme ji. So nice talk given by the Dr. Vanitha Sharma from Australia, and I welcome Dr. Anjana Tak. She's working as an associate professor in Stri Rog and Prasuti Vibhag in Uttarakhand Ayurveda University, Harrawala, Dehradun. And I'm just, there are so many participants. Just look, 100 participants already full here. And so many are watching in Facebook also. And one in clinical Ayurveda Sambhasa, I invited Dr. Anjana Tak. That session was very beautiful. And our presentation, I hope that all the clinical practitioners will enjoy. And I welcome Dr. Anjana ji. आपकी बहुत डिमांड है यहाँ पर, काफी आपके वो पहले लेक्चर्स को देख के लोगों ने बहुत बार मुझे कहा, तो मैंने मैडम को बोला कि आप उनसे कांटेक्ट करिए। तो ये एक ऐसा मंच है, मैं बताऊं आपको कि देखिए यहाँ उत्तराखंड से हैं, यहाँ सिडनी में बैठे हैं, उधर सोलापुर में हैं, यहाँ मैडम वंदना जी हैं, ये उत्तर प्रदेश में हैं। और एक दूसरे को, हमारी जो महिला चिकित्सक हैं उन लोगों को बड़ी समस्या थी कि गायनी की बहुत सारे क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व नहीं होते हैं। तो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा जब इतने एक्सपर्ट्स यहाँ हैं। तो डॉक्टर अंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको अभिवादन जी, नमस्कार। Yes, ma'am. Welcome. And your topic is Yoni Dhawan and Yoni Dhupan. So we are going with all the procedures, Sthanik Chikitsa and local applications, which are really useful in the day-to-day practice and also in the gynecology, Ayurveda gynecology. Welcome, ma'am. You can continue. Namaskar to all. Namaskar. I hope I am audible. Yeah. My sincere thanks to Ayush Darpan Foundation, the organizers, and special thanks to you,
Dr. Shilpa, for coordinating this event so nicely. Now, without wasting any time, allow me to share my presentation. Yeah, you can. Just a minute. Is it visible? Yeah, ma'am. Yes. Continue. Thank you. Now, in the starting, I would like to say that vagina is not just a copulatory organ. In addition to being a genital organ having the reproductive functions, it also serves as a potential route of drug administration. Unlike oral and other traditional routes of drug delivery, the vagina route is not a common route for the administration, but the large surface area, the high vasculature, and lymphatic drainage makes the vagina a desirable route. Now, coming to the basic anatomy, the vaginal wall, it consists of mainly 3 layers: the epithelial layer, the muscular port, and the tunica adventitia. Coming to the absorption of drugs from the vagina, it occurs in mainly 2 steps: the drug dissolution in vaginal lumen, as in case when we are administering any solid form like the pessary, etc. And the second important step is membrane penetration. If any liquid is instilled into the vagina, it first diffuses through the vaginal fluid, followed by uptake and penetration through the vaginal mucosa, and then it is absorbed in the blood to exert the local and systemic desired effect. Now, what are the advantages of the vaginal drug delivery? First of all, it avoids the first pass metabolism, avoidance of the enzymatic deactivation of GIT, and it also has a large permeation area. Approximately the surface area of the vagina is roughly 60 centimeters square, and it has a rich vascular system and relatively low enzymatic activity. And also this vaginal drug delivery system, it is a non-invasive route. Despite of these facts, if we search the uniprakshalan or vaginal douching on internet, or if we listen to the modern gynecologist, this procedure seems to be harmful. Internet is flooded with a lot of instructions not to douche or perform any procedure for cleansing of the vagina, as it is a self-cleansing organ. But we as a Ayurvedic gynecologist should be well aware of the myths and should be confident enough to perform this procedure in our patient. First of all, one thing should be very clear, that the self-douching means which is performed by the patient herself at home is not advisable. And the use of fancy douche products mainly designed for the aesthetic or the cosmetic purposes are not advisable. But Yoni Dhawan as a Ayurvedic procedure performed by qualified practitioner is totally safe and effective measure to combat many disease conditions. So we must have unshakable faith on Ayurveda and should be confident enough to convince and perform this procedure. Now, what is Yoni Dhawan or Yoni Prakshalan? It means that this procedure is washing or cleansing of the vaginal canal, that is yoni, by injection of the fluid, especially the quath decoctions or other medical fluids like arish, takr, kshir, and tal, etc. under low pressure. In general, if we say that the term douche is applied for the stream of fluid directly which is instilled inside any body cavity. In the same way, the yoni prakshalan or douching, or we can say the irrigation of the vagina, it is a procedure in which washing of the vagina is done by liquid at low pressure. Now, what are the advantages or why we perform this yoni prakshalan? First of all, mechanical cleansing of the vaginal tract and the cervix, as in vaginitis and leukorrhea. And from cervix, I mean the ectocervix, not the endocervix. It also helps to alleviate any foul odor. It is done as a preoperative procedure in most of the patients before conducting any gynecological procedure, for example, prior to Uttarbasti or Pichu, etc. It helps to reduce the swelling, cleanse, and to promote healing after certain procedures like Sharkaram and cauterization, etc. Now comes the question how it works. For this, we have to understand the mechanism of absorption of drug through vagina. Whenever we administer any drug into the vaginal route, it is either absorbed transcellularly via the concentration-dependent diffusion through the cells, or paracellularly, that means mediated by tight junctions
or vesicular or receptor mediated transport is always there. So the fluid, whatever we are instilling inside the vaginal lumen, as in this particular case of yoni prakshalan, acts by the same way. Now, what are the requirements? The main requirements are we require the sterile gauze swabs, sheets for draping, sponge holding forceps, enema can or douche set, whatsoever is available, rubber catheter or nozzle, and the quath, which I will discuss later, which should be selected according to the disease, and the amount may vary from 300 to 500 ml. Along with this, we need the sterile, or we can say the surgical pair of gloves, apron, Macintosh towel, and we may need the vaginal speculum to examine the vagina and to apply the medication if needed. Now the journal instructions. The procedure should be done in adequate light. And this is very important, and it should be done after thorough pelvic examination. The hand should be washed thoroughly before and after the procedure to prevent any cross infection to and from the patient, especially in case of STDs. The sterile glove should be always be used, and now the preparation of the patient. Take consent and explain the procedure to the patient. We have to maintain the strict privacy. Ask the patient to void the bladder to reduce the discomfort during procedure. This step is very important and should be followed prior to any gynecological procedure. We have to evacuate the bladder, mandatory. This step is very mandatory. Now bring the patient to the edge of the table, the procedure table, or assist the patient to the dorsal recumbent position on the bed. We have to place a Macintosh or the towel under the patient to protect the mattress and the bedcloth. Drape the patient to expose only the perineum. Now coming to the actual procedure, we have to pour the desired preparation or the decoction, whatsoever we have decided as per the disease condition, into the douche can and allow a little solution to run through the tubing. And we can either hang this can to the IV pole, or we may ask the person who is assisting the procedure, say for example, if any nurse is there, to hold it, but make sure that it should not be above more than 24 inches from the level of patient's hip. Now clean the perineum. Test the temperature of the solution before using. Allow small amount of solution to flow over the vulva. Regulate the flow of the fluid by adjusting the screw cap. Pouring solution over the vulva removes any gross discharge. It also determines the tolerance of the patient to the temperature of the solution. Means that we have to adjust the temperature of the solution as per the disease, which I will be discussing in the slides later. Now separate the labia with the thumb and the forefinger of the left hand and gently insert the nozzle into the vagina about 2 to 3 inches. Direct the nozzle upwards and in the downward direction along with the curve of the vaginal canal. Now allow the fluid to run in a steady stream. The douche nozzle should be directed downwards and backwards along the curve. This is very important. It should be rotated simultaneously to ensure flushing of all the fornices, that is the anterior, posterior and lateral fornices thoroughly should be cleansed. The treatment should not be done hastily. If the therapeutic effects are to be achieved, it should take at least 7 to 10 minutes to pour 500 ml of solution. Now, when the required amount of fluid is used, clamp the tubing and remove the nozzle from the vaginal canal. Disconnect the douche nozzle and place it in the kidney tray. In this slide, you can see that proper cleaning and draping has been done. Using a sterile cut sheet perineum is used so that the perineum is well exposed. Decoction is there in the douche can, which is attached to the rubber tubing and further to the rubber catheter. I personally don't prefer plastic nozzles for my patients, as these are sometimes harsh on them and are a reason of discomfort for them. Now coming to the post-operative procedures, ask the patient to be in the sitting position on the bedpan to drain the solution from the vaginal canal. Now be very careful while performing this step on the procedure table. In case of obese person, first ask her to get off the table and sit in squatting position over the bedpan on the floor only. Now remove the bedpan, turn the patient to one side and dry the perineum and buttocks.
If any medication has to be applied, for example, the pitch of Jatyadi tel or anything else, then insert the speculum into the vagina very gently to visualize the cervix and apply the medication using proper applicators. After the procedure, remove the Macintosh and towel and rearrange the bed, adjust the position of the patient to make her comfortable. And that's all in the post-operative measures. Now, points to remember. Yoni Prakshalan, though it is a very simple and comparatively safe procedure, but we must be aware of certain points so that we can have maximum benefits without any undesired effects. Like Yoni Prakshalan is contraindicated during menstruation, during pregnancy, and in the puerperal period due to chances of retrograde menstrual flow and infections carried to the uterus, respectively. We have to check the condition of the perineum for any lesions. If there are any abrasions or wounds, or we can say the rashes are there over the perineum, or there are any lacerations inside the vagina, either defer the procedure or choose the solution accordingly. Clean the perineum thoroughly before the douche is given, as shown in this picture. Clean the perineum from above downwards towards the rectum to prevent the colon bacilli entering the urethral meatus and vagina. This is very important, है ना? ये सेम वही तरीका है जैसा हम किसी भी ऑपरेटिव गायनोकोलॉजी से पहले इसके लिए पेंटिंग के लिए जो हम फॉलो करते हैं. Now, use the clean technique, or this is usually enough for all the patients. However, the sterile technique may be used in some certain cases. For example, if the patient is HIV positive or the patient is suffering from very highly infective vaginal conditions. Now, what is this sterile technique? It is generally defined as the technique in which we need all the area to be free from microorganisms. It involves strategies used for patient care to reduce exposure to microorganisms and to maintain the objects and the areas as free from microorganisms as possible. So this sterile technique, it involves a meticulous hand washing, use of sterile field, use of sterile gloves, or application of the sterile dressing and the use of sterile instruments. Whereas in case of clean technique, it means free from dirt and marks or stains. It involves strategies used in the patient care to reduce the overall number of microorganisms or to prevent or to reduce the risk of transmission of microorganisms from one person to another or from one place to another. Now, this is very important. Use the solution of correct strength to achieve the desired effect and also to prevent irritation. This point is very important because many times we ask the patient to prepare the decoction at home and bring it for the procedure. But the quantity of the Yavkut provided to her is many times not sufficient. Even at my working place, it happens usually. The pharmacist gave a small packet of Yavkut, which the patient is asked to use for, say, for example, 5 days in divided doses. In that case, not more than 10 grams of Yavkut is utilized in one sitting. And we must take a special notice here. Make sure that at least 200 grams of coarse powder is used for making decoction in a single sitting, and never provide any churn for the preparation of decoction, as the amount of suspended particle is high in the finished product, which is not desired in case of Yoni Prakshalan. Means for making of the decoction in case of this Yoni Prakshalan, only the drug should be used in Yavkut form. The procedure of cloth making may also vary according to the dravya. In case of Kathin dravya, as mentioned in Sharangdhar Samhita and in our various Ayurvedic texts, for example, if we are using the barks like of Panchvalkal, we have to take 16 times water and we have to reduce it to 1/8. Means in case of when we are making the decoction of Kathin dravya, water has to be more. The amount of water should be 16 times. And when we are using the madhyam or mridu dravyas, for example, like trifla or trin panchmul or nimb is used, then we have to boil it in 8 times water and reduce it to 1/4. Say for an example, if we want to prepare the trifla kwath, we must take approximately 200 grams of Yavkut. We have to boil it 8 times of water should be taken. That is, in case of 200 grams, 2 liters of water should be taken. And then
we have to reduce it to 1/4. Only then we will get the proper 500 ml of decoction having maximum potency. So this point is very important. Now the douche nozzle, it should be well lubricated and kept wet to prevent any friction or tissue trauma. It should be directed downwards and backwards around the curve of the vaginal wall. This step should be followed very gently. We should rotate to ensure the flushing of all the furnaces, and before and after the insertion of this nozzle, we have to examine for any cracks so as we can prevent any injury to the vaginal wall. Now, speed and pressure of the fluid administered. We have to adjust the height of the reservoir or the douche can or whatever pot we are using for this decoction to regulate the pressure of the solution. As I have told earlier, that it should not be above more than 224 inches from the level of पेशेंट से हमें बहुत ज्यादा उसको ऊपर उसको हैंग नहीं करना है सो दैट कि फ्लूइड एक डिजायर्ड स्पीड से और एक डिजायर्ड प्रेशर से ही जो है वो वजाइना में फ्लो करे. Now coming to the selection of drugs. So in this slide you may see that these are the commonly used quats which we are using in our day-to-day practice, and you all must have been using these like Dashmul quat, like Trifla, Nimb, Panchvalkal and Trin Panchmul quat. And you may also see the indications. Dashmul has an anti-inflammatory property. You all are very well aware. This is Shothar. So any vaginal condition, when there is, like in case of cervicitis or vaginitis, we may use this Dashmul quat. Trifla has the antibacterial, antiviral, and anti-allergic properties. Nimb is a well-known cremigme. It is a very well-tried antimicrobial drug. Panchvalkal is having the sheath and kashai potency, and it also consists of phytosteroids. So it is also useful in case of perimenopausal women. Trin Panchmul, it has Vatpichamak action, it is kashai in nature, and it is effective against gram-positive bacteria, and this is antifungal. Now again in this slide you may see that sometimes the Panchvalkal here in place of Kapitan, Shirish or Vetas, this drug is sometimes used, and in our text it is very clearly mentioned that these Kshiri Vriksh, or we can say the Panchvalkal, it is indicated in Yoni Rog and is said to be Vranapaha. Now this is another slide which is showing the choice of drugs used in various disease conditions. Say for example, if the condition is Vata predominant, for example, if the patient is having the symptoms of Yoni Shul, Stabdhata and Sparsh Asahita, we may choose the drugs as Garuchi, Rasna and Bala. And very importantly, the temperature of the decoction in this case, this particular case, in case of Vat Visheshan, it should be Sukhoshan, that is, the decoction should be lukewarm. But in case of Pitta aggravating conditions, we may choose the drugs like Mulethi, Panchvalkal or Shatavari, and in this case, the comparatively Sheetal decoction, or we can say the slightly cold or the decoction having the normal temperature should be used here. And in case of cough predominant conditions, for example, if the patient is suffering from Shov, Yoni Kled, Kandu, or if any kind of Srav, Pandu, that is the yellowish color Srav is there, then we may choose the drugs like Trikatu and Trevrit. And in this case, the decoction should again be Sukhosh, that is lukewarm in temperature. Now coming to the next slide. Usually patient come to us with various reports, and sometimes we are able to make sure that what type of infection or vaginitis she is suffering from, है ना, जैसे कि patient pap smear के साथ हमारे पास आता है. So it is very clearly mentioned that this smear shows the protozoal infection, that is the trichomoniasis is there, or there is any yeast infection like the candidiasis is there. So what type of powder should be added to the क्वाथ द्रव्य used for योनि प्रक्षालन? Many of us, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि without identifying any condition, sometimes किसी में हम टंकन ऐड कर देते हैं, कभी कभी हम स्फटिका ऐड कर देते हैं, but यहाँ पे हम बहुत ही particularly अगर हमारे पास पैप स्मेयर की रिपोर्ट है या फिर if we are having any facility to determine the pH of the vagina, then we can specifically add the particular powder to achieve the required drugs. For example, as we all know that Tunkan is borax, and the Tunkan is having the pH approximately 9. That means it is highly
alkaline. So this condition, this powder should be added to the decoction for acidic secretions and discharges. Acidic, say for example, in case of candidiasis, we all know that this Candida albicans, it thrives in acidic pH, है ना. तो हमें पता है कि अगर candidiasis है, that means the vaginal pH is towards the acidic side. So to neutralize it, or we can say to उसको हमने जो clear करने के लिए we may add the Tunkan inside the this decoction bath. We may also add the Yavakshar or Swajikakshar in this case too. But if the pap smear or the pH is we can say the comparatively alkaline, we all know that the trichomoniasis, this is a protozoal infection which thrives in the alkaline pH. So to combat that, or we can say to neutralize that, we may add the Sphatika, Shuddha Sphatika Bhasam to that, because the pH of the Sphatika is 3.3 to 3.9. So this is very important. Now in case of senile vaginitis, the drugs having the actions of phytoestrogens in them, they can be chosen like the Bala, Shatavari, Ashok, Haridra or Ashwagandha. These may be chosen for the decoction. Now in this slide, I have summarized certain decoctions which are mentioned in our text according to the indications. In case of Yoni Dargandhya, the Sarvagandha Dravya Kwat may be used, and the Aragvadadi Gand, which is mentioned in this Ashtang and Sushud, this decoction can be used. In case of Yoni Shitalta, Vatha Dravya can be used. In case of Yoni Pachilya, Aragvadadi Gand is again indicated. In case of Srav, we may use a decoction prepared from Karir, Dhav, Ark Pushp, Venu, Nimtwak, Jambu, Jingni Mool, etc. And so on. In case of like in case of Uni Kandu, Guruchi, Trifla and Danti, it gives very promising results. In case of Uni Pak, Panchvalkal Kwat, and especially because in this case, all the dravyas, all the 5 dravyas are having the Sheetal Virya, the sheath potency. So in case of Yoni Pak, the preferred decoction may be the Panchvalkal Kwat. In case of Yoni Da, again along with the Panchvalkal, the Chandan Kushai may be used. And in this slide, you may see the properties of the 5 the constituents of Kshiri Vriksha, or we can say the Panchvalkal. The what is said to be the Kaf Pitta Vranapaha, and by Bhaprakash it is clearly mentioned that this is Yoni Dosh Harit. And the Udumbar, it is also having the Himgun, as I have told earlier, that it is having the sheath potency. It is also known to said to be Vran, Shodhan and Ropan. Ashwath, that is the people, the Ficus bengalensis. It is also said to be the Varna and Yoni Vishodhan. In case of plugs, if we see the reference of this Bhaprakash, Vran Yoni Gadapaha, it is said to be Vran Yoni Gadapaha. And in the last Shirish, as I have told that many at many places the modified Panch Shiri is used instead of Kapitan. Either Vedas or Shirish is used. So Shirish is having the clear-cut indication that it is Tovar, that is it is Kashain, whereas it is Kasavran Vishapaha. So these are the brief indications of why we are using the Panchvalkal Kwat in journal. I am skipping this slide because we are already running out of the time. These are the phytochemical constituents of modified Panchvalkal, which I have already told that Shirish is added here instead of Kapitan. This is a slide according to the is research conducted by CCRS, which is showing the phytochemical constituents of the modified Panchvalkal Kwat. We may find a lot of research on the internet if we search. Like in this slide, you may see that Trifla Kwat Prakshalan has been tried in Shleshmala Yoni Vyapat, and this is found to be having highly significant result in that. Now coming to the limitations of Yoni Prakshalan. Though this is a very simple procedure and can be done in almost all the mostly all the patients, but there are certain limitations, like we cannot administer it during menstrual period. In the bleeding phase, this is contraindicated. The vaginal pH and the phase of menstrual cycle may alter the sensitivity of the special drug.
or the decoction used in prakshalan. That's why I have mentioned that it is very useful if we can find the pH of the vagina, hai na, so that we may combat this factor. Local irritation of some drugs or preparations may be there. Influence of sexual intercourse in the efficacy of uniprakshalan may be there. Sometimes leakage of the drug from vagina and wetting of the undergarment. This is a very troublesome complaint in certain patients. And the quath, it had to be prepared freshly every day and was a tedious as well as time consuming process for the health assistant, or we can say the staff nurse who prepared it every day, and also for the physician who is administering it every day. So these are certain limitations for yoni prakshalan. Now coming to my next topic, that is yoni dhupan. As you all know that dhupan karam, it implies to the fumigation of the desired or affected area with essential drugs or the objects required as per the need. Yoni means the vagina here, or we can say the vulva and vagina here, and dhupan means fumigation of the same area. This is a procedure in which fumigation of the vulva and vagina is performed by medicated or and it is disinfected. Smoke is used over the surface of the yoni. This yoni vyapat is also an important kind of dhupan mentioned in different stri rog in prasav and in sutikavastha. थोड़ा सा सूतिकावस्था के बारे में मैं बताऊंगी कि there are many changes that occur in सूतिकावस्था. There are wounds at placental site and the genital tract abrasions are there, along with the vat prokop, dhatu kshay, and the clay, the raktanisruti and agni mandes, they are in case of सूतिकावस्था. So to avoid these any severe complications and also to regain the health after this prasav, along with the Sutika dietary regime following of the Sutika Paricharya, Yoni Dhupan is mentioned as a Rakshogna Upkram here. Yoni Dhupan is mentioned as Rakshogna for about 7 to 10 days in case of Sutika Paricharya. Now coming to the purpose of Yoni Dhupan, if we see all our Ayurvedic texts, especially in Kashyap Samhita, where detailed description of Dhupan is mentioned, we may find that Dhupan Karam is indicated for 3 main reasons or purposes. Like for Rakshogna Karm, Dhupan of Vranagar is mentioned, or Kumaragar or Sutikagar is mentioned for Vyadhi Nashan. For Yoni Shodhan, it is mentioned for Vranaropan, for Kled Shoshan, Krimi Har action, and wherever the Vedna Shamok or Durgandh Har action is needed, then the Dhupan is indicated, and also for sterilization of certain preparations like in case of Asav and Arisht Nirman. There are different type of Dhupan drugs mentioned as I have given the reference. In Kashyap Samhita, you may find the Dhupadhyay, Dhupkalpadhyay, and on the basis of origin, Jangam, Sthavar and mineral type of Dhupan dravyas have been categorized. Now this slide shows the therapeutic indications of this Dhupan and ingredients. These are not specific to Stri Rog, just I have compiled. Like for disinfecting the clothes and bed, we may use the jaw, sarshap, atsi, hing, gugul, etc. for Dhupan. For the fumigation of Vranagar, which is indicated twice a day for 10 days by Sushruta in Sutrasan, sarshap, neem and lavan, these are mentioned as the ingredient for Dhupan. For air purification, Laksha, Haridra, Ativisha, Abhya, Musta, Harenuka, Ela, like these drugs are mentioned. Now coming to the properties of Dhupan Dravya. Most of the drugs indicated for Dhupan in our Ayurvedic text have Laghu, Ruksh, Tikshna, Vikasi and Ugra Gandhi properties. That is the volatile gun is there. They are having the Katu Tikta Ras, they are having Ushna Virya and Katu Vipak. These all qualities of Dravya help in its rapid spreadability and quicker combustion. These drugs mostly possess the Shothar, Krimigna, Kandugna, Vranshodhan, Vranaropan and Vedana Shamak action, and mostly Agni and Vayu Mahabhut Pradhan Dravyas are used for this procedure. Now coming to the mode of action of Yoni Dhupan. The Dhupan Dravyas, as I have told earlier, the Dhupan drugs with Katu, Tikta, Ushna and aromatic properties, when put on fire, these get converted into volatile medicated fumes. And these fumes enter into the small units of tissue, which we say that these enter into the srotas due to their suksham and srotogami properties.
Therefore, when these enter the srotas, because of their suksham gun, or we can say the vai gun, they dilate the blood vessels there and help in oxidation of the blood that lead to adequate tissue perfusion. And also the drugs, as I have mentioned earlier, they mostly have the antiseptic properties. This antiseptic and sterilized environment, which is created by Dhupan over the vulva and in the vagina, it helps in disinfection of the uterine cavity to some extent, and the vagina and vulva mainly. It also helps to normalize the pH and laxity of the pubic muscles. This helps to reduce the pain, decrease the vaginal discharge, healing of the wound, and also it prevents the growth of microorganisms. So the Yoni Dhupan may be carried out in many ways. One of the easiest method is use of commode chair. We need the appropriate Dhupan dravya, the pellets of cow dung, an induction stove or any hot plate along with the tongs. I personally prefer sarshap khali. That means the leftover when the sarshap tail, that is the mustard oil, is whenever it is extracted, the leftover, that is known as sarshap khali. While performing this procedure, at the effect as the effect of katu tail or sarshap tail is added on. Now, for this procedure, we have to ask the patient to comfortably sit on the commode chair with the legs slightly abducted. This is very important. Normally, we ask the patient to simply sit on this this commode chair, and as we all know that in the normal position, the vaginal walls are well opposed. And so we have to instruct the patient to slightly keep their legs in abducted position so that some amount of tome may enter inside the introitus. We have to cover the patient at the level of waist with a blanket and perform this procedure for at least 10 to 15 minutes. This is very important. Make sure to that adequate fumes are there while this duration. You may replace the dhupan pot twice or thrice after letting it again to have the optimal effects. Means कि एक बार जब हमने धूपन पॉट रख दिया, यूजुअली वो कई बार 10 मिनट तक वो उसमें से फ्यूम्स नहीं निकलते हैं. ठीक है, सो just doing dhupan for 2 to 3 minutes or so will not solve the purpose. So here are some classical references of some dhupan dravya according to the Vyadhi along with the references. The main references are in case of Yoni Kandu and Shleshmala Yoni Vyapat, the Brihtifal, Haridra and Daruhritra. These dravyas are indicated. For Yoni Srav, Saral, Gugul, Yav and Katuk Matsya may be used as per the Charak. For Garab Nirodh, Nim caste is indicated. For Garb Sang, Krishna Sarp Nirmok, which I know that not is readily available. Pinditak, that is Madanfal, can be used. Bhuj Patra, Kalihari, Katutumbi, Kusht and Sarshap is indicated in case of this Garb Sang. In case of Vilambit Prasav, or whensoever we want to increase the uterine contractions in case of if there is any obstructed labor, not obstructed labor, in which the progress of labor is not comfortable, optimal, we may use a Krishna Sarp Nirmok, Tagar, Bhuj Patra and Shinshapa for that. In case of Aprasang and Nagodar, Katuka Labu, Sarshap, Krita Vedan, Langli and Bhuj Patra etc. are indicated. And for Sutika Paricharya, in general, these drugs are very effective and is used by many practitioners already. Kusht, Gugul and Agru mixed with grit. This is very effective and it helps for the easy involution, and it also avoids many puerperal infections also. And for Kumaragar, these Yav, Sarsha, Patsi, Hingo, Gugul, Vacha etc. drugs are used. Many researches are already done on the Dhupan Karam. I have summarized a few of them. Like a research performed by Dr. Swati at Bharati Vidyapith under the title Determining the Efficacy of 3 Ayurvedic Formulations and Dhupan in Preventing the Infections Post-Vaginal Delivery with Episiotomy. She used the Dhupan drugs like Vidang, Shatpushpa, Jatamansi for 5 days daily on the episiotomy wound. And the results were very promising. Highly significant results were found there, and the episiotomy wound of 99.7% of the cases were healed without any infection or complications. In another research done by Dr. Vidya Murthy, again at Bharati Vidyapith Pune, under the title of Evaluation of Dhupan Karm in Sutika Paricharya, she used Kusht, Agru and Gugul for 7 days on the episiotomy fluid, and this again shows a promising result in Udar Shul, in Kukshi Hras, and also the Yoni Shul
and yoni shot. These symptoms were very much cured. I am skipping some of these. In another research conducted at STM Ayurvedic Hospital, Udupi, a clinical study of amal ki churn orally and saraladi yoni dhupan in Shwet Pradar with special reference to vaginitis. The patients of Shwet Pradar got considerable relief in yoni srav, in kandu, in durgandhata, and in the last research you may see that the role of Krishna Sarpnirmukh was assessed in prasav. Here the Krishna Sarpnirmukh yoni dhupan was done in the second stage of labor, not in the first one. The Krishna Sarpnirmukh dhum was given in the second stage of labor, showed the significantly better results compared to control group in the duration of uterine contractions and intervals between the uterine contractions, and statistically significant results were found in this research. So in the last, I may say that that if our diagnosis is clear, and if the quality drugs are used and the preparation are used with proper procedure and guidelines, you may get 100% result. Each sthanik chikitsa hold its own importance. Yoni prakshalan and yoni dhupan has marvelous results when applied with proper indications, strict aseptic precautions, and with extreme carefulness. So that's all from my side. Thank you. Now over to you, Dr. Shilpa. Thank you very much, ma'am. It was really great session. Some questions are there. We will discuss some questions. So in which avastha, like in Sutika, as the ladies menstruating, at what stage or on what day we could administer this dhupan? Like in case of Sutika avastha, we may administer it from very first day. This dhupan can be done from the very first day. And as we can, जैसे कि हम इसको पुपेरियम को अर्ली पुपेरियम में जैसे हम करते हैं या लेट पुपेरियम में हम करते हैं, जो अर्ली पुपेरियम है, जो फर्स्ट 7 to 10 डेज का जो टाइम है, उसमें हमें ऑप्टिमल रिजल्ट्स हैं, जो हमें उस टाइम पे ज्यादा अच्छे इसके इफेक्ट्स मिलते हैं. Still the ladies menstruating, ma'am, we can give it. Yes, yes. In case of Sutika, dhupan can be done. चालू है तो भी हम दे सकते हैं. Yes, dhupan can be done, not prakshalan. Dhupan is indicated in that time also. Okay. Yeah. Just share your experiences in various conditions, ma'am, like in 1-2 line, infertility, like other menopausal conditions, or any discharge. I think we all know that in Dhawan it is really dramatic results. Dhawan, in vaginal discharge. सॉरी फॉर दैट. जैसे कि मेरा अभी देखिए प्रक्षालन का टॉपिक है, इनफर्टिलिटी आगे मेरे जो को गाइड है डॉक्टर कामिनी धीमान आर गोइंग टू स्पीक, तो आई थिंक वो मेरे से बहुत बेटर बता पाएंगे. एनीथिंग स्पेसिफिक टू योनि प्रक्षालन, सो आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट. One question is there. Post delivery yoni dhawan and pichu in the no. Post delivery yoni prakshalan should not be done. Yeah. In pregnancy, as I have already said, in puerperal period, it is contraindicated. We should not prefer. Yoni dhupan can be done. Yeah, definitely. Yeah. I think no questions from any questions, doctors? Yes. Settings, how many settings are required, ma'am? For yoni dhawan, at least for 7 days, for 7 consecutive days. Okay. Ma'am, can it be like this? Excuse me, ma'am, I am Dr. Vandana Pathak. Yes, Yoni prakshalan should be continued till the, suppose there is white discharge coming, and when we observe the clear liquid, like the quartz which we are using in the yoni dhawan, when we observe that flakes and everything has stopped, it might be 7 days, it might continue, have to be continued till 10 days. When the flakes are over and the patient's complaints are reduced, we can even increase the duration from 7 days to 10 days. What is your view, ma'am?
हाँ जी डॉक्टर साहब, the preferred time duration, as I have told, that it is from 7 to 10 days, but according to the disease condition and the severity of the condition, you may extend this duration too. But जो आप ये बोल रहे हैं कि जो clear solution का आना और अगर flakes जो वो vanish होते हैं, I don't think कि this should be the criteria for continuation of the यूनि धावन, because क्योंकि हम उससे पहले जैसे ही हमने fluid थोड़ा सा अंदर डाला, पहली बार में ही हो सकता है फ्लूइड आ जाए, हो सकता है कि वो ना भी आए, है ना? हो सकता है कि इन्फेक्शन इज स्टिल देयर, बट वी मे नॉट फाइंड एनी फ्लेक्स इनसाइड द फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ द वजाइना, है ना? बट हाँ फॉर नहीं मतलब 7 to 10 डेज तो है ही है, लेकिन अगर वो मिनिमम हो 7 ही to रहा है, वाइट डिस्चार्ज आ ही रहा है और हम 7 या 10 डेज सोचे, तो हम उससे भी ज्यादा दिन तक दे सकते हैं, जब तक कि जो हम साइन देख रहे हैं वो कम खत्म ना हो। जी मैम, डेफिनेटली वी मे एक्सटेंड द पीरियड। यस मैम, एट्रोपिक वजाइनिटिस में कैसे दे हम लोग, ये डॉक्टर कृतिका ने पूछा है। हाँ जी, मैंने देखिए अभी थोड़ा स्लाइड में बताया भी है कि वो ड्रग्स जिनमें फाइटोएस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है ना, बेस्ट है कि जैसे अगर हम बला का क्वाथ यूज कर पाए, इवन दशमूल, है ना, ये इसमें भी फाइटोएस्ट्रोजेंस रहते हैं, तो इस तरह के डिकॉक्शन अगर हम यूज करते हैं तो वो सिनाइल वजिनाइटिस में इम्पॉर्टेंट है। एंड अगेन अगर इसको हम साथ में पिचो के साथ अगर हम कोलैबोरेट करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। या ओके, यस डॉक्टर रेशमा, प्लीज जस्ट इन वन लाइन योर क्वेश्चन। डॉक्टर रेशमा, या यस मैम। मैम, पोस्ट डिलीवरी बहुत से पेशेंट कंप्लेन कर रहे कि वजाइना लूज हो गया या लैक्स हो गया, so what can we do for that? Yes. For this in our classical text, if we see that kapi kachu mool kwath, this is indicated. I have just used in 2 patients and अच्छे उसमें results मिले हैं, but इस पे और भी research करने की जरूरत है, but मुझे personally जो लगता है वो कपी कछु मूल क्वाथ इसमें बहुत अच्छा काम करता है। Thank you, ma'am. Yes, Dr. Meenal. यस मैम। मैम ये आपने जो डिकॉक्शन बनाने के लिए बताया है, डिकॉक्शन में आपने टंकण क्षार, यवक क्षार और सर्द क्षार का जो कॉम्बिनेशन बताया था, इफ देयर इज पीएच इज दैट इज पीएच इज आई थिंक सो दैट इज फॉर एसिडिक कैंडिडियासिस ना, देन उसमें कितना अमाउंट हमें ऐड करना है डिकॉक्शन के अंदर टंकण क्षार और का? मिनिमम इन केस ऑफ जैसे हम 500 ml डिकॉक्शन ले रहे हैं, बहुत कम भी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर जिसका जितना हमें इफेक्टिव 2 से लेके 5 ग्राम तक हमें 500 ml में डालना पड़ेगा, ताकि हम उसके पेज को न्यूट्रलाइज और उसको हम ऑल्टर कर पाए। नॉर्मली क्या करते हैं कि 500 ml अगर हम लेते हैं तो हम यूजुअली 2 या 3 पिंच ऐड करते हैं, मैक्सिमम 4 पिंच ऐड करते हैं, तो इट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। तो मिनिमम 2 से लेके 5 ग्राम तक हमें ये जो सिलेक्टेड ड्रग है वो उसमें डालनी पड़ेगी। सेम विद द मैम स्फटिका भी हमें इसी अमाउंट में लेना है? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। और मैम प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर एटलीस्ट हाफ एन आवर, मतलब 500 ml हम जब डूश दे रहे हैं तो हाफ एन आवर उसको डूशिंग में लगना चाहिए लगभग। नहीं, मिनिमम जैसे देखिए जी 10 मिनट्स तक लगना चाहिए। हाफ एन आवर तो बहुत मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा। 10 मिनट्स में नॉर्मली इतना फ्लूइड जो वो निकल जाता है। जैसे मैंने बताया कि हाइट हमने 24 इंचेस तक अप्रॉक्स जैसे हिप के ऊपर एडजस्ट किए, तो 10 मिनट में ये फ्लूइड निकल जाता है। बाकी इसकी फ्लो को रेगुलेट करने के लिए जो ट्यूबिंग है हम उसको दबा सकते हैं, उसको हम क्लैम्प कर सकते हैं, बट नॉर्मली 10 से 15 मिनट तक का टाइम इसके लिए सफिशिएंट है। 15 मिनट्स। और आफ्टर दैट मैम उसको हम जो आपने प्रोसीजर बताया वो लेने के बाद में उसको पैड वगैरह प्रोवाइड करा के उसके बाद। बिल्कुल, देखिए ये जो योनि प्रक्षालन है ना, आमतौर पे क्योंकि मुझे दिया ये गया तो मैंने और चीजें इसमें इंक्लूड नहीं की हैं, बट नॉर्मली देखो जब भी हम योनि प्रक्षालन करते हैं ना, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय योनि पिचू, है ना। बेस्ट यही है कि आप प्रक्षालन करिए, उसके बाद हल्का सा उसको स्पॉन्ज होल्डिंग से आप स्वैप से क्लीन कर दीजिए उस एरिया को, और उसके बाद आप एक पिचो रख दीजिए, स्टेराइल वल्वल पैड दीजिए, और एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स पेशेंट को आप आईपीडी के बेड में लिटा दीजिए। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। एक अलग से सेशन रखेंगे मैम आपका फिर से एक बार पूरा। या डेफिनेटली, सो थैंक यू वेरी मच। सो आई थिंक डिस्कशन खत्म हो गया, तो हम अगले स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं। अगले वेबिनार के इस सीरीज में आई वेलकम डॉक्टर रेणुका कुलकर्णी मैम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, एंड I would like to call upon Dr. Shweta Attarwala to introduce Dr. Renuka ma'am. Yes ma'am. Namaste ma'am. Sabhi ko namaste, and it is my absolute pleasure and honor that I am getting to introduce our next speaker, Dr. Renuka Kulkarni ma'am.
इनके लेक्चर्स जिन्होंने सुने हैं, एक्चुअली शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, but just to let you know, she is an Ayurvedic infertility specialist with 29 years of experience, and she practices in Pune and Pandharpur since the last 29 years. And what I have understood from her lectures that I have heard, she has a completely holistic approach, including yoga, including Yog Nidra, including all of the Ayurvedic procedures, and वो इतने complicated cases को भी इतनी simple way से present करते हैं मैम कि ऐसा लगता है अच्छा ये भी ठीक हो सकता है. So she has invented a painless procedure of Uttar Basti, which she has done by herself. Like I said, Yog Nidra mein, and varying cases of infertility, tubal blockage, PCOD, cysts, endometriosis. So she has so much experience in all these cases, and there is so much to learn from her. Welcome, Renuka ma'am. Looking forward to another informative session from you. Yeah, definitely. And today's topic is preconception and infertility. I think this is the current need of this situation. So whenever we are going to deal with this infertility or preconception, we must think of Ayurveda, and definitely the Panchakarma having a greater role. So I would like to request Dr. Renuka ma'am to throw some light on this topic. Yeah, ma'am, welcome. Thank you, Dr. Shilpa, Dr. Naveen Joshi sir, and this doctor, I don't remember her name, Shweta. Dr. Shweta, for my wonderful introduction, and we will go further in our lecture today. Today's topic is Shuddhi Karma, role of Panchakarma in preconception and infertility. So we all know from where we learn Ayurveda, man is a miniature of nature. We all learn Ayurveda from nature. All the 5 elements that are present in the nature are also present in human body, and vice versa also. Pindi to Brahmandi, Shiva and Shakti are the root causes of the formation of nature. Similarly, male and female body are extremely important for the formation of the fetus. Rather, to be more precise, Shukra and Artava are the very important factors for formation of healthy fetus. In Maharashtra, there was one great Santa, Santa Tukaram. He said in one of his poem that Shuddha Bija Poti Phale Rasala Gomati. That is, when the seed is pure and healthy, the fruits will be healthy, sweet, and with good luster also. So, what a clever farmer do? He selects a good healthy seed, soak it for 3 days in cow urine, then embed it in mud, and then he is doing Bija Samskar. My dear friends, please keep in mind that fruits that are healthy, not decayed, are bound to remain on the tree until it completely ripens. On the contrary, the fruits that are not healthy, decayed, will fall from the tree. How we can understand? Here, we can understand the habitual abortion cases, because one of the major cause of this habitual abortion is Bija Dushti. So, while treating the infertility cases of habitual abortion, Vaidya can plan for proper Panchakarma of both the partners. Similarly, when a couple approaches to Ayurveda for preconception, as a clever Vaidya, we all should focus on the formation of healthy Artava and Shukra. Here, you can see a healthy fruit. Here, you can see a healthy fruit formed by a healthy seed. After passing Yathochit Kal is very important. Time factor is very important. In our 30 years practice, not a single baby was having any congenital deformity, no need of using any external hormones,
having good resistance, good intelligent quotient, and good emotional quotient also. So when a couple approach to our clinic, we have to take the detailed case taking according to Ayurveda, Ashtavidha Parikshan, Udara Pariksha, Anshansha Kalpana, Dosha Dushya Samurchana. If any previous major illnesses are there, then history of the hormonal treatments taken previously, any hereditary diseases, and then Vaidya can decide about the proper treatment. You all are aware of the shlok Charaka Chikitsa Adhyay 30 and shlok number 8, that Mithyacharena taha strinam pradushtaina artavena cha jayante bija doshacha daivacha shrutaha pitha. Mithyachar, which includes mithya ahar and mithya vihar, will lead to pradushta artav, and we can extend this sutra to the male body also, and for the formation of the shukra. So mithya ahar and mithya vihar, we are what we eat. Many times patient asks, why me? It is not you, it is your Agni. You can easily observe two family members in the same family eating the same food. One is obese and the other one is thin. It is not you, so we have to consider that it is not you, it is your Agni, and that is your digestive capacity and the choice of food and your constitution. So you are, if you choose pizza and burger, you will be like that, and if you choose healthy food, you will be like this thin, like our glass figure. Then, so while treating any patient, maybe specialized practice of preconception or infertility, you have to focus on the importance of Agni. Remember, without Tej primordial element, any type of conversion is not at all possible. When one's Agni is good, you can digest the food easily. So we are Kaya Chikitsak. We are actually correcting the Agni of our patients. So the major important factor we have seen that if you are choosing the pizza, burger, like Ati Guru, Ati Snigdha food, Kapha Vruddhikar Ahar, then Pani Puri, Pav Bhaji, chaat items, misal that are actually Rakta Dushtikar Ahar will lead to Jatragni Mandya. Jatragni Mandya will lead to Ama Nirmiti. Due to Jatragni Mandya, more and more Ama will be produced. That will produce Srotorodha, and you all know that due to Srotorodha, Vata Vruddhi will be there. So स्त्रियों में आमल की निर्मिति ज्यादा होती ही है, क्योंकि वो चॉइस से ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा खट्टा मीठा ऐसा ही खाना चूज करती है. Then while teaching, in one of the patient from California asked me that we are what we eat. Madam, if we are eating seedless foods, how the seeds will be produced in our body? And up to some extent, she was right, because Poshana of our seeds, follicles or shukra is done by the food, which actually food we are taking, and by the process of the Agni. So one should focus on the food that is more and more organic, natural food, A2 milk, and non-genetically modified food. So it is very, very important to choose while counseling about the diet, one should focus. You all should focus on these things. Then Ahitakara Asatmya Ahar, then fruit salad, milkshake like Viruddha Ahar, and Vishamasan, buffet is classical example of Vishamasan. Everybody is standing and eating the food. It is not mentioned in Granthas. It is yes, it is easy to serve, but it is not mentioned in Granthas. This Jatragni Mandya will lead to Dhatvagni Mandya. And this Dhatva, due to this Dhatvagni, when Dhatvagni Mandya is there, Mala Bhag will be produced more than the Sara Bhag. So you all know that Rasa Mala Kapha, Rakta Mala Pitta. Then Mala Bhaga of Rasa is Kapha, that will be increased, and Pitta, Mala Bhaga Pitta will increase. You all know that there are different type of diet fads. There are for the reduction of the weight. That when the obese patient come to their clinic, that's always say that you should reduce the weight first, then you can conceive. Then they follow all types of the diets suggested by them. There are different kind of nutritionists.
dietitians. Then there is keto diet. Only all kinds of dugdha vikruti, cheese, paneer, and all these dugdha vikruti will lead to Jatragni manja only, and it will not produce the healthy. It actually causes the hormonal imbalances. Then low carb diet, Dikshit diet, Divekar diet, and whatnot. So many things. So Vaidya has to consider many factors while suggesting the proper diet and regimen to the patient. Like Dushyam, Desham, Balam, Kalam, Andalam, Prakutim, Vaya. You all know better than me. So, while from Ahara Rasa, after the action of Rasa Dhatu Agni, here you can see in the slide, Rasa Dhatu is formed. And in female body, while Parinamal of Rakta Dhatu from Rasa Dhatu, Raja and Stanya are formed as a Upadhatu. You can see Raja and Stanya. Then, if Rasa Dhatu Agni Manja is there, Rasa Malak Kapha will produce more. Rakta Dhatu Agni Manja is there, Rakta Malak Pitta will be produced more. Raja is Adhogami and Sanya is Urdhvagami. Here we can correlate these patients. तो सीरम प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा बढ़ गया है तो रजा कम होता है, हाँ? तो स्कैंटी मेंसेस हो जाते हैं. हर टाइम होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन रजो का दुष्टि का लक्षण ये हम कंसिडर कर सकते हैं. One infertile case, just successful. One infertile, she was having scanty menses and repeated breast abscesses she was developing. यहाँ पे मैंने इसका अर्थ चिकित्सा का जो थॉट प्रोसेस बिहाइंड द चिकित्सा वाज रज का अध प्रवर्तन न होते हुए उसका ऊर्ध्वगमन हो गया था. नाउ शी इज हैविंग अ बेबी गर्ल. तो आहार रस से ही शुक्र धातु का पोषण होता है. सो वन हैज टू फोकस ऑन द डाइट and it is very, very important. After that, there are many factors you all not knowing that ahara dosha, vihara dosha. Vihara dosha, lifestyle disorders. Due to this corona situation, lockdown, work from home, everybody's lifestyle is very, very, very disturbed. So one has to correct the lifestyle. Then no exercise. Many or no proper exercise. Not only to burn, exercise should not be done only to burn the calories, this much of calories. No, it is not like that. The Vyayam should be Ardha Shakti. Excessive stress. Yes, due to this corona situation, everybody is having stress. Then you have to counsel the patient. We cannot change our circumstances. We can only change ourselves. So, and you will be astonished to know that due to this stress, excessive stress, it directly affects on the male body, that is sperm count. In woman body, stress, manasobhidha, I have spoken about this in last videos many times. Chintyanam chati chintanat is the major cause of rasava stroto dushti. So all the, and from rasa se hi raja aur sanya ka as a byproduct ye nirman hote hain. So it affects on Artha also and Shukra also. So we have to manage this stress as described by Dr. Vinita, that Shirodhara, Dr. Shweta, she told that Yoga Nidra, you have to focus on different kind of meditation, pranayam, we control the stress in order to control the stress. Then in males, I found that different kind of addictions also gave great result on sperm count and quality of the sperm. One of the patient I met in last 1 year only, he was, in order to build his muscles, he was doing exercise, more and more exercise. He was lifting weight up to 150 kg and drinking the protein shake. As a result, he developed gynecomastia. So you all know the shloka that Shukravahe dve tayor mulam vrushanam stanaucham. तो वृषण को जो पोषण जाना चाहिए था वो स्तन को जाने लगा, तो शुक्र का पोषण कम होने लगा और उसका सीमेन एनालिसिस में डिस्टर्ब था ही. तो नो प्रॉपर स्लीप. नाउ यू आर nowadays Netflix is having the competition with the sleep, and due to corona, work from home, everybody is watching the screen. Screen time is increasing day by day. Then late marriages in case of women and men also. This is also a major factor. Not taking rest during the menses and excessive use of hormones. These are the vihara doshas. There are particular things that are described in granthas, that there is special regimen for the woman
because woman is Vranita when she is having menses. Then what she should eat? Light, easy to digest food, veg cooked food. She should take total rest, maintain peace of body and mind, and listen and watch pleasant stories and songs instead of horror movies. She should not do. On the contrary, what happens in her life that she eats a lot. She orders pizza, burger, and she like to eat all these things. Then in foreign countries, increase in serotonin level. They use the hot chocolate, black, dark chocolates or Cadbury's, non-veg, cheesy foods, salads. Then as shown on TV ads, nobody like to take rest at this time. Then as shown in TV ads, women should avoid, it should not be done. She should avoid dancing, then trekking, cycling, hiking, and all yogas, sports activities, then mental strenuous works, daytime sleeping and late night sleeping, intercourse also, traveling and long sitting in air conditions. Then here, in each and pressure, while deciding about the Panchakarma, role of Vaidya is very, very important. In and each every patient, you should not perform the Panchakarma. It is not at all necessary. It is described in Charak Sutra Sthan, Adhyay 16, Shlok 16, Bahudoshasya lingani tasmai samshodhanam hitam urdhvam cha anulomam cha yatha dosham yatha balam yatha dosham yatha balam. Only if Bahudoshasya lingani is present, Vaidya can perform appropriate Shodhana Karma by considering the dosha, bala, avastha, sthana, and many more other factors. Yatha dosham, for you all know, Vikruta Kapha Vruddhi, woman, Vikruta Pitta Vruddhi, Virechan, and Vikruta Vata Vruddhi, Basti. Yesterday, I met one enthusiastic unmarried Vaidya. She approached to our clinic. She was just 35 years old. And she had done woman, Virechan, Basti, Raktamokshan, all types of Shodhan Karma for her PCOD, irregular menses. And as a result, due to this repeated Shodhana Karma, she has developed a Vardhakya Janita Avastha. Her AMH was less than 0.01 and every month it was reducing. And this is the Vyapada of repeated Shodhana Karma. Mule Anupahate. If it is done properly by an intelligent Vaidya, it is also described in Grantha. When Vaidya perform proper Panchakarma with all Samyak Siddhi Lakshan, then vitiated doshas are removed from the body forever. So, in practice of infertility, we can understand this, experience this problem. This problem, once solved, it is solved forever. When patient goes home after infertility successful case, I have to tell them that, oh, be aware that you can conceive again. And it happens in clinic very usually. So once the mule anupahate, from the root cause, we are detoxifying all the doshas. So the problem is solved forever. Then you can see the MSs in Shodhan Karma. The major Shodhan Karma is Vamana and Virechan. Considering the age and all the things I have told you just now, then if it is in the dosha are some utkleshita in Amashaya, then you can, and if Vasanta Rutu is there, you can advise Vamana, Santarpanjanya Avarodhatmak. According to Ayurveda Gynec, I used all these things in Santarpanjanya Avarodhatmak Samprapti, PCOD with Stulata, Shwasa, Kasa, Navajvara, Adhoga Rakta Pitta, that is heavy menses. One of the patient who was doctor, she was suffering from excessive dysfunctional uterine bleeding, and all the Avarodhatmak Samprapti was there. Then after proper Vamana, her Adhoga Rakta Pitta, because it was not dysfunctional uterine bleeding, it was Adhoga Rakta Pitta. So after giving Urdhvagaman to yes Adho Pravruta Dosha, that she was conceived and gave rise to birth to a healthy boy. So it is very important. Role of Vaidya is very important. Then Virechan, it is purgation. Pachyamanashaya में पित्त दोष है, उत्कृष्ट है, तो विरेचन सजेस्ट कर सकते हैं. In order to correct the increased pitta, ushnata, heat or rakta dushti, we can suggest proper virechan and we can get the results also. Then Basti, you all know that Anuvasan and Niruha Basti are there. Anuvasan,
Matra Basti or medicated oil enemas and Niroha Basti, it is all described in Granthas. You all know that Nahi Vata Drute Yonu. So many times only Basti can, Yoga Basti, it may be Yoga Basti, Madhutailik Basti, Vaitaran Basti, or alternate Matra Niroha Basti, only Matra Basti can cure many infertile cases. So these are the major role of Shodhana Karma. Some Upakarma are also important because in my practice, I am using Uttar Basti a lot. So we can focus some of the Uttar Basti. So Uttar Basti is very effective tool given by Ayurveda. It is actually a God's gift. Tubal blockage, tubercular salpingitis, then PCOD, but patient should be married. Blight and ovum, we can consider this as a bija doshti, endometriosis up to 1 or 4th grade, excessive thin or thick endometrium, pinpoint os, endometrial cyst, uterine fibroid, pelvic infectious disease, habitual abortion, starch test positive, and follicle size not increasing. So it is contraindicated in virgins, VDRL positive cases, uterine prolapse, and suspected pregnancies. Then Upakarma like Shirodhara is also extremely important. Dr. Vinita explained it for the hormonal imbalances, hypothalamus axis, pituitary gland, reducing the stress. We have seen that stress is playing a very important factor in formation of his Artava and Shukra. Now, here for the preconception, we can see one case. One couple approached to our clinic for planning a healthy baby for preconception. Then she was 35 years old, having stulata, strong hereditary history of diabetes mellitus, thyroid, and hypertension. In childhood, she was suffering from asthma, shwasa, and for that she had taken woman from our clinic only. After that woman, she was taking only Ayurvedic medicines if needed. In fact, after seeing her results, all her body, all her family get attached to our clinic, and they are taking treatment from our clinic from up till now. So while planning for a healthy baby, I performed Vamana, Uttar Basti, and Shirodhara. And her husband is 37 years old, as a renowned doctor working in emergencies. He cannot take lunch and dinner in time due to his profession. Many sleepless nights to attend the emergencies. He was suffering from severe Amla Pitta, and so we planned his Vaman and Shirodhara to control his stress also. As a result, she gave birth to a healthy baby to 4.2 kg on 20th July 2021. And in this, all this pregnancy was very smooth. This doctor, her husband was doctor, and his friends were asking that, oh, how is it possible that you are not getting any nausea, vomiting, no fever, no infections, no morning sickness, and no edema on your feet also? How is it possible? What kind of medicines you are taking? And this is not me, it is the beauty of Ayurveda, you can say. And here we can see the one infertility case. She was a case of habitual abortion, and every time, 3 times, it was a missed abortion. And I told that you have to, when there are habitual abortion, we have to focus on the bija. So to give bija, her bija should be done more and more. It should be prepared in a good manner. So I focused on her, and everything was avarodhatmak, srotorodhatmak samprapti. She was suffering from allergic rhinitis, and very heat was there in her body. So I advised her Vamana and Uttar Basti to increase the endometrium receptivity. And in 1 month, within 1 month only, she gave birth rise to this beautiful girl. And now she is pregnant for the second time. So this is all, and this is one. So I told you the problem once solved, it is solved for A1.
So this is the beauty of Ayurveda. See, these are some successful cases treated in our clinic. So thank you, Dr. Ayush Darpan team, all the viewers, for the patient listening. And if you are having any questions, you can ask. And if you are having any questions, you can contact me personally on this WhatsApp number or mail. Thank you. Thanks, ma'am. Really, it was nice. Within time. Will you stop sharing, ma'am? Yes, ma'am. So we will have some questions. Yeah. Yes, Dr. Shweta. Yes, ma'am. Yes, please try now. Yes, yes, ma'am. Thank you, ma'am, for the wonderful session. मैम सिर्फ एक बहुत ही बेसिक चीज पूछनी थी, जब हम पेशेंट को काउंसिल कर रहे होते हैं फॉर शोधन कर्म, स्पेशली फॉर वमन, जैसे ये अर्बन सिटी, मतलब मैं तो मुंबई में हूँ, तो मैम उनको बोलना पड़ता है कि आपको एटलीस्ट 2-3 दिन आपको घर पे रहना पड़ेगा या रेस्ट लेना पड़ेगा पोस्ट वमन। तो मैम कितना हमको मिनिमम उनको काउंसिल करना चाहिए कि आपको ना वर्क से छुट्टी लेके ये करना पड़ेगा? एंड मतलब आहार तो हम समझते हैं संसर्जन कर्म में, पर विहार उनको क्या एडवाइस करना चाहिए उस पीरियड में? मैं क्लिनिक में क्या करती हूँ आपको बता देती हूँ। सैटरडे संडे तो उनको छुट्टी होती है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स वर्किंग वुमन। सो इफ वी आर एडवाइजिंग वुमन टू मेल और फीमेल, फ्राइडे नाइट को उनको स्नेहन स्वेदन करना, सैटरडे मॉर्निंग उनको वुमन कर देना। मैं वो जो विश्राम काल होता है वो नहीं करती, पुणे में वो बाय ट्रेडिशन हम नहीं करते, विश्राम काल नहीं देते। तो स्नेहन स्वेदन करना फ्राइडे नाइट को, सैटरडे अर्ली मॉर्निंग उनका वमन कर देने का, सैटरडे पूरा दिन उनका संसर्जन क्रम का जो सिर्फ पानी और जो रात को पेज राइस वाटर बोलते हैं वो देना है। तो उसके बाद संडे तो फुल रेस्ट होता है। सोमवार को भी उनको एक रजा लेना, लीव लेने के लिए बोलने का, और उसके बाद फ्रॉम मंडे दे कैन वर्क फ्रॉम होम और दे कैन गो टू वर्क, सो वी कैन एडजस्ट। यस मैम, थैंक यू। क्योंकि पेशेंट्स में व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि वो घर पे रहते हुए भी दे वांट टू वर्क और समथिंग, तो उनको बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट बोलना पड़ता है कि आपको, तो वहां पे ही थोड़ा हिच आता है वमन के लिए, यानी वहां पे वो थोड़ा तो ये ऐसा कर सकते हैं आप, तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। यस मैम, थैंक यू। Yeah, ma'am, it's really hectic in metro cities as both are working females. And also one nice question is there, that kindly explain the relevance of manas gunas management as preventive aspect in the females as the most important component. तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में इसको हमें सोचना चाहिए। मैडम प्लीज पार्डन मी क्वेश्चन। Yeah. Relevance of manas gunas management as a preventive aspect in females as the most important component, मतलब मानसिक कैसे हम फीमेल्स में उस गुणों का relevance क्या है, जो चरकाचार्य ने बताया है मनसोभितापात। तो मनसोभितापात का जो पूरा जो प्रॉब्लम है, क्या होता है, आवर सोसाइटी बिलीव्स द वुमन दैट शी इज अ फर्टाइल मशीन। उसको शादी को 1 साल या 2 साल हुए नहीं कि अगर बच्चा कब देने वाली है, गुड न्यूज कब सुनाने वाली है, ऐसा उसका प्रेशर आता ही है। एज अ वुमन वी शुड फील हर प्रेशर एंड वी शुड सपोर्ट हर इन ऑल हर द जर्नी। सो व्हेन दे स्पीक ओपनली टू हर अस एज अ फीमेल, understanding her problems, we can counsel her accordingly. And in order to, so I said that we cannot control all the other factors, we can control ourselves. So yoga nidra we can suggest meditation, pranayam, and the counseling factor is very, very important in all these cases, because they are also anxious, they are also feeling guilty, and these manasa bhav are very closely related to hormones. When the patient of infertility, repeated IVF cases come to our clinic, they are actually lost. They are feeling guilty, or each and every patient cries in front of me because
it is the pressure and she is expressing her pressure. So we have to focus on hormones, counsel her, then advise her Shirodhara, then Nasya, all this holistic approach, and advise her some Surya Namaskar, sun salutations for controlling all these hormones. And there are many hormones are working in actually woman body. So she will not react to the same situation. She will react differently. Sometimes it will be irritated. She will feel some perimenstrual factors. Sometimes there are different kind of hormone is working. Postmenopausal depression, postpartum depression is there. So all these are very closely related to hormones. And when we are actually bombarding her body with the hormones, if we are introducing any intrauterine device like Copper-T or Mirena, then it is actually making the hormonal imbalances in her body. And hormones are working by feedback mechanism. And all this feedback mechanism is controlled by the pituitary gland, as explained by Dr. Vinita. So this is the duty, because after giving Shirodhara or Nasya or all these things to counsel her, and all the hormones when come in balance stage, she feels that, oh, now it is okay that I will conceive and I can carry all the things to the last. I think it is the question. Yeah, ma'am. Yeah. Very nicely explained. Just we will deal with one case that doctor is asking about some case, left ovary and having the sides right ovary. I will read in detail. Just a minute. A married couple, grade 1 obese, if the female is an hypothyroidism and the TV/US scanning shows right ovary 20 and left ovary 23 follicles. Doctor advised for laparoscopy, ovarian drilling diagnostic procedure. So what should advise to do in this case for as a pregnancy in Ayurvedic infertility treatment? And monthly cycle is normal. तो मंथली साइकिल इज नॉर्मल एडवाइस किया है डॉक्टर ने, एलोपैथी डॉक्टर्स ने कुछ ड्रिलिंग वगैरह, बट हम कैसे इसको डील करें? बिफोर ओवेरियन ड्रिलिंग यू कैन वर्क, बिकॉज आफ्टर ओवेरियन ड्रिलिंग there are chances of conception in only 1 or 2 months, because after drilling the adhesions occur more firm and you cannot remove that adhesions after drilling. So before शस्त्र लगा तो हमारे दृष्टि से वो साध्य नहीं होते, तो कष्ट साध्य हो जाते हैं. तो यहाँ पे तो हाइपोथायरॉइडिज्म है तो आप उसको वमन दे सकते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म है तो विरेचन दे सकते हैं और वो कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन you have to take all the Ayurvedic case taking history, considering all these things, and then you can conclude. And she is obese also, so you have to ask her to control her weight. Otherwise, you can do different kind of panchakarma like basti, then udvartan, and then advise woman, and then go further. So in this case, woman will be more beneficial. Yeah, ma'am. Thanks a lot, ma'am. Just a last question of this session, Dr. Meenal, please. Dr. Meenal, yes, yes, मैम ये जानना चाहती थी कि जो विरेचन के लिए अगर पीसीओडी का पेशेंट है तो कुछ स्पेसिफिक ड्रग हो सकते हैं विरेचन और बस्ती के लिए, तो हम पीसीओडी के पेशेंट के लिए जब विरेचन दे तो स्पेसिफिक उसी ड्रग से दें, या फिर बस्ती जो हम दे पीसीओडी पेशेंट में अनुवासनल नीरू, तो उसमें कोई स्पेसिफिक बस्तियां हमें पीसीओडी के पेशेंट के लिए जरूरी है? हाँ, तो बस्ती जो है तो अनुवासन बस्ती जो मात्रा बस्ती है तो आप तय कर सकती है कौन से प्रकार की है. मार्गावरोधजन्य है तो सहचर तेल और एरंडा मूलादि का अल्टरनेट दे सकते हैं, नहीं तो दशमूलक वात का भी आप दे सकते हैं निरूह, और नारायण तेल का अल्टरनेट के लिए यूज कर सकते हैं. समटाइम्स मात्रा बस्ती ऑफ महानारायण तेल इन लो AMH यू कैन यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड. लो AMH महानारायण तेल का 21 डेज के लिए मात्रा बस्ती 60 ml का आफ्टर भोजन आप दे सकते हैं. वमन के लिए मदन यष्टि वात हम देते हैं, चाटन देते हैं मदन वचा यष्टि का मधु के साथ, और उसके बाद वमन आकंठपान यष्टिक वात का करते हैं, दुग्धपान का करते हैं. इक्षुरस का बोला है लेकिन मैं ज्यादा एडवाइस नहीं करती क्योंकि वो गर्म करना पड़ता है, तो मैं ज्यादा नहीं करती इक्षुरस का. और विरेचन के लिए पेशेंट के प्रकृति के हिसाब से उसका कोष्ठ कैसा है इसके हिसाब से ही हमें तय करना पड़ता है. समटाइम्स आरगवत से देना चाहिए, आरगवत कपिलावटी का देना चाहिए, अभयादि मोदक का देना चाहिए, इवन इच्छा भेदी का भी देना चाहिए. लेकिन इट इज वैद्य
who should decide which kind of shodhana we have to perform according to Utkleshita dosha. So, and Prakruti, if she is of 60 years, we cannot advise her for woman and virechan. We should advise only for the basti. If she is 40 and she wants second conception or anything, primary infertility, we should advise woman or virechan according to Prakruti, because considering her age, her shodhan should not be more. It should not increase vata in her body, because always nahi vata drute yoni. तो योनि में वात रोग का कारण ही है, जब इनफर्टिलिटी की केस है तो वहां पे वात रोग है ही, तो ज्यादा बढ़ाने का नहीं। तो देखना चाहिए, संतर्पण जन्य संप्राप्ति है तो मेजर शोधन लाइक वमन और विरेचन कर सकते हैं। बताया है, सो थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ने भी वही सेम क्वेश्चन पूछा, आई थिंक उनका आंसर मिल गया है आपको। सो इन स्पाइट ऑफ योर बिजी शेड्यूल आपने टाइम दिया, क्योंकि आज आपकी अलग अलग जगह पे ओपीडी होती है। सो थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली ग्रेट, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट द इनपुट्स अबाउट द पंचकर्मा, लाइक importance of the panchakarma. हम बहुत बार like pichu, dhawan and all things we perform regularly, but woman very nice work. You are doing very nice and noble work, madam. Yeah, you are giving confidence to many Vaidyas. Yeah, definitely, ma'am. Thank you very much, and we will look forward for another one session in the further upcoming months. Yeah, as per your convenience. Sure. No so problem. thank you very much all. I think परीक्षाकारिणो ही कुशलो भवन्ति, और निश्चित रूप से हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। सो बिल्कुल, तो इसी के साथ अगले हम इसके तरफ बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक के तरफ। हमने आज देख लिया किस प्रकार से अलग अलग जो पंचकर्मा है या लोकल एप्लीकेशन है, स्थानिक चिकित्सा, इसमें हमने अभी आगे चलते हैं हम लोग एक अलग ही विषय के साथ। पंचकर्मा हमेशा करते रहते, बट क्षार एंड अग्निकर्मा। So now I welcome Dr. Anjali Verma to speak about the Kshara and Agni Karma, and now I call upon Dr. Vandana Pathak madam to introduce Dr. Anjali ma'am. Yes, Dr. Thank you so much शिल्पा मैम, and जो लास्ट स्पीकर थी हमारी कुलकर्णी मैम, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे उन्होंने सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिए हैं अलग अलग टाइम पर, और बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। सो आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर अंजलि वर्मा। शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ स्त्री प्रसूति Rishikul, Government Ayurvedic College, Haridwar, and she is PG from IPGT and RA Jamnagar. She is undergraduate from Bundelkhand Rajkiya Ayurvedic College, Jhansi. She has delivered lectures as guest speaker on various platforms. She has been resource person in various institutions, and she has more than 15 articles in national and international journals, and she has published season 2 publication of 2 books. And her experience is around 7 years in the academic and clinical field of gynecology. And the first and the most important thing is that she is product of Bundelkhand Rajkiya Ayurvedic College, and I am also the product of Rajkiya Ayurvedic College. So she is my super junior, and I welcome and honored that I am introducing here today. So over to you, Anjali Verma ma'am. Please do deliver your lecture. Ma'am, screen the host disable the participant screen sharing. No, you can share, ma'am. You can. You are co-host. You can share. तो मेरा तीर निशाने पर लगा है वंदना मैम। Actually, screen share just हो क्यों नहीं रहा है? Yeah. Actually, I am started. The screen is sharing now. Try now. Yeah. ग्रीन आइकन है, उसको दबा के उसके बाद आप अपना स्क्रीन शेयर करो। Actually, I pressed it, but one participant can share multiple participants. Okay. डॉक्टर कुलकर्णी मैम, आपने स्टॉप किया है ना शेयरिंग? Yes, so you can try मैम once again. वो होस्ट बना दीजिए मैडम उनको। किया है सर, किया है co-host है मैडम। I press the green button, but हाँ now उसको दोबारा क्लिक करिए आप। जी सर, हो गया जाएगा। हाँ, आ गया। I think it is visible properly, and am I audible? Yes, yeah. Okay. Yes, ma'am. Thank you very much.
first of all, I would like to extend my warm thanks to the whole team of Ayush Foundation, Ayush Karpan Foundation, especially to Dr. Shilpa ma'am and Naveen Joshi sir for inviting me. And now I am moving towards my presentation as the role of Agnikam and Shakam in history and history roga. मैम कुछ लोगों को म्यूट करा दीजिए मैम। किया है सर, सभी को किया है, अभी किया है क्या? मैम कंटिन्यू प्लीज। मैम here is a issue that स्क्रीन स्क्रॉल क्यों नहीं हो रही है? ये कीजिए मैम, उसको जाती है आगे आगे थोड़ा। हाँ यस, या इट्स गोइंग। First of all, I would like to leave a thought in the mind of my audience that the new advancement which we seen today in the modern medical science, are they invented or they reinvented? What we seen the practiced Ayurveda nowadays, it is not just limited up to it. It was more glorified in the ancient period, which we seen today is now. So for answer this question, are the new advancement in the modern medical science are invented or reinvented? For answering this question, I will moving forward towards my presentation in the context of Agnikarma and Sharkan role in Stree Roga. The layout plan will be according to the introduction of both the Sharkarma and Agnikarma, then the work principle on which principle the both karma are working, then the indications in Stree Roga, then their method of application, then their mode of action in various Stree Rogas. So the first one is the Agnikam. Here I introduce the Agnikam in the context of Ayurveda as well as in the modern medicine science. So in the Ayurveda, Agni and Agnikam are two familiar terms which we heard, and the two different kinds of Agni are mentioned in Ayurveda. As a first one is the Agni and the another one is the Agnikarma. Here the Acharya Charak, who was expertised in the field of Kaya Chikitsa, he talked about the role of Agni inside the body, which works on the various levels through the digestion and through the conversion of dead food, and then the conversion of the tissues at the level of Jataragni, Dhatagni and Bhutagni. While Acharya Shushruta described the things which he seen, जो उन्होंने प्रत्यक्ष देखा उसको बोला, and he was the expertise in the Shalya Tantra. That's why he explained the karma of Loka Agni, which is a physical appearance, what we seen in outward, the Agni, that Agni therapeutic use on the body for various anatomical and physiological action. So the Acharya Shushruta accept the Agnikam as the parasurgical procedure and can be quoted as the thermal microcauterization technique. Here the Agnikam and its specific retention and transmission capacity, according to that, the tools of Agnikam are defined by Acharya Shushruta. The various type of Agnikam tools are defined according to the need of pathology as Pikpali, Ajashakra, Godanta, Shar, Shalaka. These all having low retention capacity, low heat retention capacity and transmission capacity. That's why they are using in the superficial layer, that is the most superficial layer, that is the skin. Then on the second level, that is the muscular level, they use the shalakas made of the metals. The Jambavos Shalaka and the Loho metals, they use for deeper tissue penetration so that the heat transfer easily towards these deeper tissues like the muscular organs, like the muscles. And on more deeper, they use the Sneha Dravya. The Sneha Dravya have the longer retention capacity, heat retention capacity.
कैपेसिटी, जो कि वो ठंडे भी देर में होते हैं और गर्म भी देर में होते हैं एज कम्पेयर टू द मेटल्स. मेटल्स आर द हैविंग द हाई कंडक्टिविटी टुवर्ड्स द हीट. तो इसलिए उन्होंने जो स्नेही द्रव्य हैं, दे आर यूजिंग फॉर most deeper tissues like the blood vessels, ligaments, joints and bones. Here I represent some of the recent studies which shows that how the thermal conductivity varies with the materials, as the metals having the high thermal conductivity as compared to the woody material. So we can say when we select the Agni Karma tools like the Shalaka, whether we have to use the Shalaka or have to use the Dagda Karmvarti. So keep in mind these thoughts that the thermal on the behalf of the thermal conductivity and heat retention capacity, the Shishuta explained various tools and what मतलब हमें कहाँ पे desired action चाहिए. According to that we have to select these tools for Agnika. The Isne has a deeper penetration and longer heat retention capacity. That's why they use Isne Dravya for deeper tissues, Agnikarma. Now, for the better understanding of the Ayurveda principle and for unlock the more future areas, तो उसके लिए हमें ज़्यादा better होगा कि if we understand that the concept of the Agni Karma and how the Agni works on the tissues, तो अगर उसको हम modern के concept से अगर हम समझते हैं तो बहुत अच्छे से हम उसको और बढ़ा सकते हैं, उनके फंक्शंस को और ज्यादा यूजफुल यूज में ला सकते हैं. तो here I represent how the energy moves. The heat is a kind of energy. तो ये एनर्जी के ट्रांसमिशन मोड्स आर 3 kinds of transmission modes of the heat energy. It is the convection, conduction and radiation. So which we use in the Agni Karma, we adopted the conduction and convection method only, while in the modern science they advanced with the technology, they collaborate with the technology. That's why they are able to use the radiation therapy also in the various types of pathologies. So we can say that the laser technique, radiations and are also a kind of we can say the digitalized Agni Karma. Now the work principle of Agni Karma. The work principle of Agni Karma is based on the thermodynamics principles. The first law is that when the energy movement is always from the higher temperature towards the lower temperature. So when we heated a shalaka and placed it over a cell, so the temperature of cell is lower than the shalaka. That's why the energy, the heat conduction occurs from the shalaka towards the cell in this manner. And this heat is not only responsible for the mechanical changes, it also causes the biochemical changes. And the modern therapies, they use the laser technique and radiation therapy. The radiation therapies in that therapies also they use the same principle. अभी यहाँ पे मैंने स्लाइड में ये रिप्रेजेंट किया है जो नॉर्मल सेल्स होती हैं और कैंसर सेल्स होती हैं. एक्चुअली इनमें क्या है कि कैंसर सेल्स हैविंग द कैपेसिटी टू absorb more heat, they can consume the more heat or the radiation or the any kind of energy. That's why they use the radiation and the cancer cell absorb it. And due to this heat, the DNA damage occur after a lapse of time and apoptosis of the tissues occur. In that manner, the rescue of the healthy cell occur from the cancer cells. So here the flow of energy from one cell to another is called as entropy. It is always to go from the higher side towards the lower side. So that phenomena is used in the therapeutics of modern medicine science, and we also adopted that method, but we only use the conduction and convection because of the lack of technology that we have now today. But the modern science also collaborate with the other disciplines. That's why they are able to be more advanced from us. Now here in this slide I show how the heat is responsible for various changes. For a short period of time, when tissue exposed to the heat energy, there is only a physical process occurs.
And after a lapse of time, here is a biochemical process occur in which after and the moreover time after more lapse of time, there is a biological process occur which we can say as a mutation and cell degradation occurs, due to which a longer period of exposure of heat, that kind of heat is responsible for the metaplastic atypical cells regeneration. So we can say that how the heat is responsible for the biochemical, biological changes and even the changes in the metaplasm also. And through this heat, through this low Agni, we can reverse the flow of entropy. रिवर्स द फ्लो ऑफ एंट्रोपी, जो कैंसर्स की या जो भी एटिपिकल सेल्स की ग्रोथ हो रही है वो जो हायर साइड से लोअर साइड की ओर हो रही है, अगर हम बाहर से उसको मोर एनर्जी दे देंगे तो वो अपने आप में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एंड दैट वे वी कैन रेस्क्यू द हेल्दी सेल्स. सो दीज आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज फॉर एज आवर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स. अगर हम कोलैबोरेट कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, देन वी कैन रीच इट, because the principle, the foundation, the pioneer of the today's modern medical science is based on the Ayurveda principle. I can say it. Here in this slide, I show how the movement inside the cells occur when the heat, when a tissue exposed from the heat. In the tissues, I previously told that convection and diffusion, the convection and the conduction occurs. But the cells, here the blood flows in a closed circuit. So for that purpose, हमें यहाँ पर जो जब हीट से एक्सपोजर होगा तो मैकेनिकल इंजरी होगी. आफ्टर दैट वो हीट जो है मॉलिक्यूल्स के जरिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दूसरे मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज होगी, और फिर क्योंकि हीट की वजह से सेल की परमेबिलिटी भी चेंज होती है, तो थ्रू द कन्वेक्शन जो मॉलिक्यूल से जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो थ्रू द कन्वेक्शन मेथड होगी. इन दिस वे द हीट इज रिस्पॉन्सिबल आल्सो फॉर द बायोकेमिकल चेंजेस एंड मेटाबॉलिक चेंजेस. सो इसीलिए जो आचार्य सुश्रुत ने डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स बताए हैं अग्निकर्म के, तो वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो थेरापेटिक हमें बेनिफिट्स मिलते हैं अग्निकर्म के इसके लिए. जैसे कि इन्होंने बताया कि रोगाणाम अपनर्भव, तो इट इज एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट. अग्निकर्म इज एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट, क्योंकि रोग वहां अपनर्भव होगा ही, बिकॉज इट कॉजेज द चेंजेस इन वेरियस लेवल, वेदर द मैकेनिकल, देन द बायोकेमिकल, एंड it also known for the Brunschodhan property. Why the Brunschodhan? अभी मैंने बताया कि it increase the capillary permeability, it increase the lymphatic drainage, it increase the metabolic rate. In that way, it clarify the microchannels. So the Shrota Shodhan microchannels भी हम कह सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, प्यूरिफाई एक वे मिल जाएगा जो भी दोष वहां पे एक्यूमुलेट है उनको फ्लो अप करने के लिए. इन दैट मैनर वहां से दोष शमन भी होता है, ब्लड रोपण, एंड ऑफ कोर्स जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, लिम्फेटिक ड्रेनेज इंक्रीज होगा, तो ऑफ कोर्स हेल्दी टिश्यू का रिजनरेशन इजीली हो पाएगा. छेदन एंड शिरा संकोच, these are the property of the cellular destruction. Here the cellular destruction is only limited to the therapeutic. हमें हेल्दी टिश्यूज को नहीं डिजनरेट करना होता है, only the unhealthy tissues have to be scrapped out. Then the शिरा संकोच, ये फीचर जो है स्पेशल है, क्योंकि इसमें क्या है कि टेम्परेचर वेरिएशन, जैसे अगर हम बहुत ज्यादा हीट एक लिमिटेड टेम्परेचर से ऊपर का जब देते हैं, देन अग्निकर्म जो है वो शिरा संकोच करता है. जैसे कि इसलिए सुश्रुत ने वहां संधान, स्कंदन, पाचन और दहन को भी एक टूल बताया ब्लड को रोकने के लिए, जहाँ पे भी एक्सेसिव हेमरेज है. तो इस फीचर को हम अडॉप्ट कर सकते हैं गायनी के वेरियस जो पैथोलॉजीज होते हैं उनमें. Here I talk about the temperature ranges varies with the mode of action of अग्निकर्म. जैसे कि जब हम एक नॉर्मल टेम्परेचर तक का, सॉरी नॉट द नॉर्मल, इट इज अबाउट द 100 डिग्री टेम्परेचर तक का देते हैं, देन उस समय क्या होता है, हीमोडायनेमिक, टिश्यू एक्सट्रीमिटी, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हमें मिलते हैं. बट जब हम
उससे हायर का टेम्परेचर देते हैं वहां पे, तो सडनली वहां पे सिरा संकोच होता है, ब्लड का कोगुलेशन होता है. इन दैट मैनर it is useful tool for controlling the bleeding. Then the Agnikam indications in Nistri Roga. Here I defined the various type of indications because of classical indications हमें कुछ मिलते हैं, but हम limited है अभी कुछ ही indications तक. And here a lot of future possibilities if we combine these principles with the today's technology. तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो किए हैं, जैसे इंडिकेशंस इसमें मिलते हैं कि यूनियार्श में हम दे सकते हैं. यूनियार्श में इंडिकेट किया है मांसपेशिया, these all kind of the overgrowth of tissues, and then the serous shear also, and the शोणित अति प्रवृत्ति. इस इंडिकेशन को अभी यूज में जितना मेरी नॉलेज में है नहीं लाया जाता, बट for that feature शोणित अति प्रवृत्ति we can use in the DOB, menorrhagia and various endometrial pathologies, and of course in the Brand Chikitsa the various kinds of wounds. And the practice indication जो use करते हैं, जितनी अभी recent researches हुई हैं जो भी अग्निकर्म पे, they are limited only up to the cervical cell pathologies or more some of the about the cervical polyps excision. Here I quoted some of the future possibilities as the endometrial pathologies, menorrhagia, GUB, and of course in the neoplasia. Now in this slide, I represent the role of Agni Karma in cervical cell pathologies, CIN1, CIN2. Here I want to give a short introduction about how the cervical cell pathologies occur. As the cervix are having ectocervical and endocervical zone. In the ectocervical zone, the columnar epithelium grows, and in the ectocervical region, squamous epithelium is born. The columnar epithelium is more prone towards the infection and inflammation. So when these columnar epithelium extroverted into the area or into the region of ectocervical region, it becomes more prone towards the infection and inflammation. In that manner, patient got various types of symptoms, and the pathology is known as the cervical atrophy. अब यहाँ पे मैंने अभी हीट के बारे में प्रीवियसली डिस्कस किया कि किस तरह से जो हीट है वो आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम वेरियस लेवल्स के चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अगर यहाँ एक बहुत लंबे समय से किसी को सर्विसाइटिस है या वेजाइनल डिस्चार्जेस है, तो उसमें होगा क्या कि धीरे धीरे वो चेंजेस जो है बायोकेमिकल चेंजेस की ओर बढ़ते हुए म्यूटेशन कॉज करेंगे, और इसी वजह से जो जहाँ पे जिन पेशेंट्स में सर्वाइकल पैथोलॉजीज या एक्ट्रोपियन मिलता है, उन्हीं पेशेंट्स में जनरली देखा जाता है कि दे आर द मोर प्रोन टुवर्ड्स द सर्वाइकल कैंसर्स आल्सो. तो इस तरह से एटिपिकल सेल्स की ग्रोथ भी इनहेंस हो जाती है प्रोलॉन्ग्ड सर्विसाइटिस की वजह से. अब इसमें अग्निकॉम किस तरह से रोल प्ले करता है और क्या मेथड है उसके एप्लीकेशन का, विल डिस्कस फ्रॉम हेयर. The Agnicom in the cervical cell pathologies can be applied through the 3 levels. The first one is the Purva Karma, then the Pradhan Karma, and then the Paschat Karma. In the Purva Karma, here I represent the instruments which are required for the Agni Karma procedure: the Cuscos speculum, the sponge holder, the Volsalum tenaculum, and all the instruments जैसे कि अभी previously जो हुए हैं, मैम ने कहा अभी यूनिप्रक्षालन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बताए, जितने भी सर्विक्स को प्रॉपरली एक्सपोज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है वो सभी इसमें रिक्वायर्ड रहेंगे. Then the specific instruments are the दग्धकर्मी शलाका. दग्धकर्मी शलाका हम ले रहे हैं या हम मेटेलिक शलाका को हमने चूज किया है डिपेंडिंग अपॉन द सर्वाइकल सेल पैथोलॉजी. हमें किस तरह की पैथोलॉजी, कितना डीपर टिश्यू पेनिट्रेशन हमें डिजाइड है, अकॉर्डिंग टू दैट नीड हम सिलेक्ट करेंगे. जैसे मैंने प्रीवियसली शेयर किया कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट होगा बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ वेरियस दग्धकर्म टूल्स. तो आफ्टर दैट ये शलाका, चाहे मेटेलिक शलाका ले आप, चाहे दग्धकर्म वर्ती ले जो हर्ब्स की बनी हो, डिपेंडिंग अपॉन द नीड. एंड देन
पेशेंट का पोजीशन, पेशेंट को ब्लैडर इम्पटी करके द लिथोटॉमी पोजीशन पेशेंट को बताते हैं। देन द proper cleaning of the vulva and internal aspects of thighs by the antiseptic solution, और हम इसके लिए हम पंचवल्कल क्वाथ या त्रिफला क्वाथ जो भी मेजर्स हैं उनको भी ले सकते हैं। Then the proper draping of the patient's vulval area, then cover the eyes of the patients, then जो कंसेंट्स के बारे में पिछले अभी शशि मैम ने, विनीता मैम ने बहुत इलेबोरेटली बताया उनका कि क्या इंपॉर्टेंस है, और ऑफ कोर्स ये सब अडॉप्ट करना चाहिए हर एक प्रोसीजर में। तो इसको मैं अभी ज्यादा नहीं इलेबोरेट करूंगी क्योंकि कुछ रिमेन नहीं रह जाता। प्रीवियसली बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है मैम लोगों ने। तो देन वी कम्स टुवर्ड्स द अग्निकर्म टूल्स फॉर स्त्री योगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कुछ मैंने दिए हैं। मेटेलिक शलाका किस तरह की होनी चाहिए, या दग्धकर्म वर्ती किन द्रव्यों की बनी होनी चाहिए। तो मेटेलिक शलाका हैविंग द टिप ऑफ एनी धातु, मीन्स स्वर्ण का हम पूरा शलाका तो नहीं बना सकते, बट उसका जो टिप है इट शुड बी मेड ऑफ द स्वर्ण, और जैसा धातु सिलेक्ट किया हो, जैसा डिजायर्ड एक्शन आपको चाहिए हो, क्योंकि इन सभी की भी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो अलग अलग है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सिलेक्ट इट। तो स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, पंचधातु, जिस तरह की शलाका चाहिए। देन ऑफ कोर्स द हैंडल शुड बी मेड ऑफ द हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, और द डायमेंशन ऑफ द शलाका शुड बी एटलीस्ट द 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वेजाइना की लेंथ ही 10 सेंटीमीटर होती है। तो प्रॉपरली अग्निकर्म हो उसके लिए ये शलाका इतनी होनी चाहिए। और अगर आप अगर स्पंज होल्डर से उसको होल्ड करते हैं या किसी और इंस्ट्रूमेंट से होल्ड कर रहे हैं, देन उसको वेरी कर सकते हैं, बट बेटर यही रहता है कि उतनी लंबी हो ताकि बिल्कुल हम उसको पॉइंटेडली पकड़ पाए। जिस तरह से एक पेन को हम पकड़ते हैं, उसका हैंडल हीट रेजिस्टेंट हो, तो उसकी जो हमारे होल्ड करते हैं, और वो जो उसे कहना चाहिए कि एडजुवेंट टिश्यूज में इंजरी ना हो, जहां डिजायर्ड एक्शन चाहिए, जहां दग्ध करना है वहीं पे दग्ध हो, तो प्रॉपर दग्ध कर्म के लिए बेटर रहता है ये। देन द शेप ऑफ द टिप ऑफ शलाका, इट शुड बी, जैसे सर्वाइकल एरिया है वो मांस धातु से कह सकते हैं कि वहां पे डोमिनेंस है, तो वहां के लिए जो रिकमेंडेड है इट इज द जाम्बा वोस्ट शलाका। जाम्बा वोस्ट अगर देखेंगे तो जाम्बा वोस्ट मुझे लगता है ऐसा कि जाम्बा का जो ओस्ट होता है उस तरह का होना चाहिए। तो इट शुड बी फ्लैट टिप होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एरिया भी ज्यादा है। अगर हम पॉइंटेड लेंगे तो वो डीपर टिश्यू पेनिट्रेशन करेगा, हमें वो फ्लैट लेना है एरिया और उससे करना है। या फिर अगर और सुपरफिशियल चाहिए तो त्वचा वाले के लिए, त्वक दग्ध के लिए आचार्यों ने बताया कि पिप्पली, अजाशक्र, तो उस शेप का, राउंड शेप का भी ले सकते हैं। देन द मेडिकेटेड दग्धकर्म वर्ती, द मेडिकेटेड दग्धकर्म वर्ती शुड बी मेड ऑफ द क्रमीहर, शोथहर, लेखनीय ड्रग्स, और जिन ड्रग्स की प्रॉपर्टी होती है जो कटु होती हैं, उष्ण तिक्तरस होती हैं, वो बेटर एक्शन देती हैं इस तरह की पैथोलॉजीज में। हेयर आई कोटेड सम ऑफ द ड्रग्स लाइक द त्रिफला, मरीच, कुष्ठ, तुबरक, निम्ब, हरिद्रा, करण, these all are the exemplary purpose. You can extend, there are many more options कि हम किस तरह का एक्शन हमें चाहिए उस तरह से हम दे सकते हैं। हाँ, मैं एक और बात कहूँगी यहाँ पे, जैसे कि गंधक है या कोई शार है, या मतलब इस तरह की जो ड्रग्स है ना, दे हैव मतलब उनको बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो ऑफ कोर्स वो जो दग्धकर्म बढ़ती है वो उसकी पोटेंसी थोड़ी और बढ़ जाती है, मतलब वो और तीक्ष्ण हो जाती है। तो इसके लिए जिस तरह की पैथोलॉजी अकॉर्डिंग टू दैट हम उसमें द्रव्य को अल्टरेट भी कर सकते हैं। इसमें जैसे मेरा एक वर्क है जिसमें कि चंद्रोदया वर्ती को यूज किया है, उसका भी मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि उसमें भी जो ड्रग्स हैं वो इसी तरह की प्रॉपर्टीज वाली हैं। तो देन वी कैन गो फॉर द मैनी मोर ऑप्शंस। और बाइंडिंग एजेंट के लिए वर्ती को बनाने के लिए हम गोमूत्र ले सकते हैं, आजा चीर ले सकते हैं, इवन गुड़ रिकमेंडेड है, आचार्यों ने किया है, वो ले सकते हैं। Then here the pradhan karma. In the pradhan karma, the first step is the after the हमने position patient को दे दिया, in the lithotomy position, aseptic पूरे measures हमने ले लिए। Then after the cuscose insertion inside the vagina for the proper visualization of the cervix. इसके लिए cuscose का proper approximation होना चाहिए और proper light source होना चाहिए, जिससे कि हमें एग्जैक्ट पता लगता है कि कहाँ पे हमें अग्निकर्म करना है।
देन हीट अप द मेटालिक शलाका और द दग्ध कर्मवर्ती ऑन द हीट सोर्स। आप जो सिलेक्ट करें, चाहे स्प्लिट लैम्प करें या कोई और हीट सोर्स लेते हैं, उससे उसको हीट अप करके इस मैनर में। देन द डायरेक्शन ऑफ द अग्नि कर्म शुड बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हमको यहाँ पर इसको एक ही डायरेक्शन में लेना है, रैंडमली कहीं पे भी एग्जैक्टली नहीं देना है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमें यहाँ पर किया, देन वी मूव टुवर्ड्स द अनदर एरिया, देन अनदर, इन दैट मैनर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अग्निकर्म करना है, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। तो व्हेन द सम्यक अग्निकर्म लक्षण अपीयर, जैसे कि कपोत व्रणता बताई गई, शिरा संकोच के लिए वहां पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है, तो जब ये लक्षण मिल जाते हैं, देन आफ्टर वी should be understood that the Agni Karma occur properly, and after the completion of the Agni Karma, the insertion of the Yoni Pichu made of the any Vran Ropak oil, हम इसमें कोई भी ले सकते हैं, उदुम्बर है, जात्यादि ऑयल है, और बहुत सारे ऑयल्स हैं जिनकी की व्रण रोपक प्रॉपर्टी हो, क्योंकि यहाँ पर जो पिचू का एक्शन होता है, जो दग्ध से हमने व्रण बनाया, जो सम्यक दग्ध व्रण है, उस व्रण को हील करने के लिए रखा जा रहा है। तो फॉर दैट पर्पस हमें जो भी मतलब अवेलेबल हो या कंफर्टेबल हो उसको यूज करेंगे। देन पेशेंट को एडवाइस देना चाहिए कि पिचू कितने टाइम के लिए रखना है और कब निकालना है। देन द ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी शुड बी 1 to 2 सिटिंग विद द इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 15 days। जनरली होता है कि 1 सिटिंग में ही पेशेंट को पूरी तरह रिलीफ मिल जाता है, बट अगर डीपर टिश्यूज इन्वॉल्व हैं पैथोलॉजी में, देन हमें सेकेंड सिटिंग की जरूरत पड़ती है। देन इट शुड बी आफ्टर द इंटरवल ऑफ 15 days। देन द फॉलो पीरियड ऑफ कोर्स ऑफ 1 month or more। Here I describe the mode of action of Agnikarma on cervical illness. The Agnikarma cause the mechanical changes by destroying the cells of columnar epithelium. Then the heat is also responsible for the biochemical changes inside the tissue, inside the cells also. So due to this, increase the regeneration of the epithelium in the active cervical area from the transformation। जो है ये सेल्स के अंदर भी क्या करता है कि जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो मूव करेगी, तो एक्सेलरेट द टिश्यू रिजनरेशन, वुंड हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज को इंक्रीज करता है। इन दैट मैनर ये जो अग्निकर्म है, इट प्रोवाइड द एब्सोल्यूट रिलीफ इन द केसेस ऑफ द सर्वाइकल सेल्स पैथोलॉजी। एंड द एडिटिव एक्शन ऑफ द दग्धकर्म वर्ती इज धूपन, कि अभी जैसे डॉक्टर अंजना मैम ने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से हम धूपन कर्म को वेरियस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो धूपन जो दग्ध कर्म वर्ती होती है, उसमें एक एडजुमेंट हमें बेनिफिट मिल जाता है कि धूपन कर्म भी साथ साथ हो जाता है। तो जो एसोसिएटेड सिम्पटम्स हैं जैसे कि विजाइनल डिस्चार्जेस, वो भी बड़ी जल्दी पैसिफाई होते हैं, तो इसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। देन द मेथड ऑफ द अग्निकर्म इन सर्वाइकल पॉलिप, उसमें भी सेम फिनोमिना अडॉप्ट किया जा रहा है, बट यहाँ पे क्योंकि इसको एक्सरसाइज ही करना है, तो पॉलिप को वेब से होल्ड करके देन इसको पेडेंकल को टर्न करेंगे, और उस पेडेंकल का जो स्टम्प होगा उससे ग्रेनुलेशन ना हो, उससे ब्लीडिंग ना हो ज्यादा, उसके लिए वहां पर दहन कर देते हैं ताकि कि चांसेस ग्रेनुलेशन के नील हो जाए। So in that manner, I conclude the Agnikarma process. Then now move towards the second procedure which I select for discussion is the Shar Karma in a gynecological practice. The Shar is said to be as the alkaline in nature. The substances which have the pH more than the 7 are said to be as the Shar. So Shar Karma is termed also as the caustic therapy or the alkaline therapy. In Ayurveda, the Shar Karma is an unique parasurgical procedure mentioned by Acharya Shushruta and adopted as Anushastra and Upayantra. The important key role of the Shar Karma is that it gives the Chedan, Bhedan and Lekhan Karma without the Shastra Karma. मतलब शस्त्र जहाँ पे भी ऐसा डिजायर्ड एक्शन हमें चाहिए, वहां पे जहाँ पे शस्त्र नहीं पहुंच सकता अगर, तो वहां पे शार अपने प्रॉपर्टीज से उसको
heal up कर सकता है. तो it is a more versatile and it is a milder form of procedure as compared to the thermal cautery. So it is more versatile and can be broadly used in different kinds of sterilobe. Now here the work principle of the Char. The Charcot works on the behalf of the pH balance and the buffer capacity. So alkaline, acidic and neutral. 3 forms हैं. हर सेल के हर पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल्स का जो pH है वो अपने अपने बफर सिस्टम को मेंटेन करके रखती है. अगर ये बफर सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो भी पैथोलॉजीज होती हैं. एक्चुअली जैसे मैंने पहले अग्निकर्म बताया, उसमें क्या हो रहा था कि एनर्जी का फ्लो था खाली, बट यहाँ उस एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, बायोकेमिकल जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट बायोकेमिकल चेंजेस, दैट केमिकल रिएक्शंस आर रिस्पांसिबल फॉर द पीएच चेंजेस. तो इसीलिए कैंसर की जो सेल्स होती हैं या जो भी ट्यूमर वाली सेल्स होती हैं, उनमें ये स्टडीज जो रिसेंट देखी गई कि जो कैंसर की सेल्स हैं, they create a microbiome of acidic medium to invade in a healthy tissues. वो अपने आसपास एसिडिक माइक्रोबायोम क्रिएट करती हैं ताकि कि वो हेल्दी टिश्यूज में इन्वेड कर सकें. वैसे नॉर्मल टिश्यूज हैड द एक्स्ट्रासेलुलर पीएच अबाउट द 7.22, रेंजेस बिटवीन द 7.22 और 7.4, while in the intercellular the same range 7 से 7.4 के बीच होते हैं. बट जो ट्यूमर सेल्स हैं, they have a more acidic pH in the extracellular spaces. तो इस तरह से ये एसिडिक पीएच होने की वजह से होता क्या है कि जो ड्रग्स हैं वो पहुंच नहीं पाती, इसलिए मल्टी ड्रग जो रेजिस्टेंस मिलता है, ये फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीएच का, कि उसकी वजह से ड्रग डिलीवरी ही नहीं हो पाएगी. एंड द अनदर फीचर ऑफ द अल्कलाइन एजेंट्स इज दैट दे हैव द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एजेंट्स. ड्यू टू दिस नेचर द सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ द लिपोप्रोटीन. तो इस नेचर की वजह से दे इजिली पेनिट्रेट द टिश्यू सेल मेम्ब्रेन, और ये अल्कलाइन एजेंट्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बाइंड्स को तोड़ते हैं, सपोनिफिकेशन करते हैं फैट का इन दैट मैनर जो हमारे यहाँ बताया गया, चिपवा आशियार. सो मे बी वी कैन कोट दैट टर्म एंड रिलेट विद दैट फीचर विच आर डिफाइंड थ्रू द मॉडर्न मेडिसिन, कि शार्क किस तरह से सेल्स के डिफरेंट टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिजनरेट करता है. Then the another thing, interesting thing about the SHAR is that कि कोई भी फंगी या एंटी जो माइक्रोब्स होते हैं, they cannot survive before above the pH of 8. और इस वजह से जो क्षार है वो बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल ड्रग हो सकता है, और बहुत सारे जो भी कहना चाहिए कि जो भी इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के, उनमें यूजफुल होता है. In this slide I defined how the tumor cells में क्या होता है कि वहाँ पे लो pH का माइक्रो इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी एंटी ट्यूमर रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सप्रेस होते हैं, और जो प्रो ट्यूमर जो प्रिकर्शर्स होते हैं वो स्टिमुलेट्स होते हैं लो pH में. तो इस वजह से जो रिसेंट स्टडीज हैं, दे होल्ड द pH ऑफ सेल और ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन, कि किस तरह से उसको बचाया जाए, ट्यूमर की ग्रोथ से किस तरह से बचाया जाए. तो ये एक अनदर एक मैं कहती हूँ एक हॉरिजन हो सकता है, एक एरिया हो सकता है आयुर्वेद रिसर्च का, और इस पे वर्क अगर हम विद द टेक्नोलॉजी करें तो वी कैन अनलॉक द मोर एंड मोर एरियाज. अभी in the Ayurveda text, the SHAR is defined upon the potency as well as on the behalf of the administration route. So according to the potency defined as the मृदु, मध्यम and तीक्ष्ण SHAR, उनका मेथड अलग अलग है बताने का, and the mode of administration के लिए प्रतिसारणीय है पानीय SHAR. तो जो प्रतिसारणीय SHAR है, we can understood it as the local application of the SHAR, and the पानीय SHAR is adopted as a systemic route, जो systemic approach लेता है, जो जिस तरह से SHAR वर्क कर रहा है, तो वो systemic approach उसको हम पानीय SHAR में कह सकते हैं. तो SHAR की जो प्रॉपर्टीज बताएं कि इसमें कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, पाचन, त्रिदोषक गुण होते हैं. तो
जो मैंने प्रीवियसली स्लाइड्स में बताया कि हाउ द पीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस चेंजेस, तो इस वे में हम कह सकते हैं कि इन सभी प्रॉपर्टीज की वजह से, इसीलिए आजकल इतना एक एजेंडा चला हुआ है कि एल्कलाइन फूड्स, एल्कलाइन बॉडी इज मोर हैविंग द मोर बेनिफिट्स एज कंपेयर टू द एसिडिक डाइट। तो कह सकते हैं हम कि क्षार की ये सारी प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स होती है कि कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, पाचन, तिदोषग्नता है, सौम्य है, लघु है, लेखन, शोधन, रोपण, क्रमिक प्रॉपर्टीज है, दहन करता है, विलयन करता है, धारण करता है, शोषण, स्तंभन, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम वेरियस जो पैथोलॉजीज हैं उनकी अगर हम संप्राप्ति बनाते हैं, तो जहां जैसा एक्शन डिजाइड होता है अकॉर्डिंग टू दैट मैनर हमें किस तरह का क्षार चाहिए, किस रूट से क्षार देना है, वो हम सिलेक्ट करते हैं। तो अब इसकी जो गायनेकोलॉजी में इंडिकेशंस हैं जो अभी प्रैक्टिस्ड में भी हैं, मैंने यहाँ वही डिस्कस किए हैं कि जैसे इसमें जेनाइटल वार्ड्स में सर्वाइकल इरोजन, सर्वाइकल पॉलिप, निपोथियन सिस्ट, क्रोनिक नॉन हीलिंग सर्वाइकल अल्सर्स जो हैं, दे हैविंग द इन सारी डिजीजेस में क्या होगा कि लेखनीय प्रॉपर्टी जो है वो डोमिनेंट होकर वर्क करती है कि यहाँ पर जो अनहेल्दी टिश्यूज आ गए हैं उनको रिमूव करना है। देन इन द वल्वोवेजिनाइटिस, वेजाइनल डिस्चार्जेस, यहाँ पे क्या होता है कि वही पीएच चेंज और जो एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं जो प्राणशोधन या रोपण की बताई गई, सॉरी दोषग्न की, तो वो हेल्पफुल है। इन द पीसीओएस ऑफ कोर्स जैसे कि वात कफज व्याधि है, तो उसमें हम इसको कटु, तीक्ष्ण, उष्ण गुण होते हैं, तो जो बिल्कुल इन दोषों के गुणों के अपोजिट है, इसलिए ये एक्शन देता है। इन द ट्यूबल ब्लॉकेज ऑल्सो थ्रू इट्स मैकेनिकल एक्शन, बायोकेमिकल एक्शन। इन द ओवेरियन सिस्ट में भी वहां पे हम सिस्टमिक क्षार का एप्लीकेशन ही देते हैं। Then the method of the application of the क्षार कर्म, it is also divided into the 3 parts, that is the पूर्व कर्म, प्रधान कर्म and पश्चात कर्म। For the पूर्व कर्म needed योनि प्रक्षालन, तो जो योनि प्रक्षालन के लिए जितने भी चीजें चाहिए होती हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जो पार्ट चाहिए, वो सब बहुत अच्छे से लैबोरेटरी वे में मैम ने कंसाइज किया था, डॉक्टर अंजना मैम ने, तो मुझे नहीं लगता मुझे अब जरूरत है उसको रिपीट करने की। देन यहाँ पे अब मैं सीधे प्रधान कर्म पे आती हूँ कि उन्होंने इसमें प्रधान कर्म में क्या है, स्पेसिफिक जो हमें चीज चाहिए इसमें वो है स्पैचुला चाहिए हमें, ये डिस्पोजेबल होगा तो बेटर रहता है, और वुड का होता है तो रिएक्ट नहीं करता किसी भी तरह के अल्कलाइन एजेंट से, तो इसमें हम कस्पोज स्पैकुलम फॉर द प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्वाइकल एरिया। देन ऑफ कोर्स द स्पैचुला, देन द टाइप्स ऑफ क्षार जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वेदर द किस तरह का क्षार सिलेक्ट करा है, तीक्ष्ण, मृदु, मध्य, किस तरह का सिलेक्ट किया है वो होना चाहिए। देन द प्रधान कर्म, प्रधान कर्म में जैसे कि अग्नि कर्म में था, पेशेंट को एट दैट काइंड ऑफ मैनर हमें उसी वे में पेशेंट को पोजीशन देनी है, कंसेंट लेनी है, पार्ट प्रिपरेशन करना है, देन कस्पोज का अप्रोक्सीमेशन करना है फॉर प्रॉपर सर्वाइकल रीजन विजुअलाइजेशन। हमारे पास अच्छा लाइट सोर्स अवेलेबल होना चाहिए, जहां क्षार लगाना है वही लगे। अगर वेजाइनल वॉल, लैटरल वेजाइनल वॉल लेग्स्ड हैं तो बेटर है कि उसको गॉज से हम कवर्ड कर दें ताकि कि वहां पर क्षार ना लगे। तो इसके लिए अब स्पैचुला से हम जो क्षार पाउडर होगा उसको इरोडेड एरिया पे लगाते हैं। देन लेफ्ट द क्षार फॉर द 1 to 2 minutes और पेशेंट से इसके साथ में कंप्लेन अगर उसको कोई हो रही है उसको पूछते जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन आफ्टर द 1 to 2 minutes remove that char by using the simple sterile water or by the nimbusvarus, matulumsvarus or by any quatha, जो भी आप डिजायर्ड चाहिए एक्शन एसोसिएटेड सिम्टम्स को रिप्लेस करने के लिए वो ले सकते हैं। देन द डोज ऑफ द चार्ज इट इज इन द कस्टमाइज्ड मैनर, क्योंकि जितना एरिया है उसके अकॉर्डिंगली डोज होगी। और इसमें भी वही बात है कि इसमें भी 1 to 2 सिटिंग्स नीडेड होती हैं और एटलीस्ट इन दोनों के बीच में 15 डेज का इंटरवल होना चाहिए। देन ऑफ कोर्स इन द पश्चात कर्म implementation of the pitchu for the proper healing up to the 7 days। अभी यहाँ पर जो क्षार का किस तरह से मोड ऑफ एक्शन हुआ, किस तरह से वर्क किया उसने, तो ये है कि क्षार की जो प्रॉपर्टीज हैं, इट स्क्रैप्स द
unhealthy tissues and enhance the regeneration from the basal layer, और इस वे में ये सर्वाइकल इरोजन को ठीक करता है. Then the another one is pathology is the cervical polyp. Cervical polyp में भी हम यहाँ पे जो क्षार सूत्र बनाया जाता है वो properly sterile क्षार सूत्र properly बना हुआ, उसको हम उसके बेस पे टाई अप कर सकते हैं पॉलिप के. और जिस तरह का हमें हाँ एक बात इसमें पॉलिप के रिमूवल में हमने एंडोमेट्रियल पॉलिप जो आउटवर्ड होते हैं जिनका ओरिजिन एंडोसर्वाइकल रीजन से हो, हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम वी कैन अप्लाई द क्षार ओनली जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं, बस उतने ही पार्ट पर हम यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए एक्टोसर्वाइकल रीजन में जो पॉलिप है उन्हीं को ही हम रिकमेंड करेंगे यहाँ पर कि क्षार सूत्र या क्षार से आप हटाएं, रिमूव करें उनको. और अगर किसी पॉलिप का ब्रॉड स्टॉक है तो वहां पर उसके लिए अग्निकर्म की भी जरूरत पड़ सकती है. Then the method of क्षारकर्म in genital wards जो होंगे इसमें इन सभी डिजीजेस में हमें इन्वेस्टिगेशन जो रूटीन हमारे होते हैं वो तो करवाने ही हैं, बट क्योंकि आई एम मेंशन हियर द स्पेसिफिकली ऑफ द एरिया ऑफ अग्नि एंड क्षारकर्म, तो मैं इसी पे फोकस कर रही हूँ खाली. तो प्रतिशाणीय क्षार को भी लगा सकते हैं और वहाँ क्षार सूत्र का भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वर्ड्स. फिर एक स्पेसिफिक यूज है इसका उत्तर बस्ती ऑफ क्षार तैला इन द ट्यूबल ब्लॉकेज. तो वहां पर बहुत अच्छे रिसेंट रिसर्चेस जो हुई हैं उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, बट थोड़ा सोच समझ, जैसे कि अभी मैम ने प्रीवियसली बताया था कहाँ हमें क्षार कितना देना है, आपको पहले एरिया को नरिश करना है, ऑफ कोर्स वो सारी बातें भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो इनफर्टिलिटी है वहां पे हमें एट लास्ट हमें कंसेप्शन ही चाहिए. तो डिजायर्ड एक्शन जैसा हो उसी के अकॉर्डिंग ड्रग सिलेक्ट करनी है, उसी पोटेंसी का क्षार तेल यूज करना है. जैसे कि भी प्रीवियसली बताया मैम ने कि क्षार तेल के साथ आप तिल तेल को मिला दीजिए, तो उससे क्या होगा कि इसकी पोटेंसी ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, मतलब उसकी तीक्ष्णता कम हो जाएगी. तो एक तो उत्तर बस्ती क्या होता है कि मैकेनिकली भी ट्यूब्स को ओपन करती है, और जो क्षार का कर्म है जो डेब्रिस को वहां रिमूव करना है वो भी करती है. इस वे में ये ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए भी बेनिफिशियल है. Then the mode of action of the क्षारकर्म आयुर्वेदा एक्सपेक्ट से बताया. देन अगेन मैं थोड़ा मॉडर्न की तरफ बता रही हूँ यहाँ पे कि एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जब से कोई भी एजेंट उस पे लगाया जाता है तो क्या करता है कि वहां पे बाइकार्बोनेट्स रिलीज होते हैं, तो दे एक्सट्रैक्ट द वाटर एंड लिबरेट द हीट. अभी जो अग्निकर्म में हमने हीट देखा वो लोक अग्नि का यूज किया, लेकिन यहाँ पे आंतरिक अग्नि का ही यूज कर रहे हैं, बस सब्सटेंस अलग है. तो उसी सब्सटेंस को अप्लाइड करके जो टिश्यू का ही जो हीट है या जो एनर्जी है उसी को ही उसी के लिए यूज किया जा रहा है. ये ब्यूटी है क्षारकर्म की. तो यहाँ पे क्या होता है कि लिबरेशन ऑफ हीट होगा, और उस हीट की वजह से कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ द सेलुलर प्रोटीन्स, इसकी वजह से क्या होगा कि टिश्यू जो है वो कोलैप्स कर जाता है, एपोप्टोसिस होते हैं और उसकी वजह से टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है. और ये मेथड ही अप्लाई किया जा रहा है ट्यूमर ग्रोथ को रोकने के लिए, कैंसर सेल्स के ट्रीटमेंट के लिए एल्कलाइन मीडियम देके उनको यूज किया जा रहा है रिसेंटली मॉडर्न साइंस में. तो हम कह सकते हैं कि क्षारकर्म is also a very beneficial tool for various types of gynecological pathology. तभी यहाँ पे भी स्लाइड में भी मैंने वही बात फिर से रिपीट करी है कि कैंसर सेल्स जो होती हैं वो एसिडिक मीडियम में जल्दी ग्रो करती हैं. तो इसके लिए हमें यही है कि जो मीडिया चेंज करते हैं तो उसका इन्वेजन रुक जाता है. ये ब्रेस्ट कैंसर के उसमें रेफरेंस में दिखाया गया है कि हाउ द कैंसर सेल कंज्यूम्स द ग्लूकोज एंड थ्रू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, एटीपी रिलीज हो रहे हैं और एसिडोसिस हो रही है. उस इम्बैलेंस पीएच की वजह से वहां पर मोर एंड मोर ग्रोथ हो रही है ट्यूमर सेल्स की. तो इस वे में वी कैन से दैट Agnikarma and Ksharkarma are a potent, palatable, and cost-effective tool for the management of various gynecological disorders. So, by concluding my session, I will leave with a note that जैसे आचार्य शिशुत ने कहा, एक का शास्त्र अभिज्ञानो न विद्यात् शास्त्र निश्चयम्. हम एक शास्त्र को पढ़ के अपने शास्त्र को भी अच्छे से नहीं समझ सकते, तो इसलिए it is a better for better understanding of our शास्त्र. We have to look about the other shastra also and collaborate it
जैसे कि अभी why the Ayurveda is a one step behind as comparison to the modern science, because we don't have the technology. तो अगर हम other disciplines को भी adopt कर ले, then of course we can contribute towards the Ayurveda and society. And the Agni Karma and Char Karma are seeded with the future possibilities of Ayurveda scope in the field of Stri Roga and Neoplasia management, of course, if combined with the technology of other disciplines. Thank you very much. और यहाँ मैं acknowledge करना चाहूँगी मैं कामनी मैम को. I am a student. उन्होंने मुझे PG में पढ़ाया है. मैम मैंने यहाँ वही बताया जो आपने मेरे में सीडलिंग्स डाले थे उस समय, उसी थॉट को मैं आगे लेके जा रही हूँ. कोई गलती हुई हो तो सॉरी. एंड थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर पेशेंट हियरिंग. थैंक यू वेरी मच. Thank you, ma'am. Thank you. It was really a tough subject to deal with, but you have explained it very nicely. So thank you very much, and I'm looking forward with all the Vaidyas for the questions. Any questions, doctor? Any questions? Okay. Hello. Ma'am, I think. Hello. Yeah. Yes, please. Hello, Yes, I Dr. Sunita Rana. I have one query. One by one, please. Yeah, just raise your hand. Yes. Shweta, yes, continue. Yes, ma'am. I was saying कि it was such a insightful lecture. यानी हमको समझ में आया कि हम कहाँ use कर सकते हैं. But I think we will need one more detailed session on how we can use it, because I think कई जगह पे हम थोड़ा OPD level पे use कर सकते हैं. तो अगर थोड़ा और इसका detailed session होगा तो बहुत अच्छा होगा. But this was a very insightful session कि हम कहाँ इसको use कर सकते हैं वो हमको पता चला. तो thank you, ma'am. Thank you very much. एक क्वेश्चन है शायद डॉक्टर सर ने पूछा है, प्रभात सर ने. सर, you ask directly, it's better to clear. मैडम, या मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम स्वर्ण या रजत सलाका या जो भी धातु का सलाका यूज करते हैं, इसको इलेक्ट्रो कटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? I don't know, क्योंकि मैंने तो यूज नहीं किया इलेक्ट्रो कटरी के साथ. भी अप्लाइड स्वर्ण और रजत शलाका ऑफ कोर्स कर सकते हैं. मेटल की कितनी कंडक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि हर एक मेटल जो होती है वो गुड सोर्स होती है कंडक्शन के लिए. तो ऑफ कोर्स यूज तो कर सकते हैं. जैसे कि कॉपर को यूज करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है. इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा फिजिक्स से है. वही बात है कि जैसे जितने भी आप देखेंगे वायर्स होते हैं उसमें कॉपर होता है, तो दे आर द पोटेंट कंडक्टर, है ना. तो मे बी स्वर्ण की अलग कंडीडेड अकॉर्डिंग टू दैट मैनर हम यूज करेंगे. अब क्या कर सकते हैं वही है कि कंबाइंड विद द टेक्नोलॉजी. मैं बार बार कोई बात कह रही हूँ कि अगर मेरे साथ का शायद कोई अभी यहाँ उस फील्ड का व्यक्ति होता तो वो बेटर आंसर कर पाता, क्योंकि मैंने तो कंबाइंड नहीं किया है इलेक्ट्रोपॉटरी को, जो स्वर्ण की बनी हो या रजत की बनी हो. हाँ अंजलि, हम नहीं करते ना इसको, कहाँ कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक कटरी इज डिफरेंट थिंग ना. अब बना सकते हैं उसकी जैसी ना, मतलब बनवा सकते हैं वो उसके IIT वालों के साथ मिलके, बट नहीं करते ना हम लोग तो. वही मैम. यस डॉक्टर शोभना. यस मैम. नमस्ते मैम. हाँ मैम नमस्ते, बताइए. हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है. In Nabothean cyst, can we what you can use Agni karma या अक्षार कर्म, प्रतिसारणी अक्षार? Ma'am, in the Nabothean cyst, it is better to go with the Agni karma by the matrix shalaka, क्योंकि वहाँ पे cystic swelling है, जो retention है, cyst है, retent है, तो उसको अग्नि कर्म हम कर देते हैं तो वो बेटर है. और
कई बार क्या होता है कि जो इरोजन होता है उसका काइंड एक फॉलिकुलर काइंड है, तो फॉलिकुलर काइंड के इरोजन के लिए मैं प्रैक्टिस में करती हूँ वो शलाका यूज करना, इवन द मेटेलिक शलाका, वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है। जैसे कि अभी पहले भी बताया कि त्वक दर्द, मांस दर्द, किस तरह का हमें चाहिए, एक्शन का नीड है, तो वहां पे मेटेलिक शलाका ज्यादा बेटर रहती है। ओके मैम, थैंक यू मैम। क्योंकि आप जो छाड़ लगाएंगे वो ऑफ कोर्स अदर टिश्यूज पे भी लगेगा, वहां पर क्या है, सिस्ट रिटेन्ड है, हमको उस हेल्दी एरिया को टच नहीं करना है जहाँ पे हेल्दी सेल्स हैं, हमें सिर्फ पिन पॉइंटेड वहीं करना है, तो बेटर है कि हम अग्निकर्म के साथ जाएं। यस यस मैम, वेरी नाइस मैम, थैंक यू। यस डॉक्टर सुनीता। या आई एम डॉक्टर सुनीता राणा फ्रॉम दिल्ली। मेरे को एक क्वेरी है डॉक्टर साहब से कि आप सर्वाइकल एरोजन का जो केस होता है उसमें कब क्षारकर करना है और कब हमें अग्निकर्म देना है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? हाँ, मैं यहाँ बोलूंगी कि जो रिकरेंट केसेस हैं या जो आपके पास ऐसे पेशेंट्स हिस्ट्री लेके आ रहे हैं जिनका की रिकरेंस चांस बहुत ज्यादा है या जिनकी प्रीवियस इलेक्ट्रोकॉटरी हो चुकी है, ठीक है ना, कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मतलब मैं ये कहूंगी कि अग्निकर्म जैसे बताया, क्षारकर्म इज अ माइल्डर फॉर्म और अग्निकर्म जो है वो बहुत पोटेंट है। तो अगर आपको ऑब्सोल्यूट ट्रीटमेंट चाहिए और हाँ, अगर आप स्मीयर करा रहे हैं, पैप स्मीयर ऑफ कोर्स कराएंगे ऐसे केसेस में, तो आप देखिए वहां पे किस तरह का क्या स्टेज है, एटिपिकल सेल्स मिल रही है क्या, अगर ऐसा मिल रहा है फाइंडिंग्स, देन गो विद द अग्निकर्म। मैं कहूंगी वहां अग्निकर्म के साथ जाइए और उसके बाद एक दो सिटिंग में अगर लगता है तो क्षारकर्म पे जाइए, बट फर्स्ट सिटिंग वहां अग्निकर्म की लेना चाहिए। और अगर ऐसा है कि ना पैप स्मीयर नॉर्मल आता है और हमें क्या कहते हैं इन्फेक्शंस मिल रहे हैं उस एरिया में, किस तरह के इन्फेक्शंस, जैसे कि अंजना मैम ने कोट किया था कि क्षार के वेरियस जो पीएच होती हैं वो वेरियस टाइप के माइक्रोब्स पे वर्क करती हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि आपको क्या चूज करना है, ठीक है। अग्निकर्म क्या करेगा कि वो जो सेल्स हैं उनको रिप्लेस कर देगा, धूपन वहां अगर दग्ध कर्म बढ़ती रह रहे हैं तो वो थोड़ा वर्क करेगा, बट क्षार का क्या होगा कि क्षार वहां लगाएंगे तो जो माइक्रोब्स हैं ऑफ कोर्स उस एरिया वो भी हट जाएंगे, और ऑफ कोर्स अग्निकर्म से भी वो होता है, लेकिन अग्निकर्म क्या है, वो थोड़ा पोटेंट फॉर्म है, तो उसको हमें किस पेशेंट्स में देना है, किस पेशेंट्स में नहीं देना है, वो वहाँ हमारे पास कई बार लिमिटेशंस होते हैं, तो उसके तरह से। और हाँ, ऑफ कोर्स पेशेंट का सत्व कैसा है, पेशेंट ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, उसको जब हम कंसेंट लेते हैं, डिफाइन करते हैं, कई पेशेंट डर ही जाते हैं, तो वहाँ ऑफ कोर्स क्षार यूज करते हैं। जी, इन शॉर्ट में आपका ये कहना है कि जो NILM रिपोर्ट आती है लिक्विड बेस्ड अंजलि, साइटोलॉजी में, तो मैम साइट के हिसाब से भी तो एक्सप्लेन करो ना। हाँ मैम, ऑफ कोर्स अगर साइट है, अगर एक्टोसर्वाइकल रीजन में ही है, वो आपको दिख रहा है एक्टोसर्वाइकल एरिया है, तो वहां पर हम अग्निकर्म के साथ जाएंगे, और अगर एंडोसर्वाइकल भी इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ क्षारकर्म के साथ में जाएंगे, क्योंकि वहां पे हम एडिटिवली योनि प्रक्षालन भी कर रहे हैं, और इसलिए वहाँ क्षारकर्म के साथ जाएंगे। आई होप मैम आई आंसर। के हिसाब से भी अपर लिप में मैम, अपर लिप में जैसे अपर लिप में है, लोअर में नहीं है, देन हाँ, अपर लिप में है, अगर लोअर में नहीं है तो ऑफ कोर्स वहां पे हम अग्निकर्म के क्षार साथ नहीं लगाएंगे ना फिर। हाँ, अग्निकर्म के साथ ही जाएंगे वहां पे। नहीं, आई डिडंट गेट योर पॉइंट दिस कि अपर में है सर्वाइकल रीजन में, लोअर में नहीं है। एक्चुअली जो क्षार होगा वो आप कितना भी उसको बचाएंगे मैम, बट वो जो है वो ज्यादा एरिया कवर करता है, कहना चाहिए कि जिस एरिया पे लगाएंगे उसके अलावा भी दूसरे एरियाज पे वो होगा ही, लगेगा ही, बट अग्निकर्म को आप पिन पॉइंटेड कर सकते हैं अप्लाई, कहने का ये मतलब है। तो उस वे में हमको पर्टिकुलरली अग्निकर्म ही सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात आप ये बता रहे थे कि एंडोसर्विक्स एक्टोसर्विक्स में, एक्चुअली वो तो यही है ना, एक्टोसर्विक्स में जो रिप्लेसमेंट होता है एंडोसर्वाइकल सेल्स का होता है, कॉल्यूमुलर सेल्स हैं जो वो रिप्लेस कर देते हैं स्क्वाइमस को, तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ इरोजन का जो है, इरोजन का डिग्री कितना है, आपको क्या लग रहा है किस तरह का इरोडेड एरिया मिल रहा है ना, डिपेंडिंग अपॉन दैट नीड हमको किस तरह का डिजायर्ड एक्शन चाहिए, अगर कितना एरिया इन्वॉल्व है, और अगर हम जो भाई वो मांस का बना हुआ सॉफ्ट ऑर्गन है, तो वहां पर हम इतना अग्निकर्म नहीं कर सकते जिससे कि अति दग्ध हो जाए, तो उस चीज को भी तो प्रिवेंट करना है, तो वहां पर हम एक दो सिटिंग्स में क्षार के साथ में जा सकते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है।
So at the end, we have to dilate the cervical canal when you do Agnikar or not required? Uterine sounding should be done. Yeah. Thank you Uterine so much, sounding doctor. should be done. Okay. Thank you. Ma'am, one more question is there. अग्निकर्मा आपने clockwise और anti clockwise कपोत वर्ण आने तक के लिए बताया है ना? So मतलब कितने समय के लिए रखना होगा वहां पर एप्लीकेशन ऑफ शलाका? मैम शलाका को जैसे ही हम रखते हैं वहां पर, उसके बाद उसको हटाते हैं, उसमें से साउंड्स और थोड़ा सा फ्यूम्स निकलते हैं। फिर देन वो शलाका जो होती है, जो हमने हीटअप करी थी, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उसको फिर से हीटअप करना होता है, देन फिर हम उसको दूसरे पार्ट पे लगाते हैं। मतलब एक एरिया में लगाने के बाद में फिर दूसरे पार्ट पे, देन फिर मूविंग फॉरवर्ड, उस तरह से हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब कितनी देर तक रखना है, एक्चुअल में क्या होगा, जो हम शलाका यूज करते हैं, जैसे अगर आप दग्धकर्म वर्ती यूज करें तो उसको हीटअप करेंगे और जैसे ही उसको वो सेल की जो एक सर्वाइकल रीजन है उसका सरफेस को टच करेगी तो क्या होगा, वो हीट जैसे ही ट्रांसफर होगी उसके बाद उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा बिल्कुल। फिर उसको हमें ठंडा करने की जरूरत पड़ती है। तो जो कपोत व्रणता एक्चुअल में है, ये हमको धीरे धीरे मिलती है कि जैसे जो लक्षण आएंगे उसके, जो सम्यक दर्द के अगर आप देखेंगे बुक में जो लिखे हैं, एक्चुअल में वही मिलते हैं कि वहां पर जैसे ही हमने हीट को ट्रांसफर किया तो वहां पर उस तरह का जो टिश्यू का कंसिस्टेंसी है, जो अपीयरेंस है, वो चेंज हो जाता है तुरंत। तो उस वे में हमें समझना चाहिए कि वो ग्रेइश कलरेशन आ जाता है, उसको ही कपोत व्रणता करके कहा। धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा शायद जब हम करेंगे वो प्रैक्टिकली। तो या मैडम फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ही करते हैं, नॉट मोर देन दैट। हाँ। यस डॉक्टर शोभना मैम प्लीज। हाँ नमस्ते मैम। मेरा और एक क्वेश्चन है। क्या हम मेरे पास एक पेशेंट है, शी हैज रिकरेंट नेबोथियन सिस्ट, शी हैज रिमूव्ड इट विथ कॉटरी last time. Again she has developed in posterior fornix 7 mm Nabothian cyst. उसका भी ये भी किया है, पैप स्मीयर भी किया है, लेकिन वो अच्छा है रिपोर्ट उसका। क्या हम उसमें ये क्षार तैल पीछू दे सकते हैं उनमें? मैम इट इज बेटर टू गो विद द अग्निकर्म इन द फर्स्ट सिटिंग। ओके। और देन अगर आप अग्निकर्म के साथ क्षार पिचू, क्या होगा कि वो एडजुवेंट जो टिश्यूज हैं वेजाइना के, उन पर भी तो इफेक्ट डालेगा। तो हम अगर हम वहां पर जो हमारे जैसे जात्यादि क्षार तत्व के साथ क्यों जाना है, हमको इनहांस करते हैं रीजनरेशन को हेल्दी टिश्यूज के, तो वहां पर मुझे लगता है कि अग्निकर्म अगर आप करते हैं तो वो बेटर है। और दग्धकर्म वर्ती से करते हैं या शलाका से करते हैं, जैसा अगर आपने जैसे बताया 7 mm का साइज है तो वो विद द मेटेलिक शलाका। और हाँ एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगी, जैसे मेटेलिक शलाका जो अगर कर रहे हैं तो जैसे बताया इसमें जो है वो डीपर टिश्यू पेनिट्रेशन देता है, तो कई बार जो शलाका है उसको स्नेह में डिप करके उसके टिप को और फिर उसको गर्म करते हैं और फिर उसको दग्ध करते हैं, एंड देन उसके बाद में फिर वहां पर पिचू का इंसर्शन करते हैं। जो पिचू रहेगा वो मैं इस पॉइंट के साथ नहीं हूँ कि क्षार का पिचू योनि में रखा जाए, बेटर है कि हम व्रण रोपक या शोधक ऑयल्स के साथ ही जाएं, क्योंकि टिश्यू को लॉन्गर पीरियड तक हम रिटेन करते हैं। वेजाइना में वो म्यूकोसा का बना हुआ है, तो स्ट्रक्चर तो वहां पर और हमें कॉम्प्लिकेशंस मिल सकते हैं और क्षार की वजह से, क्षार तैल की वजह से। ओके, थैंक यू मैम। So thank you very much, Dr. Anjali Verma, for enlightening us with this difficult topic. New, we have learned definitely from today's all the sessions. So we are all going very well. So thank you very, very much all the speakers. Moving further with our this webinar now, I request Dr. Anjana Saxena ma'am to present her views regarding the Purvakarma and Lep Chikitsa, because we have tried to cover all the aspects of Chikitsa in the Sri Roga. Dr. Anjana Saxena ma'am is practicing gynec
since last many years, almost 20 to 25 years. She is MD PhD in Stirog Prasuti Tantra, and madam is very much supporting Ayush Darpan. हमारे एक परिवार से ही है, तो ज्यादा उनसे बारे में हम लोग उनके स्पीच से ही सुनेंगे कि डेली मैम आते रहती है सेशंस में और इनलाइट करती रहती है, बट आज कुछ अलग टॉपिक के साथ मैम डील कर रही है। लेप चिकित्सा, जैसे स्तन रोग या अलग अलग विकारों में इस प्रकार से पूर्व कर्म का महत्व है, और लेप चिकित्सा। वेलकम मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं आप शेयर करने का, मुझे को स्क्रीन शेयर करने का एक ऑप्शन दिया है मैम, दिया है यू आर को-होस्ट, या दिया है मैम, दिया है मैम। मैंने दूसरी आईडी से खोला था, आप मुझे फिर से दोनों इसमें किया है शायद मैम, एक बार दोनों को है मैम, दोनों आईडी से है। थैंक यू को-होस्ट। शेयर हो रहा है मैम? हाँ आ रहा है, यस। नमस्कार सभी लोग को। सबसे पहले कामनी मैम को नमस्कार करती हूँ, और आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म को तो मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। शिल्पा मैम के इस उत्साही व्यक्तित्व को, और उससे मुझे प्रेरणा मिलती है, और नवीन सर को, जिन्होंने एकदम लगातार 24 आवर्स वो हम लोग के लिए बने रहते हैं, और ज्ञान का एक स्रोत उन्होंने आयुष दर्पण के माध्यम से हम सबको दिया है। आज स्पेशली स्त्री प्रसूति विभाग और स्त्री प्रसूति का टॉपिक चल रहा है, और बड़े बड़े लोगों ने बहुत अच्छे विचार दिए हैं। तो क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें लग रहा है हम लोग काफ़ी लेट हो रहे हैं, तो मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। मुझे लग रहा है कि पूर्व कर्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है, इसीलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के जो है इसके बाद बताती हूँ कि आगे हमें जो है कैसे कैसे लेप चिकित्सा के बारे में हमारे शास्त्रों में आया है, और उसको हम प्रैक्टिकल भी जो है यूज़ करते हैं, और जनरली उसमें पेशेंट को बहुत ही बेनिफिट मिलता है। समटाइम्स ऐसे पेशेंट आते हैं जो ओरली लेना भी नहीं चाहते हैं, या कभी कभी ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं कि पेशेंट ओरली ले नहीं पाते हैं, और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको हम ओरली दे भी नहीं सकते हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि हम योनि व्यापद की बात करते हैं, और योनि व्यापद में जो हमारे पास 3 मुख्य कारण बताए गए हैं, वातज, पित्तज और कफज, और उन्हीं दोषों के आधार पर उसमें संसर्गज और संनिपातज करके हमारे पास 20 योनि व्यापद का वर्णन आया है। तो हम एक कॉमन योनि व्यापद की बात यहाँ बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से उसमें करना है, और ये सब शास्त्रोक्त बता रहे हैं। और शास्त्रोक्त बताने के साथ साथ ही हम ये बता रहे हैं कि हमें इसमें कैसे प्रयोग में लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम, क्योंकि जब बताते हैं कि बिना वात के कभी कोई दोष नहीं होता, योनि दोष नहीं होता, योनि व्यापद नहीं होता, तो इसलिए फर्स्ट में हम लोग वातता दिशु प्रयोगा, अर्थात हिंसा कलकंतु वार्ता कोशनम अभ्यंजे धारिये, अर्थात वन सफरिंग फ्रॉम वाता शुड आफ्टर एनवायरमेंट द पार्ट कीप वार्म पेस्ट ऑफ हिंसा। अगर वातज योनि व्यापद की पेशेंट है, जो कहते हैं ना वातला कर्कशा स्तब्धा शूल निस्तोध पीड़िता, जहाँ शूल है, निस्तोध है और पीड़िता है, वहाँ हमें कीप वार्म पेस्ट ऑफ हिंसा का रखना है। और इसी प्रकार जो शास्त्र बताते हैं, सिमिलरली इन द प्रेडोमिनेंस ऑफ द पित्त एंड द कफा, पित्त में अगर हमें करना है तो पंचवल्कल का कल्क रखना है, और श्यामादि जो ड्रग्स है वो हमें कफ में। यहाँ श्यामादि का जो साफ मतलब बताया गया है वो इन्होंने प्रियंगु और त्रिवत का उपयोग बताया है। देन हम आते हैं स्पेशली जो हमें पित्तजाया चिकित्सा क्रम में क्या करना है। पित्तलानांतु योनिना सेका अभ्यंग पिचुक्रिया शीता पित्त हरा कार्य है, स्नानार्थ घृतानी चाहिए। यहाँ मेरा जो कार्य है, मैं केवल एनवायरमेंट की बात ही करती हूँ, लेप की बात करती हूँ, क्योंकि अभी हमारे बाद में कामनी मैम आ रहे हैं, वो सब पिचू के बारे में बताएंगे, और इससे पहले पूर्व कर्म के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुका है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए हमें कैसे कैसे कहाँ क्या यूज़ करना है, हम स्पेसिफिक ड्रग्स पे आते हैं। तो शास्त्र बताते हैं कि अगर हम उदावर्तादि दिशु त्रेवत स्नेह, त्रेवत स्नेह का मतलब यहाँ बताया है घी, ऑयल एंड फैट, अर्थात घृत, वसा और मज्जा। अगर हम इनको तीनों को मिक्स टुगेदर कर ले, आपस में मिला देंगे, और उसका फर्मेंटेशन अगर हम करेंगे उदावर्ता योनि व्यापद में, साफ है नीला उदावर्ता रजा कृष्ण मुंजित, तो उसके अलावा और जो हमारे वातिक योनि व्यापद है उसमें भी हमें ये जो अगर हम इस तरह का लेप करते हैं, किसका स्पेशली हम जो है घृत को और हम तेल को, तो घृत में अगर हम गोघृत लेंगे, तेल में जो है हम तिल का तेल लेंगे, और जो हम फैट वसा का जो उपयोग किया गया है उन तीनों को मिला देंगे, तो ये हमें वातज योनि व्यापद के साथ साथ महायोनि और शंसनी योनि व्यापद में भी हेल्पफुल होगा। समटाइम्स हमारे पास पेशेंट आते हैं जो प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं, उसमें वेजाइनल टीयर,
वेजाइनल टीयर जनरली डिलीवरी के समय या फिर कभी इंजरी हो जाती है पेशेंट को, तो ऐसे केसेस हमें अक्सर मिलते हैं। और वेजाइनल टीयर में हमारे शास्त्रों में बहुत जनरली हमें यह करना होता है कि नहीं, यहाँ हमें इसको स्टिचिंग लेना पड़ेगा या हम मॉडर्न मेडिसिन के हेल्प लेना पड़ेगा, लेकिन हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा वर्णन आया है और हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो वेजाइनल टीयर है उसको हील्ड किया जा सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ द। मैम आप म्यूट हो गई हैं अंजना मैम। हाँ नहीं, आप मैं म्यूट तो हो म्यूट नहीं, मैं तो आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है मैम, आ रही है, आ रही है आवाज। आ रही है मैम। नहीं आ रही है मैम, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू कीजिए। थैंक यू मैम। भिन्न योनि चिकित्सा का यहाँ मतलब है वेजाइनल टीयर, और वेजाइनल टीयर हम जैसे जानते हैं कि ड्यू टू डिलीवरी या ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, और इसके अलावा समटाइम्स इंजरी, कभी साइकिलिंग करते हुए बच्चे गिर जाते हैं या कोई भी किसी को भी किसी तरह की इंजरी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में हमको मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि अब इसका हमें जो है रीस्टिचिंग कराना पड़ेगा या हमें पेशेंट का टीयर जो है वो स्टिचिंग से ही ठीक करना होगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका बहुत अच्छा वर्णन आया है और उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो शतपुष्पा है, एप्लीकेशन ऑफ द शतपुष्पा तेल को जो है वो बदरी दल जात था, मतलब जो है जो बदरी की लीव्स, मतलब जो बदर की लीव्स होती हैं, सॉरी बदर की लीव्स के साथ उसको हम पेस्ट करके लगा सकते हैं। शतपुष्पा को हम बदरी के पत्तों के साथ, या भी पेटिका एक आया है, पेटिका रूट्स, इसके बारे में मेरे को भी क्लियर नहीं है इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लेना है, लेकिन शास्त्रों में एक पेटिका रूट्स भी आया है। ये द्रव्यगुण जो विशेषज्ञ मैंने बात की थी अभी, लेकिन वो भी अभी कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ शाम को, तो मैं इसके बारे में आपको डिस्कस कर दूंगी। लेकिन बदरी जो बदर है, बदर की लीव्स हमें आराम से मिलती हैं और शतपुष्पा को साथ उसको मिक्स करके और उसका अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पेशेंट को बहुत अच्छे से इफेक्ट मिलता है। इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन हमने जब भी शास्त्रों में पढ़ा तो मूषिका तेल बनाने की कई विधियां बताई गई और ये भी बताया गया है कि उस विधि का इंडिकेशन कहाँ पे क्या है। तो जो एक विधि हमने यहाँ पढ़ी लिखी हुई है उसमें साफ साफ बता रहे हैं कि जो मूषिकादि तेल है इसका जो पीसेस करेंगे और पीसेस करने के बाद इसको ऑयल में हम लोग फ्राइड करेंगे, और फ्राइड तब तक करेंगे जब तक वो लिक्विफाइड ना हो जाए। वो मतलब ये हुआ कि जो रेड मीट है या मूषक का जो मांस है उसको हमने फ्राइड किया और उसको लिक्विफाइड होने तक हमने ऑयल में उसको फ्राइड किया, और उसके बाद हमने उसको जो है क्लॉथ में सूट करके और हमने उसको कैप्ट किया वेजाइनली या उसका अनॉइंटमेंट किया वेजाइनली। और ऐसा इस तरह से जो बनाया गया है वो योनि कंद में बहुत अधिक लाभदायक है। तो जिस तरह की उन्होंने शास्त्रों में बताया कि इस तरह अगर हम मूषिका तेल बनाएंगे तो इसका इंडिकेशन योनि कंद है, और आगे भी इसकी कई विधियां बताई हैं, वो धीरे धीरे आपको बताऊंगी। मूषक तेल के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन किस तरह से कौन सा उसका बनाने का ढंग है और कौन सा इंडिकेशन है, ये शास्त्रों में अलग अलग आया। अब थोड़ी सी बात हम इसकी करते हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमारा आफ्टर डिलीवरी या मल्टी पैरा पेशेंट आते हैं कि जो लूजनेस ऑफ वेजाइना या वेजाइनल लैक्सिसिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है या उसको डिसेंड नहीं है, लेकिन लैक्सिसिटी वेजाइनल हमको हमारे पेशेंट में अक्सर मिल जाती है। और समटाइम्स जो होता है उसको सिस्टोसिल, रेक्टोसिल या फिर उसका प्रोलेप्स भी मिल जाता है। तो ऐसे केसेस में हमारे शास्त्रों में जो वर्णन आया है किस चीज़ का हमें लेप करना है उसकी हम बात करते हैं। तो स्पेशली उन्होंने कहा है कि अंता प्रविष्ट वही निर्गत योग चिकित्सा शुष्भी मूल लेपेन प्रविष्टा अंतर बहिर्भवे, अर्थात वेजाइनल कॉन्ट्रैक्टेड विद इन कम्स आउट बाय द पेस्ट ऑफ द शुष्भी रूट। शुष्भी रूट का वर्णन यहाँ पे जो आया है, शुष्भी जो पर्याय आया है वो करेरा का पर्याय है। तो करेरा का जो हमारा छोटा सा एक बेल टाइप का पौधा होता है जो कि जिससे कहते हैं कि उसको सपोर्ट चाहिए होता है, उसकी जो रूट होती है, अगर उसकी रूट का अगर हम पेस्ट बना के अगर हम लगाएंगे तो पेशेंट का जो वेजाइना है वो कॉन्ट्रैक्टेड होगी या वेजाइना जो है वो बहुत ज़्यादा लैक्सिसिटी नहीं होगी। उसी तरह से सेम कंडीशन बता रहा है, प्रोलेप्स इज रिस्टोर्ड विद इन द एनवायरनमेंट विद रेड्स फैट। तो ये थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि कोई भी जो है चूहे का फैट लगाने को तैयार नहीं होगा, लेकिन कंपनियां इस तरह का मेडिसिन बना रही हैं। तो अगर हम वहाँ पर भी जहाँ हमें रिलैक्सिसिटी लग रही है वहाँ पे हम शुष्भी मूल का एक लेप कर सकते हैं। शुष्भी मूल का लेप करने से पेशेंट को कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा। इसके अलावा जो बात आती है कि योनि दाढ़ीकर, मतलब वही जैसे अभी ऊपर की बात चल रही थी कि हमें योनि में टाइटनेस लाना है, योनि की लैक्सिसिटी को कम करना है, और योनि जो एक उसकी एक डिलीवरी के बाद जो उसमें एक लैक्सिसिटी आती है या उसको हमें एक नॉर्मल रसायन वाजीकरण क्रिया कहते हैं या योनि दाढ़ीकरण योगा कहते हैं, वो हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया है।
एक में उन्होंने बताया है कि हम क्या कर सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द पेस्ट ऑफ द लोद्र एंड द अलावो फ्रूट्स, उसको क्या करेंगे कि हम जो लोद्र का और अलावो का, लोद्र तुम्बी फला लेपो योनि दाढ़ियम करोती, साफ साफ लिख रहे हैं कि लोद्र का और तुम्बी मतलब अलावो फ्रूट से तुम्बी फल लेपो, तो अगर हम उसका लेपन करते हैं तो वेजाइना फर्म हो जाती है, या योनि दाढ़े कर, योनि में दृढ़ता आ जाती है, योनि जो होती है टाइटनेस आ जाती है। इसके अलावा उन्होंने सेकंड बताया है द सेम इफेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द वॉशिंग वेजाइना विद डिकॉक्शन ऑफ द बेतस रूट। जो बेतस हमारी ड्रग है, अगर उसकी हम रूट निकाल देते हैं और उसका हम क्वाथ बना देते हैं और उस क्वाथ से मानिए हम प्रक्षालन कर लेते हैं और प्रक्षालन के बाद अगर हम लोद्र और अलावो का जो है लेप लगा देते हैं, तो हमारे जो पेशेंट आते हैं जनरली, जिसको हम बार बार कहते हैं कि नहीं अब हमें ये सिस्टोसिल रिपेयर करना पड़ेगा, हमें कॉल्पोरेफी करना पड़ेगा, हमें पोस्टीरियर वेजाइनल वाल रिपेयर करना पड़ेगा, हमें रेक्टोसिल रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं, ये जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये कहीं हम खो से गए हैं। हम चाहते हैं कि हम इस पर थोड़ा सा और कार्य करें और इसको हम दैनिक प्रयोग में लाएं और अपने बच्चों को, जो हमारे थीसिस वाले बच्चे हैं, जो रिसर्च वाले बच्चे हैं, इसको हम यूज़ करें। एक हमारे पास नॉर्मली पेशेंट आता है मैथुन अचर्ण पुरुषादिति विपरीत, मतलब जो अचर्ण योनि पे आपत बताई है कि वो कभी भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, या उसको हमेशा जो है वो जनरली इचिंग वाली प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो शास्त्र बताते हैं ये, और हम लोग सभी जानते हैं इसको, हम लोगों ने अपने यूजी टाइम से ही पढ़ा है कि जो गो पित्ते मत्स्य पित्ते व क्षोभम सप्त भावितम, गो पित्त को और मत्स्य पित्त को जो है वो एक क्षोम या वस्त्र में हमें उसको भावित करना है, और उस भावित वस्त्र को या उस पाउडर को हमको उसको लेके उस भावित लेकर हमें वहाँ पे उसका लेपन कर देना है, या उस भावित वस्त्र को हमें एज ए पिटू वहाँ रख देना है। सेकेंड, उन्होंने एक योग और बहुत अच्छे से बताया है, जो ईस्ट पाउडर आता है, ईस्ट पाउडर को जो है मधुनाम किर्ब चूर्णम व ददियात अचरना अपहम, मतलब कि जो हनी के साथ अगर हम ईस्ट पाउडर को मिक्स करके अप्लाइड करते हैं तो ये ट्रैक्ट को क्लीन करता है और रिमूव करता है इचिंग को, डिस्चार्ज को और स्वेलिंग को। तो जो जनरली जो बर्बोवेजिनाइटिस की प्रॉब्लम लेके पेशेंट हमारे पास आज भी आते हैं, जनरली उनको इचिंग रहती है, उनको डिस्चार्ज रहता है, उनको स्वेलिंग रहती है, और हम जनरली फिर समटाइम्स जो है बहुत कुछ करते हैं, कभी कभी हम केवल प्रक्षालन करते हैं, कभी हम पिचू भी रखते हैं, कभी हम शोधन करते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि बेस्ट रहेगा कि अगर हम उसको अनॉइंटमेंट करें और अगर हम इसका ईस्ट पाउडर मिक्स करके हनी के साथ वहाँ पे अप्लाइड करें तो पेशेंट को रेस्पॉन्स मिलना ही मिलता। इसके अलावा मूषिक तेलम, जो मैंने अभी आपको बताया कि मूषिक तेलम के कई तरीके उन्होंने बताए हैं, तो एक इन्होंने यहाँ ये बताया है कि अगर हम योनि अर्श में जो हमारे यहाँ वेजाइनल पॉलिप आ जाते हैं या योनि अर्श बन जाते हैं, या कहीं कहीं हम लोग को वाट भी दिखाई पड़ते हैं, वेल्वा वाट, तो वहाँ पे हमें इस तरह का मूषक तेल यूज़ करना है। उस मूषक तेल को हमें क्या करना है कि ऑयल मिक्स्ड विद रेड मीट्स केप्ट इन द सन फॉर ए वीक, एक हफ्ते के लिए हमको उस तेल को रेड मीट के साथ सनलाइट में रखना है लगातार, और उस तेल को जब हम यूज़ करते हैं तो वो योनि अर्श को, वेजाइनल पॉलिप को, वेजाइनल वाट को ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है। और अगर इसके बाद इसका जो अगर हम इस बिसाइड्स दिस इसके बाद अगर फर्मेंटेशन करेंगे विद द एवम मीट मिक्स विद द रॉक साल्ट, मतलब अगर हम सेंधव लवण के साथ इसका शोधन करेंगे वहाँ पे, तो और हमें अच्छा भी इफेक्ट मिलेगा, ये हमारा शास्त्र कहता है। देन हमारे पास एक और आया है कि जो हम फॉर्मुलेस ऑफ वेजाइना की बात कर रहे हैं, या जो हमारे पास पेशेंट लैक्सिसिटी वाली कंप्लेन लेके बहुत आती हैं, तो उसमें भी इन्होंने यही बताया है कि अनॉइंटमेंट विद फैट ऑफ द रेड, जो हमें जनरली जो ये रेड का फैट है, या हम कहते हैं कि हमें जो हमारा मूषक का जो बसा है उस बसा को हमें बादुली के साथ मिक्स करना है और उसको हमें वेजाइना में लेप करना है। बच्चा हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है और बच्चा को हम जो है बहुत रूपों में यूज़ करते हैं, चाहे उसको हमें मानसिक व्याधि होगी तब यूज़ करते हैं, हम प्रसव के समय भी यूज़ करते हैं, हम जो है प्रेगनेंसी में भी यूज़ करते हैं, बच्चों में भी बहुत यूज़ करते हैं। बच्चा हमारी बहुत ही डायनेमिक ड्रग होती है, तो यहाँ बच्चा का भी एक लेप बताया गया है। बच्चा आदि लेप का उन्होंने जो वर्णन किया है उसमें बच्चा नीलोत्पल, कुष्ठ, मरीच, अश्वगंध और हरिद्र, हरिद्रा मतलब हमारी हल्दी, ये एक्सीलेंट पेस्ट बनाकर अगर हम इसको वेजाइना में लेप करते हैं तो बहुत अच्छी से इसकी जो है वेजाइना की फॉर्मनेस हमको प्राप्त होती है। तो ये अगर छोटी छोटी हमारे पास जो चीज़ें हैं इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, और हमें अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ इस पर कुछ रिसर्च वर्क के साथ साथ आगे बढ़ेंगे
इसमें एक और बहुत अच्छा सा हमारे पास योग आया है। इस योग में इन्होंने बोला है कि मदफल मधुक पर पूरितम भवती कामनी जनस्य चिर विगलित योगन से बरांगम अतिगाढ़, अर्थात फिलिंग अप ऑफ वेजाइनल कैनाल विद मदाफल। मदाफल को यहाँ अगर हम मदन फल भी मान सकते हैं, मदन फल को भी कहीं कहीं मदफल के नाम से आया है, और समटाइम्स हम इसको अहिफेन के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये देखिए शास्त्र है, शास्त्र का सूत्र है, सूत्र में हम इन दोनों को हमने काफ़ी वो किया। तो मदफल का जनरली जो है अधिकतर मीनिंग मदन फल से ही लिया गया है, और ये द्रव्य गुण वैज्ञानिक भी बताते हैं जिन्होंने मैंने कई लोगों से कंसल्ट किया। और इसके अलावा कहीं कहीं अहिफेन के नाम, अहिफेन का पर्याय भी मदफल आया है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों का ही जो हमने कषाय रस प्रधान है और दोनों का ही यूज़ हम जो है वो फर्मनेस ऑफ वेजाइना या वेजाइना योनि के गाढ़ीकरण के लिए कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक हमारे पास आया है कि हम अगर इसको मदन फल हनी और कैम्फर को एक साथ मिक्स करके और इसको बनाएंगे तो ये जनरली जो हमारे पास मेनोपॉजल एज ग्रुप की पेशेंट आती हैं, जब वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि मैडम ड्यू टू एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी और ड्यू टू हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण जो इम्बैलेंस हो जाए हार्मोन का, उसके कारण जो पैथोलॉजी डेवलप होती है, उस पैथोलॉजी को अगर हमें वहाँ सही करना है, क्योंकि अक्सर हम लोग मीनोपॉजल, पेरी मीनोपॉजल, पोस्ट मीनोपॉजल पेशेंट पे उतना कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, और ये एक मेन पार्ट होता है इस समय कि 40-50 के बीच में। तो अगर हम यहाँ वो योग का यूज़ करें जिसमें कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है और ये आप्त वाक्य है, भाई इसका रेस्पॉन्स हमें मिलना ही मिलना है, तो हमारा जो मीनोपॉजल ग्रुप है उसको इसका इफेक्ट अच्छे से मिलेगा। देन हमारे पास एक और आया है वर्णन, वो हम बताते हैं कि सॉरी पंच पल्लवादि घृतम। पंच पल्लव घृत में इन्होंने बताया है कि जो पंच पल्लव घृत है उसको हमने क्या किया है कि उस घृत को हमने पंच पल्लव लिया, पंच पल्लव के साथ हमने मधु यष्टि लिया, और उसके साथ हमने जो है वो मालती कुसुम लिया या जाति का जिसे कहते हैं चमेली का फूल लिया, और उसको हमने या तो फिर उस घृत को या तो हमने रवि मतलब सूर्य की रोशनी में पकाया, या फिर हमने उसको अग्नि के द्वारा भी मूर्छित मतलब आग हमें पकाना है, घृत मूर्छन करना है, तो वो घृत मूर्छन दो तरह से किया जा सकता है, या तो वो सनलाइट में भी घृत मूर्छन किया जा सकता है, या फिर हम उसको जैसे अग्नि में हम अग्नि पर रखकर भी उसका घृत मूर्छन कर देंगे, तो उससे क्या होगा, योनि गंध विनाशना। तो योनि में जो एक स्पेसिफिक गंध आती है, या पेशेंट जो कहती है कि मैडम बहुत दुर्गंध आ रही है, ये समटाइम वो दुर्गंध क्यों आ रही है, हम सब समझ रहे हैं कि यहाँ किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे फंगल हो, चाहे वो वायरल हो, तो वो इन्फेक्शंस, वो उस तरह की जो वो गंध दे रही है, वो उससे पेशेंट को बहुत अधिक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णन आया है कि हम पेशेंट को जो है वो शल्यकी, जिंघनी, जम्बू, धव और पंचवल्कर, अगर इसका हम डिकॉक्शन ले लेंगे या फिर इसका हम कल्क भी ले लेंगे और उसको ऑयल के साथ मिला के इसको अच्छे से पका लेंगे, तो या तो हम इसका एनॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, और अगर हम तेल बनाते हैं तो इसको जो है हम टेम्पोनिंग भी कर सकते हैं, और ये विपुलता योनि व्यापक के लिए बेस्ट ड्रग मानी गई है। तो हमें नोट कर लेना चाहिए कि हमें शल्यकी, जिंगनी, जम्बू, धव एंड पंचवल्कर, इनको लेके हमें जो है ऑयल के साथ, तिल के ऑयल के साथ इसको हमें इसका या तो हमें कल्क लेके बनाना है, और नहीं तो हमें इसके क्वाथ के साथ हमें ऑयल को मूर्छन कर देना है, और हमें योनि पूर्णन भी कर सकते हैं और योनि पिचू भी रख सकते हैं, जिससे जो हमारी विपुलता योनि व्यापक है, विपुलता योनि व्यापक को हम लोग अच्छे से सब जानते हैं, उसके जो भी लक्षण है इससे खत्म हो सकते हैं। अब हम जनरली बात करते हैं कि हमारे पास पेशेंट आते हैं जो जनरली बताते हैं कि पेन हो रहा है, समटाइम्स वो ड्यू टू इंटरकोर्स होता है, समटाइम्स उनको कार्य करने में भी होता है, समटाइम्स मेनोपॉजल इफेक्ट में भी होता है, समटाइम्स अदर कॉजेस भी होता है। तो जो एक हमारे पास शास्त्रों में वर्णन आया है वो नतादि तेलम का उपयोग आया है। नतादि तेलम में जैसे नत का मतलब हुआ तगर, कंटकारी, कुष्ठ, सैंधव और देवदारू, इस प्रकार का हमने जो है मेडिसिन लिया, और उसका फिर वही हमने ऑयल बना दिया, और उस ऑयल का हमने योनि पूर्ण कर दिया, और या फिर उसका टेम्पोरिंग किया। तो इससे क्या होता है, जो है पेशेंट लिख रहा है कि पिचु योनि रुझा है, अर्थात उसकी जो योनि है, योनि शूल है, वो समाप्त हो जाता है। इसके अब थोड़ा सा हम स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आते हैं कि समटाइम्स हमारे पास जो अनार्तक की पेशेंट आती हैं, जिनको मेंस नहीं आते हैं, या उनको जो है जनरली हम लोग विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए कभी कभी मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेते हैं, तो हमारे शास्त्र में एक बहुत अच्छा सा योग बताया गया है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि अगर हम ऐसे पेशेंट को एक शिवांकु, दंती,
पिपली, जगरी गुड़, मदन फल और मधुयष्टि। इसके साथ में अगर हम स्नोही क्षार का एक हम बर्ती बना दें और उस बर्ती को अगर हम वेजाइना में रख दें, या हम इसका लेप बना दें और इस लेप को भी अगर हम वेजाइना में रख दें, तो उससे मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। तो ये मतलब अगर ये एक चैलेंजिंग है और इसको हमें प्रैक्टिकली यूज करना चाहिए। और ये सारी मेडिसिन मुझे लगता है कि अवेलेबल हैं, शिवांकु, दंती, पिपली, गुड़, मदन फल, मधुयष्टि और स्नोही क्षीर। तो इसका हम अगर बर्ती के रूप में या फिर हम इसको एक एनवायरनमेंट बना के तेल के साथ में इसको अगर हम हल्का लेप करेंगे और हम पेशेंट को इस तरह से एक थीसिस वर्क दिया जाए, एक रिसर्च किया जाए, एक पायलट स्टडी की जाए, तो मुझे लगता है जितने योग मैं बता रही हूँ वे सब पायलट स्टडी के लिए बहुत अच्छे हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे करूँगी, और इसीलिए मैं इस फॉरम पे भी आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास एक और अच्छा सा आया था कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास कुछ पेशेंट आती हैं कि मैडम कि हमें बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में जलन हो रही है, हमारा शरीर एकदम गर्म हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे केसेस के लिए हमें जो है जनरली कई बातें बताई हैं हमारे शास्त्रों में। तो एक हमें बहुत अच्छा लगा, जैसे हम शिरोधारा देते हैं, ऐसे यहाँ पे एक नाभि धारा का वर्णन आया। वो किस तरह से देना है वो देखिए, साफ साफ लिखा है, उत्तार सुप्तस्य गंभीर ताम्रकांस्य आदि पात्रम प्राणी धाय नाभो। अर्थात पेशेंट को जो है सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। पेशेंट लाइज डाउन फ्लैट ऑन द ग्राउंड एंड डीप बाउल ऑफ या तो कॉपर का या तो ब्रास का जो कटोरा होता है, हमें उसके नेबल पर रख देना है। नाउ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ द कोल्ड वाटर इज पाउर्ड ऑन इट। लगातार जैसे हम शिरोधारा में जो है लगातार जो है तेल की धारा देते रहते हैं, यहाँ क्या करना है, नाभि के ऊपर हमें जो है दोनों स्पेसिफिक धातुओं का वर्णन किया है और दोनों धातुओं की अपनी महत्ता बताई गई है, ताम्र की भी और ब्रास कांस्य की भी। तो इसको रखना है और इस पर हमें लगातार जो है वो वाटर के पाउडिंग करना है। उससे क्या होगा, जो बर्निंग सेंसेशन है बॉडी के वो बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाएंगे और उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा जैसे कि एक बात बताइए कि पेशेंट अगर कहता है कि नहीं मेरे को बहुत गर्म हो रहा है या मेरे को बहुत जलन हो रहा है या मेरे शरीर से आग निकल रहा है, तो शास्त्रों में एक वर्णन आया है कि रैपिंग द बॉडी विथ क्लॉथ सॉक्ड इन द साउर ग्रूल। जो मंड है हमारा वो अम्लीय होना चाहिए या उसमें थोड़ा कांजी मिलाना चाहिए। ये साउर ग्रूल मंड को हमें अम्लीय बनाना है और उसमें क्या करना है, हमें कपड़े को सोक्ड करना है, चादर को उसमें सोक्ड कर देना है और उस चादर में उसको लपेट देना है। उससे क्या होगा, उसका दाह नाशनम जो पेशेंट बता रही है उससे उसकी दाह की शांति होगी। तो इस प्रकार से जो है वो हमारे शास्त्रों में ये सारे वर्णन आए हैं। इन्होंने आगे बताया है जिभ्या तालु गल सोम शोषे। अगर जिभ्या तालु और हमारा जो गला है और हमारा जो ऊपर का कहना चाहिए कि थ्रोट है, ये सब अगर उसमें क्या होता है, अगर उसमें थोड़ा सा शुष्कता आ जाती है या हमें लगता है कि हम जो है बोल तक नहीं पा रहे हैं हो रहे, तो वो कहते हैं केशरम मातुलुंग से मधु सेंदव सर्पितम। ऐसे में हमें क्या करना है, केसर को मातुलुंग के साथ मधु और सेंदम मिला के हमें सर पर लगाना है, हमें उसको जो है लेप कर देना है, जिससे कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हमारे पेशेंट की हो जाएगी। अभी हम इसके अलावा आगे बोलते हैं तो हमें जनरली जो कोल्ड जो बताया है कि जो जहाँ पित्त का कुपित्त है या पित्त ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है या इंटरनल बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को फील हो रहा है, तो शास्त्र बताते हैं कि द कोल्ड इन्फ्यूजन ऑफ द धान्य केप्ट ओवरनाइट टेकन विद शुगर, है ना। अगर रात भर जो है इन्फ्यूजन ऑफ द धान्य केप्ट ओवरनाइट, जैसे कि पेशेंट को जो है वो धान्य को जो है रात भर हमने उसको रखा, ठंडे पानी में रखा और उसके बाद जो है टेकन विद शुगर के साथ उसको दिया। तो ये जनरली हमने लेप क्रिया नहीं हुई, लेकिन ये मुझे कहीं मिला होगा, मैंने हेड कर लिया था, कोई नहीं, थोड़ा सा बाहर है, लेकिन ये एक अच्छी चिकित्सा विधा बताई गई है। देन हमारा पेशेंट बताता है कि कोल्ड मीजर्स शुड बी अडॉप्टेड एंड अफेक्टेड द हीट कॉज बाय द। तो हमें जनरली हम सब देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट जब आते हैं तो हम जनरली चंदन का लेप बताते हैं, हम उशीर का लेप बताते हैं, हम अपने प्रेग्नेंट पेशेंट में भी इस तरह का जहाँ लगता है कि हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है तो हम शतधोत घृत का लेप करते हैं, हम चंदन का लेप करते हैं।
या फिर हम जो है उशीर का लेप करते हैं, या जहाँ हमें लगता है इसकी पिकती पित्त है तो पित्त पापड़ का बहुत अच्छा सा उसका वो आता है, सुगंध वाला का भी करते हैं, सारीबा का करते हैं, मंजिष्ठा का करते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में बताया है कि हमें यहाँ पे लेप क्रिया करने से पेशेंट को हम बहुत लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे मैंने अभी पहले बताया, और एक सूत्र आया है कि इन केस ऑफ द एक्सेसिव थर्स्ट एंड द बर्निंग सेंसेशन द पेस्ट ऑफ द विदारी, दाड़िमा, लोध्र, कपित्थ एंड बीज पूरक शुड बी अप्लाइड ऑन द हेड। यहाँ भी यही बताया है कि इसका नाम दिया है उन्होंने स्पेशली विदारी आदि लेप। विदारी आदि लेप को उन्होंने बताया है कि विदारी, दाड़िम, लोध्र, दधित, बीज पूरकम, इनको लेके इनका पेस्ट बनाना है और पेस्ट बना के इनको हमें जो है हेड पर अप्लाइड करना है, जिससे कि हमारे पेशेंट का बर्निंग सेंसेशन जो है वो और एक्सेसिव थर्स्ट है उसमें हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके अलावा जो हम बात करते हैं तो अभी हमारा ये बर्निंग सेंसेशन की पेशेंट हम सभी को स्पेशली गायनिक प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इसमें जो मुझे कुछ स्पेसिफिक मिले हैं उसी के बारे में मैं बता रही हूँ कि आमलकी सभी एकदम कॉमन है और सब जानते हैं कि ये जो है वो पंचरस युक्त हमारी औषधि है और स्थापना में रसायन है। इसका तो क्या मतलब एकदम डायनेमिक ड्रग के नाम पे इसका नाम लिया जाता है। तो आमलकी को हमने फ्राइड किया घी में और उसके बाद उसको जो है साउर ग्रूल जैसे मंड में हमने अम्लीय मंड में उसको हमने भिगो दिया और उसके बाद उसका जब हमने लेप किया तो ये बर्निंग सेंसेशन को जो है वो समाप्त कर देता है। इसके अलावा उन्होंने और बताया है कि पलाश तरुजे दिहते, मतलब कि जो कोल्ड पेस्ट हम करेंगे जो पलाश की यंग लीफ से, जिसे हम लोग कहते हैं कि एकदम जो है नए पत्ते या कोमल पत्ते जो आते हैं उनको भी हमने जैसे अभी हमने आमलकी को फ्राइड करके घी में फ्राइड करके और उसको साउर ग्रूल के साथ लिया था या अम्लीय मांड के साथ लिया था, ऐसे साउर ग्रूल के साथ अगर हमने पलाश के नए पत्तों को भी लिया, कोपल जिसे कहते हैं, उन पत्तों को लेके भी अगर हमने उसको पीस के और उसके साथ हमने लगाया तो भी हमारे पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन से काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो इस तरह से और एक उन्होंने और अच्छे से बताया है कि जब फ्रोथ अराइजिंग फ्रॉम द पाउंडेड लीव बदरी और नीम इज आल्सो यूज फॉर दिस। नीम को या बदर पत्र को हमने भिगो के रखा है और उसमें से जो झाग अगर निकल रहा है, जो फ्रोदिंग उसमें से हो रही है, उस फ्रोदिंग को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स देगा। तो इस तरह से हमें लेप क्रिया पे हमें बताया है। इसके अलावा एक और अच्छा बताया है कि तृष्णा दाह को शांत करने के लिए काले चंदन, अनंत यष्टि, बदर कांजी के, मतलब उन्होंने काले को, चंदन को, अनंत को, मधुयष्टि को, बदर को कांजी के साथ घृत के साथ उसको मिला के और उसको लेप करना है तो वो तृष्णा को, दाह को और हमारी जो तृष्णा को, दाह को शांत करेगा। तो इस तरह से ये पेशेंट का बताया है। अब हम कुछ स्पेसिफिक बात करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास पीसीओडी के पेशेंट आते हैं और हम लोग आयुष दर्पण के फोरम पे कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, क्योंकि अभी कॉमन जहाँ सभी लोग उपस्थित हैं तो मैं थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो हेयर रिमूवर का यूज़ करते हैं, हमारे शास्त्रों में हेयर रिमूवर बहुत अच्छे से बताए गए हैं। उन हेयर रिमूवर में मैंने कुछ योग लिए हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले अगर हमने उसमें लिख लिया है कि शंख आफ्टर बर्निंग, जो शंख है उसको हमने बर्न किया और उसके वो डिप्ड इन द जूस ऑफ कदली, जो कदली का रस है, कदली के रस में, केले के रस में हमने उसको डिप कर दिया और उसके बाद उसको हमने इसको रब किया। किससे रब किया? विद युक्कर और पीमेंट, हड़ताल की मात्रा में हमने उसको बराबर से मिला दिया और उसके बाद जो उसको मिला दिया, जैसे हमने कदली के साथ जब उसको बर्न करने के बाद रब किया और रब करने के बाद उसमें हड़ताल की बराबर मात्रा में मिलाया इक्वल क्वांटिटी में और फिर प्राइवेट पार्ट्स में लगाएंगे तो उसके वो हेयर को रिमूव करता है। इसके अलावा उन्होंने लोम शातन उसमें बताया है कि द पाउडर्ड टेल ऑफ द रक्तांजना डीप्ड इन द मस्टर्ड ऑयल, जो पाउडर टेल ऑफ द रक्तांजना है, रक्तांजन की जो पाउडर को हमने मस्टर्ड ऑयल में डीप किया फॉर ए वीक, अगर हमने एक हफ्ते के लिए रख दिया, रक्तांजना पुच्छ चूड़युक्तम तेलंतु शाष्पम सप्ताह पीयूषी हंति मूल द्रोणम संशयम, बिना किसी संशय के वो जो है वो ये योग जो होता है वो रोम को मूल से नष्ट करता है। इसी के अलावा एक और बताया है कि कुसुम्ब तेल अभ्यंगो व रोमड़ाम उत्पाटित अंतकृता,
तो कुसुम तेल का जो अभ्यंग अगर हम करते हैं तो वो भी रोम शातन की तरह काम करता है या रोम को नष्ट करता है। इसके अलावा आरगवत तेल का वर्णन आया है। आरगवत तेल को हमें क्या करना है कि आरगवत का हमें रूट लेके 40 ग्राम लेना है और लाइम हम का कॉन्च सेल, जो कॉन्च सेल का लाइम मतलब कॉन्च सेल का जो हमने लाइम बनाया है उसके साथ हमने हड़ताल मिलाया और उसको हमने क्या करा, मस्टर्ड ऑयल के साथ कुक्ड किया और उसके बाद उसमें जो है स्पेशली लिख रहे हैं खरजे मूत्र प्रस्तेदु कटु तेलम। यहाँ पे उन्होंने खर मतलब जो है गधा और आज की जो उन्होंने यूरिन को 640 ml की मात्रा में मिलाने को बता दिया और उसके बाद और दिस ऑयल मिक्स, जब हमारा ऑयल बन चुका है, जब ऑयल हमारा अच्छे से मूर्छित हो गया है, उस ऑयल को फिर हमको क्या करना है विद पाउडर्ड शंख पक्व तेलम तदर्थम शंख हरितालम चूर्णितम। हमें शंख और हरिताल के चूर्ण के साथ उसको मिक्स करना है और फिर हमें उसको पेस्ट करना है। तो ये भी जो है वो बालों का रिमूव करता है, इरेडिकेट्स करता है हेयर्स को। इसी प्रकार कर्पूरादि तेलम का वर्णन आया है। कर्पूरादि तेलम में भी इन्होंने ये बताया कि कैम्फर को पाउडर बना लीजिए, कपूर का पाउडर बना लीजिए, उसमें भल्लातक, उसमें कॉन्च सेल, उसमें यवक छार और उसमें रियल गा मतलब मनशिलम। इसमें इसको क्या करना है, मस्टर्ड ऑयल में पका लेना है और उसके बाद उसको जो है हड़ताल इसमें ऐड करना है और इसको भी लोकल एप्लीकेशन में यूज़ करने से जो है वो हमें वो रोम शातन का कार्य मिलेगा। क्षार तेलम, क्षार तेलम में भी इन्होंने बताया है कि हम बहुत अच्छी विधि बताई है, तो मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ कि शुक्ति, शंभुक, शंख, अरलू एंड मुस्काक आर वन। साफ साफ बोल रहे हैं, जो हमारे वो पूरा उन्होंने गण बताए हैं, शुक्ति, शंभुक, शंखानम, दीर्घ व्रंता, समुष्कात, दग्धवा छारम समादायत, खर मूत्रण गोरिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि जनरली हमको वो जो है ये शुक्ति वाला जो जानवी और हड़ताल और मनशिला और यहाँ पे आस यूरिन, ये जो हमें 3 चीज़ें ऐसे यूरिन का भी यूज ज़्यादा माना गया है। तो शुक्ति, शमुका, शंख, अरलू और मुस्का का आर बर्न्ड विद ऐश कलेक्टेड एंड इट इज़ डिकेंटेड विद ऐश यूरिन। ऐश यूरिन के साथ इसको हमने मिलाया, डिकेंट किया एंड द क्षार हमें प्राप्त हुआ और इस विद दिस क्षार 1/8 ऑफ द मस्टर्ड ऑयल इज कुक्ड। हमारे पास जो क्षार की मात्रा थी उनने उसमें उसके 1/8 मस्टर्ड ऑयल इज कुक्ड। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द आत्रे जी ने, आत्रे महर्षि आत्रे जी ने इसको पुनर्वसु आत्रे जी ने इसको बताया और इसको जो फॉर्मुलेट किया है वो अश्विन कुमारों जी ने किया है। तो ये आप हमारा जो है वो एक तरह से हमें योग मिला है और इसको अगर इवन 1 ड्रॉप ऑफ दिस ऑयल इरेडिकेट्स एयर, अगर हम इसकी एक भी बूंद अगर यूज करेंगे तो ये हेयर को इरेडिकेट करता है। और इसके अलावा ये जो है वो अशशाम, कुष्ठ रोगाणाम, पामा, दद्रु, विजर्चिनाम, क्षार तेलम इदम श्रेष्ठम सर्वकृत हरम। मतलब रोम शातन तो है ही है, साथ में इसकी और भी इन्होंने वो बताई है कि कहाँ का इसका इंडिकेशन है। अभी हमारे पास एक पॉइंट और रह जाता है। समटाइम्स हमारे पास कुछ गर्ल्स भी आती हैं, लेडीज़ भी आती हैं, वो ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। समटाइम्स उनको ब्रेस्ट में पेन होता है, समटाइम्स वो कहते हैं लूजनेस लग रही है, समटाइम्स कहते हैं मैडम हैवीनेस लग रही है। तो मेरे को उसके संदर्भ में कुछ इस तरह का कलेक्शन मिला है, तो मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि स्तन पीड़ाया है लेप दो। जैसे जनरली पेशेंट को स्तन पीड़ा होने लगती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, आप प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है या पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम है या समटाइम्स उसको कभी कभी ऐसे भी होता है, तो उसके हिसाब से हम दोषों के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों ने बताया है कि हमको इस यहाँ पर जो है द पेस्ट ऑफ द विशाला रूट, विशाला जो पौधा है, विशाला पौधे का जो हमें रूट लेना चाहिए और उसका हमें पेस्ट बनाना चाहिए और उसको हमें अप्लाइड करना चाहिए, उसका हमें लेप लगाना चाहिए। वो क्या करता है, पेन, ब्रेस्ट का पेन को एलिवेट्स करता है, हटा देता है। और इस तरह से अगर यही और इसी तरह का इफेक्ट जो उन्होंने बताया है वो ये बताया है कि हमें निशा कनक फलाभ्यास, मतलब हमें हरिद्रा के साथ में धतूरा का फ्रूट लेके उसका भी अगर हम पेस्ट बनाएंगे, हरिद्रा भी हमारे पास जो है वो सही होना चाहिए और धतूरा का जो फ्रूट है वो भी हमको, उसका अगर हम पेस्ट बना के अगर हम ब्रेस्ट पे लगाएंगे तो हमारे पेशेंट की जो स्तन पीड़ा है या जो वो कहता है कि ब्रेस्ट में पेन हो रहा है उसमें हमको आराम मिलेगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा स्तन कटनी करने योग कुछ हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमें पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हाँ जो हमारा वो है उसमें हमें थोड़ा सा स्तनने में जो है वो चाहिए, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें हम सेकंड वाला बहुत अच्छा हमको लगा, वो हम बताते हैं कि
महिषी भवन नवनीतम व्याधि बलोग्र तथैव नागबला पिष्टवा मर्दन योगात पीन कठनम स्तनम कुरे। ये तो अगर हम जो पहले वाला बताया है कि ब्रेस्ट अनॉइंटेड विद द मसाज विद द रेड फैट्स मिक्स्ड विद द पाउडर ऑफ द मीट ऑफ द हॉर्स एलिफेंट बफेलो, ये प्रॉब्लम है, इसको हम नहीं बना सकते। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला बता रहा है, सेकंड वाले में हम ये कह सकते हैं कि जो हमें महिषी का मतलब हमें भैंस का जो है नवनीत लेना है और उसको हमें जो है वो व्याधि बलोग्रा तथैव नागबला, तो हमें इसके साथ जो है नागबला और व्याधि बलोग्रा के साथ हमें इसको पिष्टन करना है या इसको हमें पेस्ट बनाना है और उसके साथ अगर हम इसका लेप करते हैं तो हमारे पेशेंट को रिलैक्स मिले होगा। श्री पर्णी तेल के बारे में हम सब जानते हैं। श्री पर्णी का एक दूसरा नाम जो होता है वो गंभारी होता है और इसको तिला तेल को अगर हम कुक्ड करते हैं गंभारी के साथ में, गंभारी पेस्ट के साथ में अगर हम इसको कुक्ड करते हैं, ये तो हम लोग प्रैक्टिकली आजकल यूज़ भी करते हैं और इसको कॉटन स्टाफ के साथ अगर ब्रेस्ट पे अप्लाइड करते हैं तो इट एलिवेट्स द फाइनल ब्रेस्ट ऑफ द वुमेन जनरली आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉजल या समटाइम्स ड्यू टू काशता, एनीमिया या माल न्यूट्रिशन पेशेंट हमारे पास इस तरह के आते हैं। तो श्री पर्णी तेल का जो है जनरली काफ़ी लोग उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं और ये शास्त्रों में वर्णन आया है। इसके अलावा हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो काशीशादी तेलम, काशीशादी तेलम को भी आप कई नाम दिए गए हैं, कई तरह से काशीशादी तेल का वर्णन आया है। तो ये जो काशीशादी तेल है इसमें इन्होंने क्या है, काशीश मिलाया है, अश्वगंधा मिलाया है, लोद्र मिलाया है, गज पिपली मिलाया है और इसको इन्होंने क्या किया है कि इसको तेल के साथ उन्होंने जो है वो कुक्ड किया है। जैसे श्लोक बता भी रहा है कि इन्होंने काशीश तुरग गंधा शावर गज पिपली विपक गए तेलेन यांति वृद्धम स्तन कर्ण बढ़ांग। इन्होंने इसके साथ ये भी बताया कि जो इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट में तो ये हेल्प करता ही करता है, साथ में ये कर्ण रोगों को भी दूर करता है और मेल एंड फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स को भी ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो है ये एक छोटा सा मेरा कलेक्शन था और जिसको मैंने आपके सामने रखा और ये सब अभी कुछ सूत्र रूप में बुक्स में है, कुछ मैंने कलेक्ट किया है, कुछ मैंने यूज़ भी किया है प्रैक्टिकली और कुछ मैं आगे भी यूज़ करना चाहूँगी और आप लोगों से भी कहूँगी कि हम लोग जो मॉडर्न की दवाओं की हेल्प लेते हैं कहीं कहीं उसको हटाकर अगर हम नॉर्मल प्रैक्टिकली इस तरह का अगर यूज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद फिर से। वेरी नाइस मैम, अभ्यासपूर्ण विवेचन, एकदम से अभ्यासपूर्ण विवेचन था, बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल वेरी नाइस एज यूजुअल। Thank you very much. Yeah. Any questions, doctors? किसी को कुछ पूछना है तो लेप फॉर वजाइनल पेन बस्ती में अन्नी इंटरनली दे सकते क्या मैम? एक्चुअली लेप का मतलब हमने देखो जहाँ हम लोग यहाँ चिकित्सा कर रहे हैं वहाँ हम यही बता रहे हैं कि योनि को जो बताया गर्भाशय मुख द्वारम। अभी क्योंकि मैं लेप चिकित्सा की बात कर रही हूँ तो गर्भाशय मुख द्वारम की ही बात कर रही हूँ। जो गर्भाशय का मुख है, गर्भाशय का जो द्वार है वही योनि है। तो जो लेपन चिकित्सा का जो शास्त्रों में वर्णन आया है वो उन्होंने यही बताया है कि हम यहाँ पर वल्वा, वजाइना और या तो फिर थोड़ा सा लेबिया मेजोरा तक यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर हम नहीं जा सकते। Any more questions? Thank you very much, Dr. Ranjana ma'am. So moving forward with our webinar, so I think we are dealing with various interesting topics. So now in this series of webinar, I would like to call upon Dr. Kamini Dhiman ma'am for the next session. डॉक्टर कामिनी धीमान मैम, तो मुझे लगता है मैम का परिचय देने की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है। सो आज का टॉपिक है मैम का योनि पिचू एंड मात्रा बस्ती। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई वेलकम डॉक्टर कामिनी धीमान मैम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ आयुष दर्पण, जो कि हमेशा से सपोर्ट करती है हर चीज में
और मैडम एसोसिएट प्रोफेसर है इन द पीटीएसआर डिपार्टमेंट AII न्यू दिल्ली और काफी अनुभवी है। तो अंजना मैम आप स्क्रीन शेयर स्टॉप करेंगे? या मैम नमस्कार, गुड आफ्टरनून। नमस्कार सबको। या कंटिन्यू। हाँ नमस्कार सबको। डॉक्टर नवीन जोशी जी, वंदना मैडम, शिल्पा मैडम, अंजना सक्सेना जी और जो भी हमारे आयुष दर्पण फैमिली के लोग हैं इसमें अभी जुड़े हुए हैं, और मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन, 2 स्टूडेंट्स ने भी मेरे यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया, अंजना, डॉक्टर अंजना एंड डॉक्टर अंजलि। होप यू एंजॉयड द प्रेजेंटेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। बहुत सारी बातें उन्होंने आपको बताई, होपफुली आपके लिए, सबके लिए हेल्पफुल था। एंड जो मुझे आपने टॉपिक दिया है बहुत यूजफुल है, बहुत हम लोग यूज करते हैं, बट उसमें कहाँ हमें उसको नहीं करना है या क्या प्रिकॉशन लेना है या क्या हम करते हैं, वो थोड़ा सा मैं बताऊंगी। बाकी आप सब लोग जानते हो कि व्हाट इज यूनिपिचू, व्हाट इज मात्रा बस्ती, यू ऑल नो। So I will go with the very short understanding of that topic. And Unipichu, what is that? सब लोग जानते हैं हम कि ये पिचू क्यों बोला है उसको, और ये योनि मार्ग में रखा जाता है इसीलिए दैट इज यूनिपिचू, ठीक है। और ये बनता है एक कॉटन बॉल से। कॉटन बॉल को गॉस पीस में रैप करके एक छोटा सा पिचू बनाया जाता है, कारपास बॉल जो बोला जाता है उसको। देन उन सबको, सबसे पहली बात जो मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि व्हेन वी यूज दिस यूनिपिचू, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, कि दैट शुड बी ऑटोक्लेव्ड। सबसे पहली बात, जैसे मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है या शायद बताया होगा कि वी हैव टू ऑटोक्लेव, अदरवाइज ये कि पेशेंट को हम फायदा देने की बजाय इसको हम नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको जैसे भी आपके पास ऑटोक्लेव मशीन नहीं है तो आप उसको कुकर में भी ऑटोक्लेव कर सकते हैं। यू पुट इन स्टील जो डब्बा आता है उसमें, जिसमें छेद रहता है, जिसमें हम पनीर बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो दैट वी कैन यूज दैट स्टील कंटेनर। उसमें जितने भी आपने गॉसपीस बनाए, सॉरी टेम्पुन्स बनाए हैं, पुट दोज टेम्पुन्स इन दैट बॉक्स एंड उसको आप स्टीम लगा सकते हैं कुकर में। 8 to 10 स्टीम्स जो है वो हम लगा सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस में छोटे से क्लिनिक में भी प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन यूज दैट, और उसको ऑटोक्लेव करने के बाद वी शुड यूज दैट थिंग। एंड सेकेंडली कि वेयर डिड दिस यूनिपिचू शुड नॉट बी यूज्ड, कहाँ हमें यूज नहीं करना है। अनमेरिड गर्ल में नेवर यूज यूनिपिचू। सेकेंड थिंग, मेंस्ट्रुअल फेज में तो, ब्लीडिंग फेज में तो वैसे भी वी नेवर यूज। एंड थर्ड थिंग कि जहाँ पेशेंट को वेजाइनल डिस्चार्ज है, एक्सेसिव डिस्चार्ज, इफ देयर आपको लगता है कि एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहां डोंट यूज यूनिपिचू डायरेक्टली, उसको हमें प्रक्षालन करके क्लीन करना है। एंड देन आफ्टर प्रक्षालन यूज यूनिपिचू, ठीक है। ये 3 चीजें होंगी। अब ये कि व्हाई यूनिपिचू, ठीक है। सबसे पहला समझ आएगा कि व्हाट इज यूनिपिचू, व्हाई इट शुड बी यूज्ड, व्हेन इट शुड बी पुट, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस थिंग। तो हम यूनिपिचू को इंट्रोड्यूस करते हैं, वी इंट्रोड्यूस इनसाइड द विजाइना। तो व्हाट इज देयर, वहां क्या है? देयर इज विजाइनल एपिथेलियम, ठीक है। विजाइनल एपिथेलियम के आगे अगर हम देखें तो वहां पर सर्विक्स है। सर्विक्स से आगे वी सी दैट यूट्राइन एंडोमेट्रियम, यूट्राइन एंडोमेट्रियम से आगे है फैलोपियन ट्यूब। तो व्हाटएवर द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू दिस यूनिपिचू, it can transferred through the vagina, through the cervix towards the endometrium, endometrium से आगे जाकर वो fallopian tube की तरफ जाएगा। It means there is effect upon all these organs, जो कि whole of the reproductive system है, यानी कि ये क्षेत्र है, ठीक है। और ये क्षेत्र, this क्षेत्र is dependent upon whole of the क्षेत्र, यानी स्त्री शरीर। तो स्त्री शरीर में जहां कहीं भी डिफेक्ट किसी भी स्रोतस में वहां पर प्रॉब्लम आई है, उस स्रोतस से डिपेंडेंट ये योनि क्षेत्र है। जो योनि है,
गर्भाशय है, फिलिपिन ट्यूब है, ये सारा पूरा ओवरऑल क्षेत्र है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग इनसाइड दी वेजाइना, तो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे यूनिपिचू काम करेगा, नॉट अपॉन दी एक्सटर्नल, राइट. तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस स्पीकर्स ने भी बताया कि व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ वेजाइना, कैसे एब्जॉर्ब होता है, वो मैं थोड़ा उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन कि एब्जॉर्ब हुआ. और फॉर यूनिपिचू व्हेनेवर यूज दिस कषाय वी यूज ओनली घृत और ऑयल. लिपोफिलिक है, लिपोफिलिक है तो दैट ट्रैवल थ्रू दी सेल्स के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रैवल करके दे रीच अप टू दी इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम. वी कैन से दैट पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्टली दे कैन एंटर. तो यानी ऐसा नहीं है कि यूनिपिचू आपने रखा है तो दैट विल हैव इफेक्ट अपॉन ओनली लोकल वेजाइनल म्यूकोसा और सर्विक्स और endometrium. It can act through the systemic circulation also. इसलिए उसको बोला है कि हम कितनी देर के लिए रखते हैं, फॉर 3 hours, 2 to 3 hours रखते हैं. या तो पेशेंट को यूरिन की अर्ज आती है तब तक वी कीप दैट पिचू इनसाइड द वेजाइना. ठीक है, अब हमने वहां पर रखना है और उससे हमें रिजल्ट लेना है. अब रखने से पहले हम क्या करेंगे, वी एडवाइज द पेशेंट टू हैव यूरिन, उसको पास करना है. पेशेंट यूरिन पास करके आएगा. आफ्टर दैट इफ यू इंट्रोड्यूस, तो क्या होगा कि शी विल बी एबल टू होल्ड दैट यूनिपिचू फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन. यूरिन पास नहीं किया है, आपने उसको बोला भी नहीं कि यूरिन पास करके आओ, पेशेंट को पता नहीं है, पेशेंट को आपने पिचू रख दिया. Within half an hour, what will happen? Patient will tell that I have to go for maturation. You have to remove that pichu. तो क्या होगा? Desired effect will not be achieved. Okay? तो आपको रिजल्ट इतना नहीं मिलेगा. तो उसको आपने बोलना है कि you have to pass urine. First thing. Second thing, when we introduce this unipichu, position of the patient with flexed thighs, उसको सुपाइन पोजीशन में लिटाना है, जैसे कि लिथोटोमी पोजीशन रहती है वैसे. एंड पिचू इंट्रोड्यूस करते हैं तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस इट अप टू दी पोस्टीरियर फॉर्निक्स. पोस्टीरियर फॉर्निक्स में आपको इंट्रोड्यूस करना है. व्हाई अप टू पोस्टीरियर फॉर्निक्स, क्यों वहां तक ले जाएंगे? व्हाई नॉट इन द इंटीरियर फॉर्निक्स, व्हाई नॉट द लिटरल फॉर्निक्स? फॉर्निक्स मीन्स कि जो सर्विक्स है वो यूट्राइन वेजाइनल, उसमें सर्विक्स है यहाँ पर. ठीक है, तो ये जो ऊपर का पोर्शन हो गया एंटीरियर, नीचे का हो गया पोस्टीरियर, साइड वाले हो गए लेटरल फॉर्निक्स. तो पोस्टीरियर फॉर्निक्स जो नीचे वाला पोर्शन है वहां हमने पिचू रखना है. ठीक है, सर्विक्स है उससे नीचे आपने पिचू एंटर करना है. यहाँ हमने पिचू रखा तो व्हाट विल हैपन, ये होगा कि व्हेन पेशेंट अगर उठती है तो ये होगा कि सर्विक्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली विल बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दैट पिचू. The cervical area is rich in blood supply और वहां उसकी एब्जॉर्प्शन जो है बहुत अच्छे से होती है. ठीक है, एंड देन जो उसका पोजीशन रहता है जो विजाइना का, दैट इज एच शेप. एच शेप है तो पीछे एरिया है, जगह मिल गई है, पिचू वहां इंट्रोड्यूस किया है तो इट विल बी होल्डेड, वहां होल्ड होगा. एंटीरियर में रखा है तो स्लिप डाउन होकर वो निकल सकता है, लेटरल में है तो स्लिप डाउन होकर निकल सकता है, बट पोस्टीरियर में है तो इट विल बी रिटेन्ड ओवर देयर. यानी पोस्टीरियर फॉर्निक्स में रखने का पर्पस एक तो मैकेनिकल है कि इट विल बी रिटेन्ड ओवर देयर, एंड सेकेंड थिंग आपको रिजल्ट चाहिए. यू हैव टू गेट रिजल्ट फ्रॉम द पेशेंट फ्रॉम दैट मेडिकेशंस, तो दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड और वहां आपको रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई, क्या पिचू है, कैसे रखेंगे, उसमें क्या ध्यान देना है. ठीक है, अब किस में देना है, कहाँ हम इसको यूज करते हैं. तो ऑल दी योनि व्यापद, मैक्सिमम जो योनि व्यापद है उसमें यूनिपिचू बताया है, और किससे रखेंगे वो मैं थोड़ा थोड़ा एक के बाद एक बताती जाती हूँ कि कहाँ हम इसको यूज करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो पेशेंट का एग्जाम्पल में जैसे हमेशा देती हूँ कि इनफर्टिलिटी की पेशेंट आई है, आपने उसको इन्वेस्टिगेशंस बताए हैं,
मेरे पास पेशेंट आई थी, उसको हमने इसको इन्वेस्टिगेशन बोला कि आपको अभी HSG करना है, वेदर ट्यूब्स ओपन है कि नहीं है, ठीक है। वो गई उसके लिए, देन वापस आ गई कि दे रिफ्यूज्ड कि योर सर्विक्स इज सो रिजिड, वी आर नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस द कैन्युला, HSG कैन्युला इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाई थी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, पिचू क्या करता है, व्हेन वी इंट्रोड्यूस पिचू, उसका फंक्शन क्या है, इट डू शोधन, इट कैन डू रोपण, वो बल्य भी हो सकता है और भ्रूण भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो सर्वाइकल एरिया है, जो रिजिड है, उसे हमें बल प्रदान करना है, उसको सॉफ्टन करना है और उसको हमें रिवाइव करना है। टू रिवाइव दैट सर्वाइकल एरिया, उसको बल देने के लिए हमने उसको बलादी ऑयल से यूनिपिचू रखा, 7 डेज के लिए रखा, फिर 7 डेज का गैप दिया, फिर 7 डेज के लिए रखा, फिर गैप दिया, फॉर 21 डेज टोटल ड्यूरेशन वाज कि हमने उसको पिचू अप्लाई किया। देन वी इंट्रोड्यूस्ड यूट्राइन साउंड इन आवर ओपीडी, हमारी हॉस्पिटल में वी इंट्रोड्यूस यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड हमने इंट्रोड्यूस करके देखा कि हाँ अब साउंड उसमें इंट्रोड्यूस हो सकता है। देन वी एडवाइज्ड हर कि आप अब HSG के लिए जा सकते हो। तो क्या एक्शन हुआ यहाँ पर यूनिपिचू का, यूनिपिचू ने किया ब्रूहण ऑफ दैट एरिया एंड सॉफ्टनिंग ऑफ एरिया ऑफ द सर्वाइकल, जिसमें जो कनेक्टिव टिश्यू थे वो एकदम टाइट थे, तो कनेक्टिव टिश्यू की लूजनिंग हुई एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, दैट वाज द आउटकम ऑफ दैट पिचू, ये आउटकम हुआ, ठीक है। अब 1 बाय 1 योनि व्यापत की अगर हम बात करते हैं तो वातला योनि व्यापत जो कि वायु से होता है, ठीक है, वायु से योनि व्यापत हो रहा है तो उसमें क्या होगा, सिम्टम्स क्या है कि वायु है, रुक्ष है, खर है, क्षय किया उसने, ठीक है, रुक्षता हो गई, क्षरता हो गई, क्षय हो गया, वहां पर पूरा जो है शोष भी हो जाता है समटाइम्स, और पेशेंट को पेन भी होती है। इस कंडीशन में यूनिपिचू बोला है कि आपको वहां यूनिपिचू रखना है विद गुडुची आदि तेल। गुडुची क्या करेगा, गुडुची आप सब जानते हैं कि गुडुची जीवनीय है, रसायन है और वातशमन है, बहुत अच्छे से वो ग्रहण करता है उस एरिया को, ठीक है। तो अगर हम गुडुची आदि तेल का यूनिपिचू रखते हैं तो वो स्निग्ध भी है, स्निग्धता है, वातशमन करेगा, एब्जॉर्ब होकर उस एरिया में आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। सेकेंड थिंग आ जाती है पित्त पे, अगर हम जाते हैं पित्तला योनि व्यापत, पित्तला योनि व्यापत होगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन होगी, दाह होगा, समटाइम्स पेशेंट को ज्वर हो सकता है, पाप हो सकता है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगेन आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय पेशेंट कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, कोई पॉजिटिव फैक्टर उनको नहीं मिल रहा है कि इसमें फॉलिकल भी प्रॉपर बन रहा है, HSG भी ठीक है, उसका IUI हो गया, IVF हो गया, नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। पेशेंट हमारे पास आई ओपीडी में, हमने उसका PV एग्जामिनेशन किया। When we do per vaginal examination, we always feel the temperature of the vagina. Even हमने ग्लव्स पहन रखे हैं, even then we feel the temperature, ठीक है। तो when I did PV examination, I felt that वो vagina में थोड़ा सा warmth is increased, वहाँ लोकल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अंजलि वगैरह पीएच की बात कर रहे थे, ठीक है, तो पीएच अल्टर्ड है, वहां पर वार्मथ ज्यादा है, तो जहां उष्णता है वहां स्पर्म नेवर सर्वाइव। कुदरत ने भी स्पर्म को थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर से भी बाहर रखा है क्योंकि वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो पित्तला योनि व्यापक में जहां पित्त बढ़ा हुआ है, तो वेयर स्पर्म कैन नॉट सर्वाइव, उस पेशेंट में फिर हमने किया पंचवल्कल से योनि धावन कर दिया। देन इस ऐसे केसेस में आप कोई भी शीतल ऑयल घृत से सिद्ध उसका जो है तेल है, घी है, उसे यूनिपिचू रख सकते हैं। इसमें हमने भी शतदोष घृत से और जात्यादि घृत से अल्टरनेट यूनिपिचू जो है इसमें रखा। देन उसमें हमने अपना ट्रीटमेंट किया, IVF से फेलियर था तो वो पेशेंट कहीं जाने का मतलब ही नहीं था। देन शी कंसीव्ड और उसका बेबी नॉर्मल डिलीवरी जो हुई। अब
ऑल्दो हमें साथ में ओरल मेडिकेशन भी उसको देना पड़ा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसको हमें पित्त शमन, क्योंकि ऑलरेडी उसकी पित्त प्रकृति थी तो पित्त उसके शरीर में वैसे ही बढ़ा रहता है, तो वहां हमें थोड़ा सा ओरल, मतलब योनि पिच्चू में क्या होता है कि वी हैव टू गिव ओरल मेडिकेशन अलोंग विथ योनि पिच्चू। ठीक है अंजलि, तुम्हारा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। वी हैव टू गिव ओरल मेडिकेशन विथ योनि पिच्चू। तो उसमें भी हमने कुछ ओरल मेडिकेशन जो है वो पेशेंट में चालू रखे थे। अब थर्ड थिंग जब आते हैं तो श्लेष्मला योनिमापद। श्लेष्मला यानी कि पेशेंट को एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हम पिच्चू रख सकते हैं कि नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट को, तो आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा दोष है। वायु की वजह से है, पित्त की वजह से है, कफ की वजह से है, कौन सा दोष है। ठीक है, वायु आपको लग रहा है तो आप उसको जो है दशमूल कषाय से योनि प्रक्षालन कीजिए। पित्त लग रहा है तो पंचवल कल से करिए। कफ लग रहा है तो त्रिफला कषाय से, देन आप उसमें योनि पिच्चू का जो है प्रयोग कर सकते हैं पेशेंट। ठीक है, इस प्रकार से दोष जो है पहचानने के बाद अगर आप योनि पिच्चू करते हैं तो आपके पेशेंट में बेनिफिट मिलेगा। अब आगे चलते हैं तो असृजा योनिमापद। असृजा यानी लब्धे गर्भे अपि सासृजा। कंसीव तो हो रही है पेशेंट, बट उसको प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है पेशेंट को, और उसमें जो है पेशेंट एबॉर्शन हो जा रहा है। ऐसी कंप्लेंट लेकर आपके पास आती है। तो ऐसी अगर मेरे पास पेशेंट आई है तो उसमें हमने क्या किया कि उसमें भी हमने ऐसा ही किया कि शतधा घृत जो है आप योनि पिच्चू रख सकते हो, लेकिन उसमें एक योग शास्त्रोक्त जो बताया है दैट इज अशोकलोत्र, इंद्रायव और शतावरी। इससे सिद्ध घृत जो है आप उसमें यूज कर सकते हैं। और एक और योग है उसमें बताया है घंबारी त्वक और इंद्रयव त्वक। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंद्रयव। इंद्रयव है कुटज के बीज। अब बीज त्वक निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पेशेंट्स में कि घंबारी त्वक लीजिए, उसमें इसका कुटज की त्वक लेकर भी आप बना सकते हो घृत। और ये सिद्ध घृत अगर हम जिसमें रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस है उन पेशेंट्स में योनि पिच्चू देते हैं तो इट गिव्स मार्वेलस रिजल्ट्स। जो भी आप ओरल मेडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन इफ वी गिव योनि पिच्चू इन दैट पेशेंट तो आप उसको बहुत अच्छी हेल्प जो है उस पेशेंट को कर सकते हैं, क्योंकि ये हुआ है पित्त और वायु दोनों की वजह से। असृजा योनिमापद यानी लब्धे गर्भे अपि सासृजा। पित्त है लेकिन वो पित्त जो है उसको बाहर निकाल दे रहा है उष्णता की वजह से। इसका ऑपोजिट ये आ जाता है एक अरजस का। अरजस का में भी पित्त है, वायु है, लेकिन पित्त की वजह से वहां हो रहा है लॉस ऑफ ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग कम हो रही है। ठीक है, उसको आप स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं या एमिनोरिया बोल सकते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है उसको अरजस का योनिमापद। इसमें भी हम लोग योनि पिच्चू यूज करते हैं। इसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो पित्त शमन के लिए यूज करना है, लेकिन आपको साथ में ब्रूहण करना है। पित्त शमन के साथ ब्रूहण भी करना है। तो यहाँ फिर ये जो है काश्मीर अधिकृत इंडिकेटेड है और वो सब लोग यूज करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन मुझे लगा कि आई शुड मेंशन दैट थिंग आल्सो। काश्मीर अधिकृत इज वेरी मच बेनिफिशियल जहां आपको पेशेंट मिल रहा है जिसमें पीरियड्स कम आ रहे हैं। ओरल मेडिकेशन तो आप दीजिए, लेकिन ओरल के साथ इफ वी यूज लोकल थेरापी तो इट इज वेरी मच बेनिफिशियल। अब इसके बाद आता है अचरना योनि कंडू। बहुत सारी ईचिंग पेशेंट को हो रही है और इसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक बहुत बार हम लोग करते हैं कि बहुत लोग यूज करते हैं नींब ऑयल। नीम के तेल से योनि पिच्चू रखते हैं या नींबकवात से प्रक्षालन करते हैं। पर इसमें प्रिकॉशन व्हाट वी हैव टू टेक कि अगर पेशेंट कंसीव होना चाह रही है, इफ शी इज वांट्स टू कंसीव, तो नींब कषाय प्रक्षालन नहीं करें, नींब तेल से योनि पिच्चू नहीं रखना है। ऐसे केसेस में फिर हम लोग यूज करते हैं धातकीय आदि तेल योनि पिच्चू। इट इज वेरी मच अवेलेबल और उसको आप यूज कर सकते हो। और कोई भी और ऑयल जैसे हम लोग कई बार यूज करते हैं, कासी सादी भी यूज करते हैं, करंज भी यूज करते हैं, बट जो धातकीय आदि तेल है इट इज गिविंग वेरी गुड रिजल्ट इन केसेस ऑफ योनि कंडू।
अब प्रेगनेंसी में भी समटाइम्स पेशेंट को इचिंग होती है, तो वहां क्या पिचू यूज करना है कि नहीं करना है? वहां भी हैव टू यूज पिचू विथ प्रिकॉशन। प्रिकॉशन लेते हुए आप योनि पिचू यूज करिए विथ धातक्यादि ऑयल, ठीक है। धातक्यादि तेल उसमें भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। और जो शल्यक्यादि तेल अभी बहुत लोगों ने भी मेंशन किया, डॉक्टर अंजना ने भी मेंशन किया, शल्यक्यादि तेल वो भी प्रेगनेंसी में इंडिकेटेड है। उपप्लुता योनि व्यापक जो बोलते हैं उसको, उसमें शल्यक्यादि तेल बनाना पड़ता है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। दैट यू हैव टू प्रिपेयर एंड उसको आप योनि पिचू दे सकते हो। अब आता है उदावरता योनि व्यापक। उदावरता यानी डिस्मेनोरिया, जिसमें कि वायु प्रतिलोम हुआ है और पेशेंट को पेन हो रही है। इस केसेस में तगरादि तैल योनि पिचू बताया है। तगर क्या है? वेदना स्थापन है, निद्रा जनन है, ठीक है। ओरली अगर लेते हो तो निद्रा आती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हेल्प करता है। तो वहां क्यों तगरादि ऑयल का योनि पिचू बोला? जैसे आई टोल्ड यू कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, रिच ब्लड सप्लाई है, सर्वाइकल एरिया से भी वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑल्सो तगरादि तेल जिसमें की तगर है वो एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक इफेक्ट भी दे सकता है। तो जैसे ही आपने तगरादि तेल का योनि पिचू पेशेंट को दिया जो कि मैरिड है, ठीक है, अनमैरिड गर्ल में डिस्मेनोरिया में नहीं यूज करेंगे, मैरिड है उसमें अगर तगरादि तेल का योनि पिचू आपने यूज किया तो दैट विल गिव बेनिफिट टू योर पेशेंट, ठीक है। जैसे कि तगर को ये भी कर सकते हैं कि करते हैं हम लोग यूज, जैसे कि आर्थराइटिस के पेशेंट है तो उसके पेस्ट बना के उस पे जहाँ पेन है वहां लगाया जाता है, तो वो वायु शमन भी करता है। तो वैसे ही तगरादि तेल वात शमन करके पेशेंट को बेनिफिट देगा, आपके पेशेंट में पेन में जो है वो बेनिफिट देगा। इसके बाद है इरोजन। सर्वाइकल इरोजन जो है उसमें आप अगर अग्निकर्म नहीं कर सकते, क्षार कर्म नहीं कर सकते, तो वहां पर योनि पिचू इज वेरी मच बेनिफिशियल। जैसे मुंह में छाले आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मुलेठी लगाते हैं ना, खदीर लगाते हैं। तो वैसे इसमें भी आप कर सकते हो। इट इज ऑल्सो इरोजन। गर्भाशय ग्रीवा मुख पे ब्लड हुआ है, ठीक है, तो वहां हम लोग यूज करते हैं यष्टि मधु यष्टि मधु घृत या जातादि तेल, जातादि घृत। इससे योनि पिचू जो है वी कैन यूज इन पेशेंट्स ऑफ सर्वाइकल इरोजन। और इसमें कई बार हम प्रक्षालन करने के बाद भी पिचू यूज करते हैं। अगर पेशेंट को डिस्चार्ज है, ज्यादा डिस्चार्ज, तो नेवर यूज पिचू डायरेक्टली, प्रक्षालन कर लीजिए एंड देन यू यूज पिचू। अब एक योनि व्यापक बताया, पुत्रग्नि योनि व्यापक। पुत्रग्नि योनि व्यापक में भी योनि पिचू हेल्पफुल रहता है। उसमें यूज करते हैं उदुम्बरादि तेल। उदुम्बर क्या करेगा और किस में पुत्रग्नि होगा? यानी कि कंसीव हो गई है, 12 वीक्स है, उसके बाद एक्सपेल हो गया, 16 वीक्स है फिर एक्सपेल हो गया, 20 वीक्स है एक्सपेल हो गया। तो यहाँ क्या पैथोलॉजी आती है? पैथोलॉजी इज कि सर्वाइकल ऑस जो है वो लूज है, इंटरनल ऑस ओपन रह रहा है, और जैसे ही एटियोलॉजिकल फैक्टर कुछ मिलता है तो एक्सटर्नल ऑस भी ओपन हो जाता है एंड इट इज बीइंग एक्सपेल्ड। ऐसे केसेस में हम लोग तो वो सर्वाइकल एनसेफलाइटिस तो करते ही हैं, बट नहीं करना है या नहीं कर पाते तो वहां हम क्या करेंगे? उदुम्बरादि तेल से योनि पिचू करेंगे। एंड व्हाट इट विल डू? उदुम्बरादि तेल क्या करेगा? उसको टाइटन करेगा, ठीक है। सर्विक, जैसे मैंने बोला कि इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दैट एरिया एंड सर्वाइकल, जैसे कि हमने प्रीवियस केस में क्या किया, उसको लूज किया था, सूचीमुखी योनि था, उसको हमने वहां पर लेक्सिटी चाहिए थी। सर्वाइकल एरिया जो है उसमें टाइटनिंग थी, वो उसमें साउंड नहीं जा पा रहा था, तो वहां हमें थोड़ा सा उसको लेक्सिटी चाहिए थी। इस केस में हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा टाइटन करना है, तो ड्रग हमने चेंज कर दिया, वहां हम लोग यूज करेंगे उदुम्बरादि तेल योनि पिचू, ठीक है। सेम एज की लेक्सिटी आपको मिलती है पोस्ट मेनोपॉजल में या 35 प्लस या 40 इयर्स फीमेल में, जिसमें पेशेंट को सिस्टोसील होता है। सिस्टोसील यानी कि इंट्रावेजाइनल वॉल लेक्सिटी हो गई,
क्यों हुआ है, होम डिलीवरी हिस्ट्री है, कॉन्स्टिपेशन हिस्ट्री है, रिपीटेड कफिंग की हिस्ट्री है, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ते हुए पेशेंट का वो एरिया लैक्स हो गया, ठीक है, लैक्सिटी आ गई। अब वहाँ ऑपरेशन इसका इलाज है, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें यूनिपिचू रखते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो मैंने बहुत बार शायद दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर किया होगा कि उसमें हम लोग वेशवार से भी यूनिपिचू रखते हैं, चांगेरी ग्रिड से भी यूनिपिचू रखते हैं, और हमने तो लज्जालू कल्क को भी गॉस पीस में कवर करके उससे भी यूनिपिचू रखा है, तो वो उसको जो है टाइटन करता है, एंड सिस्टोसील जो है उसको एरिया जो है इंट्री चैनल वॉल जो है उसको टाइटनेस देता है। जहाँ पेशेंट को लैक्सिटी है, इनकॉन्टिनेंस है, शी इज नॉट एबल टू होल्ड यूरिन, वहाँ आप इस प्रकार का यूनिपिचू जो है पेशेंट में रख सकते हैं। बहुत बार आपके पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं, ठीक है, तो वहाँ इसको आप यूज कर सकते हैं एज लोकल थेरेपी। अब गर्भिणी परिचर्या, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भिणी परिचर्या में 8th मंथ के बाद यूनिपिचू रखने के लिए बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि विजाइनल एरिया को वहां पर आपको यू हैव टू मेक प्रिपेयर, लेबर के लिए आपने उसको प्रिपेयर करना है। रोज ऑयल लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी लैक्सिटी ठीक होगी, मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग इफेक्ट उसके अंदर आएगा कि लेबर के टाइम पे वो स्ट्रेच हो सकती है विजाइना, पेशेंट में टियर नहीं होगा, सेकेंड स्टेज डिले नहीं होगी, ठीक है। एंड फॉर दैट बलातेल पिचू जो है वो पेशेंट में रखा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये कुछ एग्जांपल जो थे हम यूनिपिचू जो है वो यूज करते हैं। अब मातृबस्ती, मातृबस्ती आप सब लोग देते हैं, आप सबको पता है कि मातृबस्ती हम पेशेंट में देते हैं। अब उसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, ये देखना है कि यू हैव टू एडवाइस पेशेंट कि खाली पेट नहीं देना है। हम लोग तो क्या करते हैं कि पेशेंट ने अभी कुछ खाया, अभी हाथ धोए तुरंत ही उसको दे दो, इस प्रकार का इंडिकेशन अनुवासन के लिए है। तो मातृबस्ती के लिए भी ऐसे ही करते हैं, पेशेंट ने कुछ खाया है, हैंड वॉश किया, तुरंत उसको मातृबस्ती दे दो, तो आफ्टर उसके शॉक या कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी आपने ऑयल लिया है मातृबस्ती के लिए या ग्रित लिया है, जो भी आपने सिरिंज में लिया है, एंड तक इंट्रोड्यूस नहीं करना है। थोड़ा सा 0.5 ml 1 ml आपकी सिरिंज में इट शुड बी रिमेन्ड। क्यों? आपने पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करोगे, साथ में एयर भी इंट्रोड्यूस करोगे, तो वो वहां पर व्यापक करेगा। बहुत सारी बार स्टूडेंट से गलती हो जाती है हमारे कि बात कर रहे हैं, दे दिया, पूरा सिरिंज इंट्रोड्यूस कर लिया, तो साथ में चली गई एयर भी, तो बहुत छोटी मिस्टेक है लेकिन बहुत बड़ा व्यापन हो सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 0.5 ml 1 ml ऑयल शुड बी रिमेन। थर्ड थिंग, मातृबस्ती देने के बाद होल्ड उसका थोड़ी देर रहता है, उसके लिए आपको ये करना है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं बिजी, उसका माइंड जो है थोड़ा बिजी रखना है। उसको हम लोग तो थोड़ा सा ये बताते हैं कि मंत्र बोलिए आप या ऐसा कुछ जो है, उसको माइंड उस तरफ डाइवर्ट करना है। अदरवाइज क्या होगा, पेशेंट तुरंत उस तरफ सोचते कि मुझे भी इंट्रोड्यूस किया है, मुझे भी मोशन आएगा, मोशन आएगा, मोशन आएगा, और वो होल्ड नहीं कर पाते। फॉर दैट उसका मन जो है उसको आपको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, बिजी रखना पड़ेगा, सो दैट इट कैन बी रिटेन फॉर सम टाइम। जो आप चाहते हो थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है उसका बढ़ेगा, तो वहां पर एब्जॉर्ब होकर वो इफेक्ट देगा, ठीक है। अब कहाँ कौन कौन सी बस्ती देते हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट यू नो। जो कॉमन प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग है या एमिनोरिया है, उसमें हम अलग अलग डिफरेंट ऑयल भी सिलेक्ट। पर काम कैसे करेगी? सबसे पहली बात, जो एग्जाम्पल दिया वो क्या दिया कि जैसे हम पौधे को पानी देते हैं, पानी दिया, पौधा पेड़ पूरा खिल गया, पत्ते आ गए, फल आ गए, फूल आ गए, फूल आ गए फिर फल आए, सॉरी, है ना, फूल के बाद फल आते हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो है उसका पोषण होगा अगर आपने पानी दिया। लाइक दैट
बस्ती को भी सेम एग्जाम्पल दिया है शास्त्र में कि अगर आप एनल रूट में बस्ती देते हो तो पूरे शरीर में वो जो बस्ती का वीर्य जो है एब्जॉर्ब होकर इफेक्ट देता है, वो उसका पूरा सेल टू सेल जाकर वो इफेक्ट देगा। तो वो कैसे देता है कि उसका वीर्य अपान से जाता है समान में, ऐसे रेफरेंस भी है और हम देखते भी हैं कि इट गोज फ्रॉम अपान टू समान। समान वायु से गया वो व्यान में, व्यान से उदान और उदान से प्राण में, और उस प्राण वायु ने सारे वायु मतलब ये 1 by 1 सारे वायु आगे कंट्रोल में आ गए। फिर उस प्राण ने पित्त और कफ वो उसके साथ जो एडजॉइनिंग है उसके ऊपर भी इफेक्ट डालकर पूरे शरीर में उस बस्ती का वीर्य जो है वो जाता है और आपको इफेक्ट करता है। यानी इस जो बस्ती का वीर्य शरीर के सभी पार्ट में इस प्रकार से वायुओं से पहुंचता है। अब किस व्याधि में कौन सी बस्ती देंगे, स्पेसिफिकली हम स्त्री रोग की बात कर रहे हैं तो जैसे सबसे पहला जो कॉमन आता है पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, डिस्मेनोरिया है, दशमूल से बस्ती दीजिए, दशमूल त्रिवृत्त से बस्ती दीजिए, ठीक है। पेन ड्यूरिंग पीरियड्स कई सारी वजह से होती है, कॉन्स्टिपेशन से भी है, कंजेशन भी है वहां पर, और समटाइम्स एंडोमेट्रोसिस आजकल जो बहुत कॉमन है उस वजह से भी पेशेंट को पेन होती है। वहां भी मात्रा बस्ती बहुत अच्छा काम करती है और पेशेंट के हिसाब से आप ड्रग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हैवी ब्लीडिंग है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वहां पर हम लोग चंदन वाला लाक्षादी तेल जो आप सब जानते हो उससे मात्रा बस्ती देते हैं। स्कैंटी है, कम आ रहे हैं ब्लीडिंग, तो सहचरादि ऑयल हम लोग यूज करते हैं मात्रा बस्ती के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी में भी आप लोग पूछते हो कि कौन से तेल की मात्रा बस्ती दें, उसमें हम लोग शतपुष्पा तेल की मात्रा बस्ती जो है, हनुमंतर तेल है, सुकुमार घृत है, उसकी मात्रा बस्ती दे सकते हैं। और जो मुझे स्पेसिफिकली यहाँ बताना है दैट इज मात्रा बस्ती इन प्रसूति, ऑब्स्टेट्रिक्स, क्या उसमें भी मात्रा बस्ती यूज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसमें मात्रा बस्ती आप दे सकते हैं, जैसे कि IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, बेबी का वेट कम है, एसिमेट्रिकल IUGR है, तो वहां पर आप मात्रा बस्ती दे सकते हैं शतावरी सिद्ध तेल से या घृत से, ठीक है। हम लोग तो शतावरी सिद्ध क्षीर बस्ती भी देते हैं, लेकिन क्षीर बस्ती इज डिफरेंट देन मात्रा बस्ती, तो यहाँ मात्रा बस्ती की ही बात कर रहे हैं। तो शतावरी सिद्ध तेल की मात्रा बस्ती कितनी बार देंगे? वीकली वंस, हफ्ते में एक दिन, ठीक है। इसको हम लोग देते हैं जिसमें कि बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, जिसको उपविष्टक बोलते हैं, वहां आप ये मात्रा बस्ती दे सकते हैं। देन क्षीरबला तेल से, नारायण तेल से, एक बहुत अच्छा ऑयल है दैट इज अश्वगंधा बला लाक्षादी तेल, ये इससे भी आप मात्रा बस्ती दे सकते हो। समटाइम्स इन द केसेस ऑफ APH ऑल्सो, थोड़ा सा पेशेंट को स्पॉटिंग हो रही है, प्रेगनेंसी है, थोड़ी सी स्पॉटिंग हो रही है और बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो वहां हम लोग अश्वगंधा वाला लाक्षादी ऑयल से मात्रा बस्ती देते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि लेबर की इनिशिएशन के लिए लास्ट मंथ में लेबर आपको इनिशिएट करना है, वहां भी मात्रा बस्ती जो है हम लोग बला तेल से देते हैं। और एक और अनकॉमन सा दैट इज कदम्ब माश ऑयल, कदम्ब माश तेल से मात्रा बस्ती आप लेबर को इनिशिएट करने के लिए दे सकते हो। दशमूल तेल से भी मात्रा बस्ती दे सकते हो और पेशेंट को लेबर इनिशिएट हो जाता है। अब कदम्ब माश तेल की बात आई तो मुझे एक और बात याद आई कि कदम्ब माश तेल को हम लोग उन पेशेंट्स में भी देते हैं जो लीन है, जिनका वेट कम है लेकिन PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम विद इन द लीन पेशेंट्स, वहां भी आप कदम्ब माश तेल की जो मात्रा बस्ती दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कदम्ब जो है दैट इज हैविंग एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, तो वहां बहुत सारे फॉलिकल्स बन रहे हैं और वो सारी पैथोलॉजी बन रही है, वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से वो काम करके PCOS इन लीन पेशेंट, क्योंकि माश है
उड़द है तो लीन पेशेंट में ही देंगे हम, ओबीज में नहीं देंगे। ओबीज में आपको कफ कम करना है, लीन पेशेंट में आप कदम्ब माश तेल की मात्रा बस्ती दे सकते हो जहां पर पीसीओएस है। ये मैं छोटा छोटा जो पॉइंट्स थे वो मैंने नोट करके अपने पेशेंट्स में जो हमने यूज किया, ये शास्त्रोक्त नहीं था लेकिन हम कुछ शास्त्रोक्त है लेकिन हमने यूज किया वही मैंने बताया है। तो ये थोड़े थोड़े योग जो हम लोग यूनि पिच्चू या मात्रा बस्ती जो यूज करते हैं और कैसे देते हैं मात्रा बस्ती, दैट यू ऑल नो कि हम लोग 30 ml से 60 ml तक देते हैं। पेशेंट को लेफ्ट लेटरल में लिटाते हैं, राइट लेग जो है उसका एब्डोमेन पे रखते हैं। ये सब मैंने इसलिए नहीं बताया कि यू ऑल नो कि हाउ वी कैन गिव मात्रा बस्ती, ठीक है। तो मैंने ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया। देन अभी क्वेश्चंस हैं तो वी विल टेक द क्वेश्चंस। बेटर टू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत सारी बातें हो जाती हैं, कुछ मैं मिस भी कर जाती हूँ, बट क्वेश्चन आएंगे तो आई विल try to explain you. Thank you. Very nice, ma'am. Very nice as usual. Thank you very much. एक क्वेश्चन है डॉक्टर मितुषी ने पूछा है कि कौन से रोग में नहीं देना है मात्रा बस्ती, स्त्री रोगों में? हाँ, कौन से रोग में नहीं देना है मात्रा बस्ती? इट इज वेरी गुड क्वेश्चन कि आपको मात्रा बस्ती कहाँ नहीं देना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया अभी कि ऑयल की स्पेसिफिकली सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मात्रा बस्ती में कि आप, और दूसरा कि जहाँ पेशेंट को विबंध रहता है वहां आपको मात्रा बस्ती नहीं देनी है, क्योंकि विबंध अगर है तो आप मात्रा बस्ती दोगे तो सिर्फ आप विबंध ही ठीक करते रहोगे, लेकिन जो आपको स्त्री रोग में बेनिफिट चाहिए वो नहीं मिलेगा। पहले उसका विबंध ठीक कर लीजिए फिर मात्रा बस्ती। और ड्रग सिलेक्शन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि अगर वो आपका सही नहीं रहेगा तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। यस डॉक्टर कुसुम मैम। मैम बताइए मैम। मैम जैसे आपने बताया सिस्टोसेल में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस जब है तो उसमें उदुम्बरादी तेल की पिचू आपने बोला है, तो वो कितना दिन तक देना है पेशेंट को, कब तक बोलना है उनको? 7 डेज हम लोग देते हैं जनरली। कोई भी मैं थेरापी यूज करती हूँ नॉट मोर देन 7 डेज, चाहे मात्रा बस्ती है चाहे यूनि पिचू है, एक 1 वीक का मैं रखती हूँ। और उसके बाद जरूरत है तो आप गैप देके फिर से रिपीट कर सकते हो। एक ही सेटिंग में नहीं मिलेगा आपको, यू हैव टू रिपीट दैट थिंग if feasible within 7 days, if feasible within 15 days, if feasible then within 1 month। जैसे आपको feasible है आप उसको repeatedly उसको दे सकते हैं। इसको पेशेंट को घर पे लेने को भी बोल सकते हैं? हम नहीं बोलते, हम खुद ही रखते हैं। थैंक यू। Hello, ma'am. Yes. Hello, ma'am. Dr. Yes, yes, please Sudesh continue. from Delhi. Ma'am, it was really wonderful lecture, and you are really awesome orator. मेरे 1-2 क्वेश्चंस है मैम। मैम अभी कुलकर्णी मैम ने बताया था कि नारायण तेल पिचू जो है वो लो AMH हो तो सॉरी नारायण तेल मात्रा बस्ती लो AMH में देना है। हेलो, नहीं मैंने AMH की बात ही नहीं करी है। नहीं आपने नहीं बात की मैम, आई एम जस्ट आस्किंग टू यू। हाँ उन्होंने बोला था लो AMH में मात्रा बस्ती देना है नारायण तेल से, तो क्या लाइक आई हैव गॉट अ वेरी स्मॉल क्लिनिक विद नो यूरिनरी फैसिलिटीज एंड अदर्स, तो क्या मैं उस वहाँ पे नारायण तेल पिचू दे सकती हूँ? इज इट इक्वली इफेक्टिव नारायण तेल पिचू एंड मात्रा बस्ती? बिकॉज आवर मेन मोटिव इज जस्ट टू स्नेह वहां पहुंचे और थोड़ा सा AMH इंक्रीज हो, लाइक पेल्विक एरिया में स्नेह की अब्जॉर्प्शन हो और AMH वैल्यू इंक्रीज हो। मेन मोटिव यही है। इज इट कि मात्रा बस्ती एंड नारायण तेल पिचू विल बी इक्वली इफेक्टिव इन दैट केस? सी AMH वैल्यू की अगर आप बात करते हो तो पहले थोड़ा सा आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई योर डाउट्स कि why you are considering AMH? What is your purpose? When patient is lean and thin with other parameters are normal, first thing our purpose is, and AMH is also low. Our purpose is patient should conceive, right? Yeah. Okay. And this we are not doing any business that patient का AMH कराया उसको डराओ और बोलो कि आपको not at all करना पड़ेगा, चलो आपका IVF, not like that। हमारे पास no not at all। ठीक है, you know AMH ठीक है, PCOD है थोड़ा बढ़ जाएगा, दूसरा है तो उसका कम हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं, आप करा सकते हो इमेज, कोई इश्यू नहीं। बट हमारा फोकस, व्हाट अवर फोकस शुड बी अपॉन ऋतु क्षेत्र अमृत। ओके, वी हैव टू गिव रिजल्ट टू अवर पेशेंट। इमेज लो में भी आपके पेशेंट आराम से कंसीव हो जाते हैं, हाई में भी कंसीव हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। डोंट फोकस अपॉन दोस थिंग, डू काउंसलिंग ऑफ ए पेशेंट, डू राइट ट्रीटमेंट, प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए आप अपनी, और अकॉर्डिंग टू दैट यू थिंक के ऑन व्हाट फैक्टर आई हैव टू वर्क अपॉन, एंड देन प्लान योर थेरेपी। डोंट डिसाइड अकॉर्डिंग टू AMH वैल्यू। ओके, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा मैम, वन मोर क्वेश्चन, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में आपने बोला कि उदुम्बर आदि टेलम का धारण करना है, तो व्हेन वी हैव टू स्टार्ट इट? आप प्रीकंसेप्शन में, यस, गुड previous क्वेश्चन, on the based of when we have to start it good question. after 12 Generally 16 I yeah. advise in my patient preconceptional, right? Preconceptional, okay. Yeah, it's very good preconception, उसमें ही आप उसको पिचू करवा लीजिए, and then advise her to have conception. Okay. Preventive aspect में अगर आप इसको यूज करेंगे तो it is very good, क्योंकि जैसे ही पेशेंट कंसीव हुआ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, आई थिंक इंटरफेरेंस और नहीं करना चाहिए पेशेंट को, इंटरवीन। ठीक है, तो इन प्री कंसेप्शनल पीरियड में गिव दिस। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में भी आपने बोला उदुम्बर आदि टेलम का पिचू धारण करना है, तो पोस्टमेनोपॉजल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड सिस्टोसील एटसेट्रा इनमें भी इक्वली, मतलब वी कैन यूज इट? Yeah, in postmenopausal we are doing very good work. We are doing this UniPichu on basis of PubQ पूरा assessment करके हम लोग करते हैं result. It is best. वो तो आपने अभी बताया है कि 1 week देख के फिर see the effect and then. Yes. वैसे usually urinary incontinence में कितना टाइम के बाद we get the result? टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन दिया और उसको ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। साथ में यू हैव टू गिव ओरल मेडिकेशन आल्सो। ओके ओके। अच्छा, एक दो पेशेंट्स हैं कंप्लीट प्रेसिडेंशिया है और उनमें सर्जरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। No, surgery is contraindicated. I'm just seeing that lady, old lady, 80 years old, and since 10 years she is coming to me with with one full pack of bed sheet folded on perineal area, यूट्रस को सेव रखते हुए 10 साल से देख रही हूँ। क्या उसको अगर बोलूं कि ये पिचू धारण करके भी अंदर करके कुछ करे, कुछ इफेक्ट आ सकता है? कंप्लीट प्रेसिडेंशिया में नहीं फायदा मिलेगा आपको, बिल्कुल भी नहीं। इवन देन आपको करना है तो आप फिर उसके ऊपर हम लोग गोफना बंद बांधते हैं, तो उसको अंदर कर दिया आपने, फिर बंद बांध दीजिए, बंद बांध दे। हाँ, लंगोट सॉर्ट ऑफ बांधते। शायद थोड़ा सा लोकल हो जाए, क्योंकि सर्जरी तो हो ही नहीं सकता है उसकी ऑलरेडी कार्डियक। उसमें फिर आप लज्जालू कल्क वाला प्रयोग कर लीजिए और फिर चांगेरी अल्टरनेट चेंज कर। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, रियली इट वाज वंडरफुल। लो लाइन प्लेसेंटा प्रीवियम हमें दे सकते मात्रा बस्ती, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीवियम में दे सकते हैं, बट ये कि लो लाइन प्लेसेंटा में लो लाइन प्लेसेंटा में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होंगे, तो मात्रा बस्ती आई थिंक शुड बी अवॉइडेड। तो कुछ लोग वैसे भी एनी इंटरवेंशन इन लो लाइन प्लेसेंटा शुड बी डिस्करेज्ड, आई थिंक। हाँ, विजाइनल, हाँ, उसको आपने मात्रा बस्ती दिया नहीं चाहिए। हाँ, तो पेशेंट माइट ब्लीड, हाँ, पेशेंट माइट ब्लीड योनि व्यापक होने के बेनिफिट बाय मात्रा बस्ती, क्योंकि आपको इनिशिएट ही नहीं करना है ना लेबर को। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। One more question is there, ma'am. Yes, Dr. Meenal. Yes, please. Be fast, Dr. Meenal. Yes, Dr. Meenal. Yeah, yes, please. हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा था। Yes, yes, ma'am. प्रणाम मैम।
कामनी मैम से हम बहुत बार अपने आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर कई बार मिल चुके हैं, फिर भी क्वेश्चंस खत्म नहीं होते हैं, हर बार एक नया क्वेश्चन सामने होता है। तो इस बार भी एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम आपने डिस्मेनोरिया में तगरा तेल का पिचू कहा था मैम, इसकी भी टाइमिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, हम किस टाइम पे तगरा तेल का पिचू डिस्मेनोरिया में दें, बिफोर मेंसेस, आफ्टर मेंसेस, या फिर किस टाइम पे इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं? क्वेश्चन मुझे क्लियर सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर शिल्पा, अगर आपको मैडम सुनाई दिया तो आप बताइए। शिल्पा मैडम। हाँ मैम, I'm also not getting. Yeah, please. मैम डिस्मेनोरिया में तगरादी तेल का पिचू आपने बोला है, तो वो हमें किस टाइम पे देना है, बिफोर मेंसेस, आफ्टर मेंसेस, उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए मैम? जनरली आफ्टर डिस्मेनोरिया में तगरादी तेल, यस। या आफ्टर मेंसेस भी दे सकते हो, बिफोर भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, दोनों में बेनिफिट होगा। ओके मैम, सर्वाइकल इरोजन अगर स्पेसिफिक है तो आपने बताया कि जो हम पिचू है वो पोस्टीरियर फॉनिक्स में रखें तो ज्यादा बेनिफिशियल है, पर अगर स्पेसिफिक सर्वाइकल इरोजन है तो हम सर्विक्स की टिप पर उसको रखने की ट्राई ना करके पोस्टीरियर फॉनिक्स में ही रखें। रखा वहीं जाता है पोस्टीरियर फॉनिक्स में, देन आपकी ड्रग जो है आकर वहां पर काम करती है। सर्विक्स के आगे रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वहां पर स्टेबल नहीं होगा। हाँ, वो पोस्टीरियर में ही रखा जाता है पिचू, फिर मेडिसिन तो वैसे ही रिवर्स आकर फिर सर्विक्स के ऊपर काम करेगी ही करेगी। मैम नॉर्मली फॉलिकल्स की कितनी संख्या होनी चाहिए, समझनी चाहिए? फॉलिकल्स फॉलिकल्स की संख्या तो मैडम हमेशा ही ज्यादा ही रहती है। हाँ वो, हाँ ठीक है, वो तो है। फॉलिकल्स 20 और 25 है दोनों साइड में। नहीं, बाय बर्थ फॉलिकल्स तो इन लैक्स होते हैं, हर महीने इन थाउजेंड्स फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें कुछ जो है वो आगे रहते हैं और कुछ डोमिनेंट फॉलिकल बन जाते हैं, और उसमें से एक ही फॉलिकल जो है रिक्रूट जो हुआ है 70 डेज बिफोर, वो ही रप्चर होता है। एक सवाल था कि लेफ्ट ओरी में 20 और राइट ओरी में 23 फॉलिकल्स है, तो मतलब ये नॉर्मल है या फिर क्या हो कितना चाहिए? नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो उसके साइज बड़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। या मैम या तो मात्रा बस्ती से रिलेटेड कोई सवाल है तो डॉक्टर पायल, डॉक्टर सुशीला। मैम एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पिचू या बस्ती? पिचू इज बेटर, ठीक है, उसके लिए आप पिचू दे सकते हैं। उत्तर बस्ती तो खैर हम देते ही हैं एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ाने के लिए, बट इफ यू आर नॉट मतलब आपके पास नहीं है फैसिलिटी, यू आर नॉट एबल टू हैव एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप यूनिपिचू दे दीजिए। अदर देन मात्रावस्ती, यूनिपिचू इज बेटर। किस घृतम का दे सकते हैं, फलघृतम का दे सकते हैं? शतावरी इज बेटर, फल कल्याण इज बेटर। थैंक यू। डॉक्टर पायल। Yes, I asked the question already. Yeah, okay, then I think नमस्ते मैम, डॉक्टर सुशीला बोल रही हूँ। या प्लीज। वो योनि अर्श होते हैं, उसमें पिचू मतलब क्षार तेल का यूज करना चाहिए क्या, ये पूछना। योनि अर्श को तो हम लोग रिमूव ही कर देते हैं, निकाल ही देते हैं, उसमें पिचू तक क्यों वेट करना है, उसको जस्ट स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स से पकड़ो, उसको ट्विस्ट करो, निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। या डॉक्टर अग्रवाल सर। थैंक यू मैम। डॉक्टर अग्रवाल। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं कोलकाता से मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ, प्रणाम। हेलो। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है। मैम पेशेंट पीसीओज विथ एमनोरिया का केस है 6 महीने से, और पेशेंट 22 इयर्स की, अपने क्या कर सकते हैं? 32 इयर्स है, पीसीओएस है, 22 इयर्स, 22 इयर्स है, ओबीज है, लीन है सर? नहीं, बिल्ड मॉडरेट है मैम। मॉडरेट बिल्ट है, और सिम्टम्स क्या क्या हैं उसको? केवल एमनोरिया का कंप्लेन है, नथिंग एल्स। कोष्ठ कैसा है उसका, मृदु, मध्य, क्रूर कोष्ठ? नहीं मैम, मृदु ही है मैम। और प्रकृति? प्रकृति मेनली पित्त डोमिनेंट है मैम, पित्त इसका वात का है। तो पित्त की वजह से हुआ होगा। मैरिड है, अनमैरिड है? अनमैरिड है मैम। अनमैरिड है, और डाइटरी लाइफस्टाइल उसका पहले तो सबसे पहला चेंज कराइए।
अनमेरिड हाँ गर्ल्स में वो मोस्ट कॉमनली मिलता है कि लेट नाइट जागना, फास्ट फूड कंजम्पशन, मैदा कंजम्पशन, ये सारा हमें पहले बंद कराना पड़ता है। फिर उसको जी मैम योगिक प्रैक्टिसेस, सूर्य नमस्कार वगैरह हम लोग बताते हैं, ये करते हैं। जी अनमेरिड में तो हम पीछू देते ही नहीं है, इसलिए पीछू देने का तो पर्पस ही जी नहीं है। मात्रा जी बस्ती भी इसमें पीसीओएस में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहती है, उसमें हम लोग जी दूसरी बस्तीज देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। लेखन बस्ती दे सकते हैं, मातु तैलिक दे सकते हैं, योग बस्ती दे सकते हैं, काल बस्ती, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा उसका शोधन करना पड़ेगा। अगर पित्त है तो मृदु रेचन आप करवा सकते हैं, नित्य रेचन भी करा सकते हैं, फिर आप कोई जी भी योग बस्ती वगैरह उसमें एडवाइस कर सकते हो। मैम एक दो सवाल और है। एक जी जी बिल्कुल। 30 इयर्स की लेडी है, प्रकृति उनका पित्त और वात का है, हाइट 5 फीट 2 इंच का हाइट है। पेशेंट के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है जैसा कि आपने केस में बताया, एंड इनफर्टिलिटी फॉर 4 इयर्स, 4 पीरियड इयर्स वगैरह सारे नॉर्मल। जी मैम, व्हाट वी कैन डू? इनफर्टिलिटी 4 इयर्स और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, और प्राइमरी इनफर्टिलिटी मैम? सारे फैक्टर्स नॉर्मल है। जी मैम जी, एमएच वगैरह भी नॉर्मल है उसका? अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। जी मैम हाँ ठीक है, इसको एरन स्नेह से आप रेचन दीजिए, ठीक जी है, 10 दिन के लिए एरन स्नेह हम्म से नित्य विरेचन पे उसको रखिए पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद उसको कोई भी आप स्नेह जैसे आपको लगता है उस स्नेह पे रख दीजिए, तो मेरे हिसाब से कंसेप्शन में बेनिफिशियल रहेगा। फल और घृत इसमें वगैरह यूज किया था मैम, लेकिन कोई हाँ रिजल्ट तो मिला नहीं। सुकुमार कषाय आप यूज कर सकते हो, सुकुमार घृत यूज कर सकते हो उसमें पेशेंट में। जी जी हाँ So I think thank you very much, Dr. थैंक Kamini ma'am, as usual, थैंक wonderful presentation. So we are moving with our webinar. So अगले बस 2 speakers अभी बाकी है। हाँ बहुत लेट हो गए, So पेशेंट सारे लोग मुझे yeah, 140 पे आपका कहाँ है, आपका नहीं है, आपका नहीं है, फोन पे फोन कर रहे थे हम, तो yeah, आपको थोड़ा एक्सटेंड हो बोल गया रहे थे क्योंकि डिस्कशन भी 140 जरूरी से था हम कुछ लोग क्वेश्चंस 440 को पे लेकर। पहुंचे। या बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रैक्टिकली रखना था इसलिए थोड़ा डिस्कशन रखा बीच में, तो सभी लोग हाँ सेटिस्फाई होते हैं और अच्छा भी लगता है ना डिस्कशन रखे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जा रहा है आपकी सेशन, अच्छे जा रहे हैं। Yeah, thank you very much, ma'am. Looking forward for your more sessions as usual. So now, welcome Dr. Rachana, and I will call upon Dr. Mitushi Shah to introduce Dr. Rachana. जी मैम, थैंक यू सो मच। तो आगे का सत्र बढ़ाते हुए, नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बन के शीश काटे जब बात हो सम्मान की। तो अगले सत्र के लिए ऐसे ही सम्मानीय स्त्री को हम इनवाइट करते हैं, डॉक्टर रचना मैम, जो कि है एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पीजी स्टडीज इन प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोगा at Sri Sri College of Ayurvedic Science and Research Hospital, Bangalore. Dr. Rachna ma'am is working since 10.5 years in same college. उन्होंने पीजी गाइड भी है वो 4 सालों से। मैम ने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए हैं एंड एज अ गेस्ट स्पीकर इन नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार्स शी इज प्रेजेंटेड इन मेनी टीवी शोज आल्सो। सो आई वेलकम डॉक्टर रचना मैम। उनका आज का टॉपिक है रोल ऑफ वमना एंड विरेचन इन स्त्री रोगास। Namaste all. Thank you. I welcome you all for my presentation on the topic of Vamana and Virechana in Stri Roga. So, Yatra Naryastu Pujyante Ramante Tatra Devataham. It's a very well-known slogan related to the woman because she is a pillar of the house. And nowadays we can see that she has to work both at home and even in professional place also. So much of stress she is facing, and because of that, the complete hormonal imbalance is happening. And because of the disturbance in the hypothalamo pituitary ovarian axis, she is facing different kinds of menstrual abnormalities like irregular cycles, infertility, PCOS, and excess bleeding during menstrual cycle. So different kinds of menstrual irregularities she is facing because of the so much of stress and hormonal imbalance. And we have to take care of her health because she has to maintain the family and the professional life. And as I told earlier, she is where
the women are respected, there the goddess blessing always will be there. And what kind, if any menstrual disturbance is there, then how to treat? So there are two kinds of chikitsa. One is Shodhana chikitsa and another is Shamana chikitsa. So today I would like to explain about the Shodhana chikitsa, especially the Vamana and the Virechana, and why we need Shodhana chikitsa. Because Shamana chikitsa, which will help to reduce and maintain the doshas and the dhatus, where Shodhana chikitsa will remove the vitiated dosha from the body from its location and returns to the normal state. That is why so much importance we are giving to the Shodhana chikitsa. And Panchakarma therapy states that vitiated doshas and malas need to be eliminated from the body before going or before doing the Shamana chikitsa. That is why in all kinds of Stri Rogas, different places, different acharyas explained about this Shodhana chikitsa. And also it will help to promote and maintain the physiological functions of the strotas and the avayavas, and which will increase the lifespan and even which will give the strength to the body. So it will help to increase the bala, varna, ayu, and even praja also. And it delays the aging process and prevents the diseases like kalitya, palitya also. So next question is how Vamana will help. In which conditions Vamana we have to advise, and what are the benefits of Vamana? So Vamana, when we look into the indication benefits of Vamana, Kashyapa has explained Medo Dhaurganya Kafajai. So in all conditions of the Kapha dosha is vitiated, and in the Medo Rogas, and where there is a foul smells, so in such conditions, we can indicate Vamana therapy. Hence, for example, in case of PCOS, nowadays it is very common. And even in case of Stanya Rogas, where the kapha is vitiated, there we can adopt Vamana chikitsa. And in which conditions or how Virechana will help? So again, the Kashyapa explained, Virechanena shuddhyanti prasidhanti indriyanicha datavascha vishuddhyante bijam bhavati karmukam. So by the use of Virechana, all the doshas and dhatus are clarified or cleansed. Hence the bija, that is the ovum, will become efficacious. So that indirectly tells that definitely in case of infertility conditions, the Virechana will help because bijam bhavati karmukam. Next is in all Stri Rogas, wherever we see in different menstrual irregularities, one or the other Stroto Dushti is involved. It could be Atipravritti or Sangha or Siragranthi or Vimarga Gamana. So in all the conditions, all the Stroto Dushtis, so we can compare, for example, Rakta Pradara, that is excess bleeding with Atipravritti, and amenorrhea with Sangha, and cyst with Siragranthi, and Vimarga Gamana with infertility. So whichever the Stri Rogas we take, there is an involvement of one or the other Stroto Dushti, and this Vamana or Virechana which will help to clear the Stroto Dushtis. And the reason for this Stroto Dushtis is today's lifestyle, food style, and even the stress, so which will lead to Agnimandya. So thereby there will be the Rasadhushti, because the Artava is a Upadhatu of Rasadhatu. So when there is a Artavaha Stroto Dushti, there will be definitely Rasavaha Stroto Dushti will be there. And when there is a Rasavaha Stroto Dushti, there is Uttarottara Dhatu Dushtis like Rakta Dushti, Mamsa Dushti, Meda Dushti. All this we can find. So the mainly we have to give treatment along with the Shodhana and Shamana Chikitsa. Even we have to give counseling about the diet, what kind of diet she has to take, because the Nidhana we have to avoid. Nidhana Parivarjana has to be done. And as I told earlier, the Artava is a Upadhatu of Rasadhatu. So Artava can be considered as a Bijarupa Artava or Dhatu Rupa Artava
or Rajasrava Kala Rupa Artava. So Bija Rupa Artava is nothing but the, if any kind of abnormalities with the ovum or with the ovulation, Dhatu Rupa we can compare with the hormones, and Rajasrava is nothing but the menstrual cycle. So whichever the abnormality we take, there is a involvement of Rasavaha Stroto Dushti, and that definitely we have to correct with Vamana or Virechana therapy. So when Kashyapa explaining about the general indications of Samshodhana, he has mentioned that the wise physician will decide the kind of Shodhana, whether it is a Vamana or Virechana, based on the dosha involved and the Bala, Ayu, etc. And with this, after deciding the Shodhana therapy, and if we give it properly, definitely it will increase the Agni and even the Praja also. Clearly he has mentioned Praja, and even Charaka in his Sushruta Charaka Sutra Sthana, he has given that Apatyam, Bhalam Pushtirapatyam. He also mentioned that it will increase the progeny. So thereby we can understand that this Vamana or Virechana, which will definitely help in cases of infertility, and so it will even in cases of Artava doshas also, because when there is a Shuddha Artava, then only the infertility will not be there, or the good progeny will happen. So that is why we can consider that in the indication of Shodhana itself, our acharyas mentioned about the Praja, that is having a good progeny. And other than that, other indications of Vamana and Virechana in respect to Stri Rogas are Yoni Vyapat. Charaka in his Siddhisthana he has explained, and where he has mentioned the Virechana karma can be given, and Artava doshas, Shukra doshas, Granthi and Arbuda Chikitsa, Vidradi Chikitsa, and Stanya doshas. So where in case of a Dushta Stanya and in Kapha Vyadis, they have explained about the Vamana. So these are the specific indications we will get in our classics related to Vamana and the Virechana. Next, I would like to explain each disease where the Shodhana is indicated. Sarva Vyapannam Yonim tu Karmabhir Vamanadibihi. So in all 20 Yoni Vyapats, after giving Snehana and Swedhana, we can adopt Vamanadi Samshodhana therapies. So that is mentioned in the classics. And even Ashtanga Hridaya also, and even in the Charaka Samhita also, they have mentioned after this Snehana and Swedhana, in all kinds of Yoni Vyapats, we can adopt Vamana or Virechana Karma. And in Vandyatva, the Kashyapa has explained Snehana Sweda Vamana Virechana Astapana Anuvasanaihi Kramashaha. So after giving Snehana and Swedana, the Vamana Virechana etc. procedures we can adopt for the good conception. And even Bela Samhita also explained the same thing. So Vamana and Virechana can be given in case of a Vandyatva. So this is a case I had treated, and with the reports I would like to show you. This is a patient named Nandita Shivram. She was 28 years when she came to me, and she was came with a complaint of 8 years of married life with infertility. And she was diagnosed with the endometriotic cyst in the bilateral ovaries. In the first picture, you can see the report. And she was having even the fundal intramural uterine fibroid also. So I gave her a course of Vamana followed by Virechana. So Vamana, after a gap of 2 months, then I gave her Virechana treatment, and along with the Shamana Chikitsa. So within 6 months, within 6 to 7 months, she conceived with naturally without any other procedures. So only I had given her Vamana followed by Virechana and Shamana Chikitsa.
So this is a report. I can, in the second picture, it is showing single intrauterine gestation of 6 weeks, 4 days with cardiac activity, and she delivered normally also. Now she is staying in Australia. So this is a case of infertility where the Vamana and Virechana helped. And the most common cause nowadays for Vandyatva, out of 10 patients who are visiting to OPD, 5 to 6 patients are diagnosed with a PCOD. So it is very common. Even with the young girls, we are seeing this polycystic ovarian syndrome, and where the patient will come with a complaint of obesity, acne, hirsutism, irregular cycle. So it need not be all the signs and symptoms should be there. So patient will come with a different kinds of complaints. And definitely in case of a PCOD, from Rasa to Shukra, all the dhatu visheshan we can see. So when we look into the Stroto Dushti Lakshanas of Rasavaha, there they have mentioned the Klybia, so that we can compare with the infertility. When we look into the Raktavaha Stroto Dushti Lakshanas, they have given Asragdhara, Pidaka, Nilika. That we can compare with the abnormal uterine bleeding, acne, and Nilika we can compare with the acanthosis nigricans. When we look into the Medovaha Stroto Dushti Lakshana, they have explained Staulya and Prameha Purvarupa. That we can compare with the obesity and hyperinsulinemia. So we can see that all the strotas are involved in case of a PCOS. So definitely in such condition where there is a more number of strotodushtis are involved, or the dhatu-dushtis are involved, where we have to clear the dhatus and the doshas from the body. We have to clear the channels. For this, the Vamana or Virechana therapy will be very much required and very much needed, and this will be very much helpful also. So in PCOS, some patients will complain of anarthava, that is irregular cycle or amenorrhea, and some patient will complain with the excess bleeding. So both the conditions we can see. Then we have to decide which dosha is involved. So when there is a apana avrita, kafavrita apana vata is there, then anarthava can be seen, where we have to give Vamana therapy. So when there is a pittavrita apana vata, then there is a Rakta Pradara, that is excessive bleeding. So where we have to advise Virechana. So we cannot standardize whether Vamana should be given or Virechana should be given in all kinds of PCOS. We have to decide whether which dosha is involved, which avarana is there. Based on that, we can decide whether Vamana should be given or Virechana should be given based on the signs and symptoms patients complaining, because each case is different in case of a PCOS. Some, as I told earlier, some patients will be having hirsutism, some patients will be having obesity. So when obesity is there and irregular cycles are there, then there we can decide that definitely there is a kapha dosha is involved, and we can consider as a kafavrita apanavata, and we have to remove the avarana of the kapha, and we have to give the Vamana chikitsa. And this is again one more case I would like to show you, and the patient name is Vidya. She came with a complaint of severe abdominal pain during the time of menstrual cycle, and irregular cycle was there, and she was diagnosed with a right ovarian thick walled cyst with internal echoes and echogenic linear standard suggestive of hemorrhagic cyst. So I gave her Virechana because she was having excess bleeding during menstruation. So it's a where we can decide that there is an involvement of pittavrita apanavata is there. Okay, so when there is a excessive bleeding is there, so I suggested her to undergo Virechana. So I gave Snehapana with Mahatiktagrita, and Virechana was done with Trivrit Lehya, and
after she took almost 1 year Shamana Aushadha, and 2 times I gave her Virechana. So after 6 months gap, again I gave her one more course of Virechana with the 2 Virechanas and the Shamana Chikitsa, and she relieved all her complaints, like excess bleeding was there and pain abdomen was there, and even the cycle irregularity also was there. So that all cleared, and even with the sonography also we could see the changes. So no significant sonographic abnormality was noted. So this was the treatment I gave in case of a cyst. And another burning problem nowadays we can see is uterine fibroids. This is also has a very common complaint. Now we can see the patient will come with a complaint of excess bleeding during menstrual cycle, and sometimes the severe pain abdomen will be there. That is a dysmenorrhea we can see, and even sometimes with the investigation they will come to know that they are having the fibroids. So this we can compare with the Garbhashaya Granthi. So in Granthi also, the first line of treatment, Garbhashaya Granthi also, the first line of treatment they have mentioned is a Samshodhana, that is Snigdham Vamayet Virechyaschcha. So Charaka Chikitsa 12th chapter, they have given that after giving the Snehana and Svedana, the Vamana and Virechana will help to cure the Granthi. And in Pittaja Apakva Granthi, they have told Haritaki Churna has to be given mixed with the Draksharasa or Ikshurasa, and with this the Virechana can be done. And even Kafaja Granthi also, they have mentioned the Vamana and Virechana will help to cure the Granthi. And this is a case I would like to show you. Recently it was done, and she came to me with a complaint of severe abdominal pain, and in the first report you can see that bulky uterus with the 7.4 centimeter of anterior uterine myometrial, that is intramural fibroid was there. She came in the month of March 25th 2021. So I gave her a course of Vamana, and after this recently in the month of August 2nd, the USG was done, and it was showing clearly that the fibroid size has reduced from 7.4 to 3.5 centimeter. So within a course of 5 months of treatment, so after Vamana, she took even Shamana Chikitsa also, and the fibroid size about in 5 months, about 4 centimeter fibroid size was decreased, and now she is very happy. And even her main complaint was dysmenorrhea, that was also reduced. So about 70 to 80% of dysmenorrhea complaint is reduced, and even with the USG report also the fibroid size has decreased. So not only based on the investigation, even with her symptoms also, she is finding lot of improvement. So this all shows that definitely whatever it is mentioned in our classics, the Samshodhana Chikitsa, definitely it is helping to cure the Stri Rogas. So even in case of Artava Dushti Chikitsa, in Ashtanga Sangraha, he has mentioned that Shamyaka Gavak Kshiram Virekaha. So in Pittaja Artava Dushti, it is specially indicated. The Virechana is indicated, and in Kafaja Artava Dushti, Madana Falakashayena Vamanam. So they have specifically given that Vamana has to be given in case of a Kafaja Artava Dushti. And next condition is Artavakshaya. So in case of Artavakshaya, they have given Tatra Samshodhanam Agneyanam cha Dravyanam Vidivat Upayogaha. So Samshodhana has to be given, but Dalhana has given the commentary that where we should not supposed to give the Virechana, we have to give Vamana.
because Virechana will decrease the Pitta, thereby it will decrease Artava also. That is why some Vamana has to be given, Vamana which will remove the Saumya Dhatu, thereby it will increase the Agneya Dhatu and which will promote the Rakta also. So Artava also. So that is why they have given that Vamana is indicated in Artava Kshaya condition, not Virechana, but in Chakrapani has given the commentary that both Vamana and Virechana can be given in case of Artava Kshaya. And Sushruta mentioned even in Artava Vriddhi, when there is all increased dhatus are there, that is even Artava also, there we can give the Samshodhana Chikitsa. So when there is a Ati Pravritti, then the Virechana will help. And they have given Samshodhana in some conditions, some authors they have told in Artava Vriddhis, even the Vamana also can be given, but usually I practice to give Virechana when there is a excess bleeding during the time of menstruation. And Charaka Chikitsa, he has clearly mentioned for Rakta Pradara, that is excessive bleeding, Virechana has to be given and with the Mahatiktaka Grita. And while explaining about the Chikitsa Sutras, all the Acharyas mentioned that Virechana can be given, the Rakta Pradara can be treated even like a Adhoga Rakta Pitta or Raktarshas. So in both the condition, Adhoga Rakta Pitta, they have mentioned the Virechana, and Raktarshas, they have mentioned about the Shodhana Karma. So here also we will get the reference about the Vamana and the Virechana. Last but not the least, even in case of a Stanarogas also we can see where fibroadenomas are there, or after the deliveries many a times we can see the Stanya doshas. There also they have mentioned after the Gritapana, Virechana has to be given in case of a Stanakilaka. So first Grita should be given orally. With this Sneha, the strotus gets softened and later we can give Virechana. And in all kinds of Stanya doshas, they have mentioned Vamana and Virechana can be given. So these are the different Stri Rogas we can see with respect to our classics. The references we are getting, and definitely as I told with showed with the reports, that we can see the changes also with proper diagnosing the case, with deciding whether we have to give Vamana or Virechana, and definitely it will help to cure the diseases. And next is a mode of action of Virechana Karma. How this Virechana will help? So the drugs which we are using for Virechana Karma, which will having Vyavahi, Vikasi, Ushna, Tikshna and Sukshma Gunas. So Vyavahi Gunas which will helps to do the Dhatu Shaitilya Karma, and Ushna Guna which will help for the Vishyandhana of the Sangata of the doshas, that is liquefaction, and Tikshna Gunas which will breaks the doshas and malas in the microform, and Sukshma Guna which will reaches to the micro channels. So finally the Virechana Karma which will helps to remove the doshas from the body, thereby it will prevent the vyadis and it will clear the doshas and the dhatus, and which will helps to cure the disease. And even the Vamana Karma also, Vamana Karma which will stimulate the endocrine system, especially the pituitary gland. So the endocrine system which includes even the uterus and the ovaries. So when the pituitary gland is stimulated, the complete endocrine system also will become normalized, and even the hypothalamo-pituitary ovarian axis, if any abnormality or any imbalance is there in the hypothalamo-pituitary ovarian axis, that will be balanced with the Vamana therapy. So thereby we can see that there will be the menstrual irregularities will be corrected once the hypothalamo-pituitary ovarian axis is functioning normally. So like this, there will be this Vamana therapy is very much helpful to balance the HPO axis and to regularize the menstrual cycle.
And even this Vamana and Virechana, which will helps in to maintain the neuropsychiatric level, so that it will helps to reduce the stress. So, and even it will clear the strotodushtis, and it will normalize the doshas, which are when there is a dosha prakopa, and thereby it will prevent the vyadis. So finally, the Vamana or Virechana, which will helps to clear the doshas and the dhatus, thereby normalize the strotas, and which will prevent the disease. So finally, with this, I would like to conclude that Vamana and the Virechana, which helps in different levels, in the somatic level, which will regularize the metabolism, immunity, and free radical elimination, and which will work on the neuroendocrinal level, and which will helps to maintain the psychic level also, so that it will helps to reduce the stress and relax the mind. So according to Ayurveda, Samprapti of various type of Stri Rogas are also similar to other diseases. Dosha, Dushya Samurchana, and Vigatana is also same, but only some pathological difference can be seen, like Artava doshas. So Vamana and Virechana will helps to cure many Stri Rogas based on the dosha, dhatu, and strotodushtis. We have to select the type of Shodhana. So Shodhana procedure which have withstood the test of time. So whatever our acharyas told 5,000 years back, definitely today also all the Shodhana therapies definitely helps to cure the diseases. Especially we can see in cases like fibroids, PCOS, where the allopathic system is having only the hormonal therapies, nothing else. But we can see that with our Shodhana therapies, definitely we can see the success rate. Thank you one and all. Namaste. Very nice, ma'am. Very beautiful presentation. Any questions? Sadyats? Any questions? Endometrial hyperplasia, which Shodhan? Yes, ma'am. So endometrial hyperplasia means definitely there is a involvement of kapha dosha. So we have to give Vamana in case of a endometrial hyperplasia. Which drugs are preferred, ma'am? Usually I give with the Madana Phala Kashayas, and followed by the internal treatment also. Shamana Chikitsa also will be given with Kanchanara Gugulu and Hamsapatyadi Kashaya, and Varunadi Kashaya can be given after giving Vamana. Okay, ma'am. Okay. कुछ मात्रा के बारे में भी पूछा है मैम. There is one question regarding to मात्रा कि intramural fibroids में क्या देंगी मैम? That is what I told. No, I showed with one case presentation where intramural fibroid was treated with the Vamana, followed by I gave her Shivagutika was given, and Kanchanara Gugulu I gave, and Varunadi Kashaya also I gave. Okay, ma'am. Okay, so I think so any Shodhana followed by Shamana Chikitsa is required in such cases like fibroid or PCOS. Only with Vamana or Virechana it cannot be cured completely. So at least minimum 3 to 6 months of internal medications also required. Yeah, ma'am. Definitely. Yes. Dr. Agrawal sir, आपने hand raise किया है? Dr. Manoj Agrawal. Can you stop sharing, ma'am? Yeah, sure. So we will see clearly. Okay. Shaman चिकित्सा में क्या देंगे, ma'am? What could be preferred in Shaman?
Which condition, ma'am? Which disease? Which? Dr. Ritu, I think your question, you can elaborate. Dr. Ritu? PROS. PCOS, ma'am, PCOS. So in case of PCOS, Shamana Chikitsa, right? Yeah. So again, it depends on the symptom of the patient, because as I told earlier, some patients will be having excess bleeding. So where we can't give the Tishna Ushna Dravyas and Artava Janaka Dravyas, we can't give. So where some patients will be having amenorrhea. So if the patients with the amenorrhea or irregular cycles and having a obesity, then usually we can give the Artava Janaka Dravyas like Hingvastaka Churna I will give, and even it will corrects the Agni also, and it will remove the Ama also, and Shatapushpa Churna can be given with honey, or sometimes with in the form of Kashaya also, and even the Sukumara Kashaya or Varunadi Kashaya also I will give in cases of a Anarthava condition, where in case of a Pittavrata Apanavata is there in PCOS condition, where I will give Jivantyadi Kashaya. So it will do the Pittahara and it will helps to remove even the cyst also. Jivantyadi Kashaya is helpful in case of PCOS along with the Kanchanara Gugulu. Okay, ma'am. What adenomyosis में क्या देंगे हम लोग? What would be preferred in Shodan for adenomyosis? Vamana, ma'am. Okay. Yeah, Dr. Ritu. Dr. Manoj sir, just the last question. Dr. Manoj sir. Ma'am, good evening. Good evening, sir. Actually, I was unmuted, not unmuted. I'm from Kolkata. Madam, how to manage adenomyosis after Shodan? And ovarian cyst of different variety like chocolate cyst or hemorrhagic cyst or just a clear cyst. How these conditions can be managed after Samshodan? That is what, sir, just now I explained. The cyst we have to treat based on the signs and symptoms, because each patient will be having different kinds of symptoms. So in some patients the Pitta Vriddhi will be there, some patients Kapha Vriddhi will be there, Kapha Vrita Apanavata will be there, and some patient Pitta Vrita Apanavata will be there. So when Pitta is predominant, we have to give the Pittahara Dravyas like Jivantyadi Kashaya or Yashtimadu Kashaya or Sarivadi Kashaya. So different kinds of this Kashayas which will helps to balance the hormones and also to relieve the Pitta. So such kind of drugs we have to select. Where in case of a Kaphavrata Apanavata is there, so there we can give when there is a irregular cycles and obesity, we can give Kanchanara Gugulu, Varunadi Kashaya, and Hamsapatyadi Kashaya, even Gandharva Hastadi Kashaya, which will do the Anulomana also, and even the Shatapushpa Churna Kashayas, and even sometimes I will give the combination of medicines like Gokshura, Shatavari, Ashwagandha. So all Kafahara Dravyas has to select, and that we can give in the form of Kashayas. So each PCOS patient, we can't standardize one protocol. One single protocol we can't make, sir. Depends on her signs and symptoms, we have to decide the treatment protocol. Madam, how to understand adenomyosis in Ayurveda? Adenomyosis, it's mainly there is an involvement of kapha is there, sir. So we have to give Vamana Chikitsa, and then we have to give the Lekana Chikitsa. So we can give Shivagutika in case of adenomyosis. If excess bleeding is there, again we can't give Shivagutika. So in case of severe abdominal pain with normal cycle, we can give the Shivagutika. Yeranda Sneha also can be given, and even the Varuna Adi Kashaya also given.
can be given, sir. Ma'am, last question. Yes, sir. How to understand and manage endometriosis and PID in Ayurveda? Endometriosis, again, based on the exact cause, we can't explain for endometriosis. So based on the symptoms, mainly Vataja predominant, because she will be having severe abdominal pain during the time of menstrual cycle. So we can compare this with a Vataja Yoni Vyapat. So if we give Vataja Yoni Vyapat Chikitsa or Vataja Artavadushti Chikitsa, definitely it will be helpful. Especially I will give Basti treatment, sir, in case of endometriosis, because Vatanulomana has to be done, and Basti is a best line of treatment to maintain the Vata imbalance. That is why in case of endometriosis, I will prefer Basti treatment. That is why today's presentation also I have not explained about the endometriosis, because Vamana and Virechana will not help that much in case of endometriosis, sir. Ji, thank you, ma'am. Okay, Many sir. Thank you, thanks. ma'am. Very nice explainer. Very nice. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah. Okay. So just last question from Dr. Payal. Hello, Good namaste, evening, ma'am. ma'am. Good evening, namaste. So I just wanted to ask that you mentioned in Adhoga, in Asrukdara, we do Virechan. But if it is Adhoga Rakta Pitta like symptoms, we have to do Vamana. Right? Then how can we do Virechana? There will be a confusion, right? It will be a wrong treatment if we do Virechana to all the patients who are having Asrukdara. No, I explained that they have given the indications. We can give even a Vamana also. Whatever but, it is mentioned in the classics, I have given the reference. But Virechana, when we have to remove the Pitta from the body, definitely Virechana will help in case of Asrukdara. Okay, so even if it is heavy menstrual bleeding, Virechana is helpful if you find the symptoms of Pitta aggravation. Yeah, definitely. Okay, thank you. Okay. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. So moving with our this webinar, the last session, which is very much important, pain, very much common symptom amongst the various disorders. So I would like to call upon Dr. Madhura Kulkarni, ma'am. And I request Dr. Joshi sir to introduce Dr. Kulkarni, ma'am. Actually, introduction ki zarurat nahi hai. You are just like a family member of Ayush Darpan, but still as a formality. नमस्कार मैडम, आपको नमस्कार। आपका परिचय तो आपका नाम ही परिचय देता है, मधुरा नाम है आपका, आपकी मधुर आवाज, और जो है विषय भी जो है आपका बड़ा अच्छा है, पेन मैनेजमेंट है जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी जो है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और मुंबई में हैं, वहाँ प्रैक्टिस करती हैं मैडम। तो काफी इनका अच्छा जो है वो कमांड है। अभी कई लोगों ने विदग्नि के बारे में मुझसे पूछा था, वैद्य सरोज मिश्रा जी, कई लोगों ने, तो अब आपको विदग्नि या पेन मैनेजमेंट में क्या है वो सब चीजें आपको मैडम बताएंगी। आपके लिए अवसर है कि आप अभी यहाँ पे मॉडरेटर के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न रख सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के लेक्चर्स में और लास्ट के लेक्चर्स का दोनों का बड़ा इंतजार रहता है। तो आपके लेक्चर का बड़ा इंतजार है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है आपका। नमस्कार। यस मैम, कंटिन्यू। अनम्यूट कर दीजिए उनको। नमस्कार, आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म में मुझे आप सब लोगों से मिलते हुए बहुत खुशी हो रही है। इट्स अ ग्रेट प्लेजर। इन महाराष्ट्र विल बी सेलिब्रेटिंग कृष्ण जन्माष्टमी टुमारो। कृष्ण represents Agni in the body. So we'll be talking about Agni. So I think today's session is quite important and near to my heart, because every physician or every doctor wants to relieve his patient with the pain and manage his patient's pain. So that is very important. And thank you, Dr. Naveen Joshi, for kind words about me. And thank you for the opportunity to present my presentation today. It's very exciting. Whenever I think about the pain related with the gynecology, and just close my eyes, two words come in front of my eyes. One is challenge, and second is opportunity. In real sense, when we are facing pandemic, and
many of our doctors have facing some problems, even financially, even patients are less number of patients and different kind of challenging situations. So in this situation, Vidhagni could be a perfect answer to improve their own practices. And especially when I deal with gynecological cases, I always think to relieve my patient's pain is my aim target. And I was attending the seminar very nicely organized by you and very nicely conducted by Dr. Shilpa as usual. All the stalwarts from Ayurveda gynecology were presenting their presentations. And I was thinking, yes, Panchakarma is main answer for many of the gynecological diseases, as Panchakarma literally cleanses the endotoxins at microcellular level. It gives the immunobooster to the body, and simultaneously it literally corrects the root cause of the disease. And mainly it involves in the metabolism of the body. So Panchakarma, like Vaman, supports the HPO axis, and it literally clears many of the kapha-vitiated related doshas, like rightly regarding menorrhagia, Asrugdar, Virechan, literally separates out many of the things, and it improves the internal metabolic conditions of the body. Even Basti improves the absorption of micronutrients in the body. These all things when happening inside or within the body, and mainly Agni is involved in the process. The same manner Panchakarma is like we can improve or enhance the results of Panchakarma with applying the heat from outside the body. Okay, so the same concept of Agni, but we are applying it from outside, and simultaneously it increases the capacity of body's own power to relieve the symptom. Let us see a video of our Vidhagni treatment, how we do the Vidhagni. I will say two words about Vidhagni treatment, as Vidhagni is a module developed by Dr. Uday Kulkarni, Vedhana Chikitsa plus Agni Chikitsa, both together based on the basic concept of conversion of electric energy into the heat. It is a transformation of the basic energies, and it transforms immediately, give instant results to the patient to relieve pain. Let us see the video, how the Vidhagni. Ma'am, audio is there? Yes, yes. I think audio not shared by you. While sharing the video, there is an option, share with audio. Okay, one so second. Huh? It's better. Once again you share, ma'am. Yes, yes, nice. 1 second. Yes, yes. Yeah. Before Give sharing, there is minute. option. Yeah. See, medium is very important. Rightly, it said, as we are converting the electrical field into the heat, the medium is important. Same way, Shilpa ma'am is helping me to give my message, to reach my message to all the eminent audience here. I think no audio option. No, ma'am. You just stop sharing, and before sharing, there is a small option like share with audio. ऐसे आता है वहाँ पर. Okay, you 1 second. Just let me check. This is a separate machine developed by us. Okay. And 1 second. Just give me 1 second. Don't want to waste time, but this video is very important, as practically everyone should see. Ma'am, back कीजिए पूरा. You can back पूरा close कीजिए once, and then green share screen आता है ना option. Okay. वहाँ पर 2 डॉट आएंगे नीचे. Share sound
और ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्लिप ये आता है पहले, और फिर आप जाकर वीडियो शेयर कीजिए। देखिए आप खोलिए। Okay, यू कैन okay, cancel. Yes, 1 second. I will just check. I'm checking. Dots. Now it's audible, or otherwise I will tell. 1 second. Just give me. No, not shared, ma'am. Not shared. 1 second. Application of knowledge is very important, and that is technology. Once we are like able to reach up to the exact point, yes, I got the shared sound now. Hello. Yeah. Audible, na? Yes. Yeah, yes. This is Dr. Madhura Kulkarni from Sruja Arogyadham, Thane. We are treating a patient of chronic abdominal pain. It's diagnosed as PID and recurrent abdominal pain in between the cycle, sometimes during the menstrual period. We are using Vidhagni technique. Now it's an intermenstrual period. This is a Vidhagni machine specially developed for pain management. It's nearly a cautery technique, but we have specially manufactured it, innovated by Dr. Uday Kulkarni for treating the pain patients. This is a cautery probe, and these are the buttons. We need to touch the yellow button and pierce the needle. This is needle number is 26 number needle, and lower abdominal pain. We have marked it where the exact and severe pain point is. Now, just touching the needle and passing the heat. So it's a Vidhagni. 3, 4, touch and go. 1, second round, 2, 3, and 4. Third time, 1, 2, 3, and 4. And patient is holding probe in her hand. So the Agni is properly flowing towards the point. Okay, so you have seen the technique, how we use the technique of Vidhagni to a patient who had abdominal pain and not getting result with any of the other treatment. Now, my patient. Hi, this is Rashmi here from Thane, 2010. I used to get this pain immediately after my monthly cycle, and it could get prolonged up to 8 to 9 days. The pain was so unbearable that I could not even do my day-to-day work. I had undergone laparoscopy to get rid of this pain, but it gave me relief only for 4 to 5 months. Again the pain started. Then I approached my gynec for this, but he said there is no such medicine for this pain, and he prescribed me with some painkillers, which again gave a temporary relief. Then the year 2015, I approached Dr. Mrs. Madhura Kulkarni, and she gave me the treatment of Vidhagni along with some medicines too. I took the treatment for 6 months, and since then I have no pain anymore. Now I am completely relieved from this pain permanently. Thanks to Madhura ma'am. So let us start with a journey of treating the gynecological pains with new module. It's our own
principle of Vedana Chikitsa and Agni Chikitsa, both together, we have developed Vidagni and how it helps to manage the gynecological pain. Really, just remember two words, challenge and opportunities. Really, it's a challenge for us to manage the acute pain, and really it's opportunity when patient is not getting relieved by any other treatment modalities. Next slide. I think I need to go to it. Okay, so when we study in our colleges, it actually it's a really a lot of information, text, different references, and we know when we study in the college our limitations, how we can proceed to our treatment models. It's only information. Slowly, when we start practice, it's like getting knowledge. Our patients only teach us, and application of the knowledge is very important. And by the experience, we develop our new techniques, new treatment modules, and those new treatment modules help us to be successful in our own practices. So let us explore this new world of Vidagni. Let us start giving the new world, new kind of Ayurveda, new kind of the same principle applied in a definitely different manner, which will give us economical better status, even satisfaction, and even results to our patients, because each and every treatment modality should be result oriented. That is important. So this Vidagni definitely has helped us. Next one, to get many. Okay, so we are talking about the pain, gynecological pain. When I talk about gynecological pain, we need to understand basic female physiology. Nahi vata drute yonim narinam sampradushyati. Basic vata vitiation is the original causative factor of any kind of female oriented pain. That is what we have learned. But when we deal with patients and apply our knowledge over there with the experience, we understand that pain has different kind of origins and pain has different kind of expression. Even monitoring pain is also differs from patient to patient because it's related with your mindset, emotional status, and the pain holding threshold. So 3 important points to understand what exactly the pain is, and the detailed history reveals the origin of the disease, why the pain is occurring. Even differential diagnosis is very important in case when we are diagnosing the female related pains. So basic physiology is very important. So our objective is understanding the definition, Ayurveda perspective and terminology as we are offering the world newer model, a different innovative technique, and we are not like getting away from our own original textual fact where we understand the disease in different manner. So this could be a holistic model we are offering to the world, new era of the world in a different manner. So their differential diagnosis is important, clinical evaluation and its management of Vidagni. To understand it is very important. There are different kind of pelvic pains we always see in our day-to-day practice. See, I will start talking about each and every patient that taught me a lesson. So here, I always remember one of my patient, age 14 years old, menarche at 12 years of age, and she had always dysmenorrhea. That there was auspicious day, so she couldn't go to her regular general practitioner where she used to go and get the injectable for the pelvic pain, severe pelvic pain during the menstrual cycle.
That day she came to me. I did her PR examination, and while doing the PR examination, I found some growth over there near the uterus, because see, Gudalinga Vyadin Upashya Anupashyabhyam Parikshet. Ayurveda text says that when the patient is not getting result, we need to understand the disease more thoroughly and offer the patient different treatment options. So if patient is not getting treated with regular painkillers and even injectables, and the severe pain is there during the menstrual cycle, dysmenorrhea is severe, we need to understand what pathophysiology, underlying pathophysiology is going on. So there was definitely a growth, and we did sonography for the patient, and it was nearly 10 centimeter of the ovarian cyst. Maybe it was a congenital cyst, and it was getting like torsion of the ovarian cyst. The phase was going to the torsion of the ovarian cyst because it was a pedunculated lobe, and it was very huge cyst, and surgically we removed it. But there I remember, whenever even the like painkillers and injectables, and if we don't get the result with those treatments, similarly when in our practices we use fermentation, different kind of the local treatments, and even with Dagni, if then also patient is not getting result, definitely the patient is having some other major underlying pathophysiology. So Vidagni helps us for this differential diagnosis also. And I always feel as a gynecologist or as a doctor with 27 years of experience, we need to understand I always feel that when to stop is the basic expertise we have, because when to stop, when not to give treatment is more important than when to intervene or when to give treatment. So and to understand our own limitations, Vidagni has helped me many times. So that is the case. That was a case of torsion of the ovarian cyst with severe abdominal pain. So let us start to discuss with our own Vidagni for this kind of cases also. See, reproductive organs are definitely cervix, adnexa, uterine, uterus, totally interconnected. Just in front of your eyes, if you I have see picture of the uterine picture of uterus, uterosacral ligaments, fallopian tubes, cervix, vagina. See, this is a page for the pain related with the gynecological conditions. And when you need to diagnose the pain, you need to examine it thoroughly. Per vaginal examination, per speculum examination is very important. There you can differentiate the disease, then you can understand the minute changes, minute relief parameters of the patient. See, let us take some practical experience. While treating patients, I always make a point that each and every patient should be examined. See, little important point that makes you, really gives you clinical wisdom. While examining per vagina, always remember, try to feel the touch of the internal lining of the vagina, and even how it means the touch is lukewarm or cold. That lukewarm touch or feel from within goes to the direction of the diagnosis of Paripluta Yoni Vyapat, that is PID, pelvic inflammatory disease, or somehow, somewhere the infections level are raising high. How you monitor the infections while treating the normal general patients? You always check the temperature. And remember, never ever forget to observe the internal temperature of vagina. That is very important.
while treating pain and while using Vidagni, differential diagnosis, perfect diagnosis of the disease is baseline important. So, three important things, ABC of the basic understanding of the pain regarding the gynecology. You need to understand, access the pain, access the root of the pain perfectly. See, one of my patient had endometriosis. One of the doctor asked about the question of the endometriosis. Beautifully, Jai Prakop Prasar Sthan Saushay Vyaktin Bhed Shat Kriya Kal, the stages of the disease, how the disease is approaching or encroaching the patient and going towards the major problematic situation. It's explained in these 6 stages, and we correctly can apply to the endometriosis. While one of my patients, I was examining her, and first I thought or talked to about the feel or touch of the internal vaginal, means temperature is whether the temperature is high or low. If temperature is high, we remember the infectious part. While doing the pervaginal examination, we can feel the cervix is not moving properly. It's stiff because of the adhesions, because of the obstruction. And if we feel the cervix is only moving one direction, always remember, could be rest temperature and one direction. Pelvic infections, Paripluta yoni vyapar, Gramya dharme, Rujam Brushab. The pain is very much at higher level and we cannot move it bilaterally. Both the sides is not movable. Just understand the cervix is not movable. It means it's endometriosis. It means it's a different situation where the Chaya Prakopa Parasara Sthan Saushay Vyakti Bhed, the disease has gone to the higher level. So to understand the exact stage of the disease, the second most important thing is you need to touch, feel and do the pervaginal examination perfectly. While dealing with all the gynecological pain, this pervaginal examination is mandatory. If patient is not married, you need to do per rectal examination. So you can explore the world of these internal organs. You can palpate tubo-ovarial masses. You can palpate the stiffness of uterosacral ligament. You can palpate the cervix where it's not moving at all because of the adhesions. You can see Darshana Sparshana Prashnehi Parikshetaja Roginam. You need to see the cervix, whether the cervix has erosion, where the cervix is, the discoloration is more, where the cervix is secreting certain kind of discharges, which is different in color, Harita, Shava, Varna, all the greenish or the smelly, foul-smelling pus or any kind of secretions are coming from the cervix. You need to observe it carefully. One thing I will like to share here practically, litmus paper test. Always try to take the litmus test so that you can understand the vitiation at what level it has happened. And it's not sometimes with the while dealing with the pain, we need to understand different kind of pain: emotional pain, psychological pain, physiological pain, financial pain, interpersonal relationship pains. So all these pains are related with gynecology. And just trust me, infertility is the disheartening condition. All doctors will agree with me that it's disheartening phase, and in that case the emotional pain is at its most. So these infantile patients in my practice, I observe them, they're very restless.
before the period. So premenstrual symptoms are more compared to other females in these infertile patients, and they are more anxious. So the pain threshold is low, and so dysmenorrhea or disturbance, premenstrual syndrome are moreover in these infertile patients. And if the patient is infertile and the cervix has some infection, with this litmus paper, we can understand the basic pathophysiology that the cervical secretions are not permeable. They are not allowing sperms to go in. So to understand the cervical secretions permeability, this litmus paper test helps us. So today I will like to share many practical experience what we have developed in these 27 years of our practices. So just understand basic model of your understanding the pain pathophysiology. According the woman to woman, it differs because her mindset is different, her age is different. Every age, every state, every disturbed hormonal level, the pain expresses in different manner. So you need to understand why pain is, and the severity you have to monitor whether it's that severe or whether the patient is avarasatva, or patient's mindset is not allowing the patient to cope up with the pain. So always remember, blockage of the fallopian tubes are also a common most thing, and there if the adhesions are there, if salpingitis or some infections near the tubo-ovarian junction, or salpin means the distal end or near the other end, or ovarian cyst, or cervical erosions, or uterine adenomas, or different kind of adenomyosis or leiomyomas, fibroid. These all things involve to direct the gynecological pain. Again, a practical experience I will like to share here. A patient with fibroids, if the fibroid is less than 5 centimeter, if it's not giving the trouble in her day-to-day cycles, means not much menorrhagia or dysmenorrhea, patient can cope up with the pain. And if she is not at the age of fertility, means her fertility also, the concern of conception is over, always remember she can cope up with the fibroids and save uterus. Very important point I want to emphasize here. See, what I started with, I'm getting that thread from first point to the last slide, opportunity and challenges. When patient is disheartened, distressed because of fibroid, even if it's less than 5 centimeter, if she has severe pain and severe dysmenorrhea, the gynecologist, or many of the times, she is advised to remove the uterus if the fertility is completed, her family is completed. So there, the role of Ayurveda, or opportunity for our Ayurvedic scientists, Ayurvedic physicians, gynecologists come into the picture. We can save the uterus with the Vidhagni module, with the Panchakarma treatments. So to control the pain, I've seen one patient, she had severe pain and she didn't want to remove the uterus. She had near about 7 centimeter big fibroid. Her age was 40 years age, and she had 4 years child. She didn't want to remove her uterus because she had undergone lot many fertility treatments, and again one more surgery she was not ready for, but her fibroid was troubling her like anything. She was an architect, and her day-to-day activity also was not possible during the menstrual period, before the menstrual period, after the menstrual period. So she was about to think what to do, but when we help her with the Vidhagni, she could save her uterus and even continue with her normal day-to-day life activity. So here the role of Vidhagni comes, where opportunity for Vidhagni comes, where because of pain, we need to get rid of uterus. You can always save the uterus because fibroids are
say about 90%, more than 90% are non-malignant, and we can save uterus along with fibroid. Patient can live her quality life, and Vidagni helps for dysmenorrhea. So different kind of pains, acute, chronic, some emotional or behavioral changes occurs with the chronic pains. And after understanding the basic pain pathophysiology, after understanding the basic treatment modules available, NSAIDs, injectables, laparoscopy, different kind of pseudo-menopausal drugs where the menstruation is literally hold and patient is allowed to allowed to heal. Really fantastic drugs. Modern gynec and obstetric is developing each and every day up to that extent. Really amazing. Scientists are doing amazing work, and I appreciate they have developed so many modalities that the comfort life of female patient has increased definitely. And even a holistic model we can develop along with this advanced diagnostic modules we have, sonography, NT-scan, different kind of diagnostic higher modalities we can use in our day-to-day practice. We can understand, correlate clinically with our own Ayurveda wisdom, and we can give Vidagni kind of different models to our patient to relieve the symptoms. So holistic treatment module is the word in the modern era, in pandemic era, where we can relieve patient completely. So we need to understand the plan of action and the symptomatic relief. Yes, my dear friends, as you all are doctors, you will agree with me. Symptomatic relief is equally important when the female is disturbed. She wants to get relief with the pain first, and then understand the disease, diagnose the disease, differential diagnosis, even the limitation of the treatment, even certain different kind of modalities. The symptomatic relief is very important. So, well, the pain related, when we use this Vidagni model, pain related with menstrual cycle, during primary dysmenorrhea, endometriosis, PID, and middle miss pain. I've experienced all these patients getting good result with the Vidagni treatment. Even premenstrual migraine, backache, coccygeal pain, different kind of cyst-related pains also relieved with the Vidagni. Adenomyosis, different. See, these are the swollen things, swelling and internal swelling getting relieved by the external heat application is not that much was not very much convincing thing for myself first, being inquisitive doctor, but slowly by the experience and when we are doing the patient treatment, I'm happy to share here all over India, Dr. Uday Kulkarni has traveled to teach this Vidagni treatment, to train the trainers. Even government had appointed Dr. Uday Kulkarni to teach this technique to government OPD level, where they don't have more facilities or many treatment options for poor or rural area patient. There also our Vidagni has helped them to treat the patient in deep pain. So after this, I have started using these pain management technique in gynecology also, and at certain level, I cannot say that 100% I'm getting result or so. First, I already told you the case where we need to do the surgical intervention where the torsion of the cervical, ovarian cyst was there. But yes, in the case of adenomyosis also, patients are getting nice results. Even fibroid, the positioning of the fibroid is very important. Janami Nagendra Tava Prabhavam, Sthanam Prabhavam, Nabalam Prabhavam. Of course, the snake
sitting on the head of Lord Bhagwan Shankar, and the elephant down there. Elephant says, I know your strength is, you are on the head of the god, so you are powerful. The power is not yours, but the position. Exactly the thing applies to fibroid. The positioning of the fibroid, very important. See, fibroid is I always use a word, it's like a neergat, means it's a like a kind of growth where definitely the non-malignant conditions are there, and where the pain is more, where when the positioning is like it's touching to the endometrial lining, or it's really pressing the endometrium and the menorrhagia, we have less to do. But when the fibroids are not pressing the endometrium, and they are only because of the menstrual spasm or increased congestion during the menstrual cycle, the pain is more, always Vidhagni has helped. So always remember the positioning of fibroid, we need to understand first, sonographically monitor first. Along with that, we can give certain medicines. We have developed a formula of fibroid capsule where Ksar we have included in it, and fibroid capsule really helps patient to release the spasm, to relieve the congestion, to relieve the inflammatory changes. I cannot say it, the fibroid gets shrink, because it's the muscular fiber tissues are involved, and surgically also it's difficult to remove it. So medicines could not do that extent, but yes, definitely that those medicines helps, and the Vidhagni helps in certain condition of fibroid. I do remember one of my patient happily told me that, Madam, I got menopause. So many patients get upset because of menopause. She was very happy because I had explained her that after menopause, when the blood supply to the fibroids will get cut off, automatically the size of the fibroid slowly will reduce, and slowly the pain and menorrhagia condition will go. So till that time period, we continued with the Vidhagni and certain medicinal preparation, and one fine day she got the menopause, and slowly the pain and the bleeding stopped, and for her we could save her uterus. So our motto should be save the uterus whenever we can save. Of course, again I will like to emphasize that whenever that is necessity, we need to remove the uterus surgically, and we could like save the life of the patient, we should remove it. But till that, we have Vidhagni module and we can control the pain. Yes, PID infections, different kind of pelvic inflammatory diseases, I've observed that local Yoni Dhawan, Pichu, our stalwarts already talked about it, local treatments. So I won't go into the detail of these treatments, but in PID, when the internal heat is increased and certain positions also, patient getting more and more pain, even low backache, pain literally travels toward the lower extremities, there Vidhagni helps. And the points of all jadoo point का है, और लक्ष्य अपने फोकस का है, तो विधाग्नि पॉइंट कैसे और कहाँ देना है वो एक बार हमें अंडरस्टैंड हो जाए तो इट्स easier. Endometriosis, see, here I will like to explain the limitation of our treatment when it's up to the severe infection or even stage 3 infection. You know the basic parameters for these infections, like 1 to 3 centimeter, less than 1 to 1 centimeter, 1 to 3 centimeter, more than 3 centimeter, like what the staging is determined. According to Ayurveda wisdom, the chronicity of the means how long the patient is suffering from, how her fertility is involved, how the pain levels are going up, and how even associated conditions are developing. The stages, Chai, Prakop, Prasar, Sthan, Susha, Vyakti, we can determine and
Chai Prakop Prasad, the basic 3 stages, or here we can say when the endometriosis is at minimal or mild stage, definitely the light of hope is there. I am happy to share here on Ayush Darpan journal platform that we have treated this endometriosis case, and the patient we are following up till the date. We did the treatment long back in 2015, and she did for 6 months, and she didn't get the episode for say about 6 years. In 2020 she had mild pain again, but 2020 till the date we are monitoring her, following her up, and she is absolutely fine. I cannot say with this one case in my mind, or say about few cases in my hand, that yes, we can treat the pain of the endometriosis along with Vidagni. But yes, a scope of further research is definitely there. Here I will like to share one more thing, that 4 students or research scientists are doing their MD thesis on Vidagni, Dr. Uday Kulkarni Yantra, Vidagni Yantra, and with help of that they are doing the research. So definitely more than 40,000 cases he has done already, and many doctors are following this Vidagni treatment. So let us explore the new ocean of scope of gynecological pain and the Vidagni. So it's innovative pain management, cancer pains, even these kind of pains we have already managed. Colicky pain, even it's short acting but immediately relieved. Statin juice also, yes, here also it's short acting. Definitely this is the backache, middle backache, upper backache, lower backache, sciatica, even beauty treatments. Yes, when you are not beautiful, the emotional pain increases, and we have different modalities for cosmetology, and the Vidagni helps. Definitely. See, 26 number needle, we have pierced here and passing the, so simple, Vedhan and Agni Chikitsa, but the combination. Katishul, see, lot many, more than 15 needles also we have pierced at a time. So low backache also relieves faster range. This is the Vidagni machine, and always Dr. Uday says it's a money tree. So you can get more and more money with this, and let us explore these new things. In brief, 3 major components of pain related with the gynecology. Udavarta Yoni Vyapat, Vatash predominant pain, where the pain is relieved by the menstrual flow. There, the pain related with low backache, lower abdominal pain. Before periods, we have developed a module, the third secret at Ayush Darpan platform, that this module is like Rutu Nusar Panchakarma, but this is cyclical Panchakarma related with menstrual cycle. So premenstrual basti, woman at 5th day of the menses, and Virechan at 12th day of the menses, Uttar Basti. Then second, Paripluta Yoni Vyapat, Pittaja dominant Yoni Vyapat, where pain, fever related symptoms are more, where Agni we need to use carefully, and there we need to do the differentiate diagnosis. And yes, up to some extent, Vidagni helps here also. And Upapluta Yoni Vyapat, where there are different kind of accumulation of the fluid, there are different kind of cysts, there are different kind of growth, swelling, inflammation, and the discharges. Yes, Vidagni has helped our patients a lot. And as I said, endometriosis is now our top priority research condition, where we are dealing with the pain patients, where again, where I started, I will stop my talk, that yes, this is the opportunity where nobody is like many of them have limitations to give option for the pain. We as Vidagni practitioners, we have option to at least relieve instantly the pain and manage her quality life successfully
and even the satisfaction, pure satisfaction of that healing and giving comfort to the patient, to the physician. We can earn this with the Vidagni. So let us start, not stop, but again let us start with our new Ayurvedic wisdom, with modern technology, with holistic approach, along with the Ayurvedic text concepts, baseline interest, explore the new world of Vidagni in gynecological pain, because each and everyone wants Natvaham kame rajyam, na swargam na punarbhavam, kamaye dukkhataptanam, artinashinam. I don't want heaven, I don't want anything else in the world, but I want the patient should get relieved with the pain. So let us explore this new modality. Thank you. Thank you, Ayush Darpan. Thank you, Naveen ji. Thank you, Dr. Shilpa. And thank you all the eminent doctors listening my talk patiently. Thank you, Dr. Uday Kulkarni, for this opportunity. I will stop slide share now. Thank you, ma'am. Very nice, amazing. Knowledge is of no value unless it could be practiced and shared. It's true. And thank you very much, Dr. Uday sir. Dr. Uday sir always supports, of course, Grow Mantri. Definitely. So questions are there, ma'am? We will take few of them. Yes, I want to stop slide sharing. Yeah, you have already stopped it. Yeah. Stopped it now. Okay. Yeah, what could be the Purva Karma to be done before the Vidagni, and how many sessions needs to be done for complete relief of pain, ma'am? And what will be the gap between the sittings? Yes, very important question. Every karma has Purva Karma. So first, to diagnose the underlying pathophysiology, we need whether to start with Vidagni or not. Second thing, clean the local area. Then mark it with the proper points. The simple technique of Vidagni is where the pain is at most more, the piercing point should be that. So our Vidagni is different than the acupuncture, definitely. So our points are pain related points. And so mark it and you can start. And the gap, I've shown you the video initially only, 3 rounds, 1, 2, 3, 1, 2, 3, continuously you can do it. It's a fraction of second. See, that's why I told you in starting only, in pandemic, it's a money-making tree, because you can offer the treatment with social distancing immediately happening and patient go out immediately. So it doesn't take more time. And session we offer 3 means alternate days. So 3 days in a week that way we offer the patient. Is there any difference in according to situation, ma'am? Is there any difference of settings according to the disease? Yes, severity of the pain, severity of the disease, and for menstrual pain, only once during the menstruation. Just once. It is available in the market, Dr. Uday sir. Are you there? I think. Yes, it's available in the market. Yeah, we will arrange one more. It's available in the market, definitely. And you can get connected with Dr. Naveenji Joshi, who is our good friend of us, and he knows this Vidagni technique very well. So you can get connected with him also. No worries. We are ready to give some special session for Ayush Darpan Journal regarding this. We want to use this, nothing more. Yeah, okay, ma'am. Yeah. Any questions, doctors? एक सेशन रखेंगे उदय सर का भी, स्पेशली विदाग्नि और मशीन को लेकर भी काफी इंटरेस्टिंग होगा. Yes, Dr. Payal. Yeah, please. Hello. Yeah. Because so we have very good session, ma'am. As usual, I have attended your previous sessions also. So we are eagerly waiting for Vidagni. I wanted to know. So we should always skip the marmas, right? While doing Vidagni. So if in case there is anything, if the patient tells about the pain, suppose on the marma also, should we do it around the marma? No.
we should avoid marma. That is the baseline important. See, point, even if the pain point is near Verma, just remember our eyes should be clear, our vision should be perfect. So with the practice, you understand where to pierce and where not to pierce. Okay. I have seen many cases where in former days, patient used to give like Bibdal Sadag, means that this Agni Karma was related with pain management since ages in our India. We have already seen the marks because it makes it keeps marks, but with this machine, we don't keep marks also, and sometimes it's not required to pierce the needle also, only touch and go. So it is very beautiful experience with this machine is, see, we are practicing since last 15 years, more than 40,000 patients already at our place and all over India. So many people, so many doctors are using this machine, but the more, I don't remember, more than 10 patients also had some problem, and problems are also minor. So you need to avoid marma, and that is to baseline the point when we make a circle and identify the point. There we need to understand how much to pierce, not to pierce, or where to pierce. So 3 baseline: why, where, and how much. 3 things you need to ask to your mind, and then only pierce. If the painful marmas are there, we have marma chikitsa also. So Dr. Navinji Joshi is expert in this. So we can take help of all the practice. Yeah. So while taking, if we buy the machine, then we will get the training also on Yes. so that Yes. And for your information, you will get training also. And for your information, if you type Dr. Uday Kulkarni, there are n number of videos available on YouTube. So disease-wise also, you can understand how to use this with our many videos we already put on. It's not Great, ma'am. related, Really but great. yeah, thank you, ma'am. And one last question is, if you said about the cyclic panchakarma, so I just had a question. If you have to give that woman on the 5th day of menses, what can we exactly give? Like it could be a Laghu woman type of a thing, right? Very interesting question, near to my heart, because we have developed this model, and just trust me, for the treatment of infertility, giving immense satisfaction and the result. See, premenstrually, when the estrogen progesterone levels are going down, the Apan Vayu, it as a higher pace, it's like a role of Apan Vayu. We give Matra Basti to the patient. The congestion already start releasing. Then after periods, the 5th day of the menses or completely stopping of the menses, the Laghu woman is given with the help of Ikshuras, sometimes Yashti Madhu. Yes, sometimes we have given Madanfal woman also at milder dose, and we have prepared a tablet, Madanfal tablet for this, so it's easier to take for the patient also. So this research-based model, when we give that Laghu woman at the 5th day of the menses, sometimes 5th, 6th, 7th day of the menses, immediately the HPO axis and the internal things get corrected. And we like the thickness of the endometrium, the overall condition of the patient improves. So this is experience-based study. And yes, Laghu woman is given, no Snehapan is involved. But this woman, because this is the inspiration from Yoga Guru at Thane, who used to give, Nikam Guruji, Thane's Yoga Guru, who used to give each and every female patient Laghu woman, yogic woman, after stopping of the menses. And I observe that these females are getting good menstrual cyclical regularity after this woman. So we started with this concept, and we literally correlated it with the Rutu of the female cycle. So Kapha dominant 5th day Rutu, then
Pitta dominant 10 to 12 day Rutu and the Vata dominant premenstrual Rutu. So that Rutu bhavati artavam, that the hormonal different conditions we identified and we gave this module, and it's helping. It's helping. Really nice, ma'am. Very Thank you, grateful ma'am. to you. Thank you very much. It's a wonderful session indeed, I think. And it's really great pleasure to organize such a wonderful webinar. And I'm sure it's very useful to all the doctors and viewers of Ayush Darpan. Now I request Dr. Joshi sir to conclude the session with the vote of thanks. Yes, thank you, Vaidya Shilpa Yermeji, for a very brilliantly organized session. And I definitely I'm thankful to all of the speakers who have just delivered their precious speech on this program. Especially, I'm just giving a sequence of the name by the Vanita Sharma from Australia. Vaidya Kamini Dhiman madam, already she's already supporting us at the Ayush Darpan platform by giving her a precious knowledge. By the Anjana Saxena ji, she's also a blind supporter of Ayush Darpan. I'm thankful. By the Madhura Kulkarni, as I already told you that she is connected with us. We have organized many offline seminars during the pre-COVID era, respectively in Nepal, Bangladesh, as well as in Bhutan, where the Sasi Sharma, she is also a very, very great orator as a professor in Uttar Pradesh. Where the Anjana Tak already, her lecture is very exclusive, as well as her YouTube videos are so much popular. Where the Aruna Patki, I think she is not present due to some circumstances. Where the Anjali Verma, she is from Haridwar, and I just watch her presentation. It's very beautiful. By the Rachna HB. So I am very much thankful to all of you for exploring a gynec program in such a long way, as it started from 10:30 a.m. and just I am looking here at 6:39. तो गायनी में भी इतना बड़ा सेमिनार हो सकता है, वेबिनार हो सकता है. एक यही गायनी के टॉपिक पे देखिए आप. अभी you will watch this program on the YouTube also after some time. So I am thankful to all of you, and I am especially thankful to Vaidya Shilpa Yermeji for coordinating and organizing all the plannings of this seminar or webinar. She is a very she's working very enthusiastically, बहुत enthusiasm से काम कर रही हैं. बहुत